बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए मेरी दिल वही तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए मेरी दिल वही लगे हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सभी लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया, सत श्री अकाल। हेलो हेलो गाइस, एक गाना सुना तो गाना सुना। Oh my God! क्या बात है नरेन भाई, थैंक यू सो मच फॉर द $20 यूएस सुपर चैट। आते ही नरेन कंवर भाई, दिल से बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। अगर आप स्ट्रीम को देख रहे हो, थैंक यू सो 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 मच यार। मतलब आई थिंक द बिगेस्ट सुपर चैट ऑफ दिस चैनल टिल नाउ वो है आपका ये सुपर चैट जो कि नरेन कंवर भाई ने करा है। इससे पहले यूवी भाई ने मारा करा था। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। एक बार ओपी कर दो यार, 43 लोग देख रहे गाइस। इफ यू आर वाचिंग द स्ट्रीम जस्ट ओपी नरेन भाई ऑन द चैट गाइस। लेट्स गो गाइस, लेट्स डू इट। लेट्स गो गाइस, नरेन भाई के लिए ओपी इन द चैट कर दो यार। बहुत सारा प्यार एंड रियली अप्रिशिएटेड फॉर द सपोर्ट मेरे भाई, दिल से खुशी। आज दिन बना दिया, आज मैं बहुत थका हुआ था, सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली। बहुत लंबी लंबी स्ट्रीम करके 7-7 घंटा स्ट्रीम और भी काफी चीजें रहती है। आज बिल्कुल एनर्जी, बट एनर्जी फुल बूम माम। लेट्स गो बॉयज। मिस्टर पीपी हेलो की भाई, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। 7 स्टार अनुज भाई हेलो भाई, क्या हालचाल? लियोन मेसी हेलो भाई, आप कहाँ से हो ब्रो? हम इंडिया से। देवी थापा हेलो भाई। दीपित भाई क्या हालचाल? नरेंद्र कुमार बिग फैन ब्रो फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच भाई एंड मींस अ लॉट वंस अगेन। मी टू बिग फैन ऑफ यू भाई। क्या सॉन्ग है? यस मेरे भाई। मिस्टर पीपी बंद कर देते नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी। हेलो थॉमस भाई क्या हालचाल? भाई मैं टीवी पर देख रहा था और गाना सुनकर मेरे पापा बोले कि ये सॉन्ग तुझे कहाँ से मिला। भाई ये बहुत ही तगड़ा सॉन्ग है जो भी मैंने बजाया था, तो काफी दिल को छूने वाला सॉन्ग है एंड पुराने लोग समझेंगे उस सॉन्ग को। ओपी नरेन भाई ओपी यस। लेट्स गो बॉयज, आज की डिस्कशन करते हैं साउथ एशिया का, फिर करेंगे पीएमएसएल का, ठीक है? लेट्स गो। सबसे पहले आज का हमारा जो टूर्नामेंट है जिसके लिए आप में से काफी लोगों की नजरें रहने वाली है, दैट इज पीएमपीएल साउथ एशिया फॉर श्योर। आपको सारी प्रिडिक्शंस वगैरह करके बताते हैं मेरी क्या प्रिडिक्शंस रहेगी पीएमपीएल साउथ एशिया के लिए। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा व्हाट आर योर प्रिडिक्शन। अब मैं अपना टूल खोल दूं। बिगेस्ट वेपन जो मेरा वेपन है, लोगों के वेपन होते हैं लाइक जो आप M4 वगैरह यूज करते हो, एंड मेरा वेपन गाइज ये है जो मैंने यहाँ पे बजाया है, लगा दिया है। मेरा वेपन क्यों नहीं खुला? हेलो हेलो माई वेपन, ठीक मेरा वेपन खुल जा भाई। अरे मेरा वेपन नाराज हो गया गाइस। स्टार्ट टाइम ब्रो, बस स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम पे। मैं थोड़ा सा आज जल्दी आ गया कि डिस्कशंस करने के लिए थोड़ा सा। स्टार्ट टाइम ब्रो, स्टार्ट टाइम 3 बजे होता है पीएमएसएल का एंड पीएमपीएल साउथ एशिया इज फ्रॉम 5:30। मेरा ओए मेरा वेपन क्यों नहीं खुल रहा? नाराज हो गया क्या पीक पेन मेरे से गाइस? हद है तो। अच्छा फक, मैं नूब हूँ। कहाँ पे था मेरा? तो गाइज ये मेरा वेपन है, ये मेरा हथियार है। सो गाइज आ जाओ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हियर वी गो। साउथ एशिया की रैंकिंग की अगर बात करें एंड अब बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज, बहुत सारी डिस्कशंस इस हमारी रहने वाली है पूरे ओवरऑल सिनारियो के अंदर।
पीएमपीएल साउथ एशिया की अगर हम बात करेंगे, सो इस पे ये फर्क पड़ेगा पीएमजीसी के लिए। दिस रैंकिंग्स, इन रैंकिंग का फर्क पड़ने वाला है, अभी नहीं, पीएमजीसी के लिए, फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर पीएमजीसी, क्योंकि #1 और #2 टीम आपने देखा होगा वो ओवरऑल परफॉर्मेंस से जाती है। तो फॉर मिरेकल वाइव्स एंड एसटी को ये जो बेनिफिट है ये पीएमजीसी के लिए करेगा। अगर अभी बात करें ग्रैंड फाइनल्स की गाइस, दिस इज द रैंकिंग जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, एंड अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, एक आपको नई टीम दिखने वाली है, दैट इज एनबी ई स्पोर्ट्स, जो है 161 पॉइंट के साथ, डीआरएस 153, एसटी 149, 145, 148 एंड एसजी कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक, कल 3 डिनर देखने को मिले, ट्रिपल इन्होंने मारा है। अब गाइस कुछ प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं जो आज के दिन पे आपको देखने को मिल सकती है फॉर श्योर। एक पॉजिटिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखो मैं आपको हमेशा से बोल रखा है डीआरएस का। तो गाइस डीआरएस का ना जो गेम प्ले है, दे हैव द स्मार्ट गेम प्ले, द कंपोज्ड एंड द काम प्ले स्टाइल दे हैव, जो हमेशा से लाइक उनको हेल्प करता है, लाइक सेकंड सर्कल्स के बाद जो उनके मूव्स बनते हैं, दैट इज इनसेन, एंड जो उनकी एंट्रीज होती है दैट इज रॉ एंट्रीज, जो आप बोल सकते हो डीआरएस की तरफ से। एंड आई एम वाचिंग डीआरएस रोटेशंस, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सिंस जब से पीएमपीएल स्टार्ट हो रहा है, एंड दे आर क्वाइट गुड फॉर द रोटेशन वाला थिंग, दे आर क्वाइट गुड, क्वाइट गुड फॉर द रोटेशन वाला थिंग। तो आई थिंक आज के दिन पे, एंड आपको ये भी पता है रूल्स भाई की टीम थी जो विजिट वाइब में, वहां पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला सीन करके दिखाया था एंड पे, प्रेशर वाले दिन पे। तो आई एम होपिंग आज के दिन पे डीआरएस फॉर श्योर। सेकेंडली जो टीम है जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, दैट इज स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स। जिन लोगों को नहीं पता है, अब तो लोगों ने पैटर्न भी बना लिया है स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स का, एक जो आप लोगों को पता ही है कि स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स का पैटर्न क्या है, कि पहले दिन या फिर अच्छा खेलेंगे, डाउन जाएगा, दूसरा दिन भी लाइक फिर कम बैक करेंगे, देन ऊपर होके आएंगे। तो एसटी का सीन यही रहता है, फर्स्ट डे वॉज नॉट डिसेंट, सेकेंड डे लाइक इतना, मतलब उनके पास इसमें आप देखोगे 70+ कुछ पॉइंट का लीड था, बोनस पॉइंट था, जिसके बाद ये कुछ ओवरऑल बैलेंस हुई है चीजें। लेकिन जो एक डिसेंट परफॉर्मेंस जो एसटी के था, ओके ओके था, बट एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस जो आता है वो उनका प्रेशर वाले दिन पे आता है। सो आज का दिन हो सकता है, एसटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, डीआरएस एंड एसटी, दीज आर द टू टीम जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इन दोनों आपका चैंपियन बनने के लिए। एनबी के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बारे में आपके कमेंट पढ़ लेते हैं। पीएमजीसी डेट, पीएमजीसी ब्रो नवंबर ही होगा। सॉन्ग नेम ब्रो रंग दे बसंती का सॉन्ग है। अरे 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 अरे, थंबनेल बेस्ट, यस भाई। इन्फ्लुएंस शैमिन का क्या हैवी बेंटर, भाई इन्फ्लुएंस शैमिन का बेंटर देखा, मैं बजा नहीं सकता, कॉपीराइट पड़ जाएगा, बट अलग है। डीआरएस विल विन, देखते हैं। मेरे को वाइब्स आ रही है एनबीआर 4M जीत जाएगी डीआरएस एंड एसटी की जगह, देखते हैं। हाउ टू जॉइन कॉम्पी, कौन से रीजन से हो पहले ये बताओ। एसजी एनबी, ओके, एनबी के बारे में बात करते हैं, लाइक अभी करेंगे बात, उसके बाद हम आते हैं 4MV के बारे में। तो गाइस 4MV इज अ टीम जो, जिनका मेरे को ना एक माइंडसेट काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, कि लाइक फर्स्टली दे लाइक स्टार्टिंग से फिनिशेस एंड रोटेशंस कट वगैरह में जहाँ पे उनको टीम्स मिल, ये वहां से पॉइंट्स निकालने का हमेशा से ट्राई करते हैं, एंड हार्ड शिफ्ट्स में ट्राई करते हैं कि फाइट्स लेके खेले, एटलीस्ट इनके पास पॉइंट्स लेके जाए। कल जैसे कल का मैच हुआ था, दे हैव द डिसेंट पॉइंट्स, अगर आपको याद हो 11 किल्स लेके गए थे एंड जल्दी आउट हो गए थे। तो ये इनका गेम स्टाइल है 4MV का, अगर आपने देखा हो। छोटा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल फंडा। एंड 4MV की अगर बात करें आज के दिन पे मुझे ऐसा लगता है, ये जो तीनों टीम है, अ, ऐसा हो सकता है शायद आपको, मे बी मैं एसजी को भी अगर इंक्लूड करूं, हो सकता है लाइक मैं इवन एनबी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इनमें से कोई एक ऐसी टीम होगी जो हो सकता है कि आज के दिन पे परफॉर्म वैसे वाला ना दे पाए, एंड किसी का एक डाउनफॉल होगा। वो कौन सी होगी वो देखने वाला सीन रहेगा, या पर क्या पता कोई भी ना हो, बट इनमें से एक टीम हो सकती है, क्योंकि मैं रीजन के साथ बता रहा हूँ चीजें, कि आज का जो लॉबी होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ हार्डेस्ट लॉबी फॉर श्योर। एंड आपने नोटिस करा होगा एक चीज, 6 मैचेस इन टोटल है, अगर 6 मैचेस इन टोटल है, तो कई बार सिचुएशंस आपके फेवर में होगी, कई बार सिचुएशन आपके फेवर पे नहीं होगी, क्या पता 6 के 6 मैचेस में सिचुएशन आपके फेवर पे हो, है ना। एंड हर एक टीम का ड्रॉप लोकेशन अलग है, होल्डिंग पॉइंट्स अलग है, खेलने का तरीका अलग रहता है टीम्स का, आपको पता है। तो उसके अपने प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग, एंड लाइक लक फैक्टर भी मैटर करेगा, उसके अकॉर्डिंग कौन सिचुएशंस को ऊपर नीचे, कई बार सिचुएशन ऊपर नीचे भी हो जाती है, जहाँ पे आपको पता है कई बार टीम फंस जाती है, कई बार क्लैशेस हो जाते हैं, तो सीन ऊपर नीचे हो जाता है। तो इन टीम का तो सिनारियो आपको पता है कि इनको #1 के लिए बैटल करना है, बट जो नीचे की टीम है ना, रॉ, स्टील, TRZ, DE, SITM, लियो, HV, इनका मेन फोकस है कि हमको भाई टॉप 12 आना है, यहाँ पे ग्रीन पे रहना है। आप टॉप 12 नहीं आ रहे हो तो आप साउथ एशिया चैंपियनशिप के लिए भी नहीं जा रहे हो, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ।
साउथ एशिया चैंपियनशिप इज द गोल, क्योंकि साउथ एशिया चैंपियनशिप ही एक राह खुल सकती है PMWI जाने के लिए। तो साउथ एशिया चैंपियनशिप का गोल है। सो डीई इज बैटलिंग फॉर, डीई बैटल कर रही है, टीआरजेड बैटल कर रही है, सील कर रही है, रॉ कर रही है। अगर आप पॉइंट्स देखोगे ना, पॉइंट्स गेम, तो इनको भी पता है कि इनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग करनी पड़ेगी। तो क्या पता ये इनका भी आज के दिन पे अप्रोच थोड़ा सा चेंज दिखे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली फाइट लेके जाए। एंड क्या पता लाइक जो मिड टेबल 4 टीम्स है एंड जो बॉटम की टीम्स है, लाइक अगर आपने देखा होगा इससे पहले भी कुछ फाइट क्लैश हो जाते हैं एंड सिचुएशंस कहाँ से कहाँ बदल जाए किसी टीम के। सो हो सकता है आज के दिन पे इनमें से शायद कोई टीम हो आपको थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखाई दे, क्या पता पांचों की पांचों टीम के मैचेस अच्छे जाए, मोमेंटम टचवुड काफी अच्छा है, होप सो वैसा ही रहे। बट अगर मैं आज के दिन पे बात करूं जो मुझे लग रहा है कि चैंपियन बनने वाला सीन, तो ऑनेस्टली सेइंग मुझे ऐसा वाइब आ रहा है अंदर से कि टॉप 5 टीम फॉर श्योर। आई विल गो फॉर टॉप 5। एनबी, एसजी, DRS, STE, 4M एंड SG। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से होगा। ISC की परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन है एंड गैप भी बहुत ज्यादा है 161। बट मिड टेबल चार्ट में पॉसिबल तब हो सकता है वो चीजें अगर ये कल SG जैसा खेलती है, लाइक 3 से 4 बैक टू बैक, 3 चिकन डिनर बैक टू बैक ले लिए, देन कंसिस्टेंट खेला, तब मिड टेबल चार्ट का सीन बनेगा। बट टॉप 5 फॉर श्योर। SG के लिए टफ है, कंसिस्टेंसी खेलनी पड़ेगी। अगर SG कल के जैसे कंसिस्टेंसी या मोमेंटम के साथ नहीं आती, देन उनको टफनेस होगी। क्योंकि 4MV, ST, DRS, NB अपने गैप बढ़ाने वाली है। NB के लिए #1 को मेंटेन करना इस टाइम। बाकी आपके व्यूज क्या है नीचे एक बार कमेंट करके बताओ। अब मैं आपके चैट पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ, सारी चीजें मैंने आपको गाथा समझा दी, अब आपके व्यूज बताओ। आज लास्ट डे ब्रो, यस टुडे इज द लास्ट डे फॉर द PMSL and Pmpl South Asia 2। आई डोंट नो मच अबाउट PMSL बट इज देयर BTR भाई? यस शिव दवे भाई, यस देयर इज BTR, देयर इज EVOS पर्सिया जो लक्सी जक्सी पर्सिया में गए, देयर इज फेज, देयर इज वेम्पायर। अभी हमको लॉबी दिखाएंगे, आपको भी समझाएंगे सीन। DRS शुड विन, DRX भाई देखते हैं क्या सीन होता है। अब मैं आपका चैट पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ, आपके क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। 4MV अग्रेसिव टीम हो, यस पूजन श्रेष्ठा, नो डाउट दे आर अग्रेसिव। दे वो खेलते सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एंड उनका मेन एम रहता है कि हर मैच से कुछ ना कुछ डिसेंट पॉइंट निकालना। लेट्स गुड यार, देखते हैं आज क्या होता है। हाय योगी भाई, हेलो कैसे हो इंडिया, हेलो हेलो। रूल्स सेट PMGC इजी देन ऐसे प्रो। देख लो यार कंपटीशन आपकी स्क्रीन के सामने, एक स्लॉट है, बैटल 5 टीम कर रही है लॉबी में भाई, कंपटीशन समझ रहे हो। PMWI में चलो ठीक है मान लिया, बट PMWI के लिए क्वालिफाई करना देखो कितना टफ है, दिखती भी बात है यार। For Nepal only there is hope for PMWI. Let's see, finger crossed भाई। And also आज के दिन पे जो भी लोग देख रहे, अगर आप थोड़ा सा भी हेट स्प्रेड करोगे डायरेक्टली हाइड फ्रॉम द चैनल, नो वार्निंग्स, टाइम आउट मिलेगा, फिर से दोगे हाइड। कल मैं 4 से 5 चैनल हाइड दे चुका हूँ चैनल से। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, बट आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हेट हेट वाला सीन। अब मैं एक चीज कर सकता हूँ, या मैच देख सकता हूँ या चैट संभाल सकता हूँ। एंड चैट में कई बार मॉडरेटर्स भी अवेलेबल नहीं रहते, तो डायरेक्टली मेरे को कोई भी दिखा, डायरेक्टली बूम खत्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज गुड बट नॉट द हेट वाला सेक्शन, याद रखना। What about PMSL? प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दैम। PMSL ब्रो बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। PMSL पे हमको, मेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को वाइब आया है इस बार PMSL देख के PEL का, कि टीम्स ने चीजें ट्राई करना स्टार्ट कर दिया है। द लाइक टैक्टिकल थिंग्स प्रैक्टिकली उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अभी जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद दे विल बी लाइक बेटर। लाइक जैसे PL की टीम्स का बेटर है, लाइक स्मोक्स यूटिलिटीज गेम प्ले, स्मोक्स पे खेलना है, लाइक समझ रहे हो, लाइक लोकेशंस के लिए लाइक जो बग्गीज व्हीकल यूज करते हैं, बेटिंग वगैरह, है ना, समझ रहे हो सारी चीजें। ADS गेम प्ले सी में जाके देखना, आपको बहुत सारी चीजें एज अ कॉम्पिटिटिव परस्पेक्टिव से सीखने को मिलेगी। एंड होपफुली एनालिसिस वीडियोस भी काफी जल्दी आने वाली है। एंड मैं, मेरी जो एनालिसिस वीडियो अब आएगी वो ज्यादा थोड़ी अब टैक्टिकल रहने वाली है। आई विल मोर फोकस कि आपको मैं दिखाऊं कि कोई टीम किस जोन पे, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं एक मैच के परिस्पेक्टिव में आपको एनालिसिस वीडियो बताऊंगा, दैट विल बी डीप। कि कोई टीम अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आपके मॉन्टे के जोन बन रहे हैं, तो कौन सी टीम का रेशो मॉन्टे को जोन को खेलने का बहुत बढ़िया है। तो हम इस तरीके से बात करेंगे कि वो क्या क्या ऐसा लॉबी के अंदर यूनिक कर रही है, क्यों चिकन लेके जा रही है, व्हाट इज द लाइक प्रैक्टिकली एंड टैक्टिकली थिंग्स वाइज, क्या उनकी मेंटालिटीज हमको देखने को मिले। इनर POV वी कांट, हम आपको बता नहीं सकते, बट मेरा थोड़ा एनालिसिस वाला सीन है, इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। सो यू विल गेट गुड एनालिसिस वीडियोस फॉर श्योर। बाय द वे जो हम मैचेस देखते हैं, ये जो हम वॉच पार्टी कर रहे हैं, मोस्टली दैट इज फॉर, अगर अब मैं बात करूं थोड़ा सा फन सेगमेंट रहता है, क्योंकि इंटरेक्शन सारी चीजें रहती है। बट जो एनालिसिस वीडियो रहेगी, एंड मैं काफी चीजें आपको यहाँ बता नहीं पाता हूँ, बट वो मैं ऑब्जर्व करके लिखता रहता हूँ, नोट्स वगैरह रहते हैं।
तो मैं अच्छे से नहीं बता पाता हूँ, बट जब हमारी एनालिसिस वीडियो आएगी उसको आपको एक एक पॉइंट इलेबोरेट करके बताएंगे। तो सब्सक्राइब करके रख लेना, लाइक कर देना वीडियो को। अय्यूब भाई कैसे हो? शारिक भाई एकदम बढ़िया। अब कमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट अबाउट पीएमएसएल, प्लीज चेक योर व्यूज ऑन देम। व्हाट अबाउट पीएमएसएल ब्रो, बहुत ज्यादा बढ़िया। अभी दिखाता हूँ भाई, आज कौन सा टीम को सपोर्ट कर रहे हो पीएमपीएल ऐसे पर। भाई मैं देखो आपकी स्क्रीन के सामने टीम आ रही है, उन सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, जो 5 टॉप 5 टीम, फुल सपोर्ट। एनबी विल फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर। देखते हैं ब्रो फर्स्ट पीएमपीएल है, कैसे प्रेशर को हैंडल करती है। वो एक चीज है, बट मेरे को एक चीज का डाउट है कि एनबी स्पोर्ट्स कैसे प्रेशर हैंडल करेगी। अयुगी गैस द विनर। लाइक ऑनेस्ट ऑनेस्ट अगर मैं गैस करूं सो मैं लाइक देखो जा लेके कोई भी जाए, बट आई थिंक डीआरएस एसटी और 4MB मेरे को वाइब आ रही है। पता नहीं अब कोई भी हो इन तीनों में से, शायद क्या पता कोई चौथा या तीसरा भी ले जाए, बट अगर आप मेरे से ऑनेस्टली ओपिनियन पूछ रहे हो अभी के टाइम पे, डीआरएस एसटी एंड एचवी। और आपके क्या वाइब है कमेंट करके बताओ। गुड आफ्टरनून ऑल इन वन पीके, क्या हाल चाल आपका? गैस आज का चैंपियन अनुपम भाई बता दिया। डीआरएस असलामी, विच टीम आर यू सपोर्टिंग टुडे इन पीएमएल ऐसे? ब्रो बता दिया, ये भी बता दिया। चैंपियन विल बी श्योर टॉप 5, यस। एंड वी विल लेट्स गो। एसटी इज अग्रेसिव और पैसिव। एसटीई इज डिसेंट, वो खेलते थोड़ा सा रुक के स्टार्टिंग पे एज इन्फो लेके आगे आके जाके, देन वो एक टाइम होता है उनका, लाइक उनको टीम दिख रही है आगे, देन वो आगे घुस के मार के खेलना स्टार्ट करते हैं, अपना एज क्लियर करते हैं। हेलो ब्रो, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच। सफारी भाई क्या हाल चाल? एसटीज आपका गैस आज का चैंपियन बता दिया ब्रो। डीआरएस एसटी और 4MB इनमें से एक मेरा गैस। एगी व्हाई आर यू जेलस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ नेपाली एंड हैं हैं प्रकाश केशी भाई, तालिया प्रकाश केशी भाई के लिए। भाई मैं जेलस हूँ डीआर भाई ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। डीआरएस लव फ्रॉम पाकिस्तान, ओके भाई। लव लव लव। एसटी भी अग्रेसिव टीम है, यस। लव फ्रॉम नेपाल ब्रो, लव यू टू अनंता कुमार भाई, लव यू 345। पीएमएसएल का प्रिडिक्शन दो, अभी करेंगे ब्रो इसके बाद। भाई कितनी टीम क्वालिफाइड होगी पीएमडब्ल्यूआई के लिए ब्रो? हैशटैग सिर्फ एक टीम ने जाना है ब्रो। हमेशा एसटी इजिली पीएमजीसी के लिए क्वालिफाई कर लेती, तो अब उनको भी बहुत टेंशन हो रहा होगा ऑब्वियसली। ऑब्वियसली ब्रो, पहले ऐसे होता था एक या दो टीम होती थी, अभी पांच चार चार टीमें तो लाइन पे है ही। 5 टीम अगर एसजी को आज के दिन पे गैप है, बट मैं 5 टीम बोलूंगा कि आज के दिन पे है ही ब्रो। सोलन कैसा है? बहुत बढ़िया है ब्रो। लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच बाय। टॉप 5 कौन कौन आएगा? पाक वर्सेस साउथ एशिया, टॉप 5 टीम कौन सा आएगा ब्रो? साहिल बंगल भाई आज खत्म होने दो, इसके बारे में भी बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे आज, हमारी चैनल पे अपडेटेड रहो। लास्ट डे इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, डीआरएस एंड एसटी मोर लाइकली टू बी। कॉल में डिस्कनेक्ट, यस, बट सिचुएशंस भी मैटर करेगी। शॉर्ट टूर्नामेंट में किसी को कम मत समझना। अनंता जलसी भाई, पता नहीं अनंता भाई, आई थिंक लॉल। अयोगी भाई पीएल फाइनल्स कब से है? पीएल फाइनल्स 19 से ब्रो। Bro, stop spamming. Yes, ST for the win. Yes. Why only one slot for PMPL SA and other country slot? Bro, एक ही slot है हर एक रीजन से। आशिम पटेल भाई, अगर आपको गलत फहमी ना हो, तो एक ही slot है हर एक कंट्री से। ST obviously, okay. मंगलवार डीआरएस प्लीज डोंट स्पैम। भाई ये पागल है। लव फ्रॉम नेपाल, सिस्टम ऑफ डाउन, थैंक यू सो मच मेरे भाई। एसजी का चिकन ज्यादा है, क्या पता वो और ले जाए। अफनान सेनपाई, यस कंसिस्टेंसी। मैंने मोमेंटम की आपकी बात करी, एसटी का मैंने डायरेक्टली एसजी का भी सेम बात करा। मोमेंटम इज द की। हेलो मुर्तजा भाई, भारत भारा भाई, नाहिद भाई, एक्सडी भाई, वाइल्ड एक्स भाई, मुर्तजा। सिर्फ एक टीम जाएगी भाई पीएमडब्ल्यूआई के लिए। 10 शाहरी, यस। ग्रेविटी वाइब्स को ड्रॉप मिलिट्री है और जोन 7 जा रहा है, तो क्या परफॉर्म करेगी ग्रेविटी भाई? अगर बात करें टीम्स को, इसके बारे में ज्यादा पता है, लाइक किसी टीम ने मिलिट्री बेस ड्रॉप रखा हुआ है, तो उसको ये भी पता है 7 ड्रॉप 7 जोन जा सकता है। तो आई थिंक वी शुड लाइक, तो आज का दिन वेट कर लो, बस देख लो क्या होता है। टू मच लव्ड, यस ब्रो, आज के दिन बड़ा मजा आने वाला है ब्रो। लव फ्रॉम पाकिस्तान, जस्ट वांट टू नो अबाउट बीजीएमआई गोइंग टू अनबैन व्हेन कांट। ब्रो इसके बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट, बट क्या पता, रूमर्स थे कि अप्रैल अब कैसे खत्म होने वाला है, बट आई डोंट नो क्या सीन होगा आगे, कुछ होगा ऑफिशियली पता लग जाएगा। लव फ्रॉम नेपाल होगी भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई। कब स्टार्ट होता है मैच ब्रो? मैच अभी 3 बजे पीएमएसएल स्टार्ट होगा, देन आफ्टर दैट हम पीएमएसएल देखेंगे। 5:30 बजे से पीएमपीएल स्टार्ट होगा। पीएमएसएल पे मजा मत मिस करना, बहुत है, बहुत मजा है। एसटी के लाइनअप बताओ प्लीज। एसटी का लाइनअप ब्रो सेम है। एसटी का लाइनअप में है आपका टॉप एक्शन, लाइक टॉप एक्शन, नीर और आईसी, यही 4 बंदे खेलेंगे मोस्टली। आईएट भी जीती, यही जोन थे। जैसे वाई डीआरएस 39 किल भाई, लाइक रीजन टू रीजन लॉबीज का फर्क पड़ता है मेंटालिटी का, शेरे भाई वैसे, बट यस आपने सही बात बोली, टीम्स को ऑलरेडी बैकअप रहता है कैसे खेलना है। वाई डीआरएस 39 किल्स एंड एसटी 27 किल्स।
A1 हाउ ST टॉप कम MVP। एक मिनट रुको, MVP वाला चार्ट देखने दो मेरे को यार। गाइस MVP में फॉर्मूले लगते हैं यार, ऑनेस्टली सेइंग MVP में फॉर्मूले लगते हैं। MVP में गाइस फॉर्मूले लगते हैं, मैं आपको बताऊं, एक मिनट। बाय द वे गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा स्ट्रीम को लाइक कर देना। 184 लोग देख रहे हैं। एक बार मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ, फॉर्मूले लगते हैं। तो कल मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए, कुछ और ना खुल जाए बस भगवान की दया से, ऐसा कुछ तो। तो गाइस ये है पीए ओवरऑल रैंकिंग जो अभी हमने बात करी, हम एमवीपी की बात कर रहे हैं। यस, दिस इज द एमवीपी रैंकिंग आपके लिए। दिस इज द वेरी टफ फॉर ऐसे टीम। यस ऑब्वियसली सुफियान भाई। हाय 7 स्टार अनुज, क्या हालचाल। ऐसे चैंपियनशिप में पाकिस्तान को कुछ ज्यादा स्लॉट नहीं दे दिया ब्रो। अब दो ही स्लॉट है, दो ही रीजन है पीएमपीएल में। नेपाल का भी अगर अलग से इंडिविजुअल पीएमपीएल होता है देन फिर स्लॉट में थोड़ी सी रिडक्शन हो सकती है, बट अभी दो पीएमपीएल है तो स्लॉट का ऐसे ही चलेगा ब्रो। लिख के ले लो, बोलो डीआरएस और एसटी। लेट्स गो बॉयज। मैंने भी डीआरएस एसटी और 4 एम के लिए बोला है, वाइब्स के लिए तीन जो मुझे लग रहा है। इन केस एसएससी फ्रॉम वन स्लॉट टू पीएमपीएल देन ऑल टीम्स आर मैड इन चैंपियनशिप। ब्रो मजा तो तभी है ना जब पीएमपी उसकी स्लॉट की वो आशिम पोडियल फ्रॉम टॉप 4 इफ वन टॉप सिक्योर 10 पॉइंट्स फ्रॉम ईच गेम दे विल बी चैंपियन 100% श्योर। यस आसिम भाई, आज के दिन पे 10 का एवरेज पर मैच जरूरी है भाई। पीएमएसएल में मेल कास्टर बहुत थाईलैंड टीम की बात करता है। मुझे चाहिए कि और जीत जाए और उसको फेस देखूं। अरे अरे ठीक है भाई, फॉर श्योर। ST MVP is 100% डैमेज 20 MVP 20% एलिमिनेशन। तो गाइज ये देखो, ये है आपका MVP लीडर बोर्ड जिसमें टॉप आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझना, चीजों को अच्छे से समझना। बाकी दानी भाई बोरे आज ST टॉप करेगी, देखते भाई। निर्जर टोटल 3 किल इन फाइनल। यस सऊदी लीग देखो, क्रिप्टो ने धागे खोल रखा है पक्का भाई। इसके बाद श्योर, एक कल से हम फ्री है, पूरा सऊदी लीग का ट्राई करते हैं परमिशन का। सऊदी लीग में क्रिप्टो ब्रो देखते हैं जो भी मैचेस होगा। बाय द वे एमवीपी की बात करते हैं, काफी लोग पूछ रहे हैं। सो 25 एलिमिनेशंस, 20 एलिमिनेशन टू डॉक, एवरेज सर्वाइवल, ये सारी चीजें मैटर करती है गाइस एमवीपी रैंकिंग्स के लिए। एंड डैमेज ये देख रहे हो गाइस, ओवरऑल अगर आप डैमेज देखते हो 4811, 25 एलिमिनेशंस, 20 एलिमिनेशन, आई थिंक 1735। अगर आप बोल रहे हो लाइक डीआरएस एक क्वेश्चन आया था, तो गाइज आप यहाँ लाइक पूरा ओवरऑल सिनारियो देख सकते हो कि डैमेज टॉप का एंड डीआरएस डैमेज 3549 है, 3484 है। एलिमिनेशन टॉप के भी ज्यादा है। अभी किसी का क्वेश्चन आया था तभी मैं आपको ये ओपन करके दिखा रहा हूँ। एवरेज सर्वाइवल ज्यादा है अपना गेंटे भाई का, एंड एमवीपी रेटिंग इज 2.09। तो इसमें फॉर्मूले लगते हैं, सारी चीजें होती है, उसके बाद ओवरऑल सिनारियो यहाँ पे बन के आता है। तो उसके रिस्पेक्टिव में अगर आप देखते हो, इवन दो 17 एलिमिनेशन गेंटे के भी है बट 17 एलिमिनेशन सीक के भी है, बट डैमेज अगर आप देखोगे उनका ज्यादा है। चाहे वो लाइक आपका एवरेज सर्वाइवल इसका कम है बट ज्यादा है। तो यही चीज है, एक मैनेजेबल थिंग है। अगर आपको एमवीपी बनना है सो आपके पास डिसेंट डैमेज, डिसेंट एलिमिनेशन, डिसेंट आपका एवरेज सर्वाइवल होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग एमवीपी रैंकिंग बनती है। एंड जो बंदा टॉप पे होता है वो एमवीपी का टाइटल ले जाता है। सो दिस इज द थिंग, मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा भाई। सऊदी लीग में देख लेंगे, क्रिप्टो एमवीपी है सऊदी लीग में। ओके, ओ आई गॉट इट, ओनली टॉप इन एमवीपी लिस्ट फ्रॉम एसटीई। यस आई थिंक यू शुड चेंज योर नेम फ्रॉम एसटी एमवीपी, नॉट विन फ्रॉम इंडिया मैनेजेस पीएमपीएल एसए और पाकिस्तान माफिया निंजा। यस ब्रो, ऑल्सो यस माफिया निंजा टू ब्रो। माफिया निंजा भाई भी हमारे एमवीपी लीडर बोर्ड में है फ्रॉम एसजी 18 एलिमिनेशन के साथ, हल्के पे नहीं लेना। 3517 डिसेंट डैमेज है, एवरेज सर्वाइवल बढ़िया है। आज अगर माफिया निंजा भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम देखा है एलिमिनेशन लीडर बोर्ड में, जब जब माफिया निंजा भाई आए हैं तब तक उन्होंने लॉबी में फाड़ा है, जैसा कल फाड़ा है। आज अगर मोमेंटम एसजी पकड़ गई तो एसजी को भी कम मत समझना, आज के दिन पे कुछ भी धागे खुलने वाली पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ब्रो क्या इंडियन टीम्स पीएमपीएल पाक में पार्टिसिपेट कर सकती है? नहीं भाई, बीजेएमआई का अलग से सीन। एमवीपी फार्मूला, वाई पीएमपीएल प्रोडक्शन इज बैड, आई डोंट थिंक बैड ब्रो, बढ़िया है अपने अकॉर्डिंग, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बाकी यस, लेट्स गो बॉयज। हाय हाय, करे स्टार्ट पीएमएसएल से जर्नी। एंड जो भी नए लोग हो गाइस, पीएमपीएल साउथ एशिया 5:30 स्टार्ट होगा, 5 PM, तो 5 PM हम अब सब आ जाएंगे। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द इंग्लिश स्ट्रीम राइट नाउ। लेट्स गो पीएमएसएल। हम पीएमएसएल के 3 मैचेस देखेंगे, देन विल शिफ्ट टू पीएमपीएल साउथ एशिया गाइस। अभी पीएमएसएल का 3 मैचेस देख के देन विल शिफ्ट टू पीएमपीएल साउथ एशिया। इसको इग्नोर करो, इसको छोटा करो, इसको पकड़ो और इसको चलो। ST News had only 3 kills in finals, कोई दिक्कत नहीं भाई। Best IGL from Nepal, माफिया निंजा। Yes, the reason, the experience,
द गाय हैव द असॉल्टिंग। भाई जब जब इससे पहले वाला सीजन भी देख लेना, माफिया निंजा डीआरएस में भी था जब, तो जब माफिया निंजा ने मारना स्टार्ट करा था, सो वो जीते थे, और आज वही सेम चीज की जरूरत है। वेम्पायर अंडर प्रेशर चोक करेगी? आई डोंट थिंक वेम्पायर अंडर प्रेशर चोक करेगी। सैद रिजवी भाई पीएमजीसी नहीं देखा क्या आपने? बाय द वे गाइस, हियर वी गो, पीएमएसएल 2023 ऑन योर स्क्रीन। लेट्स गो बॉयज। किसको सपोर्ट कर रहे हो पीएमएसएल के अंदर, वो भी एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पीएमएसएल की भी मैं रैंकिंग एक बार दिखा देता हूँ लोगों को, लोगों बोलेंगे पीएमएसएल का नहीं दिखाया, ये खुद ही दिखा देंगे क्या रैंकिंग? अभी गाइस थोड़ी देर में रैंकिंग यही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो गाइज ये है पॉइंट सिस्टम, ग्रैंड फाइनल्स, टुडे इज द लास्ट डे। यहाँ से 2 स्लॉट पीएमडब्ल्यूआई के लिए, 2 स्लॉट फ्रॉम पीएमएसएल बाय द वे, जिनको नहीं पता है रहने वाले। एसटी स्ट्रगलिंग टू गेट प्लेसमेंट पॉइंट, यस। वीपी वीपी कमबैक किंग्स, यस। माफिया निंजा अग्रेसिव आइजल इन एसए, यस। वीपी लेट्स गो बॉयज, let's go with the full energy in the intensity. Rules is best ideal from Nepal, yes. He's proving, bro, he's proving day by day. Respect is going another level for rules, Paji bhai. वीपीई, वीपी फॉर #1, लेट्स गो भाई। वीपी ने बहुत बढ़िया खेला है कल के दिन पे, $2.5 लाख। गाइस बाय द वे, आपको एक चीज मैं बताने वाला हूँ वीडियो बना के भी, यहाँ पे आपको स्नीक पीक दे देता हूँ। अब से पीएमपीएल टूर्नामेंट्स इज लाइक सेकेंडरी थिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस पूल आई गेस, एंड प्राइमरी थिंग विल बी द चैंपियनशिप। यस, अब टीम्स का चैंपियनशिप में क्वालिफाई, देखो पहले टीम को होता था पीएमपीएल क्वालिफाई करना, बट अब पीएमपीएल में क्वालिफाई करने के बाद टीम्स का टारगेट होना चाहिए अब चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना है। अब हर एक चैंपियनशिप के आपको प्राइस फुल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बाय द वे, हियर वी गो गाइस, बोनस पॉइंट्स इसका भी हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज लास्ट डे है। बोनस पॉइंट टीम्स को ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये सिस्टम आपका पीएमएसएल का है। रूल्स इज स्मार्ट एंड यस यस भाई। हेलो, हाँ। Doc is aggressive Igel from SA. Doc is Jod bro. Doc is Jod. VP with iPhone. अरे 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 अरे, वीपी ने उस टाइम एंड्रॉइड में फाड़ दिया था बे, अब तो आईफोन पे है, कुछ ना कुछ तो करेगी यार वीपी, मेरे को बिलीव है यार। वीपी जब वीपी ने पीएमजीसी करके दिखाया है, एंड वीपी ने उससे, भाई वीपी ने एक बार नहीं, वीपी ने 2 बार करके दिखाया। अगर आज वीपी कर फिर से करके दिखा देती है, कहाँ करके दिखाया, गेस करो कहाँ करके दिखाया। वीपी ने लास्ट चांस में #14 से #5 मारा था, 4 या 5, याद है? लास्ट चांस में, लास्ट दिन के अंदर, 2 दिन का लास्ट चांस था, जहां पे डीआरएस भी क्वालिफाई हुई थी। आई गेस डीआरएस #2 या #3 आई थी वहां पे लास्ट चांस में, याद है वहां पे? देन वो ग्रैंड फाइनल्स में भी लास्ट डे पे उन्होंने हैशटैग बिल्कुल बॉटम से आके क्या 90 पॉइंट इनर दे जोड़े थे। तो वेम्पायर ने 2 बार करके दिखाया है, तो तुक्का एक बार लग सकता है, तुक्का 2 बार बहुत कम से लगता है। अगर आज भी वीपी ने कर दिया, तो आपको ना पूरे वर्ल्ड को एडमिट करना पड़ेगा आज के दिन पे कि भाई वीपी जैसा प्रेशर पे कोई टीम नहीं खेल सकती। अगर वीपी आज कर देती है, अगर वीपी आज भी डी मतलब मार देती है ना लॉबी को, आज के 3 मैचेस में पता लग जाएगा आपको। अगर वीपी ने खोल दिया ना, तो आप समझ लो वीपी की जो टीम है, आपको एडमिट करना पड़ेगा वर्ल्ड्स बेस्ट टीम प्ले लाइक अंडर प्रेशर वाला सिचुएशन। करंटली गाइस रैंक आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। ऑल्टर ईगल आईमैक्स इज द कंसिस्टेंट टीम, देन वीपीई 113 पॉइंट के साथ है आज के दिन पे। जब कोई टीम 14 से उठ के लास्ट में टॉप 5 टॉप 10 आ सकती है बैक टू बैक, आज के दिन पे क्या वो टीम #2 से #1 आएगी? इट्स अ बिग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइज। आपको क्या लग रहा है, यस और नो पे नीचे चैट पे आंसर करना। बाय द वे, बूम काफी अच्छे फॉर्म पे, मोमेंटम पे आ चुके हैं। शाइन लाइक डायमंड का कल का दिन अच्छा नहीं था, बट अच्छी डिसेंट टीम है। फेस के इतने अच्छे बोनस पॉइंट होने के बावजूद दे आर ऑन #5, मतलब परफॉर्मेंस नहीं आई है। यूडो अलायंस इज अ कंसिस्टेंट टीम, आज के दिन पे मेरी होप है यूडो से, देखते हैं क्या करती है। खेल अच्छी टीम है, गीक कंसिस्टेंट है, काफी अच्छी टीम्स है। एंड अगर आप गैप देखोगे इतना नहीं है, 87 टू 113 अगर आप वीपी तक देखते हो आना पॉसिबल है, बट बैक टू बैक 2 अच्छे चिकन डिनर्स आप आ जाओगे ऊपर, देन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा तो #1 भी आ सकते हैं। इवोस पर्सिया कल का दिन बहुत ही डिसेंट नहीं गया। इवोस पर्सिया भाई बहुत ही डिसेंट दिन नहीं था, रुको मैं दिखाता हूँ। मैं आपकी लक्सी लक्सी पूछ रहे तो लक्सी लक्सी ये वो स्पर्शिया में, देन RRQ, BTR, बेकन बॉक्स, सेमना एंड द सेवियर वॉइन। कल एक दिन अच्छा नहीं खेला, #3 और 4 से आई गेस #9 पे आ गए। तो दिस इज द लेवल, बट 1-2 पॉइंट का भी फर्क है। सो आज देखते हैं क्या सीन होता है। मीनवाइल टॉप 4 डैमेज टीम, फेज का डैमेज देख लो भाई, 98,756 शाइलैंग डैमेज, 96,000, 90,000, 90,000। ओ भाई ओ भाई, ये फाइनल्स डे 2 का है ब्रो। जॉर्ड
फ्लूक द जॉड, यस मनी का डॉलर भाई। सैयद रिजवी, टोनी बीमार हो गया था इसलिए बेंच कर दिया था उसको। ओके आमदानी ब्रो, आपने पीएमपीएल देखा? अगर देखा उसमें R3G को एक इंटरनेशनल प्लेयर ने कोच किया, उसको कैसा लगा? ब्रो मेरे को बताया, बट मेरे को इतना सीन पता नहीं है गाइस सीन, बट इसके बारे में ओमदानी भाई मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा, देन आपको इस पे कमेंट करूंगा। टीम चेंज है वीपी, ओके यस नाउ रूल्स इज बेस्ट आईजीएल। VP winner of PMWI and also after party showdown, they are the king of comeback. Yes, VP and इनको in last chance. VP भी वर्ल्ड के 3-4 बार टीम है ब्रो। यस यार, PMWI में भी इन्होंने लास्ट डे पे कमबैक मारा था भाई, 3 बार कर चुकी है VP की टीम। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कर चुकी है बे। शोडाउन में, पीएमडब्ल्यूआई की मेन इवेंट में, पीएमजीसी लास्ट चांस, पीएमजीसी ग्रैंड फाइनल्स। तो वीपी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। बट यस, टीम चेंजेस हुए। नूजी प्लस टोनी के का एडिशन आया हुआ है। नूजी का थोड़ा सा सीन अभी ऊपर नीचे चल रहा है। नूजी इज द गाय जो अर्ली एलिमिनेट हो रहा है टीम के अंदर। आई गेस मोस्टली स्काउटिंग कर रहा है नूजी, तो उसमें गिर रहा है, तो वो दिक्कत हो रही है टीम को थोड़ा। एज एन 3 प्लेयर ज्यादा खेल रही है वेम्पायर की टीम ग्रैंड फाइनल्स की। वेर इज नोवा 19 तारीख को भाई। यस्टरडे SG3 विनर विनर चिकन डिनर। यस भाई, मैंने देखा कल के दिन पे, एंड आज के दिन पे भी मोमेंटम पकड़ लिया एसजी ने, सो एसजी भी लाइन पे ही है। नोवा लीग इज डिस्क्वालीफाइड। ओके, बेकन डिसअपॉइंट कर रही है। बेकन डिसअपॉइंट कैसे कर रही है? भी बताइए, बेकन कैसे आपको डिसअपॉइंट? वेट करो आज का दिन, देखो क्या होता है। बूम बम बूम हेल गीक द सेवियर तो क्वालिफाइड है। यस, हम ग्लोबली प्रॉपर कभी खेलेंगे, पहले के दिन याद आ रहे हैं। ब्रो सुन, जब गेम आए, गेम होना जरूरी है, बस दैट्स द पॉइंट। और तो कुछ। पीएल ग्रैंड फाइनल्स 19 तारीख को है भाई। साउथ एशिया वर्सेस इंडिया रीजनल क्लैश हो सकता है। नहीं, साउथ एशिया वर्सेस इंडिया का तो पता नहीं, ऑफिशियल्स पे डिपेंड करेगा, बट गेम तो आ जाए। ब्रो दिल से फेस कब से फॉलो कर रहा हूँ, देखते हैं। पीएल ग्रैंड फाइनल्स 19 से ब्रो। गोल्डन भाई, सारी चैट निपटा दी भाई, प्यास भी लग गई मुझे। वीपी अपने वर्स्ट फेस में भी सेकंड चल रही है, अगर यही स्टैंडर्ड है भाई। आपका नशा लग गया है मुझे, आपकी स्ट्रीम ना बहुत खराब लगता है। लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच शिव प्रताप सिंह भाई, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। इंडिया टीम आर नथिंग एड। अरे अरे ब्रो, ऐसे कमेंट मत करो ठाकुर भाई, देखो अच्छा नहीं लगता यार। आप लिखोगे फिर दूसरा लिखेगा, ऐसे हेट बढ़ता है। तो आई थिंक यू आर द मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड गाइस। अगर आप भी नहीं लिखोगे तो दूसरा भी नहीं लिखेगा, समझ रहे हो? ऐसी चैट हेट की बढ़ती है। आई एम सपोर्टिंग ऑल्टर ईगो, यस। किसी भी टीम को ऐसे मतलब वो मत करो, मतलब कि लाइक वो टीम वैसा है वैसा है, सिचुएशन कंडीशंस होती है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग भाई। और भाई मैं बताऊं, चैट में मैं कल देख रहा था हेट कैसे फैलता है, पता है? वैसे बाय द वे, फर्स्ट मैच शैनॉक एंड ऑल्टर ईगो एमएक्स, वन ऑफ द बेस्ट टीम है शैनॉक की, देन वेम्पायर, बूम एंड बेकन। एंड मैं एक चीज देख रहा था हेट फैलने वाला रीजन। एक पर्सन कुछ लिखता है, फिर वो दूसरा लिखता है, फिर उसके बीच में उनका बैटल होने लग जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अभी का करंट सर्कमस्टांसिस देखूं, मैं ऑनेस्टली ऑन पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी सीन क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, साउथ एशिया हमारा चल रहा है, ठीक है? एंड सीन क्या हो रहा है कि अगर आप देख रहे होंगे, जैसी टीम अच्छा खेलती है, तो आई नो यू आर द फैन ऑफ द टीम, आप टीम के फैन हो, बट आप क्या करते हो, आप अप्रिशिएट करो उनको, बट आप क्या करते हो, उसके साथ साथ ना दूसरी टीम का नाम अटैच कर देते हो, एंड उसको थोड़ा सा डाउन दिखाते हो। अब जो दूसरी टीम का कोई फैन बंदा है जो देख रहा है इस टीम को, उसको वो अच्छा नहीं लगता, देन वो वहां से बोलता है। फिर आप फिर अलग बोलते हो आप अच्छी टीम खेल रही है ना आपकी, तो लाइक XYZ कोई भी हो, मैं भी यहाँ पे टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। लाइक मैं DRS ST वाइब्स SG को सपोर्ट कर रहा हूँ आज के दिन पे साउथ एशिया। PMPL, इसमें मैं बात करूँ PMSL पे, वेम्पायर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आज के दिन पे। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑल्टर ईगो लाइमैक्स को, फेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। सो अब मैं, ये टीम जब अच्छा खेलेगी ना, मैं अप्रिशिएट करूंगा, जब ये डाउन खेलेगी मैं और ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। तो आई थिंक ये क्वालिटी आप अपने अंदर भी लाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस टाइम पे जो दूसरी टीम अच्छी खेलेगी तो लाइक वैसा वाला सीन, समझ रहे हो? अगर आप बैंटर्स दे रहे हो ना, पॉजिटिवली बैंटर्स दो, बट एक हेट वाला सीन मत फैलाओ चैट के अंदर, दैट्स इट। आई थिंक आप समझ गए होंगे चीजें, हेट ऐसे ही फैलता है भाई। बाकी मैच पे फोकस करेंगे। सारी चैट निपटा दी भाई, सारी चैट निपटा दी, मेरा गला सूख गया, पानी पी लूं फिर से? इतनी सारी चैट फिर से होगी भाई। आई एम सपोर्टिंग ऑल्टर ईगो, मैं टू फेज, लेट्स गो। लव यू मेरे भाई, लव यू टू संजय भाई, क्या हाल चाल? पीएमपीएल कब स्टार्ट होगा? 5:30 मेरे भाई।
फेज फैन यस, सारी चैप्ट निपटा दी भाई, सारी चैप्ट एक साथ। होप इंडिया में बीजेएमआई बैक हो, सो बट वी कैन विटनेस द इंटेंस व्यूअरशिप ऑफ साउथ एशियन इंडिया। भाई मजा आ जाएगा, इंडिया में बीजेएमआई आए और कभी साउथ एशिया और बीजेएमआई का कुछ टूर्नामेंट आ जाए भाई, स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं वॉचिंग के। पानी पी लो यस। साउथ चैंपियनशिप कब से है ब्रो? चैंपियनशिप की डेट 27 है, बट इसमें डिले हो सकता है। साउथ एशिया ग्रैंड फाइनल्स कब से स्टार्ट हो रही है? वही साउथ एशिया का ग्रैंड फाइनल्स 5:30 से। पठान भाई, पठान 5x 7x 5:30। अभी पीएमएसएल है, इसका भी ग्रैंड फाइनल्स है, इसका भी लास्ट डे। एक ही बंदा चैंपियन बनेगा। वीपी कमबैक इज रियल यस यस, सपोर्ट एवरी टीम बिकॉज एवरी टीम हैज सेम एफर्ट यस। आज किस टीम में है मतलब? रोजमेरी न्यू राइजिंग स्टार वट अ प्लेयर ब्रो, पहले से राइजिंग स्टार है। ऑल्टर ईगो एमएक्स अभी वो चल नहीं रहा, इवन दो वो मार नहीं रहा, जब जब हम देख रहे तब तो नहीं मार रहा, तब भी ऑल्टर ईगो खेल रही है। इमेजिन करो रोजमेरी जब मारने लग जाएगा, ऑल्टर ईगो एमएक्स काम पहुंच जाएगी। भाई आपसे मिलना है, कैसा होगा पॉसिबल? शिव प्रताप सिंह, कहाँ रहते हो आप? वट आई वॉन्ट पीएमजीसी सीजन 1 इन्फिनिटी बैक टू ट्रैक लाइक अ मॉन्स्टर। लेट्स सी भाई क्या सीन होता है भाई। बीजेएमआई आएगी तो साउथ एशिया वर्सेस बीजेएमआई, अंश वाईटी भाई ने बताया है होने वाला है। ओके भाई, लेट्स सी क्या सीन बनता है ब्रो। अगर इंडिया रीजन में गेम वापस आए जाए तो इंडिया रीजन भी अच्छा खेलेगा ऑब्वियसली भाई। चांस मिलेगा आगे, जितना चांस मिलेगा उतना प्रैक्टिस होगा, एक्सपीरियंस आएगा, तो आगे बढ़ते रहेंगे। पीएमपीएल अफ्रीका में ट्रिपल ई स्पोर्ट्स कंसिस्टेंट है। आज कैसा खेला चैंपियनशिप? आज हमारे अफ्रीका का भी फाइनल है। ऐसे चैंपियनशिप का क्या है ब्रो? 27 अप्रैल की डेट है, ऑफिशियल ने खुद बताई है, बट कोई दिक्कत। लव यू मेरे भाई, लव यू टू जान। रोजमेरी बहुत साल से परफॉर्म कर रहा है यस भाई। DRSX गाइस, बहुत सारी चैट है, सबको निपटा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करना। दिस शुड बी 3 एंगल 2 मिरामर 1 शैनॉक इन पिंपल ऐसे। कोई नहीं ब्रो, चले रहने दो भाई। तुम्हारा ओपिनियन में कौन सा रीजन हार्ड है? रीजन सभी हार्ड है भाई, आप ऐसे कंपैरेटिवली कमेंट नहीं कर सकते, बट अभी के टाइम पे मेरे को, मैं साउथ एशिया देख रहा हूँ, पीएमएसएल देख रहा हूँ, मेरे को दोनों हार्ड लग रहे हैं। बाकी मैंने रीजन इतना मैंने डीपली फॉलो नहीं करा है जितना मैंने पीएमएसएल और पीएमपीएल साउथ एशिया करा है। एंड मैं मेरे पास वर्ड नहीं है भाई फॉर दिस कंपटीशन गाइस। मैं पहले भी कंपटीशन होता था, पर पहले कंपटीशन होता था लाइक 2 टीम होती थी, 3 टीम होती थी ऑनेस्टली। टॉप 2 के टीम में बीच में कंपटीशन होता था, थर्ड टीम T2 के होती थी, जो लाइक नीचे से आती थी बकल अप करते हुए एंड बिल्कुल पेल देती थी उन दोनों टीम को। समझ लो 3 टीम होती थी, 10 से ज्यादा 4 टीम। अभी देख लो 5 6 7 8 फर्स्ट डे तो पता ही नहीं लगा कौन टॉप पे आएगा नहीं आएगा। SG #14 से #5 आ गई है। टॉप 4 टीम कंसिस्टेंट खेल रही है, क्या पता आज के दिन पे कोई बैक टू बैक चिकन निकाल ले ऊपर आ जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती। आपका लाइव देख नहीं पाता काम के प्रेशर के लिए, रात में देखता हूँ फुल स्ट्रीम। थैंक यू सो मच नीले गुप्ता भाई, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। बाय द वे फर्स्ट मैच इज अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम PMSL 2023। सबको बुला लीजिए, टुडे इज द लास्ट डे फॉर द PMSL एंड PMPL साउथ एशिया 2। ऑल टीम्स लेट्स गो यस ब्रो। अगर इंडिया रीजन में गेम वापस आ जाए तो इंडिया रीजन में भी अच्छा खेलेगा यस। सुमन मल्ला यू स्टिल स्नेक इन क्लासिक द डे बिफोर यस्टरडे भाई, मेंबर ने स्टार्ट किया था हेड देना टाइटन नेम वाला। कभी भोजपुरी कभी लिख रहा बोलता। ठीक है भाई, टाइटन भाई को हम हाइट दे देंगे अगर टाइटन भाई स्ट्रीम देख रहे होंगे। सो दिस इज द लास्ट वार्निंग फ्रॉम माई साइड गाइस। अगर कुछ भी गाइस स्पैम होता है जस्ट लेट मी नो। मैं डायरेक्ट, कल मैंने 4 5 बंदे हाइड कर दिए जो कंटिन्यूसली गलत लिख रहे थे, एंड दे आर नॉट इवन अब चैनल का पार्ट। थोड़ा सा टॉक्सिसिटी कम हो गया चैट पे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर एक रीजन पे जितनी भी टीम्स खेल रही है उनको प्रॉपर एक रिस्पेक्ट एंड प्यार मिले। एंड गाइस, जो टीम अच्छा खेलती है हर्ट स्पैम कर दिया करो, नाम क्या गया। अगर कोई टीम डाउन भी खेलती है उसके लिए भी हर्ट स्पैम कर। भाई डिले रखो 10 सेकंड का है, वो ऑलरेडी है। शाउट आउट टू गौरव ब्रो। अगर इंडिया में गेम वापस आ जाए तो यस यस। अल्फा भाई, आपने कितनी बार कमेंट कर दिया, जल दीजिए ठीक, थक गए होंगे। अरे अरे शुभम गेमर भाई, ठीक है भाई। ओनली वीपी भाई, ओके। लैन होता है SSC चैंपियनशिप, देखते ब्रो क्या सीन होता है। कि भाई तुम्हारा ओपिनियन में कौन सा रीजन हार्ड है बता दिया ब्रो। अभी तक MVP कौन है? टॉप अरमान भाई, टॉप वर्ल्ड क्लास MVP। ओहो लक्सी जक्सी परसिया RRQ। आज बैंटर देखना है यार चैनल में प्लीज यार, गीक वर्सेस वाइन करवा दो प्लीज। लेट्स गो बॉयज, लक्सी जक्सी परसिया ऑन योर स्क्रीन। आएगी भाई, कैसे सौगात भाई, एकदम बढ़िया। लेट्स गो, आज बैंटर देखना भाई वॉइन का एंड उसका गाइस, मजा आ जाएगा जो फर्स्ट डे देखने को मिला था। आई फॉलो पबजी टूर्नामेंट एंड सिंस 2019। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया पठान भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया। आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो एंड बहुत मुश्किल है कंटिन्यूसली फॉलो करना। चलो भाई, काउंटडाउन स्टार्ट, फर्स्ट मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। PMSL फाइनल्स लास्ट डे, डे 1, 1 मिनट पहला मैच स्टार्ट होने को। पहला मैच रहेगा आपका शैनॉक का। PL सबसे हार्ड पाई यो भाई। अभी देखो और 19 को कितनी हार्डनेस निकलती है, सब निकालेगी, ट्राई हार्ड करेगी ना जब, मजा आएगा। ऑल रीजन हार्ड टू यस भाई।
एसजी बैक टू बैक आएगा लगता है, लेट्स गो। T2K कहाँ है? पिछले पीएमपीएल में टॉप 8 भी नहीं आई थी। ग्रेविटी भाई, मैं पिछले से पिछले पीएमपीएल को देखना, जिसमें मेरे को याद आ रहा है जब ज्यूस होती थी, ज्यूस एंड डियास का कंपटीशन पे T2K ने भी कमबैक मारा था। तो लाइक देखो जाके सीजन्स में कम्युलेटिवली बात करिए T2K इज कम्युलेटिवली द कंसिस्टेंट टीम। मंगले भाई बोल रहे 2 प्लेसमेंट पॉइंट इज द रीजन बिहाइंड द कंपटीशन। यस, क्योंकि फाइट लेना और लाइक जो स्ट्रॉन्ग टीम होगी फाइट्स में वही आगे जाएगी, फाइट निकालना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प इज वेरी हार्ड। यस भाई। कौन कौन टीम क्वालिफाई है पीएमडब्ल्यूएल? पीएमडब्ल्यूएल अभी तक बूम, इंडोनेशिया, हेल, जेनेसिस, द सेवियर, गीक, आई8। आज 2 टीम, आज आपको 3 टीमें मिलने वाली है पीएमएसएल के लिए, 2 फ्रॉम PMSL and 1 from PMPL South Asia. SLD new okay. Hello bro, I'm back. Hello bro, love you bro, love you to AB Gaming. BTR को क्या हो गया, उनके लिए कुछ बताओ। कोई कुछ नहीं हुआ ब्रो, BTR को कोई टेंशन ना लो, सॉर्ट हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम सपोर्टिंग अल्टर ईगल IMAX ब्रो। अल्टर ईगल IMAX इज अ गुड टीम, रोजमेरी के लिए सपोर्ट कर लो भाई। हेलो ब्रो, हेलो कुलदीप भाई। क्लासिक स्टूडियो क्रिप्टो ने बोला है अगर की टीम PMGC नहीं गई तो I8 से PM खेलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? रोस्टर लॉक इन का सीन होता है ब्रो। हाँ, रोस्टर अगर चेंजेस का वो सीन है, अगर वो क्वालिफाई नहीं होती तो हो सकता है। शांस किस टीम में है? शांस एस टीम है ब्रो, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी भाई ट्रॉफी बड़ी प्यारी गाइस, ये ट्रॉफी है भाई, वन ऑफ द बेस्टेस्ट ट्रॉफी भाई PMSL की। आज मिलेगी किसी को लाइव, लैन इवेंट हो रहा है भाई। तो चल चल परसिवा, चल भाई, लेट्स गो बॉयज। फर्स्ट मैच ऑन योर स्क्रीन। आने दो, आने दो। Yep, I'm गेमर looking, and that प्लीज was a एडी, चलो real भाई बहुत सारी trophy. It चैट wasn't होगी, like a बहुत सारा हो गया image गाइस। or सौरभ something. बसनेत भाई, वैन Yeah, एसटी so वाज it's चैंपियन, great to see T2K that. वाज That means बेस्ट we'll टीम फ्रॉम see नेपाल। ये सौरभ भाई बसनेत, the winning हम team actually पुराने lifting it बंदे हैं up तो हमको later पता है today. So कौन सी do टीम stay कैसे tuned, खेलती ladies है। and gentlemen, and अगर we'll आपको see the पता होगा, trophy in its हमने full देखा है glory हर एक being टीम lifted को up. कोर से। But let's focus onto the game. लाइक समझ So रहे हो it's ना, going to be Sami लाइक मेरे को VOIN तो ऑलमोस्ट 3 only. साल हो गए, मैं I'm 3 साल से looking टीम at को देख GEEK रहा हूँ। SLATE. They changed बहुत their सारे drop चेंजेस squad भी देखे, onto अब the तो काफी eras of सारी L चीजें कई बार House, याद भी whereby नहीं रहती है, Sem9 बट आई नो normally कौन drops सी around hot कंसिस्टेंट 10. टीम है, किसने कहाँ पे So कैसे करा है, कौन सी Luke's KD भाई बहुत position डोमिनेट। is kind of dangerous कुछ because समझ he's के बोलते हैं competing गाइस। two GEEK That for SLATE BTR players. world That's gameplay something needed। for us to BTR में watch चेंजेस out है, on. वो पूरी टीम And I चेंज है do see यार, the movement from समझो। Yummy. He's moving around Let's the go areas boys, of first Paradise match on your Resort, screen। and that's where Lamborghini happened to be. It seems it's down to the circle, really. रॉ ने They बहुत need to अच्छा खेला move था or लास्ट not. वीक। यस, You do know सॉरी Paradise थोड़ी Resort. We haven't seen भाग दौड़ Paradise में था, Resort कुछ दिन fight नहीं आया। चलिए शुरू for the करते हैं, कोई longest दिक्कत time नहीं। here, honestly speaking. Even though there's a couple आज of teams surrounding us. वो We haven't seen the circle even because some of Team Mika Sem9, finished अरे off मैंने Sem गीक और 9 Sem9 low. नहीं, You गीक और guys are वाइन long. देखना था भाई। That's वाइन के that's लॉन्डो a कहाँ very हो straight first block, by the way. That's one of the भाई? किस fastest. Yeah, it is, and kind of anticipated that because when we saw What's your low, he opinion was about dropping. SG of When he was yesterday still game? Bro, flying, GEEK वो was SG है, already down there. माफी निंजा भाई। They started वाला दिन looting, याद आ जाता है जब so एक they दिन had में that 3 advantage. निकाले And थे so एंड happened that the रेस टू DBS was PMGC in चला Mika's था, side, the ज़्यूस perfect का weapon in that sort कंपटीशन of था और range, PMGC के and लिए ultimately #1 that's what क्वालिफाई कर रहा था। happened. याद है वो दिन? And now याद है the वो, याद है theory जब of DRS में थी SG का Lamborghini ओल्ड and also लाइन में। माफी निंजा Yummy भाई है now in the same तो पॉसिबल है। situation as माफी Low, निंजा, but this time it's going to be Chua coming in onto हैप्पी him. फॉर But देम Yummy has एंड the अब उन्होंने DBS. कंपटीशन काफी हार्ड बना दिया है। We do know आज when के it दिन comes पे to this सेम map, अगर the उन्होंने 2 DBS चिकन is a निकाल must. दिए It's a वो भी compulsory हैशटैग weapon बना सकते that हैं। everybody will carry. Despite they राइजन don't हाई have any यू हाई rifles, that's नहीं fine, नहीं as ब्रो, long as शायद they have 2 a दिन तो नहीं DBS. खेले, आज का Coming पता up from Yummy, can he clutch this? Yummy pretty much one of the best players coming on with those DBS, but the entirety सचिन भाई, of बाय द वे गाइस, PMPL का मैच the शाम को actual स्टार्ट होगा। DBS तो is PMPL here. Yummy trying to Okay. respond. He got Okay. 2 and make a 3. Whoa! Oh, this is the DBS King Yummy man. यम्मी Somebody gave him a special award for being the DBS Hi. king. I mean, we're talking about 3 D-Savior players. यम्मी And भाई नहीं that मार is रहे, going कल to be यम्मी भाई 3 ने लास्ट points में for भी बहुत Boom क्लोज दिया था। Esports. Just ओपी like यम्मी that, भाई, leaving T-Duck all alone शम्मी with भाई। QBZ. He's definitely not going to pursue this any further. He hurt the DBS. No, he's not going to take that fight for sure. And He's plus now taking it. Yummy has PMGC backup. क्वालिफाई करना इजी है या PMW? Okay. Yeah, he's taking it. Okay, He's okay. taking it. T-Duck Okay. shot out on Hexas. Now Yummy's Hi. still alive, but this is not going to be a distance for a DBS working. T-Duck, 1 compensation. The Razy coming from the other end. Assalamu Yummy alaikum, switch over to M4. वालेकुम अस्सलाम You शेर want to भाई। fight, you got one, but can he at least get one? रानी वाह, Never mind. The first team out. ओपी Whoa, we can see देख रहे हो guys, Hexas there with a Banters। taunt. बैंटर्स And देख रहे हो Hexas गाइस, still लाइव survives. Yummy बैंटर्स। is able to pick him up, Wait so guys, they're थोड़ा going सा to be पीछे करें, A-okay. ज्यादा नहीं, 10 Never सेकंड mind. पीछे करते हैं First team बैंटर्स। out.
ये Whoa, we can see Hexas there with the वॉइन नहीं तो taunt. बूम ने दे दिया And बोले आ Hexas जाओ still survives. और आ जाओ Yummy is able to pick him up, so they're going to be मोटा भाई A-OK. एंग्री और व्हाट Oh man, coming out of Paradise Resort, wanting to take their advantage. I know these Xavier, they're desperate for points, but to डीबीएस है that तो पॉसिबल है गाइस extent, 1v5 भी Ooh. पॉसिबल है 1v8 That- 1v5 भी that करते was, बंदा डीबीएस में that was Situations पे a वैसे रहेगी difficult decision for these Xavier. A bit too forceful. पीएमएसएल पता really. क्या है पीएमएसएल I mean, को like, for पीएमएसएल इक्वल टू T-Duck, डीबीएस कंपटीशन I डीबीएस don't know आपको if भर he के just देखने को really want to go for शायद the एक fight टाइम or को आप just थोड़ा सा because थक he भी can जाओ इतना actually डीबीएस go दिख for जाएगी survive as टुडे इज द लास्ट डे बाय द वे a मेट्रो solo man army if he wants to. He doesn't have to necessarily forcing the fight. Maybe the idea was no point. The first map चलो of the भाई final day. आगे भाई पीएमपीएल No साउथ elimination एशिया points, no rank point, nothing out of this. चैंपियन Yeah, कितने टीम I guess PMWI में a little जाएगा bit of desperation move there चैंपियनशिप by का अभी these तक रिवील नहीं Xavier. है ब्रो In fact, they तो win the आप छोड़ दो circle. बट एक बार रिवील कर They दे तो बढ़िया obviously have Paradise कंपटीशन ऐसे Resort हार्ड for देखने को मिलेगा themselves. आई थिंक रिवील कर So देना चाहिए all कि they पीएम needed to do if लाइक they साउथ like एशिया invaded चैंपियनशिप that से भी fight is स्लॉट है just focus on भाई to टीम जो getting ट्राई into हार्ड the next करने phase वाली है circle, सोच going लो to the टूर्नामेंट next का क्या हाल checkpoint, होगा but 3 दिन के they टूर्नामेंट really में तो want to ऐसे take that हाल है fight. They really wanted उसमें the क्या point, होगा but it was चैंपियनशिप given में to जब Boom at the आपका other day. पीके 4 वर्सेस points साउथ that will एशिया होगा bring Boom इमेजिन to करो क्या ही 110 टीम points, ट्राई हार्ड 3 करेगी points shy away from सोच के भी Vampire ऐसा लग रहा है Esports ना at कि that precious second spot. Boom Esports, they'll be happy with that पबजी win. मोबाइल शॉटगन लीग यस ये शॉटगन But लीग every point is a dime right now, Cloud. We're talking about to the last wire for this नॉट अ गुड team. न्यूज़ The only difference is ST going कहाँ to है be ब्रो that ST 1 करेगी point by the 5 end of the 5.5 day के to लिए make a difference between getting नाइस those एक champions or not. दो But Yummy, when you भाई give क्या him इजी this मार दिया DBS, भाई बाद even में no यमनी भी जा सकता helmet at this point, his vest was almost totally shredded. है देख रहे हो लॉन्डो But he clutched it anyway. That was incredible. Ooh. Oh, okay. I think that was a replay or something else. But anyway, Boom Esports, they'll be really, बढ़िया really भाई happy वेम्पायर with को बोट that. रोटेशन मार के So, ला 4 points in the back. And now, VOIN, the team ब्रो at number वेम्पायर का 16, नाम लिया कौन था Vampire पनौती Esports. हमारा सैयद Alpha भाई is just going to let it go. Oh no, they spot him out, so now he must take the fight. टोन नहीं Alva pretty low on बढ़िया his HP. Yeah. Stone, not gonna even stop. VOIN feels like this is a bit off for them, a bit too forceful with one player only in the front, 1-3. guys VOIN ने अगर गलती से फाइट निकाल दी I just want to see the reactions to What banter that type जो fine, you can चलता see even है they're just working as a 2-player right now. Maybe going for 2 formation, but they're not even reluctant. Muzi भाई knock No मत sense of reluctant or panic coming up from Vampires. Casually, composedly pushing into it side of VOIN. VOIN on the other hand feels like a bit messy here today. I'm wondering if he stayed put, would that change anything? I think it was spotted by Vampire PMWI Esports के the winner other को day, so he PMGC का has to slot react मिलेगा to it. not But at confirmed least yet. they managed to trade it back, so there's going to be 1 elimination. But Bacon Is this time max on the other quality? side Yes, this seems is to be max interested, quality. but in they're only outside circle, so it's going to be worthwhile they take this fight against VOIN. For Vampires, 2-2 formation, the other 2 going for the safer spot. कौन सी डिवाइस पे टूर्नामेंट हो रहा है The ब्रो other नो 2 going for स्पॉन्सर the kills टूर्नामेंट and elimination. It's gonna be it's shut LAN by basically down, it's a though. LAN but Like mentioned, the trade done, like iPhone damage पे done anyway. But for the अपने Vampires, डिवाइस what, पे they, जो what else सबको can do? सुटेबल लगता Can है they do? They उस just डिवाइस पे work out कोई the best that they sponsor can with the present. किसी को अगर एंड्रॉइड पे सही If लगता है the खेलना trio क्या is पता taking आपको work एंड्रॉइड से wonderfully भी well. खेलता Rosemary on there then taking a lot of the blues and seeing this for Sem 9. Now this is surprising. The entirety of Alter Ego, I'm not sure where they are at, but there's only one भाई Rosemary. नहीं यार Happened रोजमेरी to be अल्टर ईगो से ना solo-handedly अर्ली going into this blue zone by himself. Maybe Octa is long sight गॉड well. आइलैंड But this is going to be greeted by the side of Sem 9. बाय A द वे दे हैव द big स्ट्रांगेस्ट शैम big मैप क्लियर problem. बट सैम They 9 got मेरे को shot लग down नहीं रहा due to the पॉसिबल blue होने zone's long देगी sight with ओ them. भाई Well, unfortunately, Semnan the कहाँ की circle टीम है? कौन सी didn't region की favor टीम है? them, so they have to tank out the Don't blue at some you point. do? It's just a निकालो matter of भाई। Semnan whether he can get a knockdown, and Not a if he good thing does, for like Alter what's Ego, like happening Semnan now, ने beat that her. sharp shooting indeed. One knockdown there, and it's going to be low you on the Rosemary as well. Fnatic caught out, and he's going to be shot from the other side, but Adibs almost got Bye. down. Not a good Octa, thing there's for nothing much he Fnatic can bye. do. Not You a need to good get one. out of Not a this good zone. one. फैनेटिक They सबको need to पता get है out. अभी लॉबी Both के अंदर वो teams हैशटैग actually वन do पे need to चल get रही है out. भाई सबको पता है वो थोड़ा आइलैंड पे आती है bit सबको too far पता है from वो circle, यही yeah. एक्सिस सबको पता है और सैम this 9 को भी happens पता है तो सैम 9 whenever ने you बोला see this क्यों ना coming, थोड़ा सा पॉइंट both लिया team जाए might सैम not 9 की make it रैंकिंग है सैम 9 to top 14th five. We रैंक know पे that चल for a रही है fact, एंड eh? 2 एलिमिनेशन उठा दिया Sem मेजर 9 बीटी कर starting off चुकी with है यहाँ 3, managed to get a पे bit बुरा of लगा damage थोड़ा to the सा side ऑल्टर of ईगो Alter लाइफ Ego, एक्स के लिए more बट than चलो a कोई bit. दिक्कत की नहीं पोटैटो Heavy मीन casualty गए on the side of कौन Alter Ego, down to one last एसटीजी player. किधर की टीम है टर्की की भाई VOIN on the other hand also down to only 3 players left. Caught by the side of GEEK State now firing back. Stuxnet now down on the ground.
BTR वॉइन coming और on the गीक other side इसको with देखने के लिए मैं with तो also सबसे ज्यादा FaZe. बेचैन हूँ। यूआई की टीम नहीं है They're ना, happy to बीटीआर keep खेल it रही है ना, going for VOIN. They might get बीटीआर ही तो sandwich here. मैं यूआई की नहीं खेल खिला रहा हूँ, 2 दिन तो Looking नहीं at खिला रहा। current VOIN situation, looks like they are pretty clear. तो फाइनली चल रहा है Geek on the सरफराज other भाई, बाय द वे side गाइस दिस इज द should be able to pick up फाइनल his teammate, that should be fine. PMSL They're just फाइनल waiting for लास्ट VOIN to डे just move फर्स्ट away just to मैच, be इसके very, बाद very PMPL sure. Now होगा they're gonna get the next compound over 5:30 से, Geek विल Slate, स्विच टू and from PMPL this साउथ compound, you're एशिया not gonna इस get a मैच good के बाद visual. से। So it's more of like VOIN just putting out that warning shot, managed to get that one knockdown, and definitely they're clear to come over. At least VOIN, what they're doing is that they're managing the road early on, since we're still stage 2 of the circle. So that's a necessary move for them. There's still a lot of space, absolutely fine. But Hill and Yoodo Alliance, it's not the first time actually we see these two fight inside of Camp Bravo. So it's been a while, but it's going to happen again now. ये काफी इंपॉर्टेंट मैच है गाइस वीपी के लिए। अल्टर ईगो एमएक्स तो खुल गई है, वीपी के पास चांस है पॉइंट निकालने का। बूम हैव अ चांस, 10 लाख डायमंड। फेज देखो अगली जोन्स पे क्या टीम की स्ट्रेटजी रहती है। टीम स्टिल हैव अ चांस। वीपी का वंस अगेन यार, एक बंदा अर्ली उड़ गया। लो भाई बूम को पेल दिया। बॉक्स We saw how he can actually play it alongside with all the other teams against himself and just against all out there. Himself alone, he did it before. He can actually still do it. But he needs to buy a bit more time. Right now, Box just wants to get him out of the equation. But can he just slowly, sneakily get away with it? Hello, Red Skull, bye. The moment he stands up, he'll be shot down by Box Gaming. So I think that he wants to try Total to win bro, this fight, but it's not going to be easy per day obviously, because Box It's the Gaming last has day the for elevation. PMS ये जो है, Okay, he tries to get away. Box Gaming, same like PMPL okay, they happen to leave PMPL this South area, Asia so 5:30 start होगा। it's going to be पहले मैं clear आपको for बता him. देता हूँ, But 5:30 for the will news shift of to, Alter Ego, it's only one like player PMPL left, South Asia। and it's not going to be good as well. Same goes for Boom. They happen to have this, like, I don't know, this sort of like connection when one performs, the other does. If one doesn't, then somehow the other doesn't. I don't know, is it like kind of like a comparison kind of like a connection that they have because they have the same color scheme? मैच देखो वीपी हैशटैग ट्वीट PMPL। यार वीपी का पता नहीं क्या सीन है, इनकी जर्नी भी मेरे को पाई की तरह लगती है। पता नहीं 3 मैन स्टार्ट यार। अल्टर ईगो एमएक्स being the next last few circles, we do have too many teams coming from the southern side. ईगो एमएक्स का सच में गेम बहुत अच्छा जा सकता है। चलो There's कोई going to नहीं, be like what, part 4 of or the game 5 by the teams way। only from Paradise Resort पर्सिया and Camp जो Bravo. आपकी The rest of टीम them will be एलकावी के gatekeeped पास by दिख GEEK, रही है। SLATE, FaZe and Bacon time. ये And पर्सिया that's going नाम to be ले, a बड़ी लंबी huge उम्र है, haul अच्छा for खेलने them वाले के। if they stay in the southern side and gatekeeping it. SLD Shanlang taking on Diamond, RRQ back to back now. finished Not sure RRQ. what's happening on the other Yeah. end. But PERSIJA even हेलो भैया, हेलो सौरभ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। Another one FaZe वीपी versus GEEK हैशटैग SLATE. बस देखो It's not peaceful for GEEK Slate now that FaZe Clan is in the compound, same as GEEK Slate. Mika now only one still standing, but GEEK Slate couldn't stand the fire coming in for FaZe Clan, and GEEK Slate became the second team to go out with only 1 point in this Bacon का round. push DBS is everywhere. गाइस ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है अभी के टाइम पे। Nothing on Mela. टीम्स के But पुशेस Mela, एंगल्स will वाला he जो actually गेम clutch है against बहुत Bacon time? Yes, he बहुत is. Shetty down on the ground, मतलब finish पहले off straight थोड़ा away. टीम सोच के Mela करती है, wants अब 1-2, instant now he got a 4 for the Bacon ने entirety of थोड़ा सा FaZe, ऊपर नीचे or he करके clutched the ऐसे entire top squad. finish आ गया But उनके इस पे। Bacon time greeted by the hands of Mela. Touch now not happy with that, reply with a fire to a sort of moment. Now Noise on the other hand trying to find any sort of Mela with why Mela? Ooh! Well, why Mela? Too bad it has to be Mela. And now with Mela down, it's firepower down for FaZe Clan, but Venturas has a good amount of firepower in him as well, but it's up against a DBS helped by 9 Noise. 9 Noise will finish on Mela. And now it's only Onzens on the other building with Venturas down. Hanse bhai, thank you so much. Love from my side too. Love you. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanse, Pardo bhai. Thank you so much. I feel like this is definitely in the center. Bacon and FaZe are dying to get their hands onto this compound right now. Boom fighting again, 7-9 if I'm not mistaken. Whilst the side of Bacon sharing the same compound as FaZe, they're paranoid and especially FaZe is running low of man. 7-9 finish of Boom, where Dex is going to be eliminated, but at a great cost. Left with only 2 players left coming up from 7-9. Bacon time on the dead spot. 100% shot. He can see through down. Nice यार, FaZe. And Touch taking it away, saying it's for Noise.
Sorry, FaZe Bacon have के to लिए. bow down at 13. Nicely But done by anti- Nine Noise. anti to That was phase a two. good move by him. Not बेकन भाई needing ये any चीजें मैं prone आपको shot बोलना चाह रहा हूँ to connect the PMSL पे shots. मजा पता किन चीजों को Beautifully देखने को आ रहा done. है ये That चीज is है skill, ladies थर्ड and gentlemen, पार्टीज and जो that is you इंस्टेंट आ रही knowing है थोड़ा how to फास्ट play the पिच गेम प्ले हो compound. चुका है लाइक That is, of course, PL that of course आने वाले टाइम पे relies टीम्स on a यहाँ lot पे of बहुत चीजें knowledge to ट्राई play the करी game. हो सकता है आने वाले टाइम पे SLD on the आपको other hand, काफी Yoodo चीजें Alliance देखने came को out of मिलेगी their camp, and They are now it's going to be SLD doing feeling the wrath of some, Yoodo like, Alliance, but Alter fancy Ego is वगैरह out. बनाना जो While पीएल में आपने देखे Vampire होंगे and स्मोक्स SLD करके is still in. पीक लिया There's समझ gonna लो be एक a विंडो पे huge, फायर huge देना है कोई बंदा बार बार पीक opportunity ले रहा है for ना तो Vampire, बंदे especially क्या for them to करते हैं actually take away वो that करा number one spot and stay प्रैक्टिकली and maintain बंदों ने up करना there. स्टार्ट कर SLD दिया है मतलब will धीरे try धीरे to करके fight for मास्टर it हो as well. जाएंगे They're trying to take फाइट्स down a वगैरह Yoodo Alliance, the VTR coming out from the other side. तो जैसे विंडो 7-9 है got स्मोक कर दिया themselves the समझ लो ये circle. स्मोक करा है ठीक Well, है Goose and the rest of them तो have to मतलब cut बार बार across बंदा Yoodo जाएगा Alliance स्मोक and से Box Gaming after they're स्मोक के done बाहर with जाएगा this. फिर स्मोक के Well, अंदर आएगा Yoodo थोड़ा Alliance realize लोकेशन they're not लेने की inside of ट्राई a करेगा और circle, फिर even वहाँ they're पे trying वो to get into वॉच where आउट Box वाला या Gaming is, मार्क but a little लगा bit देंगे कि too यहाँ late की now. They तरफ do have विंडो the है middle स्मोक पे ground जाएगा एंड वहाँ instead पे of the स्प्रे देना high स्टार्ट ground. करेगा As और स्मोक LD के now अंदर से cornering वाला जो Yoodo आपका बंदा Alliance. है They're splitting वहाँ पे themselves नॉक into 2 formation right now. क्रेजीएस्ट 2-1, sorry. वाले CJ EVOS Luxy taking on Vampires. कि And भाई पेल Stone रहे is वे from the वीपी ground को as well. Oh स्टोन no, नॉक they can't take the number one spot सिया if they're being eliminated early now. Ooh, yeah, it's going to be hard, and that's अरे भाई opportunity for वेडनेसडे SLD, पीएल but है we'll बस leave that 2 talk दिन for बाद यस later मेरे as भाई VOIN onto PERSIJA EVOS. Only 2 points this round for Vampire भाई टोनी के Esports. इज नॉट प्लेइंग Not टोनी that के तो much, ब्रो but for तबीयत खराब है SEM9, अकॉर्डिंग RRQ wants this compound, but they're winning it against RRQ. Dap taking his DBS to work and putting so much effort in there as well. The Shino's just shut down on RRQ. RRQ Asar wants to go for the blood. Barely get any sort of Suriname elimination United these qualify days. नहीं हुई, bro. Veldemont अभी already नहीं। been knocked down. Down to Asar to carry out the entire crew responsibility to get himself some points for the side of RRQ. Box Shinos just finished off Voldemort entirely leaving with only Asar left on the side of RRQ. With SLD now picking a fight against Yoodo Alliance. Youngs, SLD, they are running gun. Seeing against for SEM9. Dominating gaya. across the board with 5 eliminations. Ooh, that nade from Adeluk. Adeluk. He's been performing recently. He wants to carry that momentum now. But Trongzi knows exactly where Adeluk is at the neighborhood on the side of Adeluk. But on the left, that's Kenny to give him cover Oh, fire. nice But that nade Last coming guy. in from nowhere takes Okay. him down. And now Kenny will try to take out Kwanji on the other side. This is going to be the third party. Box Gaming playing at his bats. Well, SLD, they had the angles before. Yes, they don't have those elevations. But they almost got a clear view, but they whiffed it when it needed not to be whiffed it. Yoodo Alliance Kenny has, knowing the fact he's taking out all the vital points of SLD players first. टोनी के क्यों नहीं क्यों नहीं खेल रहा है ब्रो उसका बीमार का कुछ VOIN and किसी को PJ shout EVOS out having दे a go. दो। Now ओ भाई, Box I taking a know fight against what Yoodo the Alliance meaning and of Yoodo Alliance public tasting है। their own medicine with two teams fighting at Please the मत same करो, time. time on Box करेगा। being the third party, while PCJ EVOS just finished the Come on, down, last take it play away। of VOIN and आप Yoodo बेटा Alliance back to back out. I know That this is word, it for bro, I know VOIN. this. But they managed to get 4 elimination points at least. Kwanji will be eliminated by the zone. That means SLD is out. All the top teams are currently out. We're left with mostly page 2 teams now. It's all down to the ranking points to make a difference here. We don't think there's going to be any budge when it comes to the top 5 of the overall ranking, but unless if it's going to be coming up from the second page teams here, which most of them except for PMSL Hill, को 2 स्लॉट है and भाई ये if I'm not PMSL है mistaken, बट Bacon Time and PMSL SEM9, is not a BTR and Boss PMPL have thing been याद रखना PMPL से grinding एक ही themselves स्लॉट since गया है they won a grand PMWI final, को couldn't get PMSL any is a double-digit points. This championship is thing their time to push up the ranks. SEA Now, championship Box playing नाम this ही very change हुआ। intelligently. I'm talking about genius plays. Bro, And Ryzen the खेल रहा है from most afar, not Ryzen investing and too much when it comes to Firewall utilities best and the आज ammunition, भी यार resources-wise, देखो being कौन-कौन preserved. है। So they're just taking the fights in a There very is long Big Bear fights का and simple just trying to poke time from the पे sidelines Hill, instead. BTR, That is Bacon, smart. Box But and the thing SEM9 is, you is can't alive. play like that till Hoping to secure the मैं chicken. होप कर They सकता था still have to SEM9 fight नहीं the होती तो brawl. यहाँ पे शायद Well, ऑल्ट्री you को want to मैच fight, होती you'll बट probably get कोई it नहीं soon because But yeah, BTR जो is just जैसा next भी to है, Bacon जो भी है। time. Bacon Ryzen time on the खेल रहा है outside, भाई आज, BTR on the Ryzen is outside playing as guys, well. They Ryzen need to खेल clear रहा their है। flanks and Oh my BTR is God, Ryzen is aware playing of the today, threat guys. from Bacon time. But the zone लिक्विड will को बिठा push के them राइजन को anytime खिलाया जा soon. रहा है राइजन And इज by प्लेइंग then, two राइजन teams will need to स्वफल come out. The moment that happens, राफेल then the 70 fight एंड will begin. आपका लिक्विड को बेंच किया है इन्होंने
For side of Bacon, time to trying to open up the angle as wide as possible, just to make sure they will not be cornered, will not be jumped down by the entirety of one nade अब तक to PMWI के finish लिए the कौन सी entire टीम बता cluster. चुकी है? So अभी Bacon बताया था time, ब्रो थोड़ी they're देर trying पहले, to बाय open द up फिर the से बता spaces देता and हूँ, angles, and इंडोनेशिया just in case PMPL if there's विनर somebody behind there, बूम will, थाईलैंड you हेल know, विनर्स है ये backstab सारे them, something some वियतनाम से sort. द सेवियर But Jan जेनेसिस Force definitely वाइल्ड wanted to go काइट in से for है Bacon time. He heard the audio एंड cue, he heard the GEEK engine from started. He Malaysia knows for a fact they're a bit too busy from to PK just it's navigate Ayek themselves in the center of and circle. अभी तक But कितनी it's a bit टीम too late now. The आज moment he आपको tossed 3 those nades, 4 5 there's टीमें nobody और there. मिल जाएगी PMWI के Okay, लिए, क्योंकि speaking आज about के दिन tossing पे needs, 4 let's see if any PMWI needs will खत्म land. हो रहे हैं आज Right के now, दिन पे Ice, he has an exit So we plan will get in more case for Nine Noise क्योंकि दो टीमें and his PMSL से teammate है, three बाकी एक touchdowns साउथ to get एशिया, out एक of this. अफ्रीका Right एंड now, और they are एक left आपका behind, एक and और the फाइनल nade लाइट from हम Nine सभी Noise आज lands करेंगे. onto Gen Force. This could be an opportunity for Bacon side of the circle. Obviously, moved away, and with that signal, Ice is coming back to give cover fire. They are rushing into the side of BTR. Knowing for a Nice. fact if they don't take down Nice. BTR, they will be backstabbed by this guy. They need to force a fight anyway. Ryzen now trying to save Jan Force along the process. Only a couple of the players left here. But where is the one player coming from BTR? Where is Bovel? I believe he's just behind, probably looking for an exit point, because if they stay too long here, the zone will put pressure onto them. Bacon time has the same idea as well. They managed to अगर pick up VP each आज ये other. टूर्नामेंट So नहीं now निकालते they're going to rotate to the तो left. मुश्किल हो Scouting जाएगा, work was क्योंकि फिर done, इस so they साल know आपको that VP on the left जीतने is वाली clear. थी. If in Sort case of, a bit अगर hesitant VP coming up from आज some के दिन teams. Knowing VP का निकालना knowing बहुत nothing ज़्यादा about the position of the other side. Box taking the middle ground while BTR taking those elevations. the savior right is on top of yes winning. आपका But Lamborghini Box do have a 4. They have a huge chance to win. The same goes for Hill, which not taking any part. They're finally breaking the silence. Ryzen taking on to a side of Lavi got राज भाई the prediction opportunity मेरी he तरफ से needed. But at the same time, the Blues Yeah, are it's against actually BTR. They have to force forward, but can't do so ऐसे due to अगर Box जैसा now firing निकाल दे back. back to back. But Renders spray by Jan's Force इस पे in आ the जाए. smoke. Clip another one. Down to 2 players. They तीन are team forced लग to रही है take TRS, Box in SLATE. for this fight because they don't According. have a choice. But they make it so clear Box and so clean by eliminated by the BTR. nade. Oh, but it was जो flash कर रहा है nading flash on Capone and helping BTI in the process to get into the circle. But of course, that's a point for him. He'll be happy with that. And now BTR kind of saved by Hill Esports, and they can move it, but they're still being shot at. Tiger will support Sky PMPL only from the Indonesia back से line. boom. Well, Meanwhile, Bacon BTR time eliminated. are Here we go. trying to Hail, open up as Bacon, much angles as 7-9 possible आपके as the screen के trio. Down सामने. to 3 players Hail, I still guess, got the movement, going with decent 3-1 formation. I The guess flanker पांचवें will छठवें be the रैंक पे थी. anchor इस for मैच the के team. बाद He will तीन pivot ज़्यादा so much when एलिमिनेशन it नहीं comes to उठाए getting उन्होंने. those अगर वो off angle चिकन and भी the blind निकाल shots. लेते 10 But 13 the side पॉइंट of ही Hill, होंगे. they're going back to तो 1-2-1 मोस्टली वो मिड instead of 2-1 just टेबल now. रैंक Knowing for a fact it's going to be more than 1-2 they have to deal with. They have to open up their angles. इतना मेरे को Bacon मैंने not going to waste करेंगे. time. They're going to hop onto those vehicles while such remaining as the back line. They're just going to bait out with 2 players in those cars. And Noise By the way, managed to top advance teams के matches forward, अच्छे getting गए an नहीं है. off बूम angle एलिमिनेट position. हो गई Now, है, this is gonna be a वेम्पायर close एलिमिनेट fight हो for गई थी, Bacon अल्टर time. गोला This एमएक्स is smart. एलिमिनेट हो गई This थी. मतलब is मिड just टेबल चार्ट cornering की टीम Sam9 भी अपनी all सिक्योर around. कर रही Oh है yeah, पोजीशन फॉर द 7-9 हैशटैग caught between 2 teams, and both teams are eyeing that compound, but who will make the first move? Anyway, the answer is here. Adepts on the 3 touch. Managed to eliminate him. And now, Bacon time down to 2. Hill Esports still has the numbers, but none of them really need to move yet until stage 8. And stage 8 still has the compound. 5 seconds left for the teams. Bacon time the furthest. I think they will be clipped off by the Blues. So first, Gats low actually STF 4MV picked out vibes. the same time as साथ Bacon भाई time देखो just क्या now. होता है. Sam9 DRS को got कम मत himself समझो भाई. compound. DRS If you do have those जब करके दिखा देगी ना हाथ mollies, में it's कम gonna be पकड़ the M के for Sam9 will be flushed वो out. अलग One knock ठीक inside लगेगा of Bacon आपको time भाई. instead of Hill. मैं बता रहा हूँ Gats low, DRS is chucked ST down by the Blues. and But here vibes. comes Flash. Trying to DRS clear the and corners ST with those थोड़ा सा mollies ज़्यादा and the percentage nades. क्योंकि they have Creates a the good Sam9. Now they're cornered. Can they counter fire? Tap on his meanwhile, knees, saying Sam9 goodbye. भी out This हुई है और Sam9 dead being on करे हैं. Hill obliterated ने अपने in 5 the hands of eliminations Hill हो with चुके 5 हैं. eliminations 3 now. flash, And Molly well Tiger, placed, 1 and to now it's Gats going to low. be 9 noise against the world. Bacon का last Looks बंदा like it's going guys, to be Hill hashtag 2 Esports पे आगे chicken noise dinner. They have भी control of बचा the है जो circle. They screen have के the सामने. numbers. They're going बहुत on ही to ज़्यादा 9 noise, damage and and Hill here we go. Esports, First as chicken we dinner miss goes them to in. team Hill Esports, but eliminations अगर आप देखते हो इतने ज़्यादा भी elimination नहीं है, decent है. 16-17 पॉइंट लेके गई है इस मैच से. अगर आप देखोगे ओवरऑल रैंकिंग पे देखते कि कितना फर्क पड़ा है. बाय द वे गाइस 527 लोग देख रहे हो. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड PMSL इज गोइंग ऑन एंड आफ्टर दैट आपका PMPL होगा. PMPL टाइमिंग्स इज आपकी जो रहने वाली है इज 5
5:30 इज द फर्स्ट 20 इज द फर्स्ट मैच टाइमिंग एंड 5 बजे हम शिफ्ट कर लेंगे पीएमपी साउथ एशिया। हाय हेलो मनिकेन भाई, क्या हाल चाल? असद ओपी अगर मैं प्लेयर आए तो फ्लैश हमेशा एमवीपी बनता है। अगर एमवीपी टाइटल की बात आएगी, फ्लैश सेल में सबसे आगे होगा। पीएमएसएल का प्राइस $2.5 लाख, 2.250,000 US डॉलर। आज मैं ना बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ यार, पता नहीं क्यों आज मेरे को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, बट एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। टीम्स टू वॉच, अगर आपको हमारा एफर्ट हार्ड वर्क अच्छा लग रहा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 524 लोग देख रहे हो। हेल बीईसी सैम 9 बॉक्स, ठीक है, डिसेंट है। लव फ्रॉम डीआरएस, थैंक यू सो मच। हिल्स पोटैटो भाई, टिल लास्ट गेम द कंपटीशन विल बी टफ। यस मंगोले भाई, काले भाई, वही तो सीन है, लोग समझ नहीं रहे, अभी तक किसी को कर नहीं सकते। अयोगी मेरी दूसरी आईडी को अनहाइड कर दो। लिटिल स्पैरो, आपका नाम क्या है? मुझे आप पहले नाम बताइए अपना, एंड कल आप बहुत हेट दे रहे होंगे तभी आपको हाइड पड़ा होगा, क्योंकि हाइड इस चैनल पे मैं ही देता हूँ। पीएमएसएल का प्राइस ब्रो $2.5 लाख। यार इसका इम्पॉसिबल है, 10 पॉइंट सिस्टम में अगर 15 होता तो हो एनवीएक्स ड्रैगन भाई। देखो आज दे आर द वर्ल्ड #2 टीम ब्रो, डोमिनेट करके पहुंची है, सो कर सकती है। मेरे को बहुत सारी होप है डीआरएस से, एनओ आज करके दिखाएगी। कंपटीशन देखो है नो डाउट, बट एक्सपीरियंस प्रेशर पे खेलने वाली से दे नो बेटर। डीआरएस ने खेल रखा है, डीआरएस ने पीएमजीसी पे करके दिखाया, सो साउथ एशिया पे भी करके दिखाएगी। एसटी सेम अगर हम बात करें यहाँ पे, लाइक सीन हो सकता है वाइब्स किस तरीके से खेलती, किस अप्रोच में, देखने वाला सीन। भाई रेडपुल पीओ गिव्स यू विंग्स, अरे रेडपुल पे से कोई विंग नहीं आती भाई। नीचे काट कट रहा है वीडियो, स्ट्रॉन्ग मैन जीवा, करता हूँ वेट। इनके प्लेयर्स इतने छोटे छोटे क्यों है? नीचे कट रहा है, हाँ भाई देख लिया। पीएल ब्रो आपका 19 तारीख को है, तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल को दबा लो। लो आपके लिए कुछ, आपने बोला काट दो, हमने काट दिया, ठीक है। और बताओ और क्या सेवा करी गाइज, और कुछ सेवा जो हम आपकी कर सके, बट आई एम वेटिंग फॉर द ओवरऑल स्टैंडिंग। रूल्स रोटेशंस इज जस्ट टॉप नॉच ब्रो, रूल्स भाई की रोटेशन देखने में मजा आता है। कैलकुलेटिव रोटेशंस मैं गिन के बता सकता हूँ, 4-5 रोटेशन ऐसी है जो वाली। एक तो मेरे को जॉर्ज पुल वाली जो पीएमजीसी पे थी, एंड कल यासना वाली बहुत प्यारी रोटेशन आ रही है, बहुत अच्छा लगा। पीछे से घूम के आपकी टीम आई यासना ब्रिज पेट्रोल पंप से, जो कल के मैच बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा चुम्मा। भाई किसका मोन्टेज देखते हैं मतलब? रेगम 15 किल, चिकन डिनर सेकंड हाईएस्ट, यस सिस्टम डाउन एग्जैक्टली। आएगी भाई, बढ़िया, अपना बताओ। बढ़िया भाई, चुम्मी दो, लो भाई चुम्मा, बहुत 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 बड़ा चुम्मा रहमान भाई आपको। ले लो भाई। ब्रो कोरिया में क्या चल रहा है ब्रो? पता नहीं यार, इंडिया में कोरिया का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्या चल रहा है। बट जो अभी चल रहा है आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, बेकन 12 पॉइंट, सेम 9 11 पॉइंट, बॉक्स 9 पॉइंट, बीटीआर। Here we go, the overall ranking. Alter Ego Live Max still they are with the, like आप बोल सकते हैं एक एडवांटेज पे, बट 10 लाख डायमंड #3 पे आ गई है। वीपी को ये मैच खेलना पड़ेगा, अच्छा नहीं खेलेंगे तो 10 लाख डायमंड नीचे तैयार बैठी है। बूम एक रैंक नीचे गई है, बट डिफरेंस अगर आप देखोगे 1 पॉइंट का। खेल आ चुके गाइस एक अच्छे मैच के बाद 105 पॉइंट के अंदर। सो अब यहाँ से कंसिस्टेंसी मोमेंटम चाहिए, हर एक मैच अच्छा खेलना जरूरी, जो टॉप पे है। #1 वाली टीम के लिए इंपॉर्टेंट है किस तरीके से उसको स्टेबल रखेगी अपनी पोजीशन को, बाकी देखते क्या सीन होगा। देन यूडो अलायंस, परसिया 90 पॉइंट, ठीक है, परसिया भी कर सकते हैं आज के दिन पे वंडर्स। 115-190 पॉइंट किए जा सकते हैं कवर, दो अच्छे मैचेस ये परसिया को। बीटीआर 88, गीक 88, जितना नीचे जाते रहेंगे उतना टफ होगा, बट तीन टीम के सेम पॉइंट है बे, 88 पे अटके हुए सब, 88 88 88, then 85 बेकन, then बॉक्स, सैम 9, द सेवियर एंड वॉइन विद 14। वॉइन तो बहुत नीचे चल रही है भाई, बहुत ज्यादा नीचे।
एंड वोइन ऐसी टीम है जिसने सबसे पहले पीएमएसएल के अंदर टीम वाइप करी थी, वो थी आपकी गीक ग्रैंड फाइनल्स पे, जिसके बाद उन्होंने क्रेजी बैंटर भी दिया। बाय द वे गाइस, हमारे अब अगला मैच जो है वो इरेंगल का रहने वाला है। एंड इरेंगल आपको पता है कितना ज्यादा फन रहता है। एंड कल के दिन पे अगर आप देखते हो, इरेंगल को काफी क्लोजली खेला है वीपी ने। क्या आज के दिन पे भी वीपी अपना क्लोजली खेलेगी? टॉप परफॉर्मर इरेंगल की बात करेंगे, दैट इज हेल, फेज, शार्लैक डायमंड एंड यूडो अलायंस। दीज आर द फोर गुड टीम्स जिन्होंने अच्छे से निकाला है मैच। ओवरऑल अगर आप देखते हो और रैंकिंग पॉइंट्स, एलिमिनेशन सबसे ज्यादा 218 हेल के ही है इरेंगल के अंदर, देन फेज, then you do, then shine like diamond। बूम या आई ले जाएगी, देखो भाई क्या होता है। मार्फ इंडिया का रोटेशन इज टुडे मैच ओपी, रशिया, रशियन उस साल वो साल मतलब वहाँ वहाँ का बेस्ट प्लेयर जो कोरिया में, तो कुछ वहाँ चेंजेस भी हुए, बाकी उनकी वो चेंज हो चुका है थोड़ा सा उनका स्पॉन्सर। मार्फ इंडिया का रोटेशन इस टाइम भाई, मार्फ इंडिया भाई ओल्ड ओजी वाइब्स आ गई कल मैचेस देख। जो डीआरएस वाला सीन नहीं करा था बैक टू बैक चिकन, याद है वो दिन? घूम ले जाएगी, ठीक है। अरे भाई पीएमजीसी के टाइम हाइट दिया था मेरे को, राहुल सिंह नाम है। देखता हूँ लिटिल स्पैरो राहुल सिंह नाम से मेरे को दिखेगा, मैं कर दूंगा नेट भाई। आज मेरा डीआरएस कॉन्करर पुश इन, आज देखना डीआरएस कॉन्करर पुश। अंसे भाई, यू नीड सम हाइट फ्रॉम द चैनल, दिस इज द लास्ट वार्निंग फ्रॉम माय साइड ब्रो। राइजन कौन सी टीम पे है? ठीक है भाई। जहाँ का गेम है पबजी के बारे में नहीं पाया, ओके। राइजन कौन सी टीम पे है? डीडब्ल्यूजी साल रशिया में नहीं के गेम डीआरएस, ओके ब्रो, टाइम आउट। ब्रो क्रिप्टो सऊदी लीग में खेल रहा है, यस भाई। हेट ना दो गाइस, यस वही अगी भाई, गाना सुना दो। गाना सुनाए आपको? आ जाओ गाइस, बाय द वे गाना सुना देते हैं, आ जाओ, लेट्स गो बॉयज। बस कॉपीराइट से ना आ जाए, आपको गाना सुना दे। कौन सा गाना सुनोगे आप बताओ? मोहब्बत कर वाले कम, ये वाला गाना लगा दूं? आनन पत कर। अयोगी भाई, बीपी विनर और नॉट? अच्छा खेलेगी तो विनर, बट आज टोनी के नहीं खेल रहा भाई। कमिंग होम, कमिंग, टेल द टाइम। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं कितना करती, कितना ये समझ, ये समझ, ये बातें जब ना जब हम आओगे, लो क्या तब आओगे, राह से भूली ना।
नहीं, ये राइजन बेंच, राइजन खेल रहा है भाई, राइजन बेंच नहीं, राइजन खेल रहा है गाइस, राइजन इज प्लेइंग। यस गाइस, राइजन इज प्लेइंग। और पूछो क्या क्वेश्चन है? क्योंकि भाई आई8 पीएमपीएल ऐसे चैंपियनशिप जीत सकती है? यस ब्रो, नहीं जीत सकती यार, द गुड टीम बट कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। जय श्री राम प्रमोद भाई, क्या हाल चाल? ड्रॉप टॉप सुनाओ। अरे अरे, कॉपीराइट थोड़ा ना लाना है ब्रो, ये तो कॉपीराइट, ये तो वाले सॉन्ग्स है जो अनप्लग्ड सॉन्ग्स है। तो guys, नेपाली सॉन्ग सुनना है? कौन सा सॉन्ग सुनना है? नेपाली सॉन्ग। डीआरएस हैव मोर हिट्स इन oh yeah, this is the like spirit bro, power spirit bro। चलो भाई, बाय द वे सेकंड मैच भी स्टार्ट होने वाला है हमारा। कॉस्टिक, यस। भाई नेपाल में तो एक ही बंदे का सॉन्ग सही लगता है, बट उसमें को कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, जाने में तो कुछ दिक्कत नहीं, वो क्लेम दे देगा बंदा भाई। साकार, निप हॉप, द किंग ऑफ निप हॉप एंड यूनिट पोइट। ये नोट 69 क्या बोल रहे हो? नोट 69 क्या चीज है? हियर आफ्टर ऑजियम गेमिंग यू आर वन ऑफ द बेस्ट कास्ट। अरे अरे भाई, थैंक यू सो मच। बाय द वे, ऑन द वे सुना दो एक बार भाई। भाई ओके ओके भाई, तो स्पैम मत कीजिए, पढ़ लिया यामा बुद्धा सादी नेपाली लेजेंडरी रैप। अरे यार, सिस्टम ऑफ डाउन, यामा यामा भाई बंदे, यामा बुद्धा लेजेंड ब्रो, लेजेंड। सारे बंदे यामा की वजह से तो ही ग्रो हुए हैं, यामा बुद्धा की वजह से। मतलब इफ यू टॉकिंग अबाउट द हिप हॉप नेप हॉप, अगर आप सिनारियो देख, मैं तो काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हिप हॉप वगैरह की लाइन पे आई नो हिप हॉप वगैरह का सीन। जब हमारी जो लाइक एज अ क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट हुई है, हमारा जो दोस्त है बाबा पहाड़ी, ही फ्रॉम द इंडियन हिप हॉप सीन, वी नो अबाउट द हिप हॉप सीन। लाइक रामा बुद्धा को तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं, रॉ बार्स करके। साकार वहीं से आया है, यूनिक पोइट वहीं से आया है, लाउरे वहीं से आया है। देयर आर लॉट ऑफ अब तो काफी सारे बंदे अपने फ्यूचर पे फोकस हो गए। एक अंडरडॉग करके जो यूनिक पॉइंट की टीम होती थी, उसमें पता नहीं दो बंदे और थे। अभी एक मैं देखता हूँ अपने वो, जिनका सबसे लेजेंडरी बैटल हुआ था यार, क्या नाम है उनका? जो भी तो आपके वो अपने अब तो पॉलिटिशियन बन गए ना, वो सिविल इंजीनियर भी है वो, जो भी पॉलिटिशियन बन गया यार, क्या नाम है उनका यार? जब टी2 के गई थी, डीआरएस गई थी, तो मैंने उनको फोटो पे भी देखा था। क्या नाम है गाइस, याद दिलाओ नेपाल की जनता। जिसका वो अंडरडॉग के बंदे को पेला था यार, मतलब थोड़ा लाइक दाढ़ी दूढ़ी सी सिंगम, लाइक वर्डिंग थी सिंगम सुंगम, जब रॉ वार्स में कुछ हुआ था। याद दिलाओ यार। सिस्टम ऑफ डाउन, यस। क्वेश्चन और जॉनी इट इज कास्ट कब वापस आएंगे कास्ट करने? प्रो जब गेम आएगी तब तभी होगा। यस, बालिन शाह भाई यार, भाई वो लेजेंडरी बैटल गाइस, दैट वाज द लेजेंडरी बैटल। जिसने नहीं देखा भाई, भाई मैं इस सीन पे हूँ गाइस, मुझे काफी टाइम से पता। नो लाइक देखो आपको नहीं पता होगा जितना, उतना हमने बता दिया आपको। अरे भाई बोल रहा है एक खराब करके सबका करियर। हेलो, अरे अरे, देखो आपको नहीं पता, उससे ज्यादा मुझे पता गाइस। देखो आपसे ज्यादा हमको पता है आपकी इंडस्ट्री के बारे में, समझ रहे हो? याम सो ड्यू टू द यामा बुद्धा, आई नो ऑल ऑफ देम। सिर्फ यामा बुद्धा की वजह से आई नो, फ्रॉम लाइक यामा बुद्धा की वजह से आई नो साकार, यूनिक पोइट, आई नो बालिन शाह, आई नो लाउरे, मतलब और भी बहुत बंदे। अब तो दिखते ही नहीं, अब तो पता नहीं कहाँ चल गया, बहुत पुरानी बात है। बट दैट वाज अ शॉकिंग दो, जो हुआ था सीन यामा बुद्धा वाला, जो आज भी लगता है। बट यस, इंस्पिरेशन यामा बुद्धा इज मैनी लाइक। और सबसे बड़ी बात, लाइक यामा बुद्धा ने जो वो साथी वाला सॉन्ग बनाया था, जो बीट थी, शायद $14 में खरीदी थी, मुझे किसी ने इंडिया में बताया था। आई डोंट नो इज इट ट्रू और नॉट, दैट बीट फॉर $14 जो उसने बाय करा था। आई डोंट नो उसके राइट किसी के पास क्या सीन है क्या नहीं है, और वो बीट ना अभी हर एक पोइट में, पोएम पे वो बीट चलती है।
तो उस बंदे का लेवल देख सकते हो, उसने उस बीट को कितना पहले, साथी सॉन्ग उस पे है पूरा, और उसने कितना पहले वो बीट जो थी वहां पे अपने गाना बनाया उसने, तो उसको कितना पता था चीजों के बारे में, और वो बीट अब जाके वायरल हुई जिसके ऊपर बंदे वॉइस ओवर्स वगैरह। हेल गीक बूम द सेवियर इनका पहले से, यस यस। वालिंशा इज मेयर नाउ, यस वालिंशा, यस वालिंशा मेयर ऑफ काठमांडू, यस। देखिए भाई ऊपी कास्ट, यस 70 एंड स्क्री आर सोर्ट अराउंड इश नॉट शाह, इशा ओके भाई, शाह बालिन शाह दाई लो भाई। वाह भाई कास्टिंग क्या कर रहे हो भाई? डू यू नो ऑस्मियम गेमिंग ब्रो? यार भाई है अपने ऑस्मियम गेमिंग ब्रदर ब्रो। यू गेमर यू आर जीनियस, वी विल गिव यू नेपाली। अरे 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 भाई, साथी भाई साथी तो गिरीश भाई, हाँ गिरीश खत्ती, सॉरी मेरे को उनका सरनेम नहीं है, माफ करना, बट गिरीश भाई भी वन ऑफ द कोर मेंबर थे स्टार्टिंग पे। अभी यार लिटरली आई नो मैनी ऑफ द हिप हॉप, मेरे को ऐसा किसी को नहीं पता, बट जो हिप हॉप सीन के अंदर आई नो मैनी ऑफ द नेम, ओजी ओजी नेम्स, नॉट द न्यूएस्ट नेम। अभी न्यू में तो अभी अपना बहुत ज्यादा फेमस है एक बंदा, कौन अभी आया, एक तो 55 कुछ करके है, वो भी थोड़ा बाद में आया, मतलब बट वो अकॉस्टिक वगैरह सीन था। एक उसके उसके साथ साथ में क्या नाम है, जिसको जेल भी हुआ था बीच में, काफी सीन हुआ था यार। हाँ ग्रीस करी, अरे यस यस डम पेडिट भाई, यस यस ही इज टू भाई, बहुत करा है हिप हॉप। तो गाइस आई नो यार इंडियन हिप हॉप, लाइक जब आप हिप हॉप को एक्सप्लोर करते हो ना, तो आपको दूसरे रीजन के बारे में भी समझ रहे हो। यूज आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म, आप गाने सुनते हो, एंड जो साकार का यूनिक पोइट के साथ गाना आया था ना नेपॉप, भाई फाड़ दिया भाई। भाई पूरे वर्ल्ड पे उसके रिएक्शंस है भाई, हम तो क्या ही बोले, बट वर्ल्ड में रिएक्शन है। वितेन यस, वितेन यस यस यस, वितेन अभी बहुत ज्यादा फेमस है। कभी इंटरनेशनल ब्रो करना यार, मेरा माइक का इशू है परवीन भाई, मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसमें के भाई के साथ, मैं 21 से 30 के बीच में माइक लेने का यार, एक तो ना मेरा यूट्यूब का रेवेन्यू मैं सेव करने का सोचता हूँ, यार यूट्यूब रेवेन्यू काट देता है मेरा। मैं सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मैं आपको एसेस दिखा सकता हूँ, मेरा अभी पिछले 4 दिन के अंदर 3,000, 5, 8, 8,000, 9, 10,000 रुपये रेवेन्यू कट हुआ है 3 दिन के, मतलब जितना कमाया नहीं होता उतना खत्म हो जाता है, और जितना कट हुआ है ना उसका उतना तो मेरा बना भी नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा रेवेन्यू कट हो जाता है। V10 MC फ्लो, V10 MC, यस नाम सुना है मैंने, बट उस टाइम तक मैं वाला सीन से बाहर आ गया था पॉपुलर, तो उसके बाद मेरे को सीन नहीं पता, बट आई वॉज एक्टिव ऑन दैट टाइम जब यामा बुद्धा था, उस टाइम पे मैं एक्टिव था इंडियन हिप हॉप, एंड आई वॉज एक्सप्लोरिंग अनदर हिप हॉप टू। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप हिप हॉप को फॉलो करते हो, आपको लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको सुन भाई, ये बहुत ही अच्छा है भाई, इसने फाड़ रखा है, ये बात कर रहा है, तो बंदे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है स्टोरी की, बंदे ने किस वे में हिप हॉप को स्टार्ट करा था। तो आई नो अबाउट द यामा बुद्धा, मैंने फिर थोड़ा सा देखा था कि एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद उसको करने को सीन समझ रहे हो ना, कि जब बंदा वेला होता है, और फ्रैक्चर हुआ था शायद, आई गेस कुछ भी था अपना, लाइक अंडरग्राउंड सबसे पहले रैप बैटल स्टार्ट करा, देन ऐसे करा, देन वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम द नेपाल रीजन। आई नो, आई नो, बस उसके बाद छूट गया, देन आई मूव इन टू स्पोर्ट्स वाला सीन, देन स्पोर्ट्स सीन आने के बाद आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है कम्युनिटी पर, क्या नहीं है। साकार का सॉन्ग आया था, ने आया था, काफी अच्छा लगा, बढ़िया, बट अभी मैच पे फोकस करते हैं। सेकंड मैच No आपके pattern this सामने phase. इरेंगल का, It's all लेट्स गो। down to the PERSIJA. If he feels like popping anywhere, it just feels एसजी like it's कैसा weak टीम today, लगा that's भाई? it. यार क्या बोलूं, इतना तारीफ तो कर Yeah, दिया we're gonna भाई। blame it on एसजी Choo today, DRS okay? We get an EP टाइम से अपन circle. सपोर्ट कर रहे हैं, Ha, but कांस्टेंट speaking रहेगा about सपोर्ट हमेशा fight से, paths, right? So स्पेशली since माफिया it's निंजा। far away from military base, PTR, as usual, North Jogopo will be their house. They're heading towards there. It's gonna be okay for them. It's an area that they played in the league, so they're familiar with that. Shooting range going to be 7-9 as usual. GEEK SLATE going to be fair here. And चलो भाई, regardless of the लेट्स fight गो path, बॉयज विद द फुल एनर्जी Yoodo एंड Alliance is इंटेंसिटी। इफ still यू आर gonna न्यू टू go द to स्ट्रीम, मेक श्योर टू Noble, लाइक द वीडियो एंड whatever सब्सक्राइब it टू द चैनल। takes. So they'll be taking आ that जाओ भाई, slow बहुत सारी grind there हमने because पास्ट it की gives you a बातें कर little ली, bit more लेट्स travel इनटू distance to द get अभी into सिनेरियो। गाइस Noble. बाय द वे, हान But से पाडो भाई maybe इज they अ need to हाइड land फ्रॉम somewhere द चैनल, between. मैं Get बहुत a टाइम से देख confirmation soon. इज But डूइंग right now,
We're gonna Doing see some what's tricks. happening at the side of Yoodo Alliance. Looks like they landed height themselves channel, सब fairly आपको early, and now onto Box Gaming. से पा दो भाई. Yep, a bit too early for चलो भाई, skirmish you again, and starting we पे do ही have box ने one PT दे first दिया. blood coming out He too gives early Cambodia than per anyway. usual. Yes, Not yes, even yes, I know. भाई, 1 वहाँ minute पे into the fight game, भी we already got ourselves वही बोल रहे हो ना. the first blood, and the circle just now seems to be a bit NCR वाला. quite still generous enough. वो not too Zypex की far तरफ India off, से right? भाई. But back to it, we only have a glimpse on it. But this is where I start to question Cloud. Are we gonna have a teams on the second page start to rampaging VP and just चिकन start लोडिंग to निकल इस crash मैच में into चिकन these आना चाहिए बे compounds अगर VP बट यार VP का without, मेन बंदा नहीं खेल any रहा sort यार. of, VP का मेन indicator, बंदा नहीं खेल like, रहा. like जोन you know what, they got nothing इंटरेस्टिंग else है. to lose because Gifts they पे do matter have a करता lot to lose still Second for shift. these teams. Actually, that's a good point. I was kind of Auto shoot thinking about आएगा that तो inside of Sandhawk, and if I were to think, I think मतलब that एक is team पहली जा why सकती the है, Xavier they जाता came है. out of Paradise Resort Height to को get that second, third elimination circle point, पे एक team whereas I felt that it Dash was होगा. not necessary for them. Second circle And पे बोल. you're, Probability chances. I do kind of एक team agree with that theory that clash हो it's जाए या starting to rotation sink clash into हो some of the या teams. किसी And if the Xavier thinks that multiple way, teams maybe VOIN will start to हो think सकता that way as second well. one So we might see a third more जब close aggressive like kind of second जब close gameplay from teams like VOIN, the Xavier, maybe even Sem9, maybe even Box Gaming. And that will shake up a lot, especially for teams really wanting the points to go on to the top 2 at least. ये last day है क्या मतलब? And that's where the teams up there will need to be aware in case they drop close by with भाई some of और those माफिन teams. जो भाई It brother will really bro. affect their momentum. But the thing is, there's too much at stake for too many teams. If you want Are to, you from Uttarakhand? No, nobody I am can from actually do have that mindset of Himachal. nothing to lose. Except for I have to give it the Axe and Voin at this point. They are the one that can actually change so much of a. By the flow way, for we are very team close to by like having this mentality, nothing else to 56.2 lose, के because subscribers. if they don't try to तो force अगर and आप push stream it, पे नए हो, they're nowhere near up subscribe there. to the channel. Well, the others, including like 14 10 players, here, we have a subscribers lot of close, like 88 down there, 0.2K which are having and a tie, सिर्फ and the 10 gap to subscribers hitting those चाहिए तो triple कर दो digits not subscribe that and too आपको far पता है off. PLB stream Even करेंगे the साथ में top आने वाले 8 टाइम down पे there, and talking about even 4 the दिन top का 6, इवेंट and रहेगा top वो 6 भी. hitting This those is the last 100 day तो marks. जल्दी से subscribe कर दो It's guys. within their reach for number 1. If they want to play, you know what, just going for eliminations, this kind of mindset. प्रवीण भाई full sure Yes, यार मैं they अभी saving can, कर रहा हूँ actually but are यार they थोड़ा सा ना confident ऊपर enough नीचे to pull it off? Because they मैं हमेशा will try करता jeopardize the हूँ entire ये team if they made a करने का mistake. scene मैंने already promise कर Yeah, I guess that's 20 where first to 30 के some of the काफी teams they. chats हमको आई है so It's इतना because scene you gotta think about it, right? रहेगा. It's like number 1, number एक 2, or अच्छा सा माइक nothing लेंगे else. कि मेरा माइक का So if इशू you रहता है are कि मेरे like को ना nowhere गेम close का to साउंड there, नहीं then अभी आपको गेम you जो might as साउंड well आ रहा take है वो that मेरे को risk. नहीं आ रहा है क्योंकि And मेरा रिकॉर्डिंग माइक है calculatively, I जाते don't वाला think it's एंड मेरे को possible for सेटिंग लग like रहा है ज्यादा Xavier, घुसना आता VOIN, नहीं है और घुसूंगा कुछ ऊपर those नीचे kind of सेटिंग teams ना हो at जाए this बस point to like really catch it to the number 1 or even number 2 spot. तीन हुआ है But तो मैं अभी माइक ले लूंगा तो I उससे don't know काफी if चीजें they're सॉर्ट हो like जाएगी तो अदर if they मेंबर्स go मेरी बात हो रही rampage and they थी can get और like भी what लाइक लोगों को मैं इंट्रोड्यूस 25, करूंगा आप 30 लोगों को बताने वाले eliminations, which is insane, and I don't think it's even realistic. But hey, you know what? What's realistic if you have a DBS gameplay like how we see in the PMSL? Then they could pull off a big surprise. So might as well take that risk. Have nothing. Have the mindset of nothing else to lose and give us the entertainment. I mean, but hey, for the grand finals, we do see a lot of UMP winning over those DBS. So I think, like, you know what? Yeah, we don't have DBS plays here and there when it comes to those CQC. But when desperation kicks, those UMP actually make wonderful weapon out of, you know what, fighting against the DBS. And multiple times yesterday, you have to witness that as well, Cloud. You saw that. Well, I believe it was me casting and not someone else. Not your cat. Not my cat, or I didn't like close my eyes while I cast. That'll be a new record breaking for me. But yeah, interestingly, I don't know. UMP starting to step up. We had UMP like many seasons ago as like the weapon of choice, and then it kind of moved away to a micro Uzi. And now with the success of UMP, if it continues to go on, then we might see that being a meta in the next season. Maybe. I mean, like, it used to be the meta before micro Uzi. It used to be before that. And then there's micro Uzi kicks in, and after that micro Uzi is just DBS all around now. Now we're having UMP back in the meta, maybe, why not? But winning, not so much. Last bullet to just blow him away. That's gonna be 1 HP in literal speaking. Winnie
They say that he's the last survivor or the first one to be knocked down, but finally get away Sword from roller, that. a So mic close of cost, getting 100 those roller. knocked. Got Legend himself cricket, one yes. first aid, definitely going to Exactly. use it in an instant. मैं तो आज कोर भाई Got ने himself काफी बड़ा indoors, सुपर but चैट can he करा get हमारे himself चैनल का replenish सबसे of बड़ा those सुपर first चैट aid था because he might स्टार्टिंग पे actually थैंक यू need सो it. मच अगर आप They'll अभी be स्ट्रीम chased को by देख the रहे hack of हो this एंड team. यस And that's going to be DX if I'm हेल्प्स अ not लॉट सो mistaken. हो सकता है Trying गाइस to 21 से hunt 23 these के guys बीच में हम down. जैसे And माइक we लेंगे mentioned about देन DX not having जो हमारी अगली they're स्ट्रीम्स having the रहेगी नेक्स्ट mentality मंथ of से nothing देन else हम to नए lose for them. I'm like, why लाइक not? They इंट्रोड्यूस can करेंगे आपको contest us. और भी They माइक को can मैं challenge बोलता हूँ वैसे us. उन्होंने बोला था बट आई Yeah, थिंक ही इज I बिजी was आई kind of गेस hoping that they नेक्स्ट मंथ crash अगर वो बूट कैंप into जाए तो that शिप one में भी compound, but ही विल looks like जॉइन अस they're not. बट अभी तक Maybe कुछ they है want to play सिस्टम a वगैरह little का bit इशू longer है because तो the previous game मोस्ट was just प्रोबेबली too अगले fast वीक for तक them, गाइस and you're not आप पॉज में satisfied if you स्ट्रीम पे like देखने को drop मिल जाएंगे and हमारे then साथ और अजय भाई खुद भी in स्ट्रीम like करेंगे 5 मोस्ट minutes and you're प्रोबेबली done नेक्स्ट and you क्या have to पता wait इसी यहाँ पे कर ले मुझे even पता नहीं है longer than क्योंकि your इस मंथ play का time, सीन का so क्या है that's वो not बूट fun कैंप गए या नहीं obviously. गए So maybe these days they यस want to play this a little bit longer this time, but if they do भाई crash into बीजेएमआई प्ले compounds स्टोर में आ गया है mercilessly, that'll be something फिर I'll be पार्टी looking चल forward to. अरे Of अरे course, it's लेजेंड entertainment for us as viewers. It's not entertaining if हिमाचल you're से losing a spot for डोगरी लैंग्वेज PMWI though. That's going to be one नहीं thing. आती A भाई lot, too much at stake for the players. Now, Alter Ego even played this a bit slower, taking himself into blues, and same goes for the side of VOIN. Boom, on the other hand, taking the gap command to Zerion. Now, we do know for a fact the Circle did cover this side of a mountain. It's a great place to get those eliminations. One of the राइजन पता नहीं highest ब्रो vantage राइजन का point सीन आज in तो the खेल रहा है 2 circle दिन देखा हमने before this कल fight. We 3 do मैचेस have देखे थे Zarki in the हमने first one. नहीं खेला I था don't know 4 if the मैचेस circle आज going खेल to रहा have था shift राइजन towards north. बाय द That वे हियर happens. वी We गो might actually अल्टर do ईगल have आईमैक्स Zarki circle this वीपीई time. शाइन लाइक डायमंड बूम ये सेकंड मैच है एंड यहाँ से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली है हेलो do अनूप hope for भाई it. क्या हाल चाल I do wish for कल it, आपने इतने कर्म but I आपने don't कल know कांड करवा दिए if we do get पूरी right, like the चैट streak आपने is लड़वा दी over. कल और उसके बाद आप गायब हो गए Like it's officially done. Like you guys can कल like आपने okay पूरी take a चैट break, लड़वा okay दी just अनूप wait for भाई the results on social media and that's it. बाय द वे टुडे इज द फाइनल डे But nobody's inside Zaki yet, I think. I don't know if there's anybody wanting coming out from the side of Zaki because most of them are focusing on the side of Gakka and the Gakka Mountains. But if it happens to be in Zaki, I'm like, that's going to be the first ever in my entire career of PUBG Mobile for the past 5 to 6 years to get a Zaki. चलो भाई यू Yeah, it डू was- it ओ was- माय it was गॉड usually आपके भाई ने like क्या that. बोला था Yeah, अगर जोन yeah, वाटर they'll be like, शोज मतलब nope, यही we're वही not वही gonna शिफ्ट give हो it to गया you. Nope, the stream ओ is भाई not gonna end. Nope. भाई ये But जोन हमने सेकंड what टाइम is a yes is that we have seen this. This is the third time that we've seen this kind of circle, kind of tuck on the left. So we saw what happened the last time when this happened. All the teams coming from one Hill, angle, as Voin, we can see Ultra, here, meaning that we Max. will see fights happening I like really Diamond, soon this big time. move And करती, while they're पर moving, PERSIJA they're ने कुछ trying to ज़्यादा find late places नहीं to करती। park themselves, and that's where वो अगले मैच we'll see them either take fights or क्या they रहता get है? shot down while they मैंने move. आपको बोला था सेकंड के क्लोजिंग होने But तक because बसड़ of you देखने को मिल mentioned how सकती many है times ये मेरा Circle been playing प्रोबेबिलिटी this था way in this अभी sort देखो of आगे pattern. प्रिडिक्शन था A lot of teams are now trying to fight over for हाँ मैं hospital बालकनी because that's the last few circle that happened to be there. And speaking of hospital, Yoodo Alliance already put themselves inside. Sen 9 passing by, have the idea of want to get into the hospital too. We're Zone talking scam about नहीं more भाई than पहले 2 बन teams चुका in है here. टीम्स Even नो Boom बेटर is placing himself on top of hospital because एक there जोन are chances क्वालिफाइड है that the hospital will खेल be the रहा है। last few in the circle. तो प्राइस पूल Sen के लिए 9 will have to कैसा crash क्वेश्चन है and क्यों have to खेल रहा force a है fight प्राइस पूल मेरे against भाई Yoodo Alliance if they want to be here. They can't make the big U-turn you do. because the moment you try to U-turn, you saw how many teams come out from the back line as well. Okay, speaking of the backline here is Adi Luke being taken out by Depth. And Yoodo भाई Alliance will आपके भाई की lose their main competition से। fragger in this मैंने बोला था compound, but the इक्का rest of दुक्का Yoodo player Alliance, they're on the पकड़े warehouse जाएंगे, on the right. पूरी की There's नहीं हो रही Kenny है। as well as क्या पता है Flex. एक टीम भी पकड़ी जाए उनका Sem9, क्लैश they हो want to यूडो win this पकड़ लिया compound Sem9 entirely, आपके so भाई they ने gotta बिल्कुल flush out, they एक्यूरेट gotta take प्रेडिक्शन out दी the थी rest of ये Yoodo भी स्टार्टिंग Alliance. पे देख लेना Same 9. They're not losing any men yet. Tap secures one elimination. लॉबी की ना Vitas थोड़ी सी closing मेंटालिटी in. अंडरस्टैंडिंग हो Same चुकी है goes गाइस for ज्यादा some of मैचेस the नहीं देखे actions. Saw थोड़े से Boom मैचेस passing across that थोड़ा yellow थोड़ा corner, समझ आ रहा lurking है around this area. क्या है क्या नहीं है It's not safe for Yoodo Alliance and Sem9, both in Chapley, and Yoodo Alliance got themselves those warehouse. Sem9 do have definitely more space here. They got themselves more those Morley on the side of Sem9. They can flush out Yoodo Alliance, but at the same time, BTR seems to be very interested in these two fights. Yeah, they're looking for the fight to start and maybe crash in as a third party to be the mop-up crew. But now the fight is going to be more like a staring contest for now. I guess Sem9, they are not taking that big risk, but they 2013 can will do be- it though, because they can be one of the teams that with that mentality of like nothing to lose and just Will flush win. out the rest of Yoodo Alliance. Maybe they're cautious the fact that they
don't know exactly Copy. where the rest of members of Yoodo Alliance are at. What? But look at the current circle, they might still have the next circle, so it might take a while for them to make that move. But at the same time, BTR is
watching, and BTR is a team that can still catch the top. So they'll be interested to take those points away. But right now, intel or information is the key for the teams. They cannot blindly get into or crashing into this compound. The entire team will be blown up because of how many teams are taking their 2020 place will be inside on this side of the circle. And he got himself, you know what, the airdrop is not even trying to help the players at this point. Even the circle is making it worse with a bit of water ratio in it, around 20% or 30% up to this point. I think around 30 to 40. But BTL got themselves center, Seminar and Yoodo Alliance. That's why everybody's trying to take this away. I did mention about on top of hospital. It feels like it's attracted to it for this circle. GEEK, SLATE, Rosemary taking on PERSIJA, EVOS. GEEK, SLATE waiting for the side of field to start to move first. They are in between two teams at the same time. I think that's going to be, what, Box Gaming or Seminar on the other end. But Alter Ego, that's good. That's quite far. Well, you have a compound and you win it in circle. I think it's okay for them. And plus, with this kind of circle on the left, you don't get many spaces to play with. Very little place to hide, especially on the beach. And they're somewhere by that area. So for them to hold on to the compound first and allow other teams to move since they still have the circle anyway, I think it's okay. Where the competition once again, guys, एक announcement आई है वो पढ़ रहा हूँ PMSL और PMWI की समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखा क्या है स्टैंड अभी announcement आई है भाई FaZe Clan का बहुत जल्दी मेरे भाई बहुत जल्दी Players from PERSIJA, EVOS just now from What gravity by बना देंगे टेंशन ना लो elevations for the side of PERSIJA, EVOS. Alter Ego कौन qualify हो रहा है PMWI के लिए bro PMWI के लिए top 2 teams from this into 1 point of eliminations due to the distance in the first place. But VOIN, they have to cut across this open field of a haystack. We do know for a fact the only thing that can work around with for the players are those haystacks and the terrain. But here the problem is, do they have enough smokes? Yes, they do. They can actually put it up to good use. But the problem is, when it comes to this sort of a field, this flat plane, the moment you pop those smokes, everybody gonna looking at you. Yeah, that's why you attract attention. Just like how SLD Kwangji attracted the attention of RRQ. He's all alone, just at the bottom of this hill. But PERSIJA was not alone as they have Boom. PERSIJA. Left, right, stem, PERSIJA, EVOS. Gone. Trying to corner them, but being outplayed instead with crazy. Responded as swiftly as they could within seconds. And in an instant, PERSIJA, EVOS eliminated. This is what I mentioned before. If you need to rotate and crash in, the info is so important. Single for bacon time. Trying to get a third party, but Razy have to fight this for himself now. Alongside, never mind. Yummy managed to flee, but Razy have to be the scapegoat. As bacon time taking advantage. Yummy भाई last match के यहाँ पे clutcher and last कल भी इसने well, Yummy may land onto another house and he may be यहाँ से VOIN just निकली है, but VOIN को आ गई आवाज कि यहाँ पे बंदा आया है, तो VOIN के बंदे ने बोला चलो क्यों ना इस बंदे को ले लिया जाए. यम्मी भाई ने हिल मारा. Versus Yummy 2v1 in this compound. Uzi भाई क्या बात है? Yummy needs to reset. Yummy निकालेगा भाई, but Uzi निकाली. Yummy with the DBS. We saw how he clutched. 1v3. Can he do it? 1v2 again? And लो भाई. Boom. Early elimination. मतलब teams के द्वार खुल चुके हैं, जो है shine like behind on side of VOIN. It's going to be both gaming start firing on them. Same goes for Vampires. Now VOIN have to find their corners without being exposed to the world outside. Okay, everybody staying indoors. Levy on the other hand, try to side poke them on the sidelines. Hill on the other side of the circle. I think there's going to be GEEK, SLATE being knocked down. Damn good, the fragger. Vampire same mentality के साथ खेल रहे हैं. पिछली बार पिली थी यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, water shows से जा रहे थे, FaZe ने यहाँ पे fire exchange करे थे, and हो सकता है Vampire कुछ सोचे, try करे. Meanwhile GEEK and Hill की तरफ से bomba fight चल रही है, Damn Root को बचाने का full try, smokes करे यहाँ पे Snipes ने. As Damn Root gets volleyed down by Tiger, gets slow on the rooftop. Gotta be careful not to overexpose themselves to other teams on the other side. And that's going to be Vampire Esports, but now they're going to focus on the GEEK, SLATE. GEEK, SLATE. Sharing the same compound as Hell Esports. Vico blown out, Stuxnet has nowhere to go. Tiger trying to find something out of those smokes. ISC PMPL champion मिल गया. करने में कर सकते हैं, but without IC थोड़ी. That's intuition. That's just game sense. Without looking at any sort of angle. Momentum down हो जाता. Blinded by the smoke. A finish off players one by one. Bit of a trading with GEEK, SLATE. Gatso getting on Stuxnet. Schweppes. Now here comes the Vampires.
The ones winning this one is going to be a different team entirely. Not Hill, not GEEK SLATE. It's going to be the Vampires. Yeah, shooting in from behind. Whoever exposes themselves to the side of Vampires, they'll be happy to take the point away. Now Snipes is alone, the last member of GEEK SLATE. Can he clutch it out against Hill Esports? Flash is resetting himself. At the same time, gets low, picking up his teammate too. Flash, now gonna toss the nade on the side of Snipes. Oh, but Kwang Ji, what happened here? The Xavier came in. The Xavier just... Not a tried to good turn them news. from the They are back. struggling once Yoodo again. Alliance First are match fighting अच्छा नहीं 7-9. गया उनका. DX tried to pick a fight against FaZe, who's busy with SLD. SLD just slipped by unharmed. Got lucky from those sprays. Two teams spraying at SLD at the same time, but none of them clipping. Except for Chonji being finished off early on, but goes to make it in, but it's pretty low with those magazines. Not enough when it comes to surviving as long as he needs. Noise to get on VOIN. VOIN having a bit of a problem, but GEEK SLATE, here comes the rush. Okay. The entire uphill is greeting. मजाक कर रहे हो क्या? Ooh, almost getting a second one, but then again, Snipe at least by Snipes managed to OP, get one out of them. anti So geek, that's gonna be anti GEEK snipe by. SLATE not going home empty बहुत in this बढ़िया है. round, but it's only 1 point for them. Now, the Xavier coming into the circle, evading fights as they try to get into their next area, but looks like there is another team waiting for them, and it's Alter Ego. Oh नहीं Rosemary, not just once crashed again. in. बहुत प्यारा. Blind. In the middle of a warfare, in the middle of a crossfire between like what, 5 teams in there. Alter Ego greeted them with an open arms, but at the same time caught themselves in a surprise. They got themselves a bit of a space to pick themselves up the pieces. But the others, on the other hand, we do have VOIN taking a bit of elevation in the open field, spotted out Alter Ego, give them a bit of Okay, pressure. But the ones in the boys, center is gonna be stoned. the ties. FaZe, Sam9 Vampire wipe and करेगी Hill Yoodo को, and can ही Bacon बचा Times ला. in a parallel Oh, line, damage in a दिया. straight line, but निकाला नहीं Sam9 होगा. taking this निकाला. warehouse against Yoodo Alliance after the VOIN stalemate pity for the कर रही है. longest time. Yeah, finally, because Alter Ego Circle live moved match away, पे. so they were forced to fight. But now Regular FaZe Clan, expire BTR, Yeah. in the same area. Also, BTR on the outside, FaZe Clan on the Sahara. inside, but FaZe Clan does not have FaZe. Ballman active right now. BTR. Ventores. Ryzen Gotta be आज careful not to be nailed substitute down by को BTR. We यहाँ पे know attack की flag है. BTR for their Ventures nades. substitute And करा. now Oh Alter भाई, ये क्या हो रहा है? Ego, the fight's not stopping yet. क्या हो रहा है यहाँ पे? Penalty. Alter Ego couldn't hold on much longer. Another crash into the compound right now with the DBS by RQ. Potato fights back with those mics losing. But hey, Alter Ego still wins 2 crash Sam9. back to back from DX to RQ. They still stand. And they still maintain all their players so they can reset. Now BTR, Bye. the FaZe Clan, क्या FaZe Clan will किस्मत lose है? players. Ventores will receive a splat from Ryzen. The rest of BTR FaZe Clan on the looking other side, strong, Bella is still starting active के together with matches Ultras, but now they'll be BTR sieged out by BTR बहुत as easy, Ryzen बहुत goes easy लिया in, and FaZe को, बहुत Ryzen बढ़िया, gets the बहुत both बढ़िया. of them. FaZe, the entire crew gone right Ryzen, now with why? 0 elimination. Dr. Barely Ryzen to making any driver points Ryzen, for those guys. ranks Driver as Ryzen. well. For the side of BTR, they can actually Lucky have a है ये reset भाई. with the trio to A on work fire around. भाई. Back to SLD back दो across the teams. street, The they got savior. themselves ham between Oh two भाई. angles there. It's going to be M9. BTR. You know, आज मतलब it's like कि भाई Alter Ego बाकी हम संभाल लेंगे. किस्मत is like आज हम संभाल लेंगे, बाकी तुम देख लो. तुम बस देख लो किस्मत वाले हम संभाल लेंगे. 10 lakh damage. Again not a good match. जो इन्होंने comeback league stages में फाड़ा था वैसा performance फाड़ू चाहिए आगे आने वाले मैचेस में. मैच में भी struggle कर रहे हैं. But Alter Ego another crash into it. This time it's Sam9. Oh, And they won! again! Alter Ego again! 3 crashes into their area, they still win this! And it's without Rosemary. Alter Ego! Really strong in this area. And while they still have the circle, they can still defend this. But don't expect any other teams to come crash in unless a surprise comes in. भाई But दो right वर्ड now, Alter Alter Ego Ego, live max के they लिए are भाई. kings Please, of that chat compound, दो वर्ड of that Alter Ego compound. live They're max kings के of लिए. that kill area. भाई What do we एक call नहीं it? दो नहीं 3 टीमें. Right now. But it was जो आई है वो गई है. down first and they just finished off. Support मिल रहा है आगे पीछे से. Got 3 people to work around. Full support बाजी हो रखी है. Picked up one of the members being knocked out early on, and now they have a bit of a reset. But 3 teams crashing into Alter Ego back to back. DX, RQ, Sam9. Who's next? Is it going to be Vampires who helped them before? Is it going to be a different team entirely? I mean, like,
They have no problem holding their किल फिट fort अच्छे से down पढ़ना there. आपको They अच्छे don't से even समझ have आएगा कि walls, वहाँ पे but हो they क्या do रहा है have a किल bit of a फिट पढ़ना terrain to अच्छे work से around the तो tower. आपको अच्छे And से that's समझ just आएगा it. कि Couple हो of क्या रहा है structures, बैक couple करो of एक बार किल vegetations फिट and a पढ़ो rock. That's जब भी it. टीम पुश हो And रही है tons of loot किसके for them नॉक्स आ रहे हैं कहाँ से कौन to फिनिशिंग कैसे gather. कैसे लेके जा रहा है एक बार जाके किल Despite फिट tons of loot, Fnatic still doesn't ओ have a helmet. भाई Maybe his तीन helmet टीमें is भाई shredded down entirely. बट But डी now it's टाइम going to में be सही Box होगी Gaming बस Void. The मैंने एक भाई two teams अपना वो with जाके a देखना similar अभी color scheme. Nades flying from Box Gaming. Will it land onto anyone? जो आएगा Not वो yet. जाएगा Void भाई still holding सेकंडों this में compound, बट but this जोन compound is now not Gale and as valuable Vampire. as before Yeah. because Circle is not in this. अब अल्ट्री को लाइमैक्स कुछ करना Vampire's पड़ेगा got themselves the circle. All they need to do is just hold it. Know for a fact Alter Ego is dead. The moment they try to pick out, if Vampire's unharmed, untouched, they can easily By the way, shoot down and 640 over लोग the देख side रहे of हैं जो भी Alter नए Ego. But लोगों the question उनको is, कॉन्टेक्ट Box दे दूं Gaming and बॉक्स को Void, पुश will करने you देते try हैं to पहले disrupt the peacefulness करना coming from आपको Vampires कॉन्टेक्ट right now? कि आपको पता Box लगे trying चल to क्या रहा challenge and rush into the side of Void, and Void will respond and reply with a nade. Nade go, per Void. nade I'm for I'm now. ready. And feels like a pro will be Void hit निकाल लो। first by those थोड़ा सा- explosion. I'm not sure if that's gonna hit just yet. Look at how many nades been propped up and with those DBS on prepare. Oh, yeah, that Nate. Okay. Waiting for the right angle, but can't see the fighter. But finally, Fnatic been knocked down. It should be a long range, but now looking at the circle, they moved Guys, away this from is the the area where Alter PMSL Ego was at. Now it's 2023 time for them to go. championship. But Box Gaming This and is the Void first ever gotta go as edition. well. Here Come to comes that the then. next one. BTR Fourth next team for है भाई Alter इधर। Ego, but this time Vampire's taking the other side as well. अब Alter तो- Ego having a bit of a problem to hold it in. Fnatic knocked, Potato Slit अब of Valve मुश्किल। remains while BTR pushing, Present crush, knock है। compress to corner, living with only But Alter Ego Potato. line Can makes you Potato do this job for the entirety of Alter Ego while Vampire shooting at them at the same time? Spotbell coming around the corner, Micro Uzi in Potato's hand, but Octa just managed, cannot be revived. Fnatic bleeding out, still licking their wounds. Potato have to fight for his life now with the entirety of BTR rushing Alter Ego in. makes They anti है। cannot hold उस it पोजीशन much में जिस longer. तरीके से होल्ड करा Finally बहुत ज़्यादा bowing बढ़िया out at Point 8 box plays. Yeah, you needed another Indonesian बहुत team to बढ़िया take out an बहुत एंटी कर Indonesian दो यार team. अल्ट्री को लाइमैक्स के But लिए आपने now it's देखा going to इस be फन जो देखने को Vietnam मिला region आपको versus इनवाल Indonesian वेम्पायर region. स्टिल अलाइव है Void against वेम्पायर Box अगर Gaming. ये मैच Lavis with a जीतती है तो वो nade. हैशटैग बना But सकती है Lavis, wait, he naded Box. himself. बॉक्स अपना बंदा खुद ही नेट देने नहीं है फिनिश Wow. Guys, meanwhile, Anyway, 700 Void लोग will देख रहे हैं. have If to you are new look to the at stream, video for firstly that. make sure to like the video and subscribe to the channel. It's a good This is the design PMSL point, but I'm not sure if 2023 that Grand Finals coincidence last or, day. आज PMPL South an Asia accident and or PMSL का intentionally last did day. it, but यहाँ we're से gonna have to wait PMSL से later जो on, दो but टीम that होगी was वो really PMWI surprising क्वालिफाई coming from करेगी. Box. Hashtag 1 rank, Never could hashtag themselves 2 that rank. lead. And ये It's gonna be first free ever win from edition Void. है But franchise Vampires, system का on जो the other global hand, पे they got इंट्रोड्यूस themselves करा है. free C region elimination, पे आपको 7 पता by होगा. the side of तो पहले BTR, चैंपियनशिप and होती थी Void C. got an 8, तो and ये this उसी is का the पार्ट है Void that we PMSL. speak सुपर of लीग the जो हो रहा first है. week. सो आज They're इसका coming फाइनल डे back जो in आपके the स्क्रीन के tournament, सामने but हो रहा will है. it be too दूसरा late मैच for अभी ऑनगोइंग for है. them now to catch PMPL up to साउथ those एशिया के जो points? मैचेस Well, है वो Vampires आपके playing कंटिन्यू at होंगे the side of 5:30 BTR. 5 बज के Nobody's 20 touching मिनट Void on the IST other end इंडियन due to the टाइमिंग kills के अकॉर्डिंग. separating them तो and हम BTR. स्विच करेंगे Well, to a 5 certain बजे स्ट्रीम extent, अपनी that's what PMSL happens if you put PMPL the साउथ mindset एशिया of के लिए. nothing to तब तक हम lose when ये you're number कंपटीशन फाइनल 16 डे and भी they आपका can कवर win कर रहे fights. हैं. तो 3 मैचेस Now ही कवर कर पाएंगे. BTR इसके बाद जो still अगला have मैच the हमारा mindset लास्ट of मैच like होगा they can catch PMSL that का. number one उसके बाद spot, but PMPL they साउथ may एशिया पे lose जाएंगे. तो Swabell सब आ जाना to वापस से. this. But at एंड एक least बार आप BTR अभी भी in the प्रेडिक्शन करके circle बता stays देना 7 to इस still मैच में favor क्या लग them. रहा है. VP Look जाएगी at अल्टर ईगो the या amount नीचे से of कोई टीम आने roads वाली है. एंड साउथ inside एशिया of में the कौन सी टीम लग circle. रहा है It's लेके gonna be जाएगी. hard for the एनबी team to manage DRS this. ST वाइब्स SG टॉप 5 टीम्स तो It's ये है. pretty open right now. बाकी अगर नए हो मेक Except श्योर for टू हिट द Vampires लाइक एंड Compound, सब्सक्राइब टू द that's just चैनल. it. There's nobody else got themselves a building to work VP around. जोन हैक. Vampires अरे do अरे definitely विवेक have भाई the build space. They even got the next circle. Same goes for BTR. नूजी चलो नूजी को Those मारते four हुए देखा inside अच्छा to be लगा. dumped नॉक and होते हुए does नहीं the two देखा. teams. SLD nowhere to pick out, no way to cross the street. I don't think they have any Fineline switch Diamond to का pop बहुत बड़ा either. major That's why downfall News है. can easily shoot them down. Even spotted eyes just Day now. 2 and This day 3 is the still going perfect on. I view don't know to किस तरीके get से बगलअप in करेंगे the बट कर सकते हैं. circle, इन्होंने and करा they है got लीग it पे. for Vampires. Yeah, एक with the और नॉक दिया compound where सर्फिंग they BTR. roofed up to work with Vampire. Looking good this time. 4 players still active. BTR already Swabell one man down. standing. Don't think it's possible. Well,
Sorvel is still possible, but it's really, really tough if they try to go and save Sorvel, because right now Sorvel being spotted out by Vampire Esports. VOIN as well can't really ये get in. franchise system, yes thanks to bro, it's a Vampire. franchise system like PEL. For the This is the Vampires, every first bullet franchise matter for system them. With ever BTR introduced in limited PUBG six, Mobile they Esports are running scenario. dry This for is the Vampires when it franchise comes to slot ammunition. जो teams They have to make sure every single like bullet is BTR have a not franchise wasted. slot. Bacon Time still have quite a Bacon- number of Bacon resources. का भी They've got franchise quite slot है a ना? हाँ, hefty Bacon का भी amount franchise slot of है. There are a lot of grenades and slots, so mollies in franchise this slot mix. भी है. Now they don't want to waste any more time, don't want to overextend themselves outside of the circle, going into the zone as fast as they can. But Vampires gatekeeping every single person that is. Flukov got himself only 64 और land loose भी हो रहा है magazines ये, and this is just the playing land it war. out, tapping one by one.
They know PMSL. they're running dry with those ammunition and Yeah. bullets. They have to make sure आपको नहीं everything था। clicks and connect QEON। and didn't waste anything. This is so clean 5 coming from eliminations Fluke already निकाल from दिए। the तो इस मैच rooftop. के बाद VP हैशटैग बन पे आ सकती Nicely है there, क्योंकि ऑल्ट्री को positioning लाइमेक्स himself. ऑलरेडी एलिमिनेट हो And चुके हैं, right now ज़्यादा they're पॉइंट playing उन्होंने without नहीं Tony K, निकाले। but they're still तो able गुड to maintain a अपॉर्चुनिटी फॉर position. वेम्पायर हैशटैग Together with that बनाने long का range एंड shot आज does के help दिन them. पे Hail अगेन Esports on the हैशटैग other बना hand, के they are on वेम्पायर the other दिखाती side है of तो circle. Still पूरे a वर्ल्ड challenge, को but Bacon ग्लोबल को moving एडमिट in. करना पड़ेगा Looks ये like they're going to चीज reset कि as a four. वेम्पायर जैसी टीम प्रेशर पे खेलती है It's going वैसा to be the कोई नहीं ties है finale भाई। They here played coming on up from our PMWI first last wrangle day, of the day. main They tournament, are back, two down, playing themselves their PMGC best and last peak stage, performance hashtag here 14 today to for hashtag Vampires. 5, Fluke PMGC and Grand Newsy Finals got last the day 19 point in wide our last view day of जब open सबसे ज्यादा angle for प्रेशर them. एंड chaos And हो। all they need to आज do भी for लास्ट Vampires डे is take अगर waiting वेम्पायर for ने the कर दिया fight तो समझ लो to come over to their side. वर्ल्ड को एडमिट करना पड़ेगा कि भाई running यस low with भाई those दे आर द bullets, टीम they are जो reserving प्रेशर their पे बहुत ammos as much as possible. Now start to toss about their throwables. Here on the other end, Bacon and Ale, if they rush towards a Vampire, Vampires will have a bit of a problem to save their ammunition because there's nowhere near to reload themselves. They don't have enough death boxes nearby. And they're down to like what? भाई वो जो 30 मैंने इंडोनेशिया के चैनल पे bullets, 125 that's के it. वाचिंग है भाई हमारे में भी 1000 I करवाओ guess यार that's why they're not really 1200 spraying तो onto हमारी the भी peak or बनती है trying to फिर इस हिसाब explode से it. लेट्स गो They बॉयज thought Bacon time would be 700 लोग trouble. लाइक एंड सब्सक्राइब Now करोगे तो Bacon वाचिंग time- बढ़ेगी okay, हमारी the लेट्स VOIN गो in trouble 700 right now लोग is एक साथ getting लाइक Esports. दबा They're दो still on the हमारी अभी outside वाचिंग circle. They बढ़ेगी have गाइस a 1000 veto करवाओ though, इस but मैच में वाचिंग then लेट्स again, गो Bacon time is close by, and the nades will rain onto Hail Esports, but Flash is ready to counter fire upon ice. Now, Vampires are going to wait for the Bacon and Hill to fight against each other. Ice bleeding out while they slowly try to tap from the sidelines. 4 eliminations coming from the side of Hill. Bacon, I have no clue right now. 1 knockdown bleeding out. Nobody can actually save him due to how far he is in the front line when compared to the others. Flick has tried to spot all the back lines, but it's difficult due to the smokes in between. Bacon do have themselves a bit of a covers, bit of a मैंने तो फर्स्ट डे barricade बोला with था those यस साजिद vehicles भाई नो they गाइस लाइक have एंड on their सब्सक्राइब side, यस गाइस but लाइक एंड Bacon सब्सक्राइब Ice will आल्सो just have जॉइन to आवर make his own टेलीग्राम ruin down there. यहाँ पे आपको Hill अपडेट्स will मिले want to करेगी go for the जल्दी push. They फास्ट close क्विक by the blue zone first. They have to move. They will cross the street. Here comes the Prince of the VP Smoke. को ammo And लेना here पड़ेगा comes इस- Catslow trying to run them down. Newsy wants to go for it, but his Some ammo clips is VP के just पास। too low. Fluke putting everything he has with that UMP, trying to take Ooh. advantage. Bacon starts to fight. I think there's going to be Vampires winning. Oh, Vampire, they have the best advantage right now. They already got 7 elimination points and they'll be looking for more. Guy As only Get Slow and already Hill. spotted a Flash, deal ka take it last out as well. Ice being and Bacon traded पे back by Flash. Nailed down by 3 touch. Bacon भी And it's going to be the last member of Hill Esports. Guy only down the open. बहुत Shoots बढ़िया। onto Vampire Esports, Guy exposing only। inside at the same time. Taking a little bit of a risk and Finish। finally taken down by Bacon Shrek. versus Vampire Stone at the same 8 time having eliminations a निकाल support fire चुकी है। from those rooftop. Swapping over 3v4 with his situation car आपकी 98 screen के and at सामने the same zone time with his car से out to work. आगे धीरे-धीरे Bacon Noise open बढ़ना up the angle स्टार्ट करेगा towards the side बेकन of a को आगे flame. They आना need to take him Vampire का down. next He's the move nearest देखना पड़ेगा away कि क्या towards the बनता side है of Vampires. अगर आप But the नोटिस rest कर are रहे a होंगे bit यहाँ पे too far. वो They गन are भी चेंज running कर low रहे हैं with their अपने साथ साथ ammunition. They क्योंकि need to एमओ save का and इशू preserve काफी देर their से resources कंपाउंड पे at the हर same जगह पे time. उन्होंने फिनिशेस Stone निकाले make the फायर best use एक्सचेंज of हुई his car है out Boys, ammunition at the same time spot out Armstar. गया There's एक और gonna नॉक much लास्ट more बंदा pop बचा on है the हियर nades. वी गो They're raining on वेम्पायर का them, चिकन and there's no way सेकंड out. मैच में Stone switch over to his Hashtag arsenals one and Vampire taking those after the weapons match that number could 2 use a NES. touch. Vampire Yes. secures this with a huge Chicken dinner with the 10 plus eliminations. Day 3 ग्रैंड फाइनल्स लास्ट डे मैच नंबर 2 इसके बाद 4 मैचेस बचने वाले हैं भाई बहुत ज्यादा इन्होंने इंटेंस कर दिया है कंपटीशन को एंड 780 लोग ऑलमोस्ट देख रहे हैं अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल जल्दी से 1000 लाइक का हमारा टारगेट है आज का कंप्लीट करवा दो एंड इसके साथ साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बताओ कैसा लग रहा है कंपटीशन लो भाई हमारे एमवीपी लेट्स गो बॉयज मुझे अभी भी याद है पीएमडब्ल्यूआई के फर्स्ट मैच वीपी का भोकाल यस रोजा का जोन मुझे अभी भी याद है ऑल इन वन पीके एंड जो सेकंड डे डाउनफॉल आया था इन द थर्ड डे जो उन्होंने उठाया था वर्ल्ड चैंपियन टीम वेम्पायर यू गुड स्टोन्ड आया टीम की परफॉर्मेंस है ये तो मानना पड़ेगा एंड आई गेस टीम इज प्लेइंग विदाउट टोनी के ना यस बाय गाइस टीम इज प्लेइंग विदाउट टोनी के भाई नूजी का भी आ गया सीन नूजी अपना बहुत ही ज्यादा जो इनिशियल रोल है देना स्टार्ट कर दिया डैमेज देखो 761 का 4 एलिमिनेशन यही चीज है अगर नूजी ऐसा खेलेगा तो आगे सीन ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा
बाकी टीम्स टू वॉच आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। वीपीई 10 स्मोक्स, 37 स्मोक बेकन भाई, 37 स्मोक्स बढ़िया। 23 बाय वॉइन, हिल बाय 35 स्मोक्स। एवरेज सर्वाइवल्स ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडियन अगेंस्ट, यस 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 मैनिक भाई। 7 हो रहा, बात क्या बोल रहे हो? हेलो CR7 हो रहा ब्रो, व्हाट्स अप? द बिग एंड द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ लाइक NGC, जिसके ऊपर सारी की सारी लड़कियां फिदा है गाइस। द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी गाइस, CR7 हो रहा, ओपी इन द चैट। टोनी के लेफ्ट VP भाई, तुम भी बोल लो कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज, कुछ भी मतलब, इसने वो लेफ्ट कर दिया, इसने वो लेफ्ट कर दिया, ठीक है भाई। बाय गाइस 550 लोग इस स्ट्रीम को देख रहे हैं। अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओ भाई पॉल्टर वाले रिएक्शन देखना बनता है भाई, लेट्स गो। और ये रिएक्शन पता क्यों आया है आपको? यू नो आपको रिएक्शन क्यों आया है? लास्ट मैच याद है और सैम 9 ने अल्ट्रिगो एमएक्स के साथ क्या किया था, याद है ना? याद है? अभी सैम 9 का पुश आया, याद है? याद है शैनॉक में जोन के बाहर वेट करा, उनकी एंट्रीज पे रोटेशन काटा, जो मैच उनका अच्छा हो सकता था सैम 9 ने #3 लिया, याद है? तो ये देख लो उनका रिएक्शन, सैम 9 का पुश, पेनेटिक, अर्ली नॉक्स, इधर उधर से भी हेल्प हुई है। ये भाई सी में बैंटर्स अलग है भाई, सी के बैंटर्स आर डिफरेंट, डिफरेंट भाई, सी के बैंटर्स कंप्लीटली डिफरेंट है भाई। भाई इतनी जोर की चीख देते हैं, बोले आजा, पंगे पुंगे ना हो जाए भाई सी पे। टुडे SG गोना विन PMPL, यस यस फॉर श्योर। बस मोमेंटम रहा, ऑनेस्टली अगर मोमेंटम कल जैसा रहा हो रहा भाई, तो फॉर श्योर। कि मोमेंटम एक बार जो SG पकड़ लेती है, जो DRS के टाइम भी एक जो उन्होंने पकड़ा था वो छूटा नहीं था, बट वो आज मोमेंटम नहीं छूटना चाहिए। बट ऑनेस्टली आज ट्राई हार्ड करेगी सारी टीम्स, क्योंकि बॉटम की टीम्स को भी पॉइंट लेना है 12 आने के लिए, एंड टॉप की टीम #1 पे जाने के लिए कंपटीशन होगा। बट मोमेंटम रहा तो SG भी कर सकती है आज के दिन पे, मजा आएगा। NB, DRS, ST, वाइब्स एंड SG, आज मैच देखने का बहुत मजा आएगा। टोनी के इज इन फेज नाउ, तो टोनी के फेज पे ये तो... यार क्या बोल रहे हो भाई? बहुत जोर जोर से चिल्ला चीख देते हैं गेम रेस से भाई, बहुत तगड़ा चीखते हैं भाई। भाई ऑल्ट्रिगो लाइमैक्स को तो गुस्सा है लास्ट मैच का भाई, ये बैंटर्स तो कवर करने पड़ेंगे, सीरीज बन जाएगी इनके बैंटर्स की। लॉल। इन्फिनिटी न्यूज इज अंडर, अरे अरे भाई क्या बोल रहे हो भाई तुम भी। लो भाई ओवरऑल स्टैंडिंग, ऑल्ट्रिगो लाइमैक्स अभी भी टॉप पे है, बट VP नहीं गई है गाइस, VP ने टेक ओवर नहीं करा है। VP के 136 पॉइंट आई गेस, सिर्फ 1 पॉइंट का मात्र फर्क पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट मैच आपका रैंगल का होने वाला है, तो उस पे ये पॉइंट कवर किया जा सकता है। देन शाइन लाइक डायमंड 3rd रैंक पे, स्टिल इतना अगर आप देखो डाउनफॉल के बावजूद दे आर मेंटेनिंग #3, कुछ तो बात है। देन बूम नहीं अच्छा मैच गया अगेन, हेल का फर्स्ट मैच अच्छा था, अभी अच्छा नहीं गया। देन फेज 100 पॉइंट पे है, बेकन BTR आ चुकी है 8th रैंक के अंदर। यूडो अलायंस पर्सिया नहीं जा रहे अच्छे मैच बिल्कुल भी। गीक, RRQ, सैम 9, बॉक्स, द सेवियर एंड वॉइन। सो गाइस अगर आप ओवरऑल स्टैंडिंग देखोगे, टॉप 2 का कंपटीशन अलग है, बट SLD, शाइन लाइक डायमंड, बूम, हेल, फेज एक अच्छा मैच एंड डायरेक्टली ऊपर एक और अच्छा मैच, एंड वो गैप कम होगा। एंड हियर वी गो हेड टू हेड गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपकी इस हेड टू हेड में क्या पॉइंट रहने वाले हैं। तू ही तू जन्नत मेरी, तू ही दिल का
तू ही दिल की है दस्तक, तू ही दिल की है मौत, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू मैं क्या करूं। आई विल बी चैंपियन। ओके भाई, चलो आ जाओ चैट के अंदर। बाय द वे गाइस 444 लोग देख रहे हैं। पीएमएसएल आपका है लास्ट डे, फाइनल डे। 2 मैचेस हमारे हो रखे हैं। आपके 2 फर्स्ट मैच शैनॉक का हेल, सेकंड वेम्पायर, थर्ड आपका एरेंगल होने वाला है। एंड इसके बाद पीएमएसएल पे ब्रेक रहता है पूरा का पूरा 1 घंटे का, 1 घंटे से भी ज्यादा का, लाइक ऑलमोस्ट 70 मिनट का ब्रेक ड्यू टू द रमजान, क्योंकि रमजान चल रहे हैं तो वहां पे प्लेयर्स लाइक फास्ट होता है, लाइक इफ्तारी होती है शाम के टाइम पे। सो 1 डेढ़ घंटे की तरह, लाइक 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक ऑफिशियल ने दिया है प्लेयर्स को, थर्ड मैच के बाद, अभी नहीं, थर्ड मैच के बाद। देन हम 5 बजे शिफ्ट करेंगे पीएमपीएल साउथ एशिया को। तो गाइज, आर यू गाइज एक्साइटेड? हाउस द जोश? देयर इज गोना ब्रिंग पीएमपीएल साउथ एशिया ट्रॉफी होम। जीवन भाई आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो जाता है, लेट्स सी, देखते हैं। आईएनएफ वर्सेस ए7 बेंटर हमने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया ब्रो, आपको बता दिया है। टेलीग्राम पे गाइस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आपने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है टेलीग्राम पे हमको ना फॉलो नहीं करा है, जाके फॉलो कर लो जल्दी से। हो कैसी मजबूरी, दिल। लो सर, डीआरएस विनर। ओके, ये हमारा केमिस्ट्री का टीचर कहाँ से आया? लक्सी सक्सी इज इन विच टीम ब्रो? इवोस परसिया ब्रो। क्या बीजेएमआई आखिर फिर चला जाएगा ब्रो? क्या मुझे इस बारे में बिल्कुल आता नहीं है। यो लेट्स रॉक, यस मेरे भाई। ए7 भाई, आज मैं ना इतना थका हुआ हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली सेइंग। बहुत भाई, बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। बट गाइज, करेंगे गाइज आज के दिन पे फुल फुल, और स्ट्रीम करना है हमको शाम को 10 बजे तक, फिर एक वीडियो भी बनाना है। आज बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क होने वाला है। ऐसे इज बिकमिंग। अगर आपको हार्ड वर्क पसंद आ रहा है गाइज, जस्ट लाइक द वीडियो, लाइक द स्ट्रीम, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। पीएल का फाइनल्स 19th को होगा। पीएमपीएल ऐसे से कितनी टीम्स जाने वाली है ब्रो? एक, मात्र एक। पीएमपीएल से गाइज एक ही टीम जाती है पीएमडब्ल्यूआई के लिए। बाकी ये पीएमएसएल है, इससे कंपेयर मत करना, इसका जॉनर ही दूसरा है। पीएमपीएल इंडोनेशिया से भी एक ही टीम गई है, तो पीएमपीएल साउथ एशिया से भी एक ही टीम जाएगी, समझ रहे हो? ये चैंपियनशिप का पार्ट है पीएमएसएल फ्रेंचाइज लीग। टेलीग्राम भी चलाते ब्रो आप? इंस्टा पे यार, ये फिर यूट्यूब पे बताया करो। ठीक है भाई, कोई नहीं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कहीं भी कर लो भाई। आपका ही है, आपका ही है गाइज, अपना ही है, टेंशन ना लीजिए। फॉलो कर लीजिए, आपका हमारा अपना सबका सेम। ओ कैसी मत दिल खोल। ब्रो अगर बीजेएमआई पे आ गया तो आपका क्या होगा फिर? मतलब ये नहीं आएगा तो आपको क्या होगा फिर? ब्रो गाइस, हर एक्सपेक्टेशंस। अरे अरे, ए7 का रिप्लाई देखो, आ गया, ए7 का रिप्लाई आ गया। ओ माय गॉड। टेलीग्राम लिंक कहाँ है? टेलीग्राम लिंक चाहिए आपको? मॉडरेटर अगर आपके पास टेलीग्राम लिंक है प्लीज दे देना, अभी मेरे पास क्योंकि अवेलेबल नहीं है, मेरे इस फोन पे अभी अवेलेबल नहीं है। प्लीज गाइस टेलीग्राम लिंक दे देना। आई एन ए7 का क्या सीन है? अरे यार, उनका ना आई गेस क्लैश हो रहा है बूट कैंप पे, उसके लेके बेंटर दिया। बेंटर भी ऐसे तगड़ा दिया कि अपना सबसे पहले वो आया, अपना फेडरल आया आईएनएफ का। आईएनएफ का फेडरल आया, उसने वीडियो बनाया। वीडियो पे वो बोलता है कि आई एम अ प्राउड लाइक सन ऑफ दिस, एंड ये मेरी ग्रैंड माँ है, मतलब प्राउड सन ऑफ दिस, प्राउड ग्रैंड पा दिस। बाद में बोलता है आई एम प्राउड फादर ऑफ अल्फा 7। मतलब ये वेंटर दिया उसने, बोला कि मैं प्राउड फादर हूँ, मतलब पापा हूँ अल्फा 7 का। आई गेस बूट कैंपेन का फाइट चल रहा है, कुछ वेंटर चल रहा है। देन अल्फा 7 का मैं वेट कर रहा था, एज एम पॉजिटिव लेना। और उस सबसे बड़ी बात है, इस बैंटर को इतना पॉजिटिव लिया है, मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट था बट पॉजिटिव लिया है। अल्फा 7 के प्लेयर्स ने खुद कमेंट करा उस पोस्ट के ऊपर, एज एन फन वे ही लिया है, नॉट सी।
DRS as well. PMPL वॉच पार्टी में कितना टाइम बचा है ब्रो? 5:20 इज द टाइमिंग IST. अगर आप नेपाल से देख रहे हो 5:20 + 15 कर देना, 5:35 फर्स्ट मैच स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू द नेपाल टाइमिंग. IST इज 5:20. अभी टाइम है, PMPL ऐसे का टाइम है मेरे भाई. ये आपका 5:20, अभी पूरा 1 घंटा, फुल 1 hour फॉर द फर्स्ट मैच. कारिलो इज माफिया इन रियल लाइफ. आई थिंक ही विल. अरे 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 अरे, भाई आपको कारिलो भाई ने भाई को फॉलो करा है यार. लो भाई, अपने ये पता कौन है? ही इज द कोच ऑफ वेम्पायर. अपने टैनी भाई है शायद, टैनी भाई इनका नाम. टैनी भाई है शायद, वैम टैनी है. इनसे बातचीत होती है हमारी. कोच सावे वेम्पायर के. और टैनी है इनका नाम, पता नहीं कुछ शायद. हाँ टैनी. ऐसा वेंटर इंडिया में ब्रो, सीधा पापा बोल दिया. अरे तुमने देखा? मैं तुमको साउंड बंद करके दिखा सकता हूँ. साउंड बंद होती है, बैंटर दिखाता हूँ. बैंटर्स दिखाता हूँ. अभी मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा. मैं टेलीग्राम खोलूंगा ना, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आती है. आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करा होगा. वेट कर, इंस्टाग्राम पे ही खोल ले. वेयर इज माय इंस्टाग्राम? ये है वेयर इज इंस्टाग्राम. पहले को आपको बैंटर दिखाता हूँ इंस्टाग्राम का. तो आ जाओ गाइस. गाइस इंस्टा बैंटर देखते हैं. बट यार वॉइस तो ऑफ करने का ऑप्शन होता होगा. प्रोफाइल मैंने स्टोरी, बाय द वे गाइस ये हमारे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लेना. ये 21 के फॉलोअर्स ये है. वॉइस ऑफ है ना, ठीक है. तो ये था, वेल आई एम फेडरल, ऐसा बोला इसने. प्राउडली सन ऑफ एंजल एंड डिविंग, मतलब बताया कि मैं मम्मी और पापा का नाम लिया. प्राउडली ग्रैंडसन ऑफ लिलिया, सॉरी अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ. प्राउडली गॉड सन ऑफ रो रोजारिया. एंड प्राउडली, ये इसने लाइन बहुत पॉज करके बोली ऐसा बोला. एंड प्राउडली फादर ऑफ अल्फा 7. ओ भाई, ये अलग ही वेंटर दे दिया भाई. कल मजा आया भाई देख के. मैं अल्फा 7 का वेट कर रहा. आई डोंट नो अल्फा 7 का आ गया रिप्लाई क्या किसी का? और इसके बाद आपका वो आ जाता है, इसका मॉन्ट टाइप मॉन्टाज आ जाता है. मजा आ गया भाई. गाइस मैं आपके क्या व्यूज थे एक बार कमेंट करके बताना. एंड ऑल्सो गाइस फॉलो कर लेना. ये हमारा इंस्टाग्राम है, अयोगी गेमर, जाके सर्च करो आ जाएगा. बाकी अभी मैच में फोकस करते हैं क्योंकि मैच होने वाला है स्टार्ट. थोड़ा सा डिले होगा मैच को स्टार्ट. गाइस हाँ, मैच इज अबाउट टू स्टार्ट. मैच देखे देखे ब्रो. लो लो शो भाई मैच लगा दिया. बेंटर भी देख लो यार, बेंटर भी देखना जरूरी है. की बोलती पब्लिक, बेंटर भी देख लो, देख लिया करो क्या चल रहा है ग्लोबल पे. रिप्लाई आया है उस पर, मैं सबटाइटल्स नहीं है बट उस पे सबटाइटल, यार सबटाइटल्स होने चाहिए ना. इन्फ्लुएंस चैम्पियन बहुत बहुत बढ़िया सबटाइटल्स दिए. बाय द वे प्लेयर्स गाइस, टेंशन का माहौल, टीएनसन का माहौल है गाइस, टीएनसन का. कैसी है ये दूर. टेलीग्राम लिंक DRX, रुको अदनान में दे दो. रिप्लाई आया है उस पर, मैं सबटाइटल्स नहीं है. सबटाइटल DRX कांट परफॉर्म इन लास्ट डे लास्ट ईयर. TNT भाई, तुम पहले से नेगेटिव हो जाओ बरो. टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? मैच तो स्टार्ट होने दो, टीम्स को खेलने तो दो, स्टार्ट तो होने दो.
हर हर महादेव भाई, क्या हाल है? कौन जीत रहा है? सात्विक भाई, अभी तो पेल रही है टीम वेम्पायर अभी के टाइम पे। तो अभी थर्ड मैच होने वाला है, अभी देखते हैं। बाय द वे 1 मिनट के अंदर आपका थर्ड मैच भी स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गो बॉयज, प्ले तो करो। कर दिया भाई, टेंशन ना लो। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ओनली देने का, मस्त बाबा रहने का। तू ही तू जन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून। लेट्स गो भाई, 40 सेकंड। किस टीम को सपोर्ट करो? क्या लग रहा है इस मैच के बाद ऑल्टर ईगल एमएक्सी टॉप पे रहेगी? या देखो, दो प्रोबेबिलिटी इस मैच के बाद, या ऑल्टर ईगल एमएक्सी टॉप पे रहने वाली है, या फिर आपकी टॉप पे आएगी वेम्पायर। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? दोनों में से एक चीज बताना। एंड एक साथ काउंट डाउन करेंगे 10 आने पे। तो बी रेडी गाइस, ऑडियंस बी रेडी। काउंट डाउन एक साथ चलेगा हम सारे लोगों का। लेट्स गो बॉयज, with the same energy and the same intensity, we are going. चलो भाई, स्ट्रीम पॉज कर दिया तुमको? नहीं भाई, ट्रॉफी मैं बोल रहा हूँ आज तक की वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉफी जो मैंने देखी है, पीएमएसएल की वन ऑफ देम। आज ये कोई एक टीम उठाने वाली है। ऑनेस्टली सिंग, वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉफी भाई, वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉफी। भाई ऑल्ट्रीगो का रिएक्शन मस्त था सैम 9 को एलिमिनेट करने के बाद, बनता भी था। अभी देख भाई, मेरे को लग रहा है सैम 9 और ऑल्ट्रीगो एमएक्स का प्लीज भसड़ ना हो, ये एक दूसरे का गेम खराब ना करे, क्योंकि टीम्स को कहीं ना कहीं जोन के अकॉर्डिंग पता है कौन से टीम कहाँ से मूव करती है, कहाँ होल्ड करती है। इन्होंने एक साथ इतना खेल दिया है, बस बीटी ना हो, अपना अपना गेम खेले सारे। बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, चाहे रोटेशन कोई कट करे या क्लैश हो, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। बट यार अच्छा लगे ऑल्ट्रीगो एमएक्स के लिए। फर्स्ट मैच ऑलरेडी वो कॉस्ट कर चुके हैं सैम 9। अगर अपना गेम खेलती तो अल्टर ईगो का वो गेम पक्का अच्छा होता, मैं गारंटीड लिख के दे रहा हूँ। कंपटीशन देखने में मजा आता है गाइस, थोड़ा ना यार, समझ रहे हो? चलो भाई, लेट्स गो विद द फुल एनर्जी एंड द इंटेंसिटी। तू ही दिल की है दस्तक, तू दिल है रौनक, और कुछ ना जानू मैं। वॉइस We उठा रहा go हूँ, up all the वॉइस way उठा to रहा shooting range. I'll हूँ। take आई that सी as well. Mid to the base. अदनान भाई, Come मैं on, लिंक दे try रहा it हूँ, as रुको well, लिंक right? देख रहा हूँ So, मैं। yeah, I'll छोड़ना take पड़ा a यार, आज tough हमारे one मॉडरेटर्स कहाँ since पे है it's the last भाई? day anyway. But for the teams, they देख रहा हूँ definitely लिंक don't want को। to take the tough one. BTR, not that tough since they can drop straight to mid to the base. But we're going to get a 50-50 between the areas of Rossong and shooting range. I feel like it's going to be ended up on Rosshog. It Guys, will end up recovering right the on top link, 2 school minutes. as well, because we've seen multiple school circles, Cloud. Don't forget about that. We've पानी had that सुनो। quite a number of Oh, hello, times hello, the hello। first day. So, I mean, I'm not surprised if that happens again. And speaking of school, and even the previous circle on top of a hospital, it was predictable because vampires know exactly where they're standing. Are they doing the same thing here, going in early to a side of school for the circle to just guard it over? Because they did it before. Can they get it back to back? Well, definitely school with this kind of circle is still a good area because it's in the middle. But of course, it's really down to the RNG at the end of the day. But if it's kind of like a 50-50 circle, right? It would be nice to like be somewhere at the bridge so it's easier to cross over when you get a hard shift onto any other side. So I think that might be one of the focal points for those teams. If not on those bridges, then somewhere on the right, like Yasnaya area will be great as well because there's a lot of ground and it's easier to travel as well, lesser choke points. So we might be able to see like those key areas being the focal point. If not, if the team really wants a compound, then Rosal is still not too bad because you can still get onto the other side easier as compared to like putting yourselves like really, really far away. Right, I'm looking at PERSIJA EVOS. They're nowhere near getting themselves a vehicle. I feel like they are rushing. गाइस लिंक ही ढूंढ रहा था, ये लो लिंक ढूंढ रहा था, ये लिंक मैंने डाल दिया, ये लिंक है, तो सेव कर लो। दिस इज द टेलीग्राम लिंक और जाके ज्वाइन कर लेना। तो इस पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इन फ्यूचर जो भी कुछ भी जैसा भी आएगा, आपको सारी चीजें हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, लाइक इट्स नॉट जबरदस्ती वाला सीन। आपको अच्छा लगे आप करो, नहीं लगता है ना करो, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं। First seem to be touching down school, which can be RRQ. And if they can hold this ground for the longest time, I feel like this might be the last few cycles as well. Just might as well just get as much loot as you can right now because there will be a third party coming in if that happens. Now, some of the team are dropping around Jogo Pool area. They will take their time. We do know for a fact
It's still inside of a circle. But those come out from SMBO. Talked about choke points. You talked about gatekeeping. I don't think anybody tried to go for a boat route because of how accessible it is for the land right now. But for Yoodo Alliance, if they're being smart, if someone can go up to starboard even at this case, but we're not sure who's going to go there. Well, normally it's let's see here. Normally it would be okay. I can't recall for now. Starboard, yeah, last we saw is there's no team, but maybe because it's right by the flight path. I was kind of thinking about the point of the boat ride as well. Normally with this kind of circle, teams won't want to take the boat VP ride next 4 matches से 2 चिकन निकाल लेगी, ठीक है भाई? Get into the circle. Plus, Hi bro, hi Kashan Ali, क्या हाल चाल? VP on, by the way अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास सीन है नहीं guys, तो that kind of reminds me of like chat के अंदर आ जाओ, PMPL चिल बातें Malaysia करते हैं. season 2. Damansara Flash Vision. They drop into Ferry Pier. The circle was way on the right and it pulled all the way to the right, like mansion and above. And they had no vehicle the entire way. And what happened was all 4 of them went out to the zone, and it was the last game whereby they had a chance to secure the slot in the next season. So it was devastating. I remember that moment because Yeah, it was with the players then. I mean, like, what are the odds that you cannot even land a vehicle after such a long time rotating and navigating the circle? That's like, it's either pure bad luck or it's just a bad day. There's nothing else going on there. I mean, if you're talking about luck, you have to put in the factor of luck in this game. No matter how good you are, if that 5% of luck is not on your side, then you're doomed. Yeah, and it was unfortunate because it was the last game and they had an opportunity to, like, if they could rack up a certain amount of points, they could still secure the slot because that time it was like bottom 4, you get eliminated from the next season, something like that. And because that was the case that they couldn't get a vehicle, they had zero fighting chance at all. Like, there was no chance at all for them to get a single point. So it was devastating for the players. Like, at least you get a vehicle, at least you still fight, and if you lose the fight, that's fine. You still be satisfied, but without even the fighting chance, then it's totally devastating. And I believe there was some talk, at least in recent seasons, behind the scenes of like, okay, maybe the vehicle spawn should be kind of like reworked. But at the end of the day, I don't know exactly whether it's reworked because of course SSC slot है, PMW 2 slot है भाई, एक नहीं 2 slot है. Then you know, that defeats the purpose of the whole RNG thing. But looking at the case right now, एक भी नहीं भाई, 2 slot है. सॉरी, एसएससी में पीएमएसएल कंफ्यूज हो गया. एसएससी की अनाउंसमेंट अभी तक कुछ सीन मेरे को पता नहीं है. कोई अनाउंसमेंट आएगी तो हमारे चैनल पे वीडियो आ जाएगी ब्रो. एसएससी से होना तो चाहिए क्योंकि पीएमएसएल से मिल रहा है, राइवल कप से मिल रहा है जापान कोरिया, सो यहाँ से भी होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू माय स्टैंड, I really don't know. Since we were at the point, just putting the out curse is no joke, Clout. Sometimes we mention about certain teams, they must got themselves some vehicles, right? And that's where they don't get any. So that's not the case here. If not, I mean, like, I wouldn't mind if they're blaming us at this point. But speaking of the Nat Circle, we have no clue about the Nat Circle where we will be because it's too obvious. Like, it's too vague right now because a lot of the good points are, you know, I said the circle, you know, it's going to be ended up there. There's nowhere else it's going to be landing into it. But for this circle right now, first circle pops, it's just guys, PMPL Vietnam से DC में qualify है. Yes, मेरे भाई PMWI के लिए already qualify है. जो guys इनमें से काफी टीम जैसे जो already qualify हो चुकी है, they are playing for the prize pool. Coming up from the side of Boom. They were being challenged by They are Bacon playing Time, only but for they're the not prize willing to give pool. away the position, not taking up the bait. Now Bacon Time, due Prize to pool की lack value of ज़्यादा है. information coming up from the side of Boom, and the hill between them is separating, and they have no clue about the position of all the other players coming up from Boom. They don't want to open fire, but they're just going to open fire something that they can definitely see, not just by the ODQ, but something physically they can see with their eyes. Then they're going to give a bit of a challenge, but GEEK SLATE, this is ambitious coming from Bacon Time, a bit too far, around 300 meters apart. And they got the high grounds and so much vegetation in between. Feels like a difficult task for Bacon Time to try to knock one down. But GEEK on the other hand definitely get themselves a lot of intel by those fires. So at least लो भाई, अब ठीक है, अब सीन ठीक है. So now shooting range is just
out of the Breezy question. zone. All the way down. We don't get to see this kind of hardship in the second circle that often, but well, good news for all the teams because they're mostly in the main peninsula. Even 7-9, they're by the bridge, so it's going to be an easy rotation ST down eliminated. south. ST को कितने तो दो भाई. No choke points Pehli there for eliminate. them. It's all managed well, and that means that a lot of teams will be playing in this down area. Down, it's quite balanced here. You got compounds, you got high grounds, you got good areas like Pochinki is still in it, like school is still in it. So I think that with this kind of circle, we're going to see a different kind of pace as compared to before. It's going to be slower as compared to the previous Erangel. Yeah, due to the multi-levels of terrain and also a couple of compounds in between too. But also I want to see if RRQ can manage how Alter Ego did before when they are in the center of the circle. They definitely will have a lot of teams to contest around the area, but DX taking the fight into the hands of Hill here. At the same time, we do have Box Gaming on the other end. Pochinki is hot right now. This is DX's old town, where they're being hushed out and being chased out by Bacon time before. But right now, DX know exactly every corner of it, how to play around. We're Hill fighting back. But it feels like DX know this like the palm of their hand. And GEEK, on the other end, taking advantage as a third party. Why not? Did Stuxnet manage to steal it away? I guess not. It's still DX securing that elimination point onto Hill. And now DX has rabbits down. Chua needs to go up to the second floor. Or Lamborghini is going to be the one. Let's see how they're going to decide that. As now Lamborghini popping out of smoke. He has 8 smokes. So there's plenty on his arsenal there to use to buy time for his teammates to reset. Where is Vampire? I saw Vampires nicking onto the side of DX just now with that knockdown. I don't see them anywhere in the map. We do have 3 teams making 4 as Vampires taking a part of this from a different angle entirely. We have no clue there where they navigate themselves. But DX right now, they can actually wrap things up, whether to finish off Hill, but they need to figure out how to not to walk into that trap. There will be the chopsticks trench. They can actually work around it. But for the side of GEEK SLATE, they're just taking this long fight all day long. They're not willing to just expose themselves due to BTRs breathing down their necks at the back line. There's also another team behind them as well. I think that's going to be maybe not Bacon time. I think what's pink color teams there? VOIN. I think that's VOIN. And coming up from the trench, Hill will try to fight back, but the problem is it's not going to be only कितने मैचेस बाकी है ब्रो? इसके बाद 3 मैचेस बाकी है. थर्ड मैच ऑनगोइंग है. पर डे 6 मैचेस है. एंड अब तो बस लास्ट ही डे है. बस आज के दिन है. जो भी है आज के दिन पे ये गाइस. सारे रैंगल मेरा मार आज के दिन पे ये PMSL. कोई एक विजेता बनेगा. कौन बनता है वो देखने वाला सीन है. और PMPL हमारा साथ होने वाला है. सो इसके बाद अपन PMPL साउथ एशिया पे शिफ्ट हो जाएंगे. So let's see here. Is it still good? Yes, it's pretty decent with Vampire Esports there. GEEK SLATE right smack in the middle of the circle. I guess the next interesting area would be from the north coming into the south. We got like 3 teams still up there, but we got 2 teams still taking that northern side. We got Bacon Time there, FaZe Clan there, so we might see crashes between PERSIJA, EVOS and FaZe Clan perhaps. Is it going to be a Pochinki circle, or is it going to be a Potato Hill circle, or even the field of Carter, or even field of Pochinki? It's going to be having a compound and also a lot of buildings, but Dab running down a bit too late, spraying over to the side. Mormon got it! He finished things off in a swift manner, a clean execution at that, but Sam Knight being shot from afar. That's coming up from the side of GEEK SLATE and another team FaZe. They lost their scout early before. VOIN coming up from the back line. RRQ repositioning himself, coming down from school area, down to the side of Potato Hills of Pochinki. Now this is where we talked about the circle plays such a big part. Even though you got yourself compounds before, but being, you know what, moved away by the circles, you have to figure out how to exit out. And when you step out from here, there's going to be an open field. So much flat plane here, Cloud. Yeah, there are multiple kinds of terrains here in this kind of circle. That's why in the center of Irregular, it's kind of like balance. You get all sorts of stuff here. So it's up to the teams whether they want to play compound, they want to play flatland, whether they want to play high grounds. It's totally up to them. Nothing wrong with that. As long as they're comfortable executing whatever their plan is, then that's going to be a-okay. PERSIJA, EVOS, for example, they're still trying to find where they're going to call home right now. I think they don't want to manage the road. That's why they went into that compound that was just right in front of them and ended up like, okay, nope, there's another team on the other side of the road. We're not willing to go through it. Let's go through
a different rotation. Dolphin never Stage bro 3, PMPL land you could नहीं still do that. होता But if PL it's like के stage जैसा 5, PMPL 6, land then bro ये they land ही हो have रहा to है PMSL sacrifice. land हो रहा है PMPL नहीं हो रहा bro अभी I agree. PMPL का कोई Right डिटेल now they आएगा तो still आपको have a बता bit दिया of a जाएगा space by the way here. guys 441 लोग देख रहे हैं 16 स्ट्रीम को अगर आप teams स्ट्रीम के intact. अंदर नए हो so make sure to Walking hit the into like stage and number subscribe 4 to in the less channel than a and minute. secondly जिन Now लोगों को that's very कॉन्टेक्ट्स नहीं limited पता है amount उनको of बता दूं आज के दिन पे 2 There is क्लैशेस है mad आपके lag for PMSL these guys. PUBG I think मोबाइल it's सुपर right लीग top जो still. सी We don't know रीजन is पे it होती gonna है be urban इंडोनेशिया warfare or थाईलैंड not. मलेशिया वियतनाम एंड Or वाइल्ड is it कार्ड gonna be रीजन somewhere एंड ये outskirts फ्रेंचाइज in the सिस्टम है overflow फ्रेंचाइज लीग opportunity? जैसे PL होता है Now that's आप gonna be a समझ लो tough one for ग्लोबल the का LGL फर्स्ट to एवर pull it एडिशन हो out रहा है because if PMSL one सुपर लीग पहले सी misjudge चैंपियनशिप of होता था timing तो and ये आज आपका position ग्रैंड फाइनल्स for का the लास्ट डे है checkpoints जिसका थर्ड for मैच each ऑन of these गोइंग है teams, they पर will डे 6 easily मैचेस go होते down हैं because of तो how आज के दिन पे आपको compressed कोई एक the चैंपियन circle, टीम how मिल जाएगा जो small this फर्स्ट the एवर radius of a एडिशन circle is सुपर right लीग now. का जीत For के the जाएगा Vampires, हैशटैग they're 1 पे taking होगा वो things very जीतेगा slow. They're प्लस taking all the दो high टीम्स ground ऐसे होने from वाली है जो the यहाँ से rim of the क्वालिफाई circle. करेगी They're not willing to be PMWI in the के लिए center तो because of how open it is. पर्सिया RRQ इनबीटी spot दो नॉक out होने PERSIJA, फॉर श्योर EVOS, बच गया wrap बढ़िया face छोड़ा down, प्लेयर को leaving only Luxy and नॉक हुआ Micro. Boy depletion गॉन on the other end with नॉट इन गुड one सिचुएशन taking लक्सी on गॉन रेड Luxy. फेस गॉन This could be a clear पूरा view RRQ for ने RRQ पिंग to करके farm रखा है जिस those पे kills. तो यस They've been गाइस guarding over score for the जोन longest आपकी time, स्क्रीन but के they सामने have to यूडो move अलायंस now. बहुत But बढ़िया along the process बहुत of ज्यादा navigating बढ़िया to the बट circle, कितनी it's देर just तक gonna बढ़िया easily wipe वो out देखने PERSIJA, वाला EVOS. सीन है While टिल Yoodo नाउ Alliance, the only team that ठीक है willing to शाइन लाइक take डायमंड up the courage फैनेटिक to देखते be क्या in the करती है इस center, and मोमेंट पे there's वाइन only couple of compounds पर्सिया there is. माइक्रो You बॉय can get in the RRQ center, which अभी Ultra आएगी Ego is on आगे the move right now, को going in VPE there. They का can फाइट होने be वाला है क्या in there थोड़ी देर for के a long अंदर time. They यस can just डॉट defend अभी it. Well, I'll be है जिस interested to see what happens in हाँ that Chinky now तो that the circle is ऑलरेडी not गाइस there. अब काफी Boss लोगों के Gaming, डाउट यहाँ से Hail क्या रहने वाले कि Esports, काफी टीम्स तो Xavier at ऑलरेडी least. क्वालिफाई हो चुकी है It's यस gonna गाइस be a fight काफी here to सारी get out ऐसी of टीम है Chinky जो ऑलरेडी itself, क्वालिफाई हो and with चुकी है फॉर 25 एन more एग्जांपल seconds, बूम we फ्रॉम gotta do it इंडोनेशिया quick. We're talking about वियतनाम stage से 4 द circle सेवियर moving to जो अभी भी stage खेल रही है 5. लॉबी It's के gonna अंदर hurt if है they जो stay there. चैंपियन है अपने रिस्पेक्टिव PMPLs के तो Speaking इस of केस में full क्या होगा circle, प्राइस मनी फॉर walking एन into the एग्जांपल fifth हैशटैग in 1 less पे than अगर 10 मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ seconds बूम now. आती है तो जो प्राइस Microboy मनी रहेगा alongside हैशटैग 1 Succeed, का only वो बूम one को vehicle मिलेगा on बट their स्लॉट side. Of नेक्स्ट all the डिजर्विंग vehicles टीम they're trying को to find, they डिस्ट्रीब्यूट land हो on जाएगा one. तो इट Two डजंट मैटर players कि have लाइक the casualty on their सीन side, क्या है got बट यस themselves a very small प्राइस मनी building भी मैटर to करती है work तो around, but टीम्स this is a काफी लोग very बोल रहे risky क्यों building खेल रही if कि they जब want to ऑलरेडी stay. क्वालिफाई One तो more प्राइस पूल के लिए खेला जा can रहा है 2.5 लाख finish off US and डॉलर flush them out छोटा मोटा easily. प्राइस पूल नहीं Ultra होता Ego है on the other सेकंडली hand, गाइस हमारा Ultra being PMPL the साउथ frontline एशिया होगा shot इसके down by बाद जो RRQ, 5 and now बजे से हम RRQ शिफ्ट कर देंगे trying इस to मैच के बाद से ओवरऑल wrap स्टैंडिंग things देखने के बाद around से the out तो corner मिलते हुए them साउथ एशिया every की स्ट्रीम single पे way 5:20 possible. वहां पे Those फर्स्ट snakes मैच giving स्टार्ट the होगा pressure out. Can they fan out? बीपी की instead of करंट Ultra लाइनअप Ego क्या है to आज के दिन पे counter फ्लूक this खेल रहा a है corner स्टोन coming out खेल from रहा the side of है RRQ. नूजी खेल रहा है Ooh, एंड okay. Altuve एक बंदे का not नाम आ रहा है interested उसको मेरे को because they don't have प्रोनाउंसिएशन नहीं Octa, आती so they ऑनेस्टली don't have the manpower to do so. So they're a little bit more interested to reposition themselves. But FaZe Clan, Empire Esports next to each other. Onzo will go down. It's going to be Fluke Nuzi. taking it down. Nuzi needs backup for him to be picked up. Should be okay, but they need to defend against other teams still rotating within the circle. इंडिया में It's बैन है all about बीजे में बैन timing. है तो Mela कैसे left खेल on रही side है of तू? FaZe. ये इंडिया Nuzi इंडिया now का being नहीं shot down from South afar. East Well, Asia. Mela take the advantage. Spot out Mela. still. One person on, not this guy. That's the reason Hashtag why one he's आना था top VP इस मैच terminator पे week 1 and keep on getting those top terminators every single week. Because how valiant it is, how much courage he actually have by himself to fight all the teams down there. Yoodo Alliance on the other hand, having such a good day, they secures 1 and make it 2 points right now. Taking those rooftop work at their best with those buggy to distract and all ruse being caused by Rebel by himself. What Boom yes, going in a class SAC fighting land, against no BTR, idea, bro. fan out the पता लगेगा बता दे। formation. Now they're trying to काफी get इंपॉर्टेंट all मैच है possible 1 kills 5 right पॉइंट now इनके from ऑलरेडी है But 4 the मैन target स्ट्रांग है being अभी तक switched कोई over and एलिमिनेशन over नहीं आया again बट जल्दी due to एलिमिनेशन the निकाल सकते lack हैं of एक focus on certain नॉक हो चुका है players. टीम They BTR का could not secure 1 yet from BTR. Well, at least they got one knockdown for Boom, and it's definitely going to be their point here. As Suave that gets taken out by Hexas, that's a confirmation. Now trying to get into the circle, BTR will look on their backs, but now we
move over to the northern side where Bacon Time VOIN as well as RRQ in the same area. But FaZe Clan, a team that's eyeing their #1 spot, got eliminated. Also there are also 7-9 coming up from the back line, so Bacon Time, they have to make सब this fast as कॉन्टिनेंट swift as टीम possible. के साथ क्लैश Putting नहीं their रहेगा bridges of डायरेक्ट smoke, but 7-9 caught in the hands of Vice from the back line. 7-9 eliminated next, while Bacon Time have to force the fight against RRQ and VOIN at the same time. Back to the playing field of the high grounds. BTR and Pmpl, Yoodo Alliance and Vampire Fluke on the other end. Vampire's only 2 players left when Rise is spotted out 3 players of Boom, but couldn't cook up the net on time because Boom shooting him from afar. There's every bullet flying left, right and center. You cannot even stand up. Yeah, the moment you stand up, you'll be shot down. Just because of the amount of teams around this area. Now, Boom, they're securing elimination points. Already 3 on their side. But for RRQ and Bacon Time, both of these teams need to bail. They're still around the area, so Potato Hill to retouch.
onto Voldemort. But it will not connect. Asa closest towards Bacon time. One nade was tossed. A second nade will be tossed after Bacon time. But Bacon time, they're moving away. Let's go. And at the same time, Vampire's got the center of a circle again. Nobody contesting them for one more time. And these teams are fighting themselves to get into the zone in the first place. So nobody's actually giving up enough attention to who's in the center right now. Box a bit too busy with with Boom and BTR, while Levy being spotted at Yummy May. Boom will gatekeep this side, but they do have BTR sharing alongside with them. That's going to be the backstab, but that's going to be the bane for Boom. If BTR decided to open fire to the side of a Boom lineup, that's going to be Box winning this one. But Levy spotted out Yummy from afar. This is going to be 200 meters apart and knocked down by PERSIJA EVOS on the other end and still in the way by Yummy. Ooh, but Yummy's job not done yet though. He has Capone right below him. Nate toss onto the smoke, but no one's there. Smoke's a diversion for Capone. But Capone's still on the outside of the circle. He has a teammate by the edge of it. Still trying to find his way into the circle still. They are on the outside. Yummy prepared for another nade. This time probably land on the Capone. Nate tossed out. BP का अलावा सब overrated है series 50% of health left against the entire Boom Esports squad. And the zone will put pressure onto him right now. Guys, it's the 5th stage and still सिर्फ 2 team eliminate हुई है. He has to make the Wow. play, he has to make the shots. Oh, Because right now they all focus on Capone. Guys, now Winnie honestly picking saying, up that nade, hoping it will level land on top देखो of it, guys. but it's a wrong angle entirely. Can Pmwi get clipped? Not even a bit. But सामने now आ रहा है भाई. it's down to Capone to hold it in, but It's- cannot मतलब hold six on much zone is longer. about Winnie, he tossed the big nade and just like Bara giving team. away his position. Didn't 37. know exactly where he's अभी standing. out हुआ है. That's it. The last of Box being eliminated at मजा आ गया 14. Same goes for SLD. 13 and 14 back to back for the Vietnam team. BTR Chen Force will be the bane for Boom. He's not being discovered just yet. But RRQ now fighting at the Legends with PERSIJA EVOS, and they have Alter Ego on the other end, and also Bacon Time on top of them at the same time. Oh, Zaxi spots out the smoke, popped up by RRQ. Tries a couple of shots there, Microboy खेल रहा है. but the hit marker isn't connecting. Lin को And हटा now दिया इसमें. Voldemort at the forefront. Microboy with the nade. This is going to be Microboy's debut today. If he can get a knockdown, if he can get an elimination to Voldemort, that will be a good one for him. But look at this. Hale Esports is out as well. Our top 3 teams are still in this though. Vampire, Boom, and Alter Ego, especially Alter Ego This and last match. Vampires, both are losing a lot of GEEK. men here. D-Ax Xavier. start to take the fight against That Knives is- with those DB-Ax working well and easily secures Oh, 3 yaar, elimination in the टूट गया hands पूरा of Vegas. Rabies. And T-Duck secures 2 for himself. Damn Rabies good just बचा finished के off the damn rest of GEEK Slate अलग ही offing. with laughing only मुश्किल damn for good VOIN. on the side of GEEK Slate. But VOIN closing in the distance. Talking about Vampires, they can get a back-to-back chicken since they are unharmed, untouchable in the center. The closest to them is going to be Bacon Time, who split it into 1-2 formation right now. Yoodo Alliance taking the most of the right side of the circle, while to the right of RRQ still fighting against Yeah, PERSIJA. khatam, PERSIJA Microboy, khatam. slither of hell remains. That Molly did not clip him just yet, but Microboy Pandari ho still sakta hai bide kuch. his time. Speaking of the inevitable, can he defy the odds? Oh, looks like the DBS Guys, gameplay PERSIJA eliminated. will answer By the that. way, OG, PERSIJA वो देखने EVOS को मिला only था 1 आपको कुछ point देर this के लिए, time. guys. It's going to be Zaxi RRQ. and, RRQ already has Microboy 8 but points, 8 ज़्यादा देर तक elimination survive नहीं points कर at पाए. least RRQ without the 8 Pico eliminations and already doing निकाल well this चुकी time है. around. But Hashtag now 10th the rank next के अंदर challenge है. is to get into the Teams are circle. playing Alter for Ego the will prize be pool. looking at Bottom them. teams are playing for the prize pool. Highest Rosemary rank, highest the prize pool. bleeding Same out, got goes himself for to the hashtag 1 eliminations. rank. Well, Fnatic, यहाँ पे PMSL के angle, slots this तो angle's PMWI का perfect. slots तो है. She just But got उसके over साथ whoever साथ यहाँ tried पे to bridge global in. slot के साथ But साथ RRQ world had those invitational के 3 साथ साथ teams prize been pool भी pulled off stake just पे है. now. Better the Straight rank, away better the prize going pool. for That's a it guys. Yoodo, क्योंकि and अभी then आपको just पता change your है rotations और into कितना the सारा circle. पैसा लगा दी है Now Alter सारी इन Ego did चीज़ों not के say ऊपर either. लाइन They अप have to बूट push कैंप सब के forward ऊपर since एंड they PMPL are में आपको ज़्यादा हार्ड मनी है outside of the blue नहीं. zone, अब जो but मनी here कैश comes है the आपका crash. इन पे But ही है. Fnatic and Alter Ego, we चैंपियनशिप know है. for a fact Meanwhile, they have been Valdemar, defending so well in the wrangle. Can they do it, and can they pull it off once Alter Ego more? Limax. Pretty much a necessary crash here for RRQ, but they don't have the numbers. बढ़िया. Fnatic will take him out. It's going to be the Finish. last man Alter now Ego for Limax, 4 RRQ. eliminations. Still on the Octa outside of भाई the circle. already The knocked and blue finished. will be on Finally top of him right Rosemary now. alive है last circles तक जो कि Next एक to plus them is 1 gonna साइन be दे रहा Bacon है. Time. I'm not sure if Bacon गलत Time to be यार. but definitely shooting towards the circle. रोजमेरी भाई मैं नहीं देख रहा भाई. मैं देखता हूँ हमेशा मर जाता है He's बेचारा down and रोजमेरी finished यार. off. 2 Alter बंदे Ego down बचे to 2 पोटैटो players, फैनेटिक. Potato and Fnatic. The fraggers, the main fraggers, both are down. Last बंदा आ रहा है Octaros RRQ का. and Rosemary Spotted है. nowhere आ to be रहा है found anymore. ओपन से. While Potato मार भी trying दी to prep up entry. the nade बढ़िया to नेड avoid है. more Splash breaching damage in, पड़ा. but he got in a slip by सही. anyway. But the response comes from ध्यान Fnatic. से, With that ध्यान से UMP जाना running low, he needs to बस. make sure every single
Spray counts. Yummy on Boom side. Got himself a couple of eliminations too. But RRQ, they are on fire. They got 9 eliminations with 1 player left. Mort, can he clutch 2v1? Oh, Bison in the hand of Potato, and now he's kind of Okay. low, and the Potato will take him out with the Bison. Now RRQ out at 9 with 9 eliminations, not too bad, but damn good. Oh no, he's low and the zone has arrived. भाई Damn good. हॉल्टरी को He should be मैक्स ही taken out. चलेगी भाई. There's no time for him to heal himself up. But he managed to slide by, but the zone is still pushing him through. And finally, Xavier will eliminate him. एक भी गई. Lamborghini bleeding out, still licking his wound after being picked up by the rest The of the team. toughest I'm not sure if they competition, can make guys. it to 8 actually टीमें pick him लाइव up, है but जिसमें they're से down to टॉप 3 six बैटल कर रही है eliminations भाई. right now, but अच्छा लगा a कॉम्पिटिशन. huge amount of Oh, भाई. bullets flying The on Savior their भी गई. side. Flying 60 in the टीमें angle, बची it's going to be guys. Hashtag boom, 8 में the Savior boom, eliminate run हुई है. and gun they go. 8 elimination and make it तीनों के 10 तीनों top with 3 4 lobby के अंदर full-man squad still बढ़िया, alive. बहुत Boom, ज़्यादा have a बढ़िया. shot at winning this. While Vampires have Fluke remains with that Oh. BDS, it won't work. But VOIN shut them down. Vampires out. Alter Ego still standing at number 1. Alter Ego there, Boom Esports there as well. Look at Boom, they have 10 elimination points in hand right now. Yoodo Alliance, once more, they will take out the members of VOIN with Flax there. And now Keenan is down. Alvar, it's going to be hard to pick up his teammate. Right now, Alvar will need to decide, does he want to go for it? Plus, he's on the outside of the circle. He got 40 seconds to decide. For Boom, they got the previous circle as their control of the circle as well, but now it's slipping away from them. They only got Raze inside of the circle for now. They're trying to dominate on the left side of the circle. While BTR Genforce has been the longest one alive by himself. While we're looking at Touch, trying to shut down by Potato, Alter Ego cannot have the freedom to spray easily because they were giving away the position. They're Pika down कब to आएगा only वापस? 2 Bro, men. Pika They're नहीं taking आएगा 2-1 formation. They took up the Oh! bait, going for Nice. Touch, and that's been 1-to-1 trade with Yoodo Alliance shooting from Let's go. behind. Alter Ego living with only 1 man, very PP low गई. HP at the same time. While Kenny of Yoodo Alliance getting 2 उसके बाद कितने मैचेस? और उसके बाद 1.5 घंटे का ब्रेक. That was almost a splat there, but Kenny matches had to बचे. stop Game that तो splat खत्म from होगा. happening. थोड़ा रमजान चले No ना, splats faster around pace in सारी this होती है. round. Yoodo Officials Alliance ने break themselves got किया है. 9 elimination Coming points to at me. this point. And now Yoodo Alliance taking out the blue as they gotta get into the circle. Alpha, nowhere to run. Niners who are happy to take the point. Kenny running low with this elimination right now. They need to figure out how to reset their ammos up because the sprays, if they Can blindly eliminate. spray, couldn't even clip and knock. Kenny running low definitely, but I didn't look not so much. He can secure those Still eliminations surviving once the being lobby. knocked भाई, down. boom के लिए जा Kenny सकती है क्या? resort to throwing those grenades to a sort of vacant time. Guys, क्या लग रहा है? Vacant boom ले time जाएगी क्या? surrounded by the hands of Yoodo Alliance, smothered by their bullets. No way out. Noise left, right, center. There's going to be a shots coming in and a nade being tossed. It's going to be the end for तो आया Bacon. इसमें. A slow death facing the inevitable death for the side of Noise. And the Starting blue में is alive even not on his side right now. Closing his side first. Noise have to go for the fight either way. Yeah, 9 Pika noise. क्यों Plus नहीं? he's Pika at the bro lower further ground, spreading so के लिए continue not कर too रहा sure है. of his chances He's there. just Yoodo getting Alliance same as well because Boom still is a full Overall, squad, assist has the focus. high ground. They are having He's control focused. of the circle as well. Unless Yoodo Alliance can pull off a GEEK slate like what they did yesterday. If not, it's going to be Boom yeah, chicken yeah, dinner. 12 eliminations in the hand of Boom with Yummy May getting a Forsangers for Hexas. Every single person pulling up their role as well as much as they can. Hexas and Yummy trying to go for a scout with Yoodo Alliance, living with 1 player, got a reset on Flax OP. VOIN, that last player, playing it as quiet as he can, will be the bane for these 2 teams, but never mind. Lapa finish off, we're down to 4v2. Can Yoodo Alliance clutches or Boom just having Boom a and Yoodo. wrap around and भाई just get boom themselves those कितना chickens? गैप लेगी Looks like भाई? they're going for 11 flanks. Kenny goes 14 down. elimination There's भाई only boom one left. क्या लग रहा है Very, गाइस? very boom का क्या likely सीन? that boom Boom close can कर finish दी this सीन. off. They're all 25, surrounding 25, Flex. 15. And Flex has Low nowhere भाई. to go. 15. It's going to be Boom Esports. Oh, Exas really, टॉप really क्या happy with भाई? this chicken ओवरऑल dinner. रैंकिंग देखना पड़ेगा. बूम ने बहुत क्लोज कर दिया इस मैच के बाद. गाइस बाय द वे 732 लोग देख रहे हो. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. दिस इज द पीएमएसएल. अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे पीएमपीएल के लिए. एक बार ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे गाइस ब्रेक है कंप्लीटली. मैंने आपको बताया जो ब्रेक आपका बहुत बड़ा है यहाँ पे, दैट इज 1.5 घंटे का ब्रेक. 60 मिनट 70-80 मिनट आपके कंप्लीट लगेंगे.
दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट ब्रेक होता है, 120-130 का। मैं आपको दिखाता हूँ अभी खुद से ब्रेक। बाकी गाइज मिलते हैं पीएमपीएल साउथ एशिया देखने के लिए। रेडी हो तो यहीं पे रहना स्ट्रीम के अंदर, कोई कहीं मत जाना। इफ रेडी हो तो जल्दी से यस लिख दो, फायर इमोट स्पैम कर दो, किस टीम को सपोर्ट करने वाले बता दो। एक बार ओवरऑल स्टैंडिंग भी आपको दिखा देंगे। क्या दिखा रहा है भाई ये? हेलो, लकी लकी है क्या कुछ? अरे अच्छा, अरे 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 अरे, हाँ 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 हाँ, यमी भाई, रिलेशनशिप रिलेशनशिप ओपन कर दिया भाई ने सबके सामने। स्पेशल भाई, देखा लोग क्रिकेट में जाके प्रपोज करते हैं, भाई ने पूरा ग्लोबल के सामने भाई, स्ट्रीम पे, ऑन स्ट्रीम यूट्यूब, 1 लाख जनता एंड हमारी 742 लोगों के सामने भाई। एई 145, बूम 111, वीपी 138। ओके, बूम कैन नॉट क्वालिफाई पीएमजीसी फाइनल्स, वीपी कैन परफॉर्म इन इंटरनेशनल। देखो क्या सीन होता है। यस आई वांट टू सी डीआरएस इन, लेट्स गो बॉयज, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। भाई ने मीनवाइल दिखा दिया है, शो कर दिया भाई। भाई ने पूरा रिलेशन, मैं सोची क्या दिखा रहा है फोटो पे, क्या दिखा रहा है, मैं कुछ तो दिख रहा है वो, कुछ तो। भाई ने रिलेशनशिप, यार रिलेशनशिप है, भाई ने पूरा पूरा ओपन कर दिया, ओपन रिलेशनशिप। ये रहा नहीं जाता। अरे यम्मी भाई, हमारे यम्मी भाई, एमवीपी, ये एमवीपी एमवीपी यम्मी। टीम पे ऐसे लगा ब्रो, ओवरऑल स्टैंडिंग अभी वैसे 5:20 इज द टाइमिंग, वेट कर लो, लगा रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई। अल्टर ईगो का रिएक्शन देखो फिर से प्लीज, अभी आएगा, टेंशन ना लो, हाइलाइट्स में टेंशन ना लो। 5 मिनट की बात है, रुक जाओ 2 मिनट सबर करो, वी आर मूविंग टू द स्ट्रीम। 5 मिनट की बात है गाइस, ओवरऑल स्टैंडिंग देखने दो एक बार, यहाँ आपको दिखा देता हूँ। जब भी चीज स्टार्ट करिए थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, पूरा देखते हैं। 5:20 पे स्टार्ट होगा भाई। आई कि ब्रो फैन फेवरेट टीम को भी वोट मिलेगा पीएमडब्ल्यूआई में क्या? रूमर्स तो है फैन फेवरेट टीम का भी, पता नहीं अब कितना सच है कितना झूठ है, पता लगेगा भाई जब सीन बनेगा आगे। तो भाई 26 पॉइंट निकाले भाई, भाई टीम ने पूरे 26 पॉइंट निकाले, बूम ने 26 पॉइंट, बहुत ज्यादा बढ़िया भाई। मोहब्बत करने वाले कम ना हो, ला 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 ला। वेर इज एसटीई ब्रो? एसटी आ रही है 2 मिनट रुको। एसटी की ग्रैंड ओपनिंग करवा रहे, डीआरएस की भी ग्रैंड ओपनिंग होगी, एसजी की भी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है हमारे चैनल पे ही। तो गाइज लेट्स गो। हाउ मेनी डेज लेफ्ट फॉर टूर्नामेंट? भाई लास्ट डे, टुडे इज द क्लोजिंग डे ब्रो। Today you will get 2 teams from PMSL and #1 team from PMPL South Asia, champion plus PMWI slot. Let's go boys. सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोको यार, 1000 लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। क्या कर रहे हो भाई, इतनी इतनी आलसीपन क्यों है? लो भाई, here we go, ओवरऑल रैंकिंग्स। ऑल्ट्रिगो एमएक्स 145, बूम बहुत बहुत गंदे वाला कमबैक कर दिया है, गंदा इन अ पॉजिटिव वे। 145 1 खोल दिया, धागे खोल दिए भाई। देन 139 पॉइंट, गाइस कोई भी ले जा सकता है, 3 ही मैचेस बचे, कोई भी ले जा सकता है। गाइस क्या लग रहा है, एई बूम और पीपी कौन ले जाएगा? वीपी के पास गंदे लेवल का, मतलब इन अ पॉजिटिव वे अच्छा एक्सपीरियंस है प्रेशर में खेलने का, देखते 3 मैचेस क्या होगा। बट इनका की प्लेयर टोनी के नहीं खेल रहा है, दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग फॉर वीपी। अगर टोनी के होता शायद अभी कुछ और सिचुएशन होती, बट क्या कर सकते हैं। शाइन लाइक डायमंड, हेल 114, ये भी अगर एक मैच में अच्छा खेल दिया जैसे बूम ने निकाला है, तो ये भी दावेदार हो सकते हैं #1 आने के। सेम फॉर शाइन लाइक डायमंड, हेल, यूडो, बेकन, फेज, बीटीआर। बहुत अब टफ रहने वाला है सीन। RRQ, गीक, पर्सिया, पर्सिया का तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल डाउन फेज आया है। सेम9 बॉक्स, द सेवियर एंड वॉइन। सो गाइस दीज आर द टॉप 16 टीम्स एंड सभी टीम्स की रैंकिंग आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। अब अपन यहाँ पे शिफ्ट करने वाले अपनी स्ट्रीम को PMPL साउथ एशिया के अंदर। सो गाइस एक्साइटेड हो? लेट्स गो, एक बार अपनी एक्साइटमेंट को जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड स्ट्रीम यहाँ पे ब्रेक है पूरा, मैंने आप जिसको बताया सभी लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रीम का यहाँ ब्रेक। लेट्स गो, मूव इनटू PMPL साउथ एशिया। लेट्स गो बॉयज, सबको बुला लिया जाए हमारी स्ट्रीम के अंदर। लेट्स गो, आने दो PMPL साउथ एशिया।
लेट्स गो बॉयज। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो साउथ एशिया में, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हियर वी गो, पीएमपीएल साउथ एशिया विजुअल्स, लाइव विजुअल्स आपकी स्ट्रीम पे आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ। हेलो एगी ब्रो, सॉरी आज लेट हो गया आने में, आज डेट पे गया था। सो ओ माय गॉड, कोई यहाँ पे डेट मना रहा है, कोई ओपन रिलेशनशिप कर रहा है, क्या चल रहा है भाई कम्युनिटी में भाई, व्हाट इज हैपनिंग ब्रो। ऑल्टर ईगो का रिएक्शन दिखाओ प्लीज। दिखाया ना एरिन भाई। ST ऑलवेज NDRS। लेट्स गो बॉयज, किसको सपोर्ट कर रहे हो इफ यू आर वाचिंग साउथ एशिया। बहुत ही टफ कंपटीशन है। फिक्सिस भाई चाय पी रहे, हम भी चाय पी रहे गाइस। क्या क्या कोइंसिडेंस है भाई। लक्सी जक्सी नहीं है क्या? लक्सी जक्सी क्यों होंगे साउथ एशिया? लक्सी जक्सी खेल रहे हैं बाय द वे, हमने देखे लक्सी जक्सी की परफॉर्मेंस देखनी है, स्ट्रीम पीछे करके देख लो। बाय द वे PMSL का ब्रेक है 70 मिनट का, तो नाउ PMPL चलेगा हमारा गाइस फुल एनर्जी के साथ। ब्रो बूम क्वालिफाइड है ना PMWI के लिए? यस। तो हियर वी गो, #1 टीम क्राउन लेके जाएगी $7,500 का प्राइस पूल। आपके रीजनल्स में कितना होता है एक बार नीचे कमेंट करके बताओ जल्दी से। मुझे समझ नहीं आ रहा है DRS को सपोर्ट करूं या I8 को। ब्रो सब दोनों को कर लो, एक ही बात है ब्रो, एक ही रीजन से दोनों को कर लो। ये बताओ इस बार न्यू चैंपियन है या ओल्ड चैंपियन है? व्हाट डू यू थिंक? एंड ये पॉइंट टेबल जिसने पूरा गेमिंग स्ट्रक्चर, गेमिंग मेटा, गेमिंग एनवायरनमेंट बदल दिया है, हार्डनेस को एक लेवल अप पहुंचा दिया है। द न्यू पॉइंट टेबल सिस्टम, जहां पे 10 पॉइंट यहाँ पे टीम लेके जाती है, जो चिकन 6 5 4 3 2 1 1 0 एंड 1 एलिमिनेशन पॉइंट। यहाँ पे डबल पॉइंट नहीं है, सेम मैट आपका है PL वाला। ऑल्सो गाइज हियर वी गो, द ओवरऑल रैंकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए। NB Esports, DRS, Stalwart Esports, 4 Miracle Vibes, Skylights Gaming, IHC, MAB, T2K, these are the top team। अगर मैं बात करूं आज के दिन पे 5 टीम के बीच में कंपटीशन जो मैं एग्जैक्टली बता चुका हूं। स्काइलाइट्स गेमिंग कल वाला मोमेंटम पकड़ लिया, एक अच्छा मैच गया वो डायरेक्टली टॉप 3 जाने वाली है। एक और अच्छा मैच गया तो वो #1 भी आ सकते हैं। तो SG का मेन आज पर्पस रहेगा कि कंसिस्टेंसी के साथ खेलना है। इवन दो जो #1 पे NB है उनका रहेगा कि हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें। DRS बहुत अच्छे फॉर्म पे है, वाइब्स अच्छे फॉर्म पे, ST अच्छे फॉर्म पे, आज के दिन पे कोई भी ले जा सकता है। बॉटम पे का इस बात करेंगे, जो बॉटम की टीम है उनको रहेगा एटलीस्ट टॉप 12 पे आना है। आपको पता है जो #12 की टीम है वो डायरेक्टली साउथ एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली है। सो साउथ एशिया चैंपियनशिप में क्वालिफाई होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूमर्स है कुछ कि साउथ एशिया चैंपियनशिप से भी PMWI का स्लॉट शायद से हो सकता है, बट ये रूमर्स ही है, ऑफिशियली आई डोंट नो अभी तक अनाउंस है कि नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए टॉप 12 इंपॉर्टेंट है। आज टीम जान लगाने वाली है #1 के लिए, टीम जान लगाने वाली है #12 के लिए। बॉटम टीम खेलने वाली है #12 के लिए फॉर श्योर। अगर आप रॉ की बात करते हो, अगर #1 की बात करें, कंपटीशन आपकी स्क्रीन के सामने। कल गाइस बहुत ही प्यारा वाला सीन देखने को मिला है हमें। डे कंपैरिजन आ रहा है यहाँ पे एवरेज स्टैट का। डे 1 पे डबल कर दिया आपने सारा सिनारियोज, अगर आप देख रहे होंगे अपनी स्काईलाइट्स गेमिंग ने कल के दिन पे बहुत ही प्यारा 3 चिकन डिनर निकाले। आज के दिन पे भी वैसा निकालती है तो टीम्स को रोक नहीं सकता कोई क्वालिफाई होने से। हर 120K वॉचिंग इन PUBG इंटू चैनल, पर हमारे चैनल पे भी करा दो कभी लाख की वॉचिंग, खुशी हो जाएगी हमको भी। करवा दो भाई प्लीज, करवा दो गाइस। क्या बोलते हो, नहीं करवाओगे? चलो कोई। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम। तो गाइज यहाँ पे स्टैट कंपैरिजन आ रहा है, यहाँ पे एवरेज कंपैरिजन डे 1 फाइनल डे 2 का। कंसिस्टेंसी जिसको आप बोलते हो आपको देखने को मिल रही होगी टीम NB स्पोर्ट्स से, एंड दे आर शोइंग व्हाई दे आर #1। तो गाइज आगे आने वाले सिनारियोज के लिए बी रेडी गाइज।
नेपाली वाला स्ट्रीम देखो ना ब्रो, नेपाली वाला स्ट्रीम पे पता है काफी हमारी इंडियन ऑडियंस भी है, काफी लाइक इंग्लिश ऑडियंस है, सो उनको ना थोड़ा सा वो रहता है कि भाई समझ रहे हो, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर रहता है, तो उस वजह से इंग्लिश है कि सबको समझ आ जाए कॉमनली वाला, सो इस वजह से वैसे करने में कोई इशू नहीं है, बीच में आपको पता है खराबी आती रहती है, तो हम वही शिफ्ट करते हैं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो आप। एसटीएनडीआर इज क्लोज टू हर्ट, यस ब्रो। एसजी का आइजल, अरे एसजी का आइजल ब्रो, माफिया निंजा भाई, माफिया निंजा दी जॉट, आइजल आइजल साहब भाई, नेपाली लगाओ, उनकी कास्टिंग अच्छी होती है, इंग्लिश में पता नहीं आता। अरे अरे डेक्स भाई, ठीक है लगा देंगे लास्ट, देखो लास्ट में, अगर लास्ट के टाइम पे ऐसा सीन, लास्ट के टाइम पे शिफ्ट करेंगे एनबी नेपाली अपनी कास्टिंग को, ठीक है। फिक्सिस भाई की कास्टिंग हो रही है यार, फिक्सिस भाई है यार, आओ फुल बुम बम भाई, भाई ओपी इन द चैट, फिक्सिस भाई है भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई, फिक्सिस भाई ऑन द पैनल, कास्टिंग पैनल, ऑन दी जॉट, यो ब्रो सौगात भाई। लो भाई, आज का दिन 6 मैचेस, 2 इरेंगल, 2 मिरामार, 2 शैनॉक, एंड आपको मिल जाएगा चैंपियन आज के लास्ट के दिन के अंदर। सो क्या लग रहा है कौन चैंपियन बनेगा, वो भी एक बार कमेंट करके बता देना, आपके व्यूज, जो भी आपके सिनारियोज हैं, जो भी आपको लगता है सिनारियोज, कमेंट करके बता देना। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी नजर। ब्रो नेपाल मुझे भी समझ नहीं आती, लेकिन हाइप ज्यादा होती। डेक्स भाई ठीक है, नेक्स्ट मैच में फॉर श्योर, नेक्स्ट मैच में अपन फुल फुल बमबाजी करेंगे, ठीक है फॉर श्योर। डेक्स भाई आपने बोल दिया, आपकी बात को याद रखा जाएगा, फॉर श्योर नेक्स्ट मैच में फिर अपन शिफ्ट कर लेंगे, कोई टेंशन की बात थोड़ी ना है। ऑल्सो गाइज, जो भी नए लोग हो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जल्दी से लिंक शेयर कर दो अपने दोस्तों को, यारों को, वीरों को, सबको सबको बता दो कि वी आर लाइव, प्लीज गाइज शेयर लिंक। आई वांट यार, लास्ट डे है आज, ज्यादा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आज के दिन पे, आज हम फुल एफर्ट लगा रहे हैं, लाइक आज फुल थके हुए बट एफर्ट फुल है हमारे, सो इस चीज के लिए इतना सा काम कर दीजिए, सबको बता दीजिए, पीएमपीएल साउथ एशिया योगी गेमर इज लाइव, शेयर कर दीजिए सबको। मोहब्बत करने वाले कम न, माफिन ऑफ एसजी, यस नॉट एसजी, आई थिंक आपका ऑटो करेक्ट थोड़ा सा कम होगा। भाई पीका ने एसटी लीव क्यों करा, अरे लीव नहीं करा है, टीम का पार्टी है, ही इज द असिस्टेंट कोच, बट वो अपना उस पे पढ़ाई पे, करियर पे स्टडी कर रहा है ना, पर ब्रो करियर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ला ला ला, मैच स्टार्ट होने वाला है बाय द वे 2 मिनट के अंदर, 5:20 इज द टाइमिंग, मिनट लेफ्ट फॉर द फर्स्ट मैच। आने दो जल्दी से, आने दो। लो गाइस, प्लेयर्स आर रेडी, पानी पिया जा रहा है, लेट्स गो, सारी टीम्स के प्लेयर देख लो, प्रेशर दिख रहा है चेहरे पे। लव यू जिंदगी, लो भाई फर्स्ट मैच आपका स्टार्ट। प्रेशर दिख रहा है, आइए सेगी भाई मॉड बना दो, मेडेलिया तो बना देंगे, हुसैन ऑफिशियल से ज्यादा CR7 की वॉचिंग में होती है नेपाल में वॉचिंग, यस सिस्टम ऑफ डाउन CR7 हो रहा इज द जॉट, जॉट जॉट ब्रो, CR7 हो रहा भाई हमारे, मैंने बोला ना वन ऑफ द फेमस क्रिएटर फ्रॉम द नेपाल। साउंड लो,
looking for that साउंड उठा दिया contestation of the top spot in the overall leaderboard, and if the circle goes towards the side of Los Leones, well, I8 they are going to be very आहा happy. But the chances are very slim because उठा दिया time and भाई time उठा again दिया we have been having चलो either भाई a आने दो circle आने towards दो the northern side or a circle towards लेट्स गो Chumasera, where 4MV 4MV लेट्स गो dropped in. So this time, really hope लेट्स something गो different comes ST in. Now लेट्स coming गो southern TRS eastern लेट्स circle, गो NB even the players of TRZ, they लेट्स need गो some SG points. लेट्स गो And if that लाइट happens, I पाथ think a प्योर southern 2 से eastern गया है circle is गाइस something TRZ should be ओ माय hoping for. गॉड But at जोन least, अगेन okay, it's जोन somewhere के close to शिफ्ट्स southern east. I'm happy. I'll take this, right? I wanted a Los Leones zone. I've gotten one. And this sort of kind of opens up to a lot of possibilities, right? There's still, Picardo, Hills in contention. Then you've got the areas of Minach and Alice आने or दो आने Lavendita, दो where we've seen those circles take those shifts. There have been those rare occurrences where we kind of witness the circle going a little southeast of Chumasera over the hills. And that is going to be a treat for all our viewers. But as of now, it's going to be the usual, drops for all these teams. For Medical Vibes, they've dropped down directly a steep drop for them, and I think they're going to make their way towards Chumasera pretty much sooner or later. And Raw, Yeta Utas, Odi, these boys, yesterday, the final game was something to be remembering, something that was worth remembering, right? And today, I'm going to expect nothing less from them. I just want to see them go all out, engage in those fights. You never know, one step at a time, and if they keep on hitting, there will be a point where they might succeed, right? Where they might pose a threat. But if they kind of fluster up in the first 3 games, then the chances of making it to the SSE is pretty much done and dusted. Chances are that they won't be able to qualify because this day is so very pivotal for all Okay, the guys. teams who are on the bottom, like Seal Esports, TRZ, especially the plus of Raw officials, because Raw दक दक officials हो रहा है भाई they टेंशन ना need लो too many points. There are 25 points deficit from the team sitting on the 12th spot. That is going to be Sitim. So they need too many points. They need to replicate the same performance. Yes, yesterday we did see a fantastic performance from the side of Yeta Uta. In fact, Yeta Uta was a guy who was performing really good even in the league plays from the side of Raw officials. On day number 1, there was a certain dip in his performance. He was taken out pretty early in the game. That is why Raw lads was struggling a little bit on day 1. But finally, Yeta Uta was able to find those initial openings onto the opponent, and that is where Raw capitalized. Now they have to be so very cautious. The split that is coming from their side, 2+, so close to the plus of 4MB. So Raw, they need to be a bit cautious right now. But IHC, talking about this team also, yesterday they did have a very good game in the one of the Senok. But other than that, I think IHC were also missing yesterday. Yeah, I think IHC, they kind of engaged in a lot of Ayugi unwanted sir, how fights, right? many They were top forcing a lot will of fights, qualify and की टीम यार eventually हैशटैग there में were टीम ने teams जाना है और that आज could मेरे को एक चीज just बहुत अच्छी take them लगी down कल हमने there. अपने लाइव में भी बोला And था आज that हमको Sano लाइव game, if you रैंकिंग remember, पॉइंट्स भी right? दिखाए They जा were रहे हैं doing जो कि so मेरे को good. काफी They अच्छी kind of चीज लगी है wiped बस out ऐसे ही लाइव for दिखाते रहे Medical मजा ये Vibes, चीज ना and then थोड़ा they बढ़िया decided to रहता है go साथ after साथ Kunyoti तो as थोड़ा well. अलग And इम्पैक्ट we पड़ता है saw मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया what लगती है happened to them and ऐसे how चैंपियनशिप्स कब easily से ब्रो they were डेट kind of ऑफिशियल ने destroyed 27th there ऑफ over there. अप्रैल And की it दी was थी Degree एंड who did majority of the damage out there. So that's definitely one thing that IHC really needs to watch out for. In fact, instead of being the aggressors, just hold a good point and just try to defend with all your might, and that might yield them some good results. Because considering how they were playing in the first day, I felt like yes, this is a team that could contest for the top 3, but they kind of have lost their grasp out of the top 3, right? So today is the day where they have to again, kind of start afresh, again start building up those points and take fights in which they can control the situation. Another one of those instances was I think the map of Miramar, the second one where they decided to barge in on T2K, and we all saw what Jane did to them and what happened, what followed suit. It was DRS, it was Skylights Gaming, from the backlines for Medical Vibes, so many teams. I mean, I kind of love the love actions like that. But right now, who we have in front of us is Team Star Wars Esports, a team that a lot of people thought would have no difficulties एसटी winning काफी this ज्यादा आज tournament. का दिन But इंपॉर्टेंट रहने वाला yes, है in the early stages they were looking really sound. गाइस But मेरा थोड़ा सा गला in बैठ the गया grand finals, ज्यादा ही एनर्जी हमने लगा दी है hasn't they सॉरी फॉर दैट haven't थोड़ा पानी really पूनी पी opened लेता up, हूँ ना right? थोड़ा सा Every एनर्जी single को थोड़ा time we रिवाइव see, कर लेता हूँ they've दिस win टाइम a इट few कुड बी द early लैंड fights, and चैंपियनशिप then अकॉर्डिंग टू while मजा आ transitioning, जाएगा it's अगर been होगा तो the same old story all over again. They lose out on 2 of the players and they have nothing to fight for.
I think we finally saw Starwood Esports a decent performance in the final game of Erangel. Then they decided to push in on Raw, for which they were so well prepared and fended them off. Yeah, but that tends to happen, Pixels. When you're the top team in the league plays, you have so many matches here in your hands. Even if you try to bring something out of the box, your opponents, not just one, all the teams in the lobby are reading you. Their analysts, their coaches are reading onto your strategies. They are coming with the counter strat, and that is something that is going to come and bite you in the back in the grand finals. That could be the reason where 4MV and Stalwart Esports were struggling a little bit on day number one. 4MV finally they have recovered. They are capitalizing on those elimination points. They have चलो started भाई, getting those chicken लियो winners. लियो ने But काफी अच्छा in league परफॉर्मेंस plays, दिखाया था it was स्टार्टिंग ऑफ द Elimintrix. टूर्नामेंट That में। was अभी अगर a आप देखते हो हैशटैग team 11 that में became an आपका ugly रैंक thorn अभी for the चल players of रहा है। 4MV. And this time looks like it अगर is the मैं players बात of करूं यहाँ पे IHC, because it's not just one or two times. So रैंकिंग, many चलो times we have रैंकिंग seen ठीक है, IHC and हैशटैग 4MV 11 पे है go up against 101 each पॉइंट के other, साथ, or बट मेन actually गोल आज 4MV रहने वाला है लियो, barging into the bounce of SITM, डेड IHC आई time गाइस, and time again. TRZ, Where और मैं IHC, they have एब्सोल्युटली always आपको been ऑन पॉइंट prepared. बता They were चुका हूँ anticipating kind of चैंपियनशिप्स, the players of क्योंकि 4MV. गाइस चैंपियनशिप So का yeah, that आपको is मानना something also पड़ेगा। that you मैं need to आपको work अभी on. But पहले से talking बता about other देता हूँ, teams, Leo Esports, this is a team that stepped up वेटेज big भी time रहेगा प्राइस yesterday. They पूल got a का, chicken dinner for और रीजन वाइज themselves बता in रहा one हूँ, of the वो Erangel. आपको In the देखने second को set ज्यादा off, they मिलने came वाला है so very close where the चैंपियनशिप्स के अंदर। players of Skylers game. They आगे got आने the वाला chicken dinner, टाइम but जो है, still, they जो had very चैंपियनशिप decent विल बी amount of द elimination points प्राइमरी in their थिंग फॉर hands. द प्राइस They पूल। came on the second spot. So रीजनल्स Leo की मैं बात Esports कर रहा are हूँ, सो also चैंपियनशिप में क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है amping up their 12 टीम ही है gameplay जो day by day. चैंपियनशिप क्वालिफाई Yeah, I करेगी। think तो Leo यहाँ पे हर Esports एक is a टीम जो squad बॉटम पे that चल रही है, has, उनकी एक अलग रेस चल रही है 12 पे आने had के a लिए। better तो grasp आपका compared to कंपटीशन अलग the है। remainder of the मिड टेबल teams, चार्ट बीच में barring स्ट्रगल the top कर रहा होगा, order सोच teams, रहा the होगा कि the teams that are in the समझ top रहे हो सीन। अगर अच्छा order खेल गया echelon. ना मिड So टेबल I चार्ट, मैं think आपको I've गारंटीड really लिख के liked दे रहा how हूँ they've been कि वो भी playing टॉप पे आ lately, how सकता है they've been कॉम्पिटिशन। progressing और ये over वर्ल्ड time, ऑफ and अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, get हमारी a few टैग chicken लाइन है dinners, जो and हमने यहाँ पे they're खुद quite बनाई है comfortable also at the अपने spot उस they're पे। holding on. इस पे मैं So अपना वो right ट्रेडमार्क now, बोलते what हैं ना, their ट्रेडमार्क भी लगा immediate दूंगा। objective will तो be, of course, to kind of वर्ल्ड make ऑफ sure that they're अनप्रिडिक्टेबिलिटी हम getting शुरू into से ही SSE, बोलते हैं, सो because जस्ट वेट एंड you know, वॉच। the लास्ट kind मैच of के battle लास्ट that is मोमेंट तक brewing in किसी the पे top भी four, कुछ I think somebody needs to really rack up at अ, least that 20 points or क्या नाम 25 points मैं क्या advantage बोल रहा था, in the एंड जो first हेट 3 वाला games, सीन है, because if they मॉडरेटर्स do मेरे को not, बता दो कौन in the कौन final मॉडरेटर 3, अभी we एक्टिव will है, नहीं see तो the मैं डायरेक्ट teams हाइड ही at देने the वाला हूँ, bottom मेरे से half ज्यादा of the संभाला table. नहीं जाएगा They kind of कि मैं start वार्निंग to दूं, get टाइम a आउट दूं। little जो more हेट फैला रहा है, aggressive, so प्लीज they मॉडरेटर do भी not एक्टिव हो, hesitate मेरे को in बता taking देना those जो एक्टिव है, fights, अगर आप and नहीं देख सकते at हो time they can तो be मैं really डायरेक्टली हाइड दे दूंगा। dangerous. कल भी मैंने And दिया है, this is one of the ओहो circle shifts that व्हाट अ I जोन, said, ये one of the तड़का rather uncommon rare टफनेस, occurrences where it kind of टफनेस में ये tends to go a तड़का little जोन ने down लगा south, दिया। and ओ Raw भाई have the optimum control हाँ, over the map as of now. All they've got to do is find भाई a good hill to find cover and just sit there, watch all these teams rotate, watch everybody fighting around them, and replicate something like भाई what they भाई did भाई in टफनेस Erangel में yesterday. तड़का I'm not asking for a chicken अंग dinner, अंग बढ़ गया but भाई। if they can use the altitude to their favor, if they can get a few more kills here and there, and kind of end with 10 12 elim points, and then maybe get a second or third spot, and if they can continue doing that, Shadow, कल का रॉ then का मैच their अच्छा गया है chances बाय द of वे। making it to the SE championship will be real. 100% agreed, because look अगर at मैं Sitim गलत नहीं तो Esports. They are पैरिस की coming from the तैयारी है, northern front, and so many सर्कल का rotations are happening. So for Sitim, 1 2 this 3 game is not going to be that easy. On the other side, Raw officials, like you said, they do have a देखते हैं। position advantage, circle advantage, and only 25 points deficit. Meanwhile, One chicken dinner, they T2K can and cover up Leo, that distance. But right now, we लेट्स have गो a fight बॉयज। breaking in T2K between the players of मोमेंटम T2K एक and जो Leo है कैरी Esports, ऑन where नहीं हो Mr. पाया है Smokey is T2K का, ready होप सो with a आज के grenade, दिन पे but उनका जो he's not मोमेंटम going है to find कैरी any आउट sort हो of जाए। connection. On the other side, we have लियो Jane and Siok. काफी अच्छी टीम है, काफी अच्छा Grenades are परफॉर्म coming कर रहा to है। and दामी fro, भाई and द मेन गाय perfect फ्रॉम one द on लियो high इज Dami. नॉक्ड। Jane brings in T2K and 4 knocks मैन it down. स्टॉक, Now रिकपात Leo, जी they are down to 2 वैकेंटे men, and स्मोकी Mr. को Smokey भी यहाँ also पे goes नॉक down, दिया है leaving संदेश the भाई ने। Liquid and Sus संदेश all भाई by डूइंग himself. सम Instant ग्रेट confirmation थिंग्स। on Mr. Smokey. Now the numbers are बैकफुट not पे favoring टीम the case लियो of Leo, but करंटली T2K, they are लिक्विड looking एक so कंपाउंड के aggressive. अंदर Yeah, एंड I सेकंड like what they're कंपाउंड doing. के They've अंदर kind of लियो completely का isolated सस Liquid, and they can make a प्रेशर। push at his direction. Oh There you go, nice pushing in liquid, tandem. Liquid still holding out on his own, has managed to get a few knocks here and there, and now Suyoga will have to chime in. It's gonna be Sussex,
Sussex, the last player surviving as T2K, making sure that they do not suffer No. more casualties. But Sussex decides to be the Oh, aggressor, but oh. Suyog was so well prepared. So नाइस it was लियो the एंटी hunters who went out for T2 hunting के and eventually एक टाइम just को मुझे ऐसा लगा बस became the खत्म हो गया hunted, सीन right? और गाइस Because एक T2K, they were just में अगर with ये 2 फाइट होती players, and the cavalry थर्ड पार्टी arrived कर really quickly. तो And courtesy to PMSL जो Jade सी with लीग that आप देख रहे grenade हो वहां on पे भी आपने देखा Haitami, होगा इस that's टाइम पे where थर्ड पार्टी things हो जाती है started going अगर आपने south. नोट
कराओ Leo Esports, and ये we were सीन है just जो praising लाइक Leo Esports, how अगर मैं they क्यू have बारे में बात developed, how करूँ they've वहाँ पे evolved as टीम a ना team, ढूंढती है and this is what थर्ड happens. This पार्टीज is the ढूंढने के लिए only क्योंकि वहाँ reason, डबल पॉइंट है Shadow, that पीएल में I ये refrain ये फर्क है from making any sort of अगर predictions. गलती से अगर It's ग्लोबल so पे भी very डबल पॉइंट difficult का because all सिस्टम आ these जाता है teams are so तो आपको यहाँ capable. पे भी Even the ऐसी players of T2K, इंस्टेंट they are थर्ड पार्टी 37 देखने को points मिलती है देन deficit टीम ना from the top ढूंढ रही होगी spot. टीम्स को And कौन कहाँ पर okay, है let's face it, T2 it's के ने not so बहुत easy ज्यादा to बढ़िया cover सीन it बना up. लिया है They can still increase नेक्स्ट their जोन bank एंड balance यस by coming in the डीआरएस top सेम 5. थिंग करी Right मैं now, जो they are सोच in the रहा था epicenter. पीछे से घूम के Perfect रोटेशंस synergy came in when they were pushing onto the बट players of Leo आईएचसी भी Esports. सेम They मेंटेलिटी वाली टीम were है इस there जोन के अकॉर्डिंग like a खेलने pack के of लिए एंड wolves जोन hunting अगर the players आता of Leo आए हाय Esports. हाय हाय Perfect हाय grenades were जोन coming in. The moment they तड़का लगा realized, रहा भाई yo, जोन they पूरा don't का have the पूरा numbers, इस they just मैच के bash अंदर into their आई एम compound, एक्साइटेड टू सी taking down सुक्स Liquid and रोटेशंस then इन such. फाइनल मजा But आएगा we ब्रो have फाइनल में another देखेंगे fight that रोटेशन might potentially break in between the players of Skylers Gaming and 4MV, because Skylers, they're trying to move in from the Westy western won't front, qualify and the today. players of 4MV, There they any do have a chances certain left height them to qualify advantage, for PMWI? and they can spot the Hatu players of भाई Skylers Gaming. शायद So Skylers, they चैंपियनशिप need to be शायद a नॉट bit ऑफिशियली alert बट and एक cautious चांस at बोल this सकते हैं point. क्योंकि अदर Oh रीजन्स yeah, I में think गेन चांस they will have to be, and at this point, Skylights Gaming, a lot of eyes are gonna be on them, and especially the worst possible opponent that they can imagine right now for Medical Vibes. They are keeping an eye on them, and that's gonna be a little bit of a tough task. How do they make it successfully inside the circle, especially when they're kind of pushing in from the western side? And this was sort of anticipated. Nima goes falling down. And that is not where their woes end, right? You've also got NT Esports in the nearby vicinity. And with East getting that second knock, I think for Medical Vibes, we all know what they're up to right now. They would instantly want to get in and just try to inch the gap a little bit closer. But Skylights Gaming making no delay over here, just trying to apply that extra bit of pressure on for Medical Vibes so that they can get the rest back at the very least. But no, वोटिंग भी things have होती gotten है completely यस मेरे भाई वोटिंग भी topsy-turvy for होती है them as another वोटिंग one का बट goes सीन falling कुछ down, कंफर्म bites नहीं the करा ना dust ऑफिशियल ने as इस बार AJ चीजें अननोन still रखी यार somehow देखो managing ऑफिशियल to को भी buy हाइप some बनानी time, है but not at टूर्नामेंट the की best of well HP. as that Does not have meanwhile enough time not to a good heal thing himself and find some cover. SG In and fact, 4MV administers दोनों that टॉप की first टीम hit, है and मेरे you को can ये see चीज देखते हुए Nima, बिल्कुल he's खुशी नहीं होगी already यार decided to अर्ली escape, स्टेज ऑफ द and he सर्कल पे wants to कि go दो on to save his life टॉप की because टीम बैटल AJ कर रही है seems रैंकिंग like he's लाइव a रैंकिंग lost आपकी cause over स्क्रीन there, सामने आ stuck रही है all क्यू by में his बोल रहा हूँ lonesome एक as हैशटैग Doc, 5 पे एक just हैशटैग trying to 4 के drive ऊपर है around with his monster truck, searching दोनों for नॉक है AJ's यार whereabouts as No Fear and Mafia Ninja, they lie in vain, just yelling, screaming in pain, but nobody to hear them out. But हेलो टॉप भाई AJ, क्या हाल if he चाल can buy a little और bit दे more देगी भाई time, मैनिक भाई रुको सबर करो maybe could force out a revival, but that does not seem बेसिकली क्यों possible anymore नहीं because भाई Talk करियर and Least फोकस have already नो decided to फियर go for the फिनिश push. माफिया निंजा फिनिश No, it was impossible to save Not the a good players of thing. Skylers Gaming right now, but right now 4MV नाइस looks like एनबी they बोले are also रुको in the जरा process सबर of करो Nima. डॉग At the भाई same time, NB डॉग भाई Esports बचाना set जरूरी with a perfect mini ओ shot आइडियल straight from one सब player from the side of 4MV, विद द and हाईएस्ट that is एलिमिनेशन not just इज a नॉक्ड एंड फिनिश्ड normal बीटी यहाँ पे player that was 4MV को dropped भी the हुई है Grenadier. He हैशटैग has been थर्ड पे eliminated. आ चुकी है 4MV 4MV left गाइस with only 3 मीनवाइल players on the लाइव other side. We रैंकिंग have के अकॉर्डिंग TRC breaking fight with the players of STE IHC, हैशटैग where 4 के Nitin with अंदर his grenades is looking for some kind of an opening, but no connection whatsoever. IHC On the other side, does IHC, it they are ready with those buggies, trying to lure the players out of the cover area, get to know about their position, and one of the player, Alex, he received hefty damage from that grenade. TRZ battling for they're hashtag kind of 12 opting for South that Asia bait and Championship switch, qualification strat, के लिए hoping TRZ somebody fight just कर gets रही है यहाँ out of पे their position IHC and fighting tries to for shoot the at their comeback direction, that and momentum the ones हमको पता providing है cover IHC ने करके would दिखाया इससे पहले get भी the लास्ट knock मैचेस में instead. उन्होंने जो But डोमिनेशन बचाते थे TRZ आगे उनके exercising TRZ है extreme उस caution डोमिनेशन over को there. शुरू करने Mamba, के you लिए could see, मोमेंटम just trying पकड़ने to के defend लिए the needle, just TRZ trying to एंड spot TRZ के a आगे little bit है of those IHC pixels अगर and उनको maybe साउथ then एशिया take a few चैंपियनशिप shots जाना here है and there. Does not have any grenades, and Hattie had a few utils that she could have used, could have at least applied a little bit of pressure on IHC. IHC understand the gravity of situation. Now again, trying to force this fight, getting a little close and personal onto Degree. Degree hides in that little shroud of smoke, and now Zyol decides to attack in. And with that, Skarl just goes spraying down, hoping a shot would connect, eventually wanting to drive over, but he finally, Zyol finds a knock as Godless charges in, and there you can see somehow Kunyo TRZ, they are holding with all their might
that they have. As you can see, Red is the final player surviving as Demo. He's got to somehow protect his team, get Cordless back on his toes, which is not going to happen. IHC as वाले Kunio TRZ has क्लस्टर managed to में get that rest खेलते back हैं. on Mamba. IHC As now वाले it has all fallen थोड़ा सा down सुक वाला towards रोटेशन Demo, देते हैं. where he's got to pick a रोटेशन fight के against अकॉर्डिंग to वो क्लस्टर Red. भी He's लाइक been जैसे taking a few कहाँ से damage फ्लाइट बात बना कहाँ क्लस्टर right बन at that सकता है कहाँ position, सेंट्रीज वो but फोकस करते हैं. eventually मीनवाइल मैडकाइट somehow लास्ट गाय बचा है गाइस. succeeding TRZ, managing to keep their players alive. रेस्ट ऑफ द in डाउन fact, IHC भी rather स्टेबल हो hoping रही that है. they could get जियोल a को few फिनिश more करेंगे तो revivals, दिक्कत as होगा. मेन Alex गाय is जियोल trying है. to डेमो impart as ट्राइंग much इज बेस्ट. information हील as लगाई जा possible रही है. as एंड हियर वी they're गो TRZ deciding गॉट to, एलिमिनेटेड kind of बाय टीम administer that first hit, IHC. and दो प्लेयर Demo नॉक्ड है. takes it जियोल को as a बचाना बहुत golden इंपॉर्टेंट. आपको opportunity पता है गन पावर and एंड दोनों takes के him दोनों out जो of बेस्ट the प्लेयर है गन picture. पावर के But अंदर. at this point, अगर IHC आप देखोगे really यहाँ need to पे get, जियोल the players back एंडुआ alive, which I don't think एलेक्स is भी gonna एंडुआ happen, अब गन पावर as पे IHC did manage to win the fight, सर but सिर्फ at the सोलो cost मैन of 3 बचा है. of their एक players. मोमेंटम जो चाहिए था IHC को True, सिंगल three मैन crucial वहां players तक have लेके been जाएंगे. lost मीनवाइल to the किलर side of वाइटी IHC, but on the SITM other डुबू side, को we नॉक have the द players टॉप sitting आपकी स्क्रीन in के close सामने. proximity to see एजिस where पे इनका Tox is एग्जीक्यूशन also मेनली एजिस lurking से ही रहता है nearby. एंड सेम So एग्जीक्यूशन हमको Standards, they देखने are को मिल also रहा है. in बट the जोन picture, but still, they are looking जोन confident as Rock is जोन so very बहुत close to the ही process ज्यादा where one player is bleeding खराब है. out. The वाले revival जोन मुझे should बिल्कुल be पसंद made नहीं है. मैंने because आपको ऑलरेडी QB बोल रखा है. is कल भी मैंने already आपको nearby बताया था. Dobu. So there is no problem in the revival, but on the other side we have high voltage and Starlet Esports, and looks like action. He has already Assassin spotted bhai. an assassin over there thanks to that Top buggy. And with that M416, he was trying to deliver some kind of a सऊदी death लीग देख रहे हो? towards him, but नहीं no रॉफ भाई अभी damage नहीं देखा. whatsoever, ऑनेस्टली but बता रहा हूँ Zodi आपको नहीं देखा. with ओ a जोट burst है of भाई. a perfect grenade Nice, comes woof. in and takes down Woof is over there, leaving It, Nova X हुआ. all by himself. Multiple grenades Raw के coming लिए in, बहुत looking for the important मैच confirmation. है. Now Zodi. He has no I idea already about the told you position guys, of Raw Nova X, but where is bottom the पे backup? already Where are and the cavalry? they Where knew is कितना Sky important ये Fire मैच Fire होगा and उनको Nova X चैंपियनशिप trying to take क्वालिफिकेशन down के the लिए. players आइए from Raw official. Can he take down Kancha? Surviving on a sliver of HP. Nova I भाई think पे he full can. pressure. He managed to burst down that vehicle, but Kancha is I ready think to Nova भाई grenade on knock. his own. And this time Nova X needs to be very cautious. Yes, आइए Whereas on early the other side, elimination. Uta comes in and takes down Sky. Raw And doing Zodi takes down Nova top. X. I8 in a कल blink उन्होंने of लास्ट मैच eye, चिकन निकाला था having अगर आपको पता annihilated होगा. from the lobby. Yeah, this is exactly the Raw officials that we wanted to see, and I really liked how Kancha just posed a lot of pressure on the final player of I8 Don't- over there. I मेरे को kind of मनी liked पहना how है, he just sorry. got that monster truck right on his face and अच्छा दिखता kind है. of drove all that attention towards him, while his teammates kind of took the opportunity and finally just put him down for good. As the circle sort of takes that shift, T2K in a really promising GEEK, position. Right behind them, they find the players GEEK, of SEA Esports. GEEK. Mapitex, day number 2 was kind of a silent affair DRS का from बहुत their जल्दी फाइट side. होने वाला Did है. not see a lot happening, and they'd be rather hoping that Komet Day ऐसा 3 टीम बाहर हो they जाए बस वो find मिरामार some में good आइए के position साथ points, ड्रॉप but it's क्लैश going to be कर. difficult, especially कर. with DRS right Hey bro. beside you, and DRS they're showing some other intent. When They is spotted PL out Grand Yeta Finals bro? who was PEL out Grand of Finals cover आपके and रहने वाले managed हैं. to आपका easily pick him off. Now this is Grand where Finals आपके Raw रहने वाले really हैं. need to just cut Finals down on their 19th of losses April. देखो and तुमको move बता के ahead, मैं भूल because गया. By the way committing guys, for Yeta 740 that's and gonna be 48 really लोग देख रहे हैं expensive live considering अभी के ERS टाइम पे. have So make sure to constantly hit the kept an like open to eye stream at their and players, also but make sure to Mapitex, subscribe to the channel guys, this as is a we are squad that very could very very potentially very pose close a to threat. 56.2 के Killer subscriber. or Gyante, if सिर्फ they're 9 not paying subscribers हमको attention चाहिए guys. towards 9 their subscriber. backlines, सारे they एक could साथ be in a दबा whole दो. world of trouble. एंड जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, यू आर द लकीस्ट. 200वे सब्सक्राइबर, 56,200वे सब्सक्राइबर्स हो. सारे एक साथ गाइस, एक साथ दबा दो सब्सक्राइब बटन. जो भी स्ट्रीम देख रहे हैं, लाइक भी एक साथ दबा दो क्योंकि हमारे 1000 लाइक भी होने वाले. शगुन के गाइस 200 करवा दो. By fighting those bullets, Meanwhile, he has grabbed the let's attention focus of to Happy's DRS. जैसा Esports, हमने आपको from बोला था, uphill, QEON Leo होने has वाला है taken बहुत ही 50 जल्दी HP according out to of the Delta. positioning. Now DRS, they have to be things. very cautious. Yes, they do have those buggies for the little bit of the hard cover, but they don't have the There are perfect teams, position guys. where his This is the teammate, lobby. I think Rules is Same already thing जो मैं closing आपको in the बोला था distance, PMSL के टाइम trying पे, to go same in thing a आपको यहाँ range पे where he देखने को can मिल रही है. lob those perfect अभी के grenades to टाइम find पे some sort of connection इट्स and अबाउट knock 5th on सर्कल Mapitex क्लोज इन होने Esports. वाला है. 13 Now टीम्स he's अलाइव है. going to change his 41 mind. He's मेंबर्स going to टोटल stick with बचे his हुए हैं. teammates. On एपेक्स the other डॉग side, को who will अर्ली he यहाँ पे take? एलिमिनेट Look करा at था him. एनबी स्पोर्ट्स High ने. voltage, they have असासियन no फिनिश idea निकालने का where मौका he's coming यहाँ पे from. एपेक्स के
के पास लोकेशन नहीं पता है, मलिक भी नॉक हुआ। नाउ प्रवीण नोज बेटर कि यहाँ पे कोई प्लेयर है। 2 men डाउन HV। पॉली कंफर्मेशन के लिए मलिक को एक किल यहाँ से निकाला एपेक्स ने। close proximity to high Oh. voltage and assassin
And Malik were not really hoping कॉल for गई those है early एपेक्स की knocks on प्लेयर their को, players. प्लेयर Now, मार्चिंग Praveen करना just स्टार्ट कर hiding चुके inside हैं. that murky प्लेयर्स smoke नोज बेटर jiggle. कि उनका In एक turn, प्लेयर अर्ली wants to नॉक get हुआ है. that rest back प्लेयर्स up नोज बेटर कि उनका यहाँ पे एक और जो quickly प्लेयर है, ASAP. यहाँ पे उसने But नॉक एंड will फिनिश that कर happen? दिया. हाई Indeed वोल्ट इज it नॉट इन गुड does, as सिचुएशन. Jiggle रिफ्यूज ने gets बनाया यहाँ पे spotted out एंगल, by एंड Regus, forms a प्रवीण को भी different यहाँ angle पे and नॉक finds दिया. two. As high और voltage one after MV the other, they're getting melted down as Assassin, the solo survivor remaining. भाई What can he साहब. do? Can he pull off a miracle? And in fact goes after Apex, who goes for a drive. एंड आई गेस by, T2 just के trying to अर्ली lure जो him टीम out वाइप of his करा था cover, 4 and एलिमिनेशन के बाद, अभी successfully तक जो Pmerical जोन पर Vibes है, have managed to आगे का सिचुएशन eliminate, क्या बनता the है. बट likes of T2 high के voltage अगर इस and, मैच से मोमेंटम आ Refuse जाता है तो also T2 के भी will एक वन ऑफ द survive. स्ट्रॉन्गेस्ट And टीम East कॉम्पिटिटर has sort of, बन been the सकती one है. who's लेट्स सी been इस मैच से कितना delivering पॉइंट those वो निकाल के devastating जाते killer हैं. blows स्टिल and been getting 37 those initial, प्लेयर्स few एंड द knocks, just 11 टीम propelling the स्टिल इन players द लॉबी of गाइस. Pmerical Vibes आप to देख kind रहे हो of, सिचुएशन get the सीन के remainder of अंदर. the players. एसजी So का जो स्टार्टिंग में Stalwart, ब्लंडर they हुआ था, might अगर have वो lost ना out on होता मे IC, बी but still सिचुएशंस a अभी three-man डिफरेंट होती. strong मीनवाइल team रिक पाजी now have set their eyes मिनी चल रही है. on एनबी dead फिस्ट eyes, बॉय guys. यहाँ पे रॉ के On प्लेयर्स the को other बीटी side, कर रहे हैं NB एनबी के Esports प्लेयर्स. and Raw एंड officials टीम्स are गाइस अगर also आप locking नोटिस कर horns रहे with होंगे, each वही other पॉइंट when निकाल के जा FaZe रही है जो officials are हैशटैग not 5 के supporting अंदर their है. case. But और like एमवी you said, पॉइंट्स Stalwart निकाल रही है, Esports tops एनबी is नॉक्स so very निकाल close रही to the है. players of Dead Eyes. डीआरएस And the way Stalwart Esports, they are way ओह too spread out. They are looking for some kind of an opening onto Dead Eyes with those grenades and perfect Molotov, and Slayers are literally एक्शन भाई burning मौली in से actions. स्लेट भाई, Molotov ठीक है. has been dealt with. फिनिश Instant टॉप confirmation coming in. Now Dead काफी Eyes, they have इंपॉर्टेंट है reduced टॉप to के लिए. only 2 सबसे men. सबसे And if a बड़ी knock सीन comes in, रहेगा there is एसटी no का chance that they क्वालिफिकेशन can save और each other or पीएमडब्ल्यूआई they can do प्रेशर वो अलग है. anything because टॉप को both यहाँ the पे एमवीपी का combos they're प्रेशर, pulling, it's so बट very अच्छा खेलेंगे small. खुद They're एमवीपी बन जाएगा susceptible to जो those बट grenades and the लेट्स गो. Molotovs. डी But आगे सामने Stalwart, डी I का don't think गाइज they're आपको going to पता face है any kind of a रैंकिंग ओवरऑल problem इतना in बढ़िया dealing with the नहीं players of है Dead Eyes, फॉर द rushing साउथ onto the एशियन corner. चैंपियनशिप. Condoms अगर are वो in मैच resilient action. ज्यादा They're अच्छा ready नहीं to खेल be पाते तो Molotov and दिक्कत use उनको हो the सकती है. 45 एसटी ने for फुल the मार्जिन specialist. कर दिया His है. condoms are बहुत ही there. प्यारा नॉक. No, अब अगर he's मैं गलत not, नहीं हूँ, as डी we का said. एक ही But प्लेयर with बचा the हुआ perfect है. angle, he अगर takes वो out उस पर मार्जिन condoms कर are, देंगे and with तो the blink of eye, Dead Eye guys, दिक्कत they होगी. have been डी dealt को with एन एलिमिनेट zero हुई. डी इस elimination पॉइंट पे in 3 their एलिमिनेशन निकाल चुकी है. Sort of आईसी getting अर्ली worried because I एलिमिनेशन could see for Pmerical वंस अगेन Vibes, yes. टीम से हमको देखने को Taking मिल a रहा है few कि 3 pot मैन shots टीम at the बहुत ज्यादा players of खेल Stalwart, रही but है. now एनबी this is एंड the moment. डीआरएस हैशटैग DRS, 1 वर्सेस they हैशटैग have 2 to win this fight. You know, the team that's on the स्क्रीन के top सामने against the फर्स्ट team ही that's मैच on के अंदर. second. रिक पाजी DRS versus ईस्ट को NB नॉक करा. Esports. This is the हेडशॉट. moment that everybody Mini was waiting for. संदेश As they नॉक्ड. can see, एक्शन. Sandesh gets a lock on towards action, but for now, Rules has cooked up that grenade. On the Top right in finished front of him. by Will Rig. throw it into perfection. Does it land? Yes, it does indeed. As now DRS, they Rules will by, have to rules capitalize on by. the situation, bobbing and weaving through all those bullets. Fizboy nice. Finds himself in a really bad Knock, position. but not as a good Rules one. Will get For traded off by DRS, NBS. 3 man surviving. Fizboy Everything नीड comes कर रहे down हैं to अपना this फिनिश one lad. मोस्टली He needs some cover. अपना He कंफर्म needs करने के these लिए. players to दिक्कत तो हो come जाए back घंटे भाई भी towards वाली him. वाइब दे रहे हैं. As अगर सही somehow नहीं रहा they और need to डेल्टा find a way to get the rest back up. Fistune Yes, अर्ली they do. नॉक्स. अब Fistboy थोड़ा सा taking down बैकफुट Delta पे in the process डीआरएस. as Gyante will try to get Rules back up, try बैकफुट to पे reset this डीआरएस fight. इस नॉक के बाद Mavericks स्टेबल haven't हुए. yet, रूल्स भाई को come यहाँ in पे for the रिवाइव poke. दिया. As Sek from the 3 प्लेयर backlines एनबी is के watching onto their flanks. He's जो just प्रेशर बनाया ensuring था वो that रिलीज हो चुका nobody है. pushes देखते हैं on नेक्स्ट मूव towards them डीआरएस का as, क्या रहने वाला है DRS इसके बाद. try to get जोन को inside the प्रायोरिटाइज zone, करना but जरूरी. Fistboy's बैक टू Molotov is बैक. going to be enough, taking down Gyante in the process. And now DRS slowly but surely starting to lose out on numbers as Rules. He's got to fight against the blue and also get in, considering the fact that Mabitex are also watching from afar. And there you Not go. in good Leo situation, deals guys. the Not in good killer blow, situation. and Not now in good just situation. one remains. It is all down towards Killer, who knows exactly where Leo is, but what can he possibly do when he's pinched in from both the sides? As there you go, goes for the peak, but Leo, really quick, really agile, ensures DRS Gaming do not escape. Oh, perfect synergetic attack on the applause of DRS. That was bound to happen. DRS was such close proximity to the players of Maptex Esports since a very long time, where NB Esports was also in the picture, and now NB Esports. They should be in the crosshairs of Maptex, but are they prepared? On the other side, we have Skylar's AJ taking on one player from 4MV with a perfect grenade. I wonder where exactly it is happening. I believe एनबी ओ भाई साहब. अब गाइस आप देख
देख रहे हो side, एनबी this is 4 not मैन looking good. स्ट्रांग. And Nima is so far away from him. If a knock comes onto AJ, I don't think Nima will be गाइस able to save जितने him अच्छे because 4 मैचेस AP उतनी they अच्छी have the लीड lowest आगे बनती रही. advantage. आज मेरे को But धक धक हो finally रहा है. Nima will start एमचिन भाई closing in हमको the खुद धक distance. धक हो रहा है. And क्या 4 चल रहा है AP लॉबी के do have अंदर. certain vehicles for the ओह hard cover and ridges to play यार इस गई around यस. with, but they also need to watch the 6 because नो from बड़ी the सपोर्ट. backside यारिन भाई standing दिल से Esports, सपोर्ट है they're also T2K को. PMSL in, बोला but तो है right now they have मोमेंटम their आ own गया worries T2K because का तो their Zen has been T2K भी taken कर down. They सकती है have to go हैशटैग for 1 the के लिए revivals फाइट. as well. इससे So पहले भी for now, हमने देखा है salvage T2K hard को received. करते हुए. Sooner or later, they will come and मोमेंटम strike वाला hard to गेम defend the अर्ली 4 4 AP. एलिमिनेशन
निकाल I think चुके हैं, for जोन Scarlet's अभी उनके Gaming, it's पास है, pretty नेक्स्ट much जोन का just शिफ्ट देखते हैं stay क्या सिनारियो divided. बनता है। They have to मीनवाइल fend off एसटी their on अपना their own नेक्स्ट मूव because बनाने they के just लिए want to तैयारी कर survive and रही है। secure those स्टील एंड T2 position के points. I सून think बी that's रेडी their फॉर go-to दिस approach for फाइट this गाइज। game. SEA Esports, however, they've managed to take this opportunity, trying to close in on the gap, trying to maybe just breach through T2K's compound. गाइस इस मैच के बाद क्या लग रहा है? #1 #1 का क्या सीन होने वाला है? #2 #3 क्या to होएगा? the कमेंट करके salvage प्रेडिक्शन बताओ। whatever मीनवाइल it is. 800 But लोग हमको T2K, लाइव देख रहे they're in हैं। स्ट्रीम के prime अंदर नए हो position तो to मेक get श्योर टू हिट द defeated. लाइक All एंड this for सब्सक्राइब टू द Zulu चैनल गाइस। with, लेट्स गो। all their might as action. He's getting constantly tapped off with that mini shot, and this is that perfect cue. This is that जैन moment भाई of opportunity that एंट्री he निकाल दी needed to है। capitalize. जैन But भाई ने Jane मल्टीपल एंट्रीज was निकाल दी है। really there. He was anticipating such a thing to happen, and फिनिश Seal, they कंप्लीट have been करा। reduced to ashes. The टोनलेस final ऑल्सो player नॉक पड़ा है। surviving मीनवाइल for रिक Team भाई Seal, को यहाँ and पे that has नॉक to be दिया Ro. है How एंड long can मैप he के do so? वैली That's ने a रिक big भाई का question फिनिश over निकाला है। there. रोज As, भाई in और fact, रन he ओवर decides to यहाँ go पे after एक्शन का। action himself and takes a massive chunk out of him. In fact, just drives him over. But for now, Mabtex दिस इज still फर्स्ट have मैच all आई four गेस। of their दिस इज द players फर्स्ट alive, मैच and Leo एंड will फर्स्ट get मैच that के rest back onto रिस्पेक्टिव him. में अगर आप But बात Mabtex करते हो have a एनबी slight स्पोर्ट्स advantage, I must say, over T2K गोइंग स्ट्रांग considering फॉर the दैट altitude #1 that they have. क्योंकि And ऑलरेडी the अगर आपने nearest देखा होगा posing जो threat will सेकंड of नंबर रैंक course टीम थी be वो from ऑलरेडी आउट हो T2K, चुकी है। बट where NB, 4MV if they एंड can एसटी capitalize स्टिल इन on द the लॉबी। opportunity, द थर्ड एंड they फोर्थ could रैंक also एसजी just स्टिल take इन द them down. लॉबी। पॉइंट कुछ ना I think कुछ just लेके at जाएगी this एंड moment, डिफरेंस if को कम NB करेगी। Esports is 801 लोग देख रहे silent गाइस। and patient, I कमेंट think करके they जल्दी can बताना get a क्या chicken लग रहा है। win. That व्हाट आर should यू be the टॉप 3 target if प्रेडिक्शंस they want to आफ्टर be the दिस मैच? champion of the grand finals. But right now, Maptex Esports, Leo has been taken down, but it's an easy revival that is coming in. T2K, this is the moment when they should be lobbing some grenades on the Molotovs in the direction of Maptex and look for those confirmation points. But AJ, well, he has been eliminated by NB Esports, leaving Nima all by himself. But Jane, with that mini, he has spotted on the players of Stalwart Esports. And Stalwart, all they have is a little bit of the ridge for the hard cover. And the moment the circle takes a sudden shift, Stalwart, they have to come out in the open. But if it भाई goes to the एनबीएस northern लीड side, बना रही है। well, एनबी Stalwart, they will have the यस benefit यस of the वही तो मैं circle. बात But कर रहा हूँ Kese, आपको। एनबी ने Scarlet बहुत takes अच्छी on Fist पहले Boy इनकी over ऑलरेडी there. लीड थी। Out there अभी in the अच्छा मैच open, the खेलेंगे तो players of अच्छी NB लीड आएगी Esports. तो But do प्रेशर they फिर have नीचे की any टीम के sort लिए of बनेगा। idea फिर एनबी about का the अगले position of मैचेस में Nima? अर्ली एलिमिनेशन Nima इंपॉर्टेंट can रहेगा। be that मीनवाइल one सियोग weak भाई thought for the ईस्ट players बाई of को NB नॉक करा। Esports. ईस्ट बाई ने But एक्शन for का now, फिनिश Stalwart निकाला। Esports and 4MV, they are locking horns ही with दैट each इज द other. लास्ट गाय Trades are लेफ्ट फॉर coming in, टीम and एसटीई। Lizette is left all by 4MV himself. But मीनवाइल 4MV, अपने they प्लेयर्स still को have रिवाइव that देते missing हुए point. 6 टीम्स 15 Yeah, I प्लेयर mean, आपकी at this स्क्रीन point, के even if सामने। it kind of क्या could, लग रहा है they're गाइस? not. किसका चिकन आने I वाला don't है feel आपके Lizette रिस्पेक्टिव trying में? to कमेंट करके successfully जल्दी से बताओ। recreate ऑलमोस्ट inside the circle 900 because लोग look at हमको it, देख it's रहे so हैं। open right now, and they're gonna be किसका prone to चिकन आने a वाला है गाइस? दिस lot इज द of कंपटीशन लेवल। shots बाय द वे coming साउथ at their एशिया direction. रीजन Nirzet, बहुत बहुत at this बहुत point आगे is जा pretty चुका है much गाइस given up. All कंपटीशन he पे। can hope for is these remainder of the teams fighting it out amongst पहले other गाइस 2 players. टीम होती थी, As 3 टीम I होती थी, think ज्यादा the से ज्यादा battle is 4 gonna टीम get होती थी। अभी गाइस just 5 6 heated कितनी up. टीम्स है Team लाइन के Mabtex अंदर and कुछ T2K, पता नहीं where लग रहा है NB कौन might लेके decide जाएगा। बट to एनवी third esports party. गोइंग स्ट्रांग But बट इज for जस्ट now, मैच नंबर American 1। Vibes, मैं तो they have बोलता हूँ also वर्ल्ड been ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी hitting esports को, their स्पोर्ट्स को। corners सो really लास्ट बॉल well, तक and या now लास्ट this is the point मिनट where तक they कुछ नहीं make कह a सकते, move, and वेट करना। who बट will be on to करंटली it? सिनारियोस That's के the big अकॉर्डिंग एनवी question, esports इज right? गोइंग स्ट्रांग। Nima, he's also trying to survive for as long as he possibly can, still remaining hidden. As Sek, he's the one trying to just mow down the players of NBST2K. They decide to take another spot, and right now, Kessie, he's gonna take the opportunity of taking one of the players of NB down. I think Akash Guys, imagine what finally bites the dust at the NV 6th 4 position as the MV final 5 like remain. NB With जो T2K, #1 पे है, Mabtex 4 being the MV I prime guess contenders, #3 पे for थी, getting a ST chicken dinner, 4 पे थी। They unless are and still until in NB top pull off 5 something scene. really Oh, miraculous. what a As nade! Nirzet, despite Nirzet! against all odds, that one T2K grenade on has trouble taken and down यहाँ the पे entirety of T2K. Nirzet ने Wally also chiming पूरा in का that पूरा process, but नेट Nirzet, एंड उसकी he's done लोकेशन the नोन job for his हुई squad. He's got to be एंड the यहाँ पे फिनिश hero निकाला for इसने। Stalwart Esports as बट they end up at क्या the यहाँ 4th पे position. पॉइंट देखे गया But लास्ट hey, मोमेंट पे with जितना 7 बेस्ट हो सकता lanes था? to their name. मैप ने पूरा लिया है ना। But 4 MV भी गई भाई, 4 MV भी गई। Here we go, top 2
team. मैप एंड एनबी स्पोर्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने मैप यहाँ से अच्छे पॉइंट लेके जाने वाली है, तो जिसका मतलब है मैप की रैंकिंग में भी फर्क पड़ने वाला है. Baron is down. This is the moment Maptex, they have to go for those first states. They have to go for the rescue mission onto क्लोज those कॉल. fallen teammates. एनबी कितना पॉइंट 3 का गैप players लेके on the जाएगी. rooftop on the other Let's side. The see. majority of the real estate is in the hands of NB Esports. But Mondo, that could have been a precise grenade from the side of Maptex. His position has been compromised, and
multiple grenades are coming in. I don't know how he's going to survive those barrage of grenades, but somehow he's still standing strong, still surviving. But Guys, by Rally the comes way, in if with you're a new to the stream, M416 and like a and Molotov subscribe next and round. जल्दी से बताओ Both the कितना players वेट set कर for रहे हो. FaZe from Oh, that PMV. net Amchin bhai. Yeah, now this is the point where Mabatex Plus go in 1 for for the push. Nizet. This is the point where they deal the killer Point blow के लिए. and Oh भाई, then मैम they ने चिकन do निकाल दिया, but get wait this. and watch. Overall standing. We want overall standing. Hashtag we want overall standing, guys. क्या हमको overall standing दिखाई जाएगी आज के दिन पे? फिंगर क्रॉस्ड. 871 लोग देख रहे हो, कोई कहीं मत जाना गाइस. ओवरऑल स्टैंडिंग का जस्ट वेट कर लो, क्या चल रहा है सिनारियो. विनर विनर चिकन डिनर बाय मैप. मैप कौन सी रैंक पे आया वो भी सिनारियो देखने वाला होगा. 865 लोग देख रहे हो. अगर आप नए हो स्ट्रीम के अंदर, मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वी आर वेरी क्लोज टू 56.2 के सब्सक्राइबर्स. जल्दी से सब्सक्राइब कर दो गाइस चैनल को. NB #2 consistent. NB #2 प्लस एलिमिनेशन प्लस #1 पे ऑलरेडी थी. #5 पे मैप की एंट्री होगी है. ओ आज अगर मैप ने पेल दिया ना और मैचेस में भी भाई, तो कुछ भी हो सकता है. बट मतलब अभी टू अर्ली टू जज होगा, बट अभी मत करना. 5 मैचेस अभी आपके और बचेंगे. बाय द वे, वी गॉट द ओवरऑल स्टैंडिंग्स. थैंक यू सो मच एमचिन भाई. ओके सो गाइस, फर्स्ट नंबर पे गैस करो कौन होगा. चलो आ जाओ, गैस करो. आपको ना ओवरऑल रैंकिंग हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेगी. आ जाओ. चलो भाई, सबसे पहले ओवरऑल स्टैंडिंग गैस करो फर्स्ट पे कौन है. अब आपकी फिर मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट पे कौन है. मैं आपको टॉप 5 बता दूंगा डायरेक्टली. वैसे यहाँ पे तो ओवरऑल स्टैंडिंग बहुत ज्यादा लेट आने वाली, तो आप गैस करते रहो. बताओ फर्स्ट पे कौन है. 8667 लोग देख रहे हो. फर्स्ट पे कौन है, सब एक साथ लिखो, चैट करके बताओ फर्स्ट पे कौन होगा आपके हिसाब से. वो तो ऑब्वियस सी बात है. मैं आपको गैप बता दूंगा कितना है. चलो रैंकिंग आ चुकी है गाइस. हमारे पास रैंकिंग आ चुकी है. बना दी हमने, जल्दी जल्दी रैंकिंग बना दी है. तो फर्स्ट नंबर बताओ कौन है जल्दी से. मैं आपको जल्दी रैंकिंग बताऊंगा. यहाँ नहीं आएगा टीवी पे, अभी लेट आएगा स्क्रीन पे. मैं आपको पहले बता दूंगा. अपना कैलकुलेटर खोल के बैठ जाओ. 600 जनता देख रही, कहीं मत जाओ गाइस. इंटरेस्टिंग चीजें ही देखने को मिलेगी स्ट्रीम पे, तो बहुत लेट आने वाला है. ठीक है गाइस, यू आर राइट. एनबी इज इन टॉप. कैलकुलेटर खोल लो, लिख के रख लो. 175 टोटल पॉइंट है एनबी के. सेकंड पे कौन होगा, गैस व्हाट. अब यहाँ पे मेन चीज आती है, सेकंड पे कौन होगा बताओ. सेकंड पे कौन है अब बताओ. सेकंड पे कौन है जल्दी से बताओ. सेकंड पे कौन होगा. मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ. सेकंड पे हो गए एसटी और एमवी या फिर डीआरएस. कौन है सेकंड पे बताओ. मीनवाइल गाइस, ईस्ट पाजी 4 एलिमिनेशन, जेन 5, न्यूज़ 5 जो नेड था भाई, एक उस टाइम एलिमिनेशन शायद मैप के पास गया है. यहाँ 6 हो सकते थे. फिस्ट बॉय एंड सीक. तो गाइज लो, मैं आपको बता देता हूँ. सेकंड पे जो आपकी टीम है वो है आपकी वाइब्स की एंट्री हो चुकी है. एंड गेस व्हाट इज द डिफरेंस. पॉइंट नोट डाउन करते रहो कैलकुलेटर पे गाइज, तो नेक्स्ट मैच में बता देना. एनबी स्पोर्ट्स #1 आफ्टर मैच नंबर 175 पॉइंट्स. #2 पे गाइज 4 मिरेकल वाइब्स है जिसके है 162 पॉइंट. डिफरेंस अगर आप देखते हो 8 9 10 11 12 13 पॉइंट का डिफरेंस है वाइब्स एंड एनबी का. #1 और #2 का डिफरेंस की अगर आप बात करते हो. ये ओवरऑल रैंकिंग है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा. #3 के अंदर गाइज गैस करो कौन सी टीम होगी. गैस व्हाट हु इज इन #3. गैस व्हाट हु इज इन #3. मैं आपको टॉप 3 टीम बता रहा हूँ. #3 पे चलो ऐसे ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. अब जल्दी से बता देता हूँ. पॉइंट नोट कर लो. एनबी स्पोर्ट्स 175, 4 मिरेकल वाइव्स 162, स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स 160 एंड डीआरएस गेमिंग 156 पॉइंट. लेट्स गो. एंड गाइस, ये जो रैंकिंग है आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगी. तो गाइस, डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा ज्वाइन कर लो इफ यू वांट द रैंकिंग्स. आपको रैंकिंग देखना है यहाँ से पहले. सो मॉडरेटर्स, ये हमारा डिस्कॉर्ड है, जल्दी से ज्वाइन कर लो. रैंकिंग में अपलोड कर रहा हूँ. बाय द वे यहाँ भी दिखा दिया, बट नेक्स्ट मैच से हमारे डिस्कॉर्ड पे डायरेक्टली रैंकिंग आ जाएगी, तो ये ज्वाइन कर लो मैच के तुरंत खत्म होते ही. तो ज्वाइन और डिस्कॉर्ड नहीं सॉरी टेलीग्राम. टेलीग्राम गाइज हमारा स्पैम कर दो. हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो गाइज.
ये आपकी रैंकिंग आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। सो गाइस आज के दिन पे कोई भी ले जा सकता है, स्टॉलवर्ड ले जा सकते हैं। डीआरएस मुझे पता है नेक्स्ट मैच पे कमबैक करने वाली, बट नेक्स्ट मैच है शैनॉक द अनप्रेडिक्टेबल मैप, देखते हैं क्या सीन होता है। देन मैप ने काफी अच्छा कमबैक #5 पे मार दिया। स्काईलाइज गेमिंग का मैच अच्छा नहीं गया था, जैसे मैंने आपको बोला था, कंसिस्टेंसी इज द की। स्काईलाइज गेमिंग में बात करते हो। एंड इसके बाद गाइस अगर आप बात कर रहे हो रॉ सील दैट गाइस टीआरजेड स्टिल फाइटिंग फॉर द #12 चैंपियनशिप के क्राउन के लिए। हाँ मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ गाइस, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब से रैंकिंग आपको सबसे पहले पूरे उसमें हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। तो दिस इज आवर टेलीग्राम, ज्वाइन कर लो। सो रैंकिंग आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो मैं रैंकिंग आपकी डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे। रैंकिंग गाइस बाय द वे हमारे पास पहले ही आ गया था, बट चलो मैं टेलीग्राम पे भी फिर से देता हूँ। फिर इज माय टेलीग्राम। PMPL can be on top. Come back to #2 गाइस, रुको अपडेट कर रहा हूँ टेलीग्राम पे। गाइस ज्वाइन और टेलीग्राम मैंने डाल दिया है। लो भाई, लेट्स गो बॉयज। मैं टेलीग्राम पे कर दिया गाइस अपडेट, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो। सारी चीजें हमारे टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, टेलीग्राम के अंदर। लेट्स गो बॉयज। यू रिमेंबर लास्ट ईयर एसटी टेकिंग इट इन लास्ट मैच। अरे अरे एमचिक भाई मत बोलो, अभी मत करो आप। 5 मैचेस बचे, थोड़ा सा हाइप रखो, थोड़ा सा हाइप रखो। एमचिन भाई थोड़ा सा बता दो पिक्का स्क्री के बारे में, लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है। सो पिक्का स्क्री का सबको क्लियर कर दो चीजें, मैं बता चुका हूँ चीजें। वैसे भी दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर करियर एंड स्टडी आई गेस। तो गाइज ये अपना टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो। मॉडरेटर लिंक कॉपी कर लो, आपको लिंक देते रहना है लोगों को कि ओवरऑल स्टैंडिंग जो सबसे पहले यहीं आएगी, तो सब जाएंगे एंड ओवरऑल स्टैंडिंग यहाँ देख लेंगे। इस क्या चल रहा है रैंकिंग में, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। ज्वाइन द टेलीग्राम। थैंक गॉड वी हैव फिक्सेस बैक ऑन कास्टिंग। यस, फिक्सेस बाय ओपी इन द चैट। डीआरएस कम बैक विद विनर विनर चिकन डिनर, वी नीड योर परफॉर्मेंस। यस ब्रो, डीआरएस का कम बैक आएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन लेने का नहीं, सब होगा ब्रो। अभी 5 मैचेस हमारे बचे हैं, टेंशन ना लो। चिल चिल चिल। आज लास्ट डे क्या? यस ब्रो, आज लास्ट डे, फुल्ली लास्ट डे। टीम डूम डिस्क्वाली, अरे भाई तुम कितनी पुरानी बात लेके आ रहे हो। नो वरीज। वन स्लॉट पी सऊदी लीग से भी है, कंफर्म है। ओके नोमान भाई, ओके। तो गाइस मैं टेलीग्राम लिंक देते रह रहा हूँ। इन्फर्नो सब लोग जितने भी हमारे, टेलीग्राम लिंक फुल स्पैम करते रहना, जब हमारा मैच भी स्टार्ट होगा टेलीग्राम पे जो ओवरऑल स्टैंडिंग है सबसे पहले टेलीग्राम पे ही आएगी। सो गाइस ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। एंड जस्ट हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करा है किन्होंने, केशव तिवारी भाई, थैंक यू सो फॉर ज्वाइनिंग फॉर आवर टेलीग्राम सर्वर। अक्षत गावटे भाई, जेस्ट डिबोलो, शुभम भाई, ओ दो शुभम बैक टू बैक हमारे टेलीग्राम को, ये कोइंसिडेंस है। शुभम चौधरी एंड शुभम सूर्यवंशी, थैंक यू सो मच। रोलेक्स, एनजे, पार्थ, जीत बॉय, अंशुल, रंग शयार लांबा, डीआरएक्स भाई, सैनिटी, एसटीई टॉप, सुब्रात साहू, श्रीराम, सैफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और टेलीग्राम बाइस। अब आपको ही सबसे पहले रैंकिंग वगैरह ओवरऑल हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेट्स गो, मैच नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। सारे प्लेयर्स दिख रहे, एक्सप्रेशंस देख लो गाइस, कौन कितना प्रेशर पे है, कौन कितना चिल है, कौन कितना काम है, सबके पीओवी एक साथ आपकी स्क्रीन के सामने। एंड कौन सी टीम को सपोर्ट करे एक बार नीचे कमेंट करके बताना। सऊदी गेट्स होस्ट कंट्री स्लॉट, इट्स ऑब्वियस, यस।
Pika points that is they collected, studying and same and goes he's for been medical assisting vibes senator in also. PMPL. Now, Scree is this there, is a but IC is performing huge very well. तो game guys for रीजन आपको DRS मिल चुका है because अपनी स्क्रीन they के will सामने. have सो to ओवरऑल रैंकिंग get भी आ back रही है अभी into the आपकी स्क्रीन के equation, सामने. because if they do ये है आपका not, then अनप्रिडिक्टेबल we're मैप going to जिसको हम see बोलते हैं the top three सनहॉक. Mongolian teams लेट्स गो reign बॉयज, सबको over लिंक भेज दीजिए. the मैच SE नंबर 2 region. हो चुका है But for स्टार्ट. now, कैन the यू fight path एक्सप्लेन trajectory मैटर? all कौन the सा way मैटर? from Lakavi towards Hatin. A lot of teams लेट्स won't गो have any एनवी problems esports taking F4 द विन न्यू चैंपियंस. their यस, पिक्का drops. कौन Just सी hoping क्लास? somebody does something out पिक्का of कौन सी क्लास में ordinary है भाई? and proves us Only top wrong. 4 Maybe, battling for the a top different slots because drop 30 clash point we difference get is to not see. possible to But cover in is that going to happen? We much are going to table. get your So it's answers not like in the competitive. next couple of seconds, 70. because Dead बोल Eyes, सकते हो High सिंग्स Voltage, यादव, बट and दो अच्छे Sitim, मैचेस they कुछ भी are, निकाल सकते हैं भाई. going सच back बता to रहा the हूँ, old लास्ट मोमेंट regime तक कुछ नहीं पता again. होता है. We could see आपने that प्रैक्टिकली action बात सही breaking करी है, out, बट but यहाँ पे seems हमने like कुछ चीजें होते हुए Sitim देखी है. want to sit अभी this अब one out. एंड तक Just कुछ नहीं बोल stay सकते back a क्योंकि little अभी तक bit, maybe मैचेस go खत्म नहीं towards हुए. सिर्फ Camp 15 Alpha. मिनट का डिले But होता है जो हमको different मैचेस पे fights दिखता है. happening over जो there. Look ऑफिशियल मैच at हो रहे हैं High फिर 15 Voltage. मिनट डिले बाद They स्ट्रीम want पे to आता है. take the fight समझ रहे हो? right अभी at मीनवाइल these आपका spaces. शैनो I खत्म feel भी नहीं there's हुआ a होगा little bit जब of तक a हम देख रहे हैं. rivalry 15 that मिनट has आगे brewed चल up. रहा I होगा. think a little समझ bit रहे of a हो? revenge ओ story that's going on, हाई because वोल्टेज this is something डेड आई that गाइस Dead Eyes guys did not हाँ anticipate, 3 के and their अंदर. worst fears have come true. ठीक है भाई. This might cause them फिर the साउथ एशिया फाइनल qualification. लास्ट डे Dead चल Eye रहा है guys, गाइस. they मैच have to नंबर win 2 this है. fight. At the same time, high voltage for them also. This is so very pivotal. The rivalry is still brewing up. And look at the position of True Love Star. He can be that cheeky player who having an off angle, which the players गाइस of बाय high द वे voltage PMPL are साउथ not एशिया फाइनल्स anticipating at all. टॉप Because क्लैश. their entire attention is towards on top sir, Precious sir, and Slayer sir, who are trying to regroup. And on top sir, well, he's not giving any kind of a sound cue. He's not moving a single muscle. But I'm hoping True Love sir to bring some kind of an opening. But high voltage, well, they're looking pretty much equipped. The backs are pretty much full. And Jiggle crawling his way, being one with the nature, moving inching closer to the players of Dead Egg guys. But unfortunately, has got no grenade, nothing, just a level 2 गाइस vest and a भाई QBZ. यही No, वेट I कर don't रहा like था this. मैं. I ड्रॉप don't like क्लैश. this from High Voltage. They should have done the contrary. They should have gone after True Love. I'm pretty sure they must have seen one of that parachutes landing aloof from his team, and should have rather isolated, because this is what happens when you do not have the information on your opponents, right? And Jiggle knows that the other remainder players of Dead Eyes are just cornered to this one place. But what can they do? Now suddenly the panic has set in, because they have lost out on Assassin, one of the most reliable players of their team, and giving Dead Eyes guys that little room to maneuver, that little room to rotate around. And well, Hatin sort of been their go-to place, and they know the nooks and crannies. They know the places that they can capitalize on. And High Voltage suddenly have had to take a back step from over here. Challenging a team in their home ground is never a good idea, and I think high voltage they have अब realized सर it. मैंने Jiggle, वॉइस like उड़ा I दिया. said, ठीक is है. out there ऐसे in the चैंपियनशिप open में with no मंगोलिया helmet. वगैरह One वो bullet करने is की. enough to take Bro. down Jiggle in this situation. Yes, he does have a अरे 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 level अरे 2 अरे vest, अरे but भाई. that is not going to help उसे him because मैच no आनंद लो smokes, है. no throwables, मैं nothing. सच Just बता a रहा हूँ. आज मैं weapon हाइड in कर his दूंगा जो hands. भी हेट The फैलाएगा numbers चैट are के not अंदर. in वैसे their भी favor, and मॉडरेटर्स the way एक्टिव the है नहीं. players of Dead Egg guys मेरे are को जो दिखेगा मैं surrounding high सबको voltage संभाल नहीं right सकता. मैं आपको right टाइम आउट now. दूं बार बार. मैं Well, डायरेक्टली Jiggle, वो he कर can't दूंगा. save his teammates. He वो कर can't दूंगा मैं help his डायरेक्टली teammates. आपको हाइड. And Dead guys, I don't think तो they're और going कोई to हाइड make the देता नहीं है और mistake of टाइम आउट coming देते out हैं. to हाइड the सिर्फ मैं open ही देता on हूँ the other अपने side of चैनल the के अंदर. fence from where Jiggle can जो भी get हाइड a मिलेगा line देख of लेना भाई. sight onto भाई भाई Dead वेटिंग फॉर guys. पैराबाइन ऑर्डर So जलवाइन pretty फाइनल्स much high फिंगर क्रॉस. भाई voltage. 19 It तारीख बस looks 2 दिन like बाद वॉच this पार्टी में fight मिलेंगे. is सब्सक्राइब not कर going लो to चैनल go को. in their favor. But anything can happen. Anything can happen. Jiggle is still crawling his way towards True Love sir. भाई I hope Dead Eye guys they don't come out in the win because this game is so अब सर pivotal for अलग both these teams. Okay, so थलग. one thing for sure that I can टॉप 12 you में know 8 उंगली contemplate from here है is the वो. fact that ये तो High Voltage, they know they're qualified for the ESA Championship. What do they have अभी to इस do? मैच No का matter आनंद लो. what they try, वो how much इतना they try. कंपैरिजन मत करो. ये भाई I'm मैच pretty sure कौन they're सा है? not मैच going to नंबर get 2. onto the top spot. And at Bro, this whom we are point, I supporting in guess they PL don't finals. care about the prize money either. So Wait, what they're मैंने gonna नाम तो बताए do थे. is फिर से just not let Dead Eyes guys get away from here. At least they would want to, cause them a few more losses. Because look at the circle, right? The circle's nowhere close to 4 where they मैचेस are बचे at इसके this बाद. point. And Second they'll have match, to guys. make a And way पहले inside the ही circle. And for Dead Eyes guys, they're not at the best of positions, right? They need to have Jiro those bhai, good games. But I'm look not at getting Sitim. vibes. Jiro, is he aware of Stalwarts coming in, or is it the other way around where Dobu, he saw IC coming
coming in close, and Giro did not even have to move a muscle there. And suddenly, just like that, Icy has been taken down out of the equation. Now Sitim
This is something I that don't know, they Zero भाई haven't को done spot previously. नहीं Right? किया, They Zero usually भाई को tend to spot take ही a नहीं fight करा against इसी high ने. voltage, and Stalwart was really caught off guard over On there. on pressure, Zero on pressure, getting ST a on little pressure इस match pressurized के बाद. from up top, and now they're gonna go in for the push and just apply or try to take down Zero in this process. Stalwart trying to move in tandem with each other, but IC finally succeeding as Dobu's position also gets compromised. Stop providing that quintessential बढ़िया cover संभाला fire situation from को. up top as Sitim. Now this is the moment where they have to IC भाई ने reconsider heal भी their कर लिया. approach towards this fight. You know, You can knocked clearly है. see Desert They and exactly know QB, the they've situation. already Desert and broken QB down को for देखो. a flank Oh as ho ho Stalwart. Meanwhile, They are adamant on 4 getting MV their players knock back निकाल दी alive भाई. as Dubu two finish of भी them निकाल दिया already FX bitten ने. the dust अरे as, अरे अरे. Pmerical vibes out of nowhere. They just किल come फीड in पढ़ ली होगी and गाइस. किल फीड steal पढ़ their ली kills होगी कि away. यहाँ पे And MVP ST ने Stalwart, पढ़ ली है किल at फीड. the same time, I'm pretty sure they're pissed, but they do not have any time to lament or be angry about. They need to get the hell out of there, because if they get caught there, there लास्ट is डे ब्रो no आज ही है means of डेंजर escape. भाई. From लास्ट one डे आज side, ही they है ब्रो. can आज get आज sandwiched आपका लास्ट by डे the ही चल players रहा of है भाई. Sitim. From लास्ट the डे गाइस. other, it is Last going to day, be last day, Pmerical last vibes day. who absolutely mow them down. I just feel sad for the players of Sitim Esports. I can feel their pain. They changed the drop just to escape from the clutches of high voltage. And high voltage, this time they went for DE. And Sitim, unnecessary, they got into the clutches of Stalwart Esports, where they lost 2 of their players. I feel sad for them, but high voltage, well, Praveen all by himself, holding on to his position, not giving any kind of sign. Finally, he comes out, takes down one player from side of Dead guys, but the DBS never fails to impress me. On top, sir comes right in the nick of time, saves the day for his team, and now high voltage. Yes, they are in the 10th spot right now. But Dead guys, they understand how important this game is, this very day is, because right now they are not in the qualification position in the overall leaderboard. They're sitting somewhere on the 13th spot. They need those points, and now they have the numbers. What can Jiggle do in this situation? He can't do anything. ये फाइट लंबा ही चलेगा भाई. नाइस कवर फ्रॉम IC. And Yup, swim inside the SGP मगर circle भाई यस somehow, यस यस. try and escape. But he has got no मैं दुआ first कर रहा है hit as ऐसे टीम well. आउट हो जाए. मेरा मार का ड्रॉ सेम ड्रॉप है. अरे अरे अरे. Jiggle. पिक्का भाई पिक्का he's shown पिक्का no पिक्का intent to स्टडी कर fight. रहा है और All he has been doing is करियर भाई just करियर roaming में around फोकस the कर रहा है grass. अपना मेन I करियर. think what he's gonna do He next left is just try competitive to सिनेरियो bite खेलना एज एन one of the ई-स्पोर्ट्स players of एथलीट. Dead उसने Eyes. छोड़ दिया है. वो स्टडी because पढ़ाई Dead कर Eyes, रहा है. फॉर they एन have that एग्जांपल आप हायर constant स्टडीज fear करते looming हो around ना. them. Where could he be ग्रेजुएशन hiding? करते हो तो पीका भी And, स्टडी के ऊपर you उस know, look तरीके at में that. ध्यान So दे रहा है. both बाकी these एसटी teams, में जो I कोचिंग के think साथ High Voltage has succeeded in their होते हैं endeavors. No सेनेटर matter बताएगा. they ओके, have lost out on majority आफ्टर of the लॉन्ग players, टाइम ये वाला जोन but देखने they've को मिला. दिल को absolutely इतनी खुशी हुई ruined है. the पूछो मत. timing for Dead Eyes guys to get inside the देखते circle, हैं because 4 now TRZ का TRZ क्या they're एंटी holding off the पैटर्न रहता है. bridge. They will also get क्या down करती है eventually. डाडा But गाइस एंड एचवी now स्टिल it's अपनी going to थर्ड come आइलैंड के down ऊपर to है. बाद में Somi जोन with का the other डैमेज team. बहुत But होने वाला today है. the circle has SG been so 2K नॉट अ गुड merciful on the वाइब्स. players of नॉट अ गुड Raw वाइब्स. officials. Regularly in the previous आरईजी one, पैराडाइज they से had a अपनी good zones with अपनी the बूट players, कैंप के even ऊपर the players of मेन Evo. अगर हम फोकस But देखें डीआरएस स्टिल at the same time, अपने you अच्छी have to पोजीशन understand के that ऊपर है. अपने you just अभी do तक not के have सीन to के hold हिसाब circles, से you have to also क्लस्टर defend उनकी साइड से your भी ज्यादा positions. है Now नहीं. T2K, अभी अच्छा Silence came in पोजीशंस को very close लेके proximity होल्ड to each करेंगे तो other as देखो आगे Muffin बाकी Ninja क्या होता है. just lies hidden in the open, lets him pass, and seems like he does not have any vehicles also. DRS Considering chicken, he's yes gotta bro, good travel a situation. long way DRS inside the currently. circle, and Also the guys, fact live that, ranking आपकी स्क्रीन healing के meta सामने भी is आ out रही of है. लाइव है question. बिल्कुल. 1 पॉइंट एनबी ने निकाल दिया है. 4 एमबी ने भी निकाल दिया 1 पॉइंट. दोनों ने 1 पॉइंट निकाला है. एसटी 162 पॉइंट. एसटी ने भी पॉइंट निकाल दिया. DRS 156 पॉइंट. मैप 146 एसडी 1000 meters away from the गाइस circle. गैप They अब don't ना have the एसजी numbers से and they एनबी का don't बहुत want बढ़ to गया है. ruin the कंसिस्टेंसी chances निकालनी of पड़ेगी. being मीनवाइल in the संदेश top भाई 3 यहाँ पे position जोन right now, से which नॉक they're हो रहे trying to हैं. get एनबी into, स्पोर्ट्स or आपकी maybe on the स्क्रीन के top सामने spot, कहीं because ना top कहीं 5 they have यहाँ पर already अगर वो made पिन कर into, देंगे तो and वीटी हो if सकता they है. make it टीटीको के inside the लास्ट मैच circle, उन्होंने बहुत ट्राई करा है. the chances are मैच में very देखते less क्या because सीन बनता T2K, है. they are also right in front of them. At the same time, T2K, they आगे have भाई their मोड में own रियान भाई कोई worries. नहीं. बी One of एक्टिव the बन player जाओगे. was taken डीआरएस down, but the revival has been 40 made. यस. All these teams coming from the complete eastern side, northeastern side, they are at the mercy of the blue. एनबी स्पोर्ट But फुल Dead Eye स्टडी करके guys, आइए. they are हर एक still टीम कब towards कौन सी टीम Harden, कैसे so रोती far away भाई. from the circle. देखिए भाई And ये I don't आई think they had the है जो chance to पुरानी loot the पीएनपी Harden है ना city पीएमपीएल का. completely, so they are a little short ब्रो of इसका those मेरे को नॉलेज resources नहीं as ब्रो. well. पीएन क्रू But पीएन क्रू Skylar's पीएन gaming, क्रू they're पीएन just क्रू letting the मैंने players of लास्ट देखा था T2K संदेश pass, भाई के साथ. relying on those पीएन first क्रू गया था hits टूट. and hoping तो that नहीं they उसमें can तो make it inside the circle. वॉटेक्स वगैरह
वगैरह थे, DRS are pretty नाम था happy ना with बॉटेक्स, how the लाउरे, zone has बॉटेक्स वगैरह, formed, उसमें right? तो वो खेल रहे Inside थे. the zone, and now they get to take a fight against raw officials. They've got a few knocks here and there. But for Miracle Vibes, under heavy Who's fire, winning East PMSL? has been taken down. बीच Liquid में हमारा decides to साउथ find एशिया थोड़ा different सा मिस angle, हो गया but था, पता है ना needs to आपको, जब be बीच के बाद तो मेरे watching को थोड़ा over पता नहीं है टीम में Doc, क्या क्या because चेंजेस if हुए Doc उस टाइम पे. sees that Pmpl flank मिस coming हुआ in, he's gonna punish एक दो instead. सीजन.
goes after शायद जितना मुझे Haidami. याद आ रहा है And लाउरे Dog भाई थे हमारे really यार needs to पीएम change his position right कॉर्टेक्स के now. Liquid काम था उनका। couldn't close in the grab as a Meanwhile, result of which Zulbai could not DBS दे रहा है ये trade को Haidami off, and now Leo Esports, they're going to be on a quick retreat. They realize the team in front of them is going to be for medical vibes. It's better to avoid them at this point of the game and rather focus more on getting a बैन decent नहीं होता cover, क्या considering the इंटरनेशनल fact that they're inside the circle, and you would not शॉर्ट want कॉलिंग for medical गाइस vibes बाय to द be वे chasing, जो भी at लोग least when लाइक for medical ओवरऑल vibes they're in स्टैंडिंग a देखने के लिए एक्साइटेड आपको scintillating पता है good स्ट्रीम form. में काफी लेट आता है तो That's the हमारे last टेलीग्राम thing ज्वाइन you कर लो want to do, जैसे is ही मैच pick up a खत्म fight होगा with आपको them रैंकिंग वहां early पे on देख into the मिल game. जाएगी हमारे टेलीग्राम पे और कहीं नहीं Well, मिलेगी Leo Esports तो at the start of the जाके day, ज्वाइन they were करके sitting रख on लो the 11th spot मीनवाइल and they लियो don't want to बाय ruin their रॉ chances of काफी इंपॉर्टेंट qualifying. मैच है But इन right दोनों now, टीम्स के लिए Kancha हैशटैग made the 12 mistake of साउथ एशिया his चैंपियनशिप life by रॉ entering in. Not the mistake, कांचा he भाई ने यहाँ actually पे नॉक Liquid was not करा है prepared. अपना Kancha फिनिश dropped करा them है अपना and लियो के प्लेयर eliminated को Liquid over मीनवाइल there from the रॉज side ने of अपने Leo मैप के प्लेयर Esports. को Now the पीटी करा है damage has रॉज ने been काफी done. The अच्छी एंट्री numbers मारी are है टॉप not 5 in के the favor अंदर of Raw Official. At the same time, पुनीत the भाई numbers of Leo टेलीग्राम Esports फुल are also टेलीग्राम not in their स्पैमिंग कर favor. देना This game अब was एंड crucial for both होप्स these आप teams. एक्टिव ही रहोगे सो Yes, Leo, टेलीग्राम पे like I जनता said, they भेजनी है are अपनी in सो the टेलीग्राम top ज्वाइन कर 12 देना फॉर द position right फास्ट now. ओवरऑल रैंकिंग एंड ये जोन But they काफी need to टाइम बाद put देखने को मिला consistency बहुत today टाइम बाद running so बहुत that लंबे they समय can बाद ये जोन qualify. On the other side, बढ़िया we have लगा the players of Maptex where Kese is bleeding. The perfect smoke cover has been laid to go for the rescue mission. Valley might be going for the rescue mission, but on यार the other मेरा भी side, we हल्का have the होने का players of SEA Esports having an फिट uphill रहना जाए यार advantage, and क्या Rock with बोलूं that QPZ क्या is करूं trying to समझ pip नहीं a आ few bullets in the smoke, looking for the connection, looking for the confirmation onto them. On the other side, Deadeye guys, they were trying to move inside the circle, but are still at the mercy of the blue. And looks like PlayZone is playing their part at the same time. Stalbert Esports is also coming in, getting the confirmation onto Deadeye guys. Yeah, and now a lot of those teams just around the edges, right? Nobody wants a part of the center. Even NB Esports feels like they're gonna take the waterways. But Seal, one after the other, they're just getting taken down. And at this point, Becca, he needs to patch himself up. Rogue does have that bike, so he could maneuver around and make a quick rotation inside the zone. But the big question is, how do they do that? Especially when at these moments, usually the bridges are guarded. But this time, that's not the case. And Rogue becomes one of those players that has to take that risk, even gets the military drop over there. As now, you've got Mondo. एनबी going जैसे हमने after the बोला था players of क्रिटिको को T2K. बीटी Rig होगा just got inside that I can see compound, has that top 5 DPS in his pushing hand as extremely Mondo hard keeps मेरे को लग रहा है tapping अभी down, जो but टीम does अभी not मिड टेबल succeed चार्ट पे चल as रही है वो now दिक्कतें टॉप टीम को T2K करने have वाली है managed to create a little bit of that अभी तो distance, and हैशटैग वन की Mondo, टीम और टी2 he's की fighting फाइट for हो his रही है life right now. टी2के Barely surviving with a एलिमिनेशंस sliver of निकाल HP. चुकी है This boy एनबी also chimes esports in आई into the थिंक fight. आई Sundesh, थिंक आई also थिंक on real low HP, needs to patch himself up as Mondo has administered the first aid. As now, this boy decides to get a little close एसटी in 4 personal. एलिमिनेशन 4 मैन As स्ट्रांग Sandesh बहुत ही बढ़िया reveals नेट फिस्ट himself बॉय as the काफी अच्छा nade डैमेज goes रिक flying पाजी down ऑल in this direction, डैमेज है also के बार managing फाइट to है आप ज्यादा देर successfully तक dodge it. डैमेज बढ़ गया है And शानोक में T2K ड्यूटी and नहीं होगी NB तो Esports, दिक्कत I होने mean, वाली थी NB रिक Esports पाजी would बहुत want to ज्यादा डाउन avoid हो the चुके हैं fight मीनवाइल in एनबी any के 3 प्लेयर है circumstances इट्स अ 3v2 whatsoever, सिचुएशन but seems like एनबी they 1 haven't got एलिमिनेशन any निकाला है vehicles to डेल्टा get in. भाई So नॉक्ड टीआरजेड even if डिग्री they भाई can को manage पीछे to से get a अगर few आपको याद हो limb उनकी points, they're एंट्री going to जो be थी happy होनी with थी वो whatever they टीआरजेड की get, होनी थी बैक because से आई थिंक Mondo उन्होंने again बैक पे going गार्ड in के लिए close, बंदा रखा है and this टीआरजेड time की एंट्रीज finally को गार्ड succeeds करने के लिए as उनको पता था कोई T2K टीम पीछे से are आएगी टीआरएस reduced का अर्ली जोन Dream. था अगर आपको बताओ एंट्रीज थी उनके पास 3-man on NB Esports. They have the perfect DBS also. But T2K Jane, well, he has a buggy, he has a vehicle, भाई and जा this रहे is a mature decision coming from his side to escape and scuttle back to the safety. क्यों But भाई will they be allowed? Because Mondo नॉक्ड is कैसे hunting for them, looking for the perfect मोंडो का angle, कनेक्शन and हो he गया drove the vehicle and he takes on one player, Rick from the रिक moving भाई का vehicle. एक फिनिश But यहाँ पे गया है last एनबी player स्पोर्ट्स remaining, को तो Jane, well, 3 finally एलिमिनेशंस makes it to गाइस अर्ली 3 safety, but एलिमिनेशन at the एंड 1 cost मैन of का what? लॉस At the एनबी cost of स्पोर्ट्स को losing जोन के 2 बाहर है players. T2K, they यूटिलिटीज don't have the उठाएंगे लूट numbers. करके Jane is मीनवाइल also मैप on पिछला fairly मैच low काफी HP. अच्छा गया था At the एंड यहाँ same पे time, बीटीज Maptex करना स्टार्ट हो चुके हैं Esports, टी2 well, के they अगर are आप also देखो inside the water, if I'm not wrong. One player was taken down. But SEA Esports, they have the Well, upper Red Eye hand guys. advantage. On the other side, on the southern western side, we have the Okay, players of vibes. IEHC also. Vibes. When one player has been taken down, Vibes. they have to move inside the circle. But how do they do so? Because T2 we के have रैंकिंग्स TRC, ब्रो we have the टेलीग्राम players of ज्वाइन कर लो TRS as आफ्टर well. द मैच They can रैंकिंग gatekeep आपको मिल जाएगी IEHC. हमारे टेलीग्राम Yeah, I mean, तो for टेलीग्राम गाइस IC, 600 the life's gonna गाइस turn ऑलमोस्ट 700 hell लोग right देख रहे हो now जिन लोगों को at नहीं this पता है आपको point. पता है रैंकिंग काफी But लेट आती है सो talking जिनको about फास्ट the रैंकिंग team that चाहिए has हमारे
टेलीग्राम को ज्वाइन got कर the लेना, best वहाँ पे chances in सारी getting the रैंकिंग chicken dinner सबसे पहले has to आपको be देखने को मिल जाएगी। इस मैच के the बाद players कौन of हैशटैग Pmwi 1 है, 2 vibes है, 3 as है, to how they're कंपटीशन positioned आपको right वहीं now. देखने को मिल Just spread across the only team मैं perhaps टेलीग्राम दे दिया है, inside the map लिंक right दे now, दिया, आप barring जाके a few क्लिक करो और others अपने and टेलीग्राम the को ज्वाइन solo कर लो। individuals.
But Stalwart also want to make और a कहीं नहीं move. मिलेगा, They want to यही take over the मिलेगा, सो ज्वाइन कर compounds, लो and 500 लोग। IHC and DRS engage in a fight of ओके, their own. डेमो As गलता। IHC decide to sort गया of एक breach their अकाजे way गया, inside मैंने the जैसे आपको circle. बोला जोन के I बाहर think सरवाइव they करना did manage बहुत to मुश्किल है, find एनबी जोन के one of the बहुत players of डीप, DRS, और आपको managed पता है to यूटी take नहीं him होगी down. तो I think बहुत it ज्यादा was दिक्कत है, Delta क्योंकि who लूट took the का fall, and सिनारियो now पता है आपको, DRS जब will आजकल टीम जो है exercise अर्ली मूवमेंट extreme देना स्टार्ट करती caution. है, And समझ रहे हो, you know, at this समझ रहे हो ये point, चीजें, the जोन Eastern कैप्चर्ड बाय teams, एसटी। it's going to be so difficult for them to kind of enter inside the zone, especially the likes of NB Esports. Now, one after the other, you could see the bodies falling, and IHC, just like that, they got eliminated. Kudnio TRZ were in such good position, and now Seal decide to attack on the houses of Raw at this point, as the Molotovs have been already thrown over, trying to flush the enemy out of the territory. As now Kansha just trying to lob those grenade at Soulless or maybe Pika's direction, but Seal deciding to take the higher route, just back off for the moment. I think that's a better decision because the grenades are so. They were susceptible to those grenades. They could have been taken down in that situation. And Raw officials, well, there are only 2 players, but on the other side, Seal, they managed to escape from the plus of Raw official, but walked right into the arms of Maptex Valley. Where Valley takes on Rogue. Now Becca is trying to go for the rescue mission. At the same time, Valley is prepared for him. Now with a grenade, he might be looking for another knock onto Becca over there, hiding behind that rock. But can he find the connection? Can he lob it to the perfection? It looks like no is the answer. But Becca, okay, Becca was trying to take down Valley, but it confirmed his own teammate's death. आईएससी में अगर स्पैम करना बंद करो भाई पुनीत भाई थोड़ा चैट संभाल लेना, टाइम आउट देते रहना, जो भी हिट वाला सीन होगा। ओके वैली बाय instantly takes him down and then goes after Sanchira, as Seal tend to get melted down over here, as Wally really high on confidence. Mabitex, we did see ST4MV too strong. Yes, ST4 elimination, TRZ4MV zone favor बहुत बढ़िया। और DRS 3 man strong, 3 elimination निकाल दिया। Fight is tough guys. Fight बहुत ज़्यादा tough है। A lot of resources trying to get Sanchir back alive, but the circle, the center, speaks a different story, because for Miracle Vibes and Stalwart right beside each other, you know, just waiting for the Giants to collide again. Yesterday they did in Erangel, where Stalwart successfully managed to exterminate that post them. I can't share you live. You know, for I Miracle can't Vibes, share you they're live. going to be इसलिए playing वहाँ this पे fight on बाकी their मैं own वर्बली terms, मुंह से on बोल their के own बता दूंगा turf, आपको। and it's going to be He's difficult for Stalwart. By the way guys, अगर आपको one, हमारा फाइट अच्छा लग रहा है, good like thing and about subscribe to the Stalwart is channel. that they've Meanwhile, got Leo some Sus good, ने knock करा है concrete TRZ cover. Mamba Bhai If को। they can capitalize on that, if they can do something out of that, and if Apex gets taken out over here, things will look really south. But it is just trades happening left, right, and center, and at this point, nobody is safe, to be honest. Well, Stalwarts are safe. They have the compound. They are in the epicenter, but Zordi from the side of Raw. भाई Zordi भाई spot किया, time on point, DRS on point, killer YT, low on HP है, अपने आप को heal करेंगे। Good game, didn't go in their favor. 2 elimination points eliminated at the 9th spot. At the same time, high voltage also puts by, but Sancheev being one with the nature takes on Woofis at the same time. Viper as well from the side of I8. What is happening? Well, Seal Esports as Puneet is not watching the chat. Guys, क्या होने वाला है इस मैच के अंदर? Differences बहुत कम थे, 160 कितना 175 160 प्लस 15 पॉइंट का फर्क था ना। एनबी तो एलिमिनेट हो गई है। ST4MV क्या कर रहा है? Oh. Now this is getting really interesting for Miracle Vibes. They've got a 2-2 split going on. White separated from each other, and if Stalwart tend to capitalize on that, then things could go really bad. But Seal, I do not know how they're still alive, but they're still kicking. But right now, as a matter of fact, they intend to get inside the circle, with Apex keeping a close watch. And we on George Killer White. Yes bro, yes. On point spot करा, on point Zordi भाई को। Then Apex Master. Guys क्या लग रहा है? Guys किसका चिकन आने वाला है? जल्दी बताओ कमेंट करके। What do you think? किसका चिकन इस मैच में आने वाला है? Fast. I need fast answers. Answer सही होगा। Possess a lot of could pose a lot of trouble, but Sanchir somehow has managed to take one of the players of for Miracle Vibes down. But the question is Apex gonna let them pass? As Soulless and Sanchir किसका चिकन आने वाला है close guys? to him, as KYT just scouting through the land, scouting for a good spot for his teammates. Let's go DRS, let's go DRS. That crucial knock.
And Soulless reveals his position, and Apex would want to capitalize on this opportunity. Goes with that DBS, but Soulless quicker and Okay, will show no SG eliminated, mercy guys. SG as he eliminated. यहाँ से instantly दिक्कत होने just वाला है SG को. bites him down, gulps him before anything else could happen. As DRS wanting to take advantage of the And situation, also, go charging in. he'll eliminate. Jante Oh bhai, gets a final imagine blow. what. Oh, जो certainly he टॉप does, but 3 they are 4 not टीम्स है stopping वही now. They अलाइव are है. after the players ST, of TRC, DRS and and that gap has Vibes. been dealt with. And Tom भाई TRC, इससे they are गंदा in the कंपटीशन crosshairs. मतलब इतना Star पॉजिटिव है Esports गंदा as क्या well. होगा Perfect third party coming in, and IC takes down Degree. Now भाई TRC कंपटीशन के ऊपर का कंपटीशन है ये. down to 4 teams. हर 12 मैच players पे ऐसा हो रहा है जो remaining. टॉप Star 3 Wars टीम्स having है the वो तीनों perfect टीम एंड position, जोन पे आ रही है perfect भाई. compound to इससे hold तो on कुछ to. पता नहीं लगेगा Yes, एंड circle is in मूवमेंट their तक. favor. On the other side, TRS still on the periphery. Rare X, I'm worried about him. How is he going to survive? Mamba is so far away from him. On one side, they have Stalwart. On the other side, they have the players of TRS, where Killer YT, along with this vehicle, is already trying to lure the players of TRC out of their covers. I think it's just at this point, you know, Mamba has to knock down a player of DRS, but unfortunately his position has been compromised. Now this is where the worst nightmares of Kunio TRC has come true. At this point, ओ what do भाई they do? DRS गाइस जल्दी से बताओ. space. They've also got the TRS vehicles, Vibes and ST Mamba TRS just has to Vibe stay at ST the mercy of the TRZ circle. Killer TRZ DRS puts him Vibes down, ST. Come on asks him guys, to let's sit go down chat over पे. there as Derek, चैट पे the गाइस only फुल sole surviving member अब of Kunio एक्साइटमेंट TRC. दिख लीजिए. टीम्स What can इतना he एफर्ट दे possibly रही है do एंड is ऑडियंस literally ना दे sandwiched एफर्ट तो कैसे from two चलेगा. possible गाइस इस directions. Now PMPL साउथ Stalwart एशिया decides फाइनल्स भाई to break ग्रैंड out of फाइनल their चल रहा है. compounds as the zone has एक्साइटमेंट shifted away चाहिए from अपने them. को. This is the perfect time where they make their move. But for Miracle Vibes, from up top, they are watching out on every single movement that करना they're पड़ता making. है And एक्सप्लेन IC, पोर्ट्रेट भाई. becoming a 900 hero लोग for देख रहे their हैं, team, सबके has थॉट managed सेम to नहीं get होते. another crucial knock and will get the घंटे भाई finishes. बढ़िया. Jante TRZ manages to फिनिश eliminate निकाला. the 8 last player of एलिमिनेशन क्या बात है. TRC, बहुत बढ़िया as DRS. now लेट्स गो. for Miracle कंपटीशन और Vibes, लेवल that बढ़ेगा little भाई. split is starting to TRS hurt them. हैशटैग Now 1 2 3 के reduced लिए down क्योंकि to just तीनों 2 टीम men with Stalwart with all पॉइंट 4 of their तीनों टीम players फिनिशेस alive निकाल रही है. are तीनों eyeing टीम प्लेसमेंट on the पॉइंट ले रही chicken है dinner. भाई. क्या कर रहे हो भाई. The नहीं way Stalwart इतना Esports, they have the कंपटीशन majority of the real estate control. हर मैच में हो रहा है भाई. हर Controlling the मैच पे complete western side DRS of the have area, grip. Yes, and bro. along with that, ST2 RS and ST oh ho 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 TRC, ST both are dealt by action over there. Action. DBS coming to the perfection. ST को भी लाइट मत देना. Confirmation of one player from the side of DRS. Now DRS IC finished. players, but IC has been knocked 3 off. man है. Dog 2 is man going to get the vibes. confirmation point. But DRS on the other निकालो. side, perfect grenade comes मजा आ on जाएगा. the face DRS of ओ Gyante DRS मैन by एडवांटेज. Stalwart प्रेशर. Esports. Now किलर वाइटी बहुत प्यारा नॉक फिनिश निकलेगा. बहुत प्यारा. 10 एलिमिनेशन 10 एलिमिनेशन हैशटैग 3 15 पॉइंट गाइस. comes in and ST versus 4 MV Vibes and It's a ST on your 1v3 screen. for Doc. Oh, But the chicken dinner DBS by obviously team do his connected shots STE. right, but that's कितने not पॉइंट gonna आए ST के? happen. The Stalwart इस मैच बाद ST क्या हैशटैग 1 आ रही है. वार्निंग हर्ट पेशेंस हियर देयर. ओ भाई क्या कंपटीशन भाई. ऑलमोस्ट 900 लोग देख रहे हैं. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बार जीजी कर लो एसटी के लिए एंड एनटी जीजी कर लो. यहाँ पे सारी टीम तीनों के लिए चारों के लिए जीजी कर दो. अपनी एसटी के लिए DRS नाइस प्लेड भाई. मैच एडवांटेज नहीं था. सिचुएशन चेंज हो सकती थी. TRZ बहुत ज्यादा बढ़िया. एंड यहाँ पे वाइब्स बहुत. ओ हैशटैग 1 ओवरऑल एसटी. क्या चलेगा ये रैंकिंग के अंदर. लेट मी चेक गाइस. लाइव रैंकिंग हमारे टेलीग्राम पे आ चुकी है. मॉडरेटर साहब हमारा टेलीग्राम लिंक दे दो. मैं आपको रैंकिंग दे देता हूँ. मेरे को रैंकिंग आई है. एक्साइटेड हो गाइस. हैशटैग 2 पे कौन है. कितने का डिफरेंस है. तो लो भाई टेलीग्राम पे दे दिया मैंने. ओवरऑल स्टैंडिंग यही है. हाँ यही है. आफ्टर मैच वॉच ऑफ तो लेट्स गो बॉयज. हम जो है रैंकिंग अपने टेलीग्राम पे दे चुके हैं आपको. आफ्टर द मैच हमने दे दिया है. मैच खत्म होने के बाद जाके देख लो भाई. टॉप पे स्टॉलवर्ड है. देन आपको लाइव पे बता देते हैं. एनबी ई स्पोर्ट्स सेकंड पे 178 2 पॉइंट का डिफरेंस. वाइब्स के साथ है 5 पॉइंट का डिफरेंस हैशटैग 1 से. एंड DRS का है सिर्फ 9 पॉइंट का डिफरेंस. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गाइस
ओवरऑल रैंकिंग अपडेटेड ऑन ऑल टेलीग्राम चैनल, जाओ जल्दी से क्लिक करो, जाके ज्वाइन कर लो एंड आप देखोगे, आप बोलोगे क्या चल रहा है भाई, कोई भी चैंपियन बन सकता है, टॉप 4 कोई भी चैंपियन बन सकता है। एसटी वाइब्स, डीआरएस एंड यहाँ पे एनबी, कंसिस्टेंसी इज द की। जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, जाके देख लो ओवरऑल स्टैंडिंग, मैं दिखा चुका हूं वहां पे सारी की सारी। एंड अभी हमारे टेलीग्राम को जस्ट ज्वाइन करा है यहाँ पर कार्ल भाई, थैंक यू सो मच, अंकित भाई, मनीष भाई, अपना साथ भाई, गौरव भाई, मिलन भाई, अमन भाई, सपन भाई, नरूटो भाई, अनुराग भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग फॉर आवर टेलीग्राम सर्वर। तो गाइज मैच नंबर 2 के बाद ओवरऑल रैंकिंग मैंने डाल दी है आपकी सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर, जाके आप देख सकते हो खत्म होने के बाद। तो गाइज बहुत कम डिफरेंस है भाई, #1, #2, #3, #4। तो इट्स लाइक आपका, आप बोल सकते हो काइंड ऑफ अ सीन की #1 जो है, #2, #3, 4, मतलब सिर्फ 9 पॉइंट का डिफरेंस है। #1 टू DRS सिर्फ 9 पॉइंट का डिफरेंस, मतलब जो कंसिस्टेंट रही हो जाएगा। एंड गाइज अगर आप चैनल के अंदर नए हो, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इधर भी देखो ना, हमारे पास है नहीं है ब्रो, मैंने बताया ना आपको डिफरेंस पॉइंट में बता। बाय द वे रैंकिंग अभी आपकी स्क्रीन के सामने भी आ जाएगी, बाकी मैं बता दिया। 180 पॉइंट है स्टॉलवर्ट के, एनबी ई स्पोर्ट्स के 178 पॉइंट, 2 पॉइंट का गैप है #1 #2 का। एसटी से मेरे वाइब्स का गैप है 5 पॉइंट का, एंड डीआरएस का है आपका सिर्फ 9 पॉइंट का। बाकी मैप के 148 पॉइंट है, तो वो गैप कवर करना मुश्किल ही रहेगा। सो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। बाकी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे होते लोग, इधर भी देख रहे हैं। सो गाइस बता दिया मैंने आपको, रैंकिंग बता दिया। अभी रैंकिंग वैसे आपकी स्क्रीन के सामने भी आ जाएगी। गाइस आज के मैचेस ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। रिमेंबर प्रेशर मेक्स डायमंड्स, अरे अरे लास्ट डे कमबैक आधा है, प्रूविंग प्रूविंग प्रूविंग। लास्ट डे के प्रेशर को बड़ी अच्छी तरीके से लिया जा रहा भाई। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तो ये लो गाइस, हमारे एलिमिनेटर लीडर बोर्ड पे किलर वाईटी एमवीपी, एक बार किलर वाईटी ओपी इन द चैट कर दो। डीआर जीतेगी तो रॉयल्टी, अरे अरे टारगेट उनका छोड़ो, हमको कुछ नहीं पता। बाय द वे गाइस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। किलर वाईटी, डॉक, टॉप्स, आईसी, सोलेस, 5 एलिमिनेशन, 3 एलिमिनेशन, 3 एलिमिनेशन, 3 एलिमिनेशन, 3 एलिमिनेशन। These are the thing. So much of respect to all the performing teams. Like I am proud how teams have involved in SA and how competitive it has been become. जी साउथ एशिया, यस साउथ एशिया का कंपटीशन देख के दिल से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्या बोले, आई हैव नो वर्ड्स। लो भाई, मैच रैंकिंग हम बात करें, पॉइंट रैंकिंग की, चलो अभी आ रही है आपके सामने।
ओ भाई ओवरऑल स्टैंडिंग भी आ जाए। पीएमएसएल का क्या सीन है? पीएमएसएल का सीन भी है ब्रो, पीएमएसएल का भी सीन है, सीन तो तगड़ा ही है। लो गाइस ओवरऑल स्टैंडिंग आपकी स्क्रीन के सामने एंड एसटीई 180 पॉइंट के साथ टॉप पे एंड वी स्पोर्ट्स सिर्फ 2 पॉइंट का गैप है एंड अभी तक हमारा सिर्फ दूसरा मैच हुआ है। देन वाइब्स की टीम आपको दिखने वाली है गाइस 175 पॉइंट्स, देन डीआरएस 171 पॉइंट। कंपटीशन भाई 1 to 4 आप देख लो, सिर्फ 9 पॉइंट का गैप है। आप क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया भाई। मैपटेक्स esports एंड स्काईलाइट्स गेमिंग T2K एंड IHC esports, दीज आर द टीम्स। अब यहाँ पे बैटल चल रही है गाइस क्लोज #1 के लिए टॉप 4 टीम के बीच में। अगर इसके बाद बात करें टॉप 12 के बीच में 96, 92, 85, 84, 78 SITM स्टिल फॉर द #12 बैटल चल रहा है लियो के साथ, हाई वोल्टेज के साथ, i8 के साथ, बट इनके पॉइंट ज्यादा है तो इनको भी गाइस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। 4 मैचेस बचे तो अभी कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तो गाइस लेट्स गो। अभी 2 ही मैचेस हुए, ऐसा लग रहा है कि 5-7 मैचेस होंगे गाइस। इट्स जस्ट अ सेकंड मैच, अभी थर्ड मैच इरेंगल, फिर मिरामार, शैनॉक, इरेंगल बचा हुआ है। जस्ट वेट एंड वॉच, सब्र करिए, रुकिए जरा, सब्र करिए। एंड ऑल्सो गाइस ज्वाइन आवर टेलीग्राम सर्वर, आपको सारी अपडेट पीएमपीएल की हमारे ना टेलीग्राम पे मिल रही है, जल्दी से ज्वाइन कर लो फास्ट। ज्वाइन द टेलीग्राम फास्ट, ये टेलीग्राम है, मैं सारी अपडेट मैच का जो भी सीन हो रहा है, ड्रॉप क्लैश हो रहा है, जो भी सारी चीजें हमारे टेलीग्राम पे जा रही है। ज्वाइन कर लो, ओवरऑल स्टैंडिंग सबसे पहले आपको देखने को वहीं मिल रही है। तो अगर आपने अभी भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, हमारे साथ 493 लोग ज्वाइन हो चुके हैं जो कि सारा आनंद इंजॉय उठा रहे हैं, तो आप भी जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को फास्ट। हमारे 515 गाइस, हमारे बाय द वे कांग्रेचुलेशन लिख दो, 500 मेंबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो गॉडेल, आकाश गिरी, थैंक यू सो मच। शेख हादी, आमिर भाई, सुलभ भाई, चिन्मय भाई, आकिब भाई, नॉक्स भाई, प्रेम, नीतू, रोशन, सपोर्ट मी, गुरविंदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और टेलीग्राम सर्वर टिल नाउ पे। सारी चीज अपडेट मिलती है, जाके ज्वाइन करो अपना टेलीग्राम, बाकी रैंकिंग भी मिलेगी। इताची चेक कर कि भाई के डिस्कॉर्ड पे, भाई एक डिस्कॉर्ड पे टेलीग्राम का लिंक दे दिया, पुनीत भाई ने दे दिया। हमारे पुनीत भाई ओपी ब्रो, पुनीत भाई इज ओपी। मोहब्बत कर कम। जनरल चैट में भेजा भाई, टैग कर दिया सबको। ओ भाई थैंक्स अयुगी एंड बाय द वे, और पुनीत भाई डिस्कॉर्ड में भी भेज दी, थैंक ओके भाई, ओके ओल्ड बॉय एक्स ओजी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया भाई। गाइस ऑनेस्टली सिंग जल्दी से ज्वाइन करो टेलीग्राम। एंड थर्ड मैच के लिए मेरे से तो एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, मेरे को हल्का होने भी जाना है गाइस। मैं सोच रहा हूँ एक बार मैच स्टार्ट हो जाए देन जाएंगे हम हल्का होने भाई। लास्ट मैच से पूरा लेट्स गो बॉयज। Let's go. Erangel match number 3 I do is the not know if first that was Erangel the of the best day of on your decision. They screen, wanted to boys. cover a lot of space, as a Let's result go. of which
they kind of got exposed to multiple angles and just losing players one after the other. And Doc was literally helpless भाई in आज that लास्ट डे 1v3 है क्या? situation in the end. But we're gonna भाई keep आज up यस ब्रो, behind आज लास्ट डे एंड Pastors सिर्फ as 4 we मैचेस बचे, head जिसमें along से to the एक मैच third स्टार्ट हो game गया, of मतलब the इसके बाद सिर्फ evening 3 मैचेस as ही बचेंगे final 3 आपके. matches after this आहा remain. हा So हा. make sure viewers, whoever are watching, get your friends in because this is looking to be a one hell of a night tonight. And right now we've got the flight path trajectory all the way from Gatka towards Mansion, and quite a decent one. I mean, teams are going to take it with open arms. A little bit tricky for the players of for Medical Vibes and Starboard to get down to their drop location. At this point, you would be also be anticipating a few teams to also start firing on all टेलीग्राम cylinders, यस, right? They चलो know भाई that आपकी स्क्रीन के maybe सामने their मैच chances are done वॉइस and हमने उठा dusted, दिए, थोड़ा सा मिल के especially आते for the हैं. likes of maybe raw officials. They want चलो to भाई go a little लेट्स गो, aggressive, try लेट्स गो to बॉयज. just take down every single soul in front of them. But TRZ, they'll have to be very cautious because they know there's a sliver of chance. Because Sitem, well, they haven't been having good games, have they? Oh yes, Satim, they've not been having the best of the time today and yesterday as well. But on the other side, TRZ, they do have the capability. Yesterday also in one of the game, they did showcase a good performance. They just need to Oh, keep their wow. numbers alive and look at the circle. Perfect circle for both the Mongolian teams. What a time for a Southern Circle, to be honest. What a time. I mean, at this point, for Medical Vibes, we'll say thank you, sir. And just when you were wondering, Shadow, this could be the game for Medical Vibes, it could certainly be one. But at the same point, my fears might turn true because they've got raw officials right beside them. So for Medical Vibes, they've got a lot to lose. They cannot afford even a single casualty right from the start of the game. And seems like, as you can see on the map feed, already shots are being fired by the players of Medical Vibes. So I think both the players, both the players from either of the teams, everybody would be eyeing to get past the bridge. And ठीक है Madcat, बॉयज, surely फिनिशेस निकालने की he's going to be प्रक्रिया hopeful चालू हो चुकी for है. making it across safely, but refuse, constantly just trying to pepper him down with those bullets. He's just one bullet shy of getting a knock on Madcat. But considering Madcat has made it to safety, the big question is, does he have any meds on him? No, neither a gun. So all he tried to do was just try to get the vehicle away from Medical Vibes and making their lives hell over here. Now the big question is, how do Medical Vibes even cross the bridge when they're under constant threat that maybe Madcat might take them down? But they look fearless. They're gonna take they're just gonna walk down their way and try to cross over the bridge. Now this really shows that they've got balls of steel. What question is Madcat? What was he doing in the territory of 4MV? They do know 4MV tends to go towards the side of military base, and every single game is so crucial for the players of TRZ. Maybe Madcat went for that vehicle, and in doing so, he spotted down the players of 4MV and raw officials. Was trying to make a quick escape. एमजी रैनी भाई चलो भाई आ जाओ स्क्रीन के सामने. 4MV पूरा ब्रिज कैंप वाला सिचुएशन. The plus of 4MV rather drawn to his own death, but 4MV, they have a new enemy that is going to be Skylar's Gaming, rather a new victim, because Skylar's Gaming, they are being dealt with. AJ also goes down and looks like Nima is the only खेल गया man टीम के standing साथ from their भाई. side. Early rotation गलत coming सीन, from अब the side of अर्ली Skylar's सीन बहुत Gaming. They तगड़े were होने not वाले भाई. prepared at all for the plus of 4MV, and looks like 4MV, they are getting few free finish points. Yeah, it's a frag fest for them at this point. They're gonna welcome everybody with open arms, and it's now just not Skylar's Gaming also joining the action. It is also Leo Esports from behind, and Doc, I think he's a little unaware of their presence right now. For Medical Vibes, Mr. Smokey, look at that from Leo, and finally Sussex breaks open, and Doc in the worst of positions right now, way too open. I do not know what he was thinking over there, but eventually will have to lose out on his life. It's going to be such a difficult task to get him back back alive, right? Because Mr. Smokey, he's gonna pose constant threat. Now East, oh my god, this is going जल्दी to be जल्दी brutal जाके as there you 4MV go, को right मिलो. out अरे in अरे the अरे अरे open. भाई सब And 4MV Mr. के पीछे Smokey, भाई. this time लियो make sure he does not miss his shots, as for Medical Vibes, they are getting decimated 4MV on one BT after the other. on Apex has 4MV no को थोड़ा other सा BT recourse, guys. will have to back off. And अगर आप again, 4MV के for फैन हो Medical गाइस, Vibes, पेटियां this बांध could have लीजिए been अपनी थोड़ी theirs. सी.
suddenly QEON is full on BB going astray. GG वाला scene है. All the teams in the danger area, not danger area, in the middle slot in the overall ranking, they are engaging in a fight with a plus of 4 MV. Like you said, it's a frag fest. They are enjoying all the frags that are coming in their direction. But Leo Esports, Skylights Gaming, they are trying to survive somehow, especially Nima on a sliver of HP. Where does he go? On one side, 4 MV there bye are the bye. players of Leo Boys, you Esports. know On the other STE. side, there are 4 वेट करो MV. zoom खेला है. There is देखो nowhere to go. And he FX has got and Refuse बचे nothing, हुए. no 4 weapon, एलिमिनेशन no वो निकाल healings, चुके गाइस. nothing इट्स at अ all. डिसेंट And नंबर. 4 MV, समझो चीज yes, को. they did lose गेम 2 के अंदर players, अभी but 8 4 to पॉइंट 3 अगर आप पर points. मैच And निकाल in के their जा रहे हो, home दैट्स द ground, डिसेंट नंबर. that 4 is पॉइंट what it ऑलरेडी is. निकाल There चुके is हैं. a इस team टीम that is की यही already खास बात है waiting कि for them, that are वर्स्ट going to be केस the में भी players of इनके पॉइंट्स I8 and होते ही है. TRZ. दिस द They are in लाइक a fish in a barrel ओवरऑल अगर आप situation. देखते हो, Mama द enjoying the वर्स्ट केस sim, भी but होगा, he has इनके been taken पॉइंट्स down होंगे by the ही players of होंगे. Raw. समझो चीजों को. A perfect knock coming in, क्लियर and इन his द पार्टी. confirmation will be there. Now TRZ, they can't do anything. They are pretty much Also handicapped. guys, And Raw 511 लोग officials, देख they are रहे also हैं. Make being sure to hit the rewarded like and by a subscribe to the few channel and also join our over there. Telegram too. Yeah, I mean, at this point, I don't know. This match is turning really brutal because the two teams that we anticipated would be really easy for them. That was for Miracle Vibes and Stalwart. I think Flight Path Trajectory just played with their hearts. And now they're in the Guys, sudden ऐसे impasse situation where पे ये Stalwart zone have बन जाए तो finally भाई scene managed to अलग make बन it जाते हैं. to Novoripnoi, but it was delayed. But still won't have a lot of trouble getting their loot done. But I8 seem to have taken control over military base, and Apex and Refuse do not really know what they are walking to, their own deaths, because T2K, they've also crossed over. We've got Leo Esports, they've also done that. Nima still lying, hiding, because I think he's the sole survivor for his squad, and at this point, it's better that he remains over there, because it's better to be in the water rather than pop out, because the moment he does that, it's going to be every single territory has been taken away by one or the other team. So it's going to be so difficult for him to survive, especially with nothing on him literally and no HP at all. IHC also trying to take over the bridge. They also want to rotate inside. Nobody, however, is bridge blocking. I think everybody understands the gravity of the situation. Everybody realizes that at this point, if you're going for a bridge fight, you are going to be, prone to fire from multiple directions, especially from T2K. If they take over भाई those zone northern closing zone. hills of the military base, so that's going to be a little tricky for them. And you can Also see guys, a join fight Telegram too. erupting Zone over there. भाई There's T2K मैं सोच रहा हूँ अगला versus zone का Team shift. Leo. एस And एस Leo जी have के had a माफी really नहीं good भाई start to है the game, सील right? सारी Have एस managed आई to टी secure हाई two वोल्टेज डी really का यही पैटर्न है. impactful जोन frags अकॉर्डिंग out ऐसे of चलता है. Apex, डी आर out of एस Medical ठीक है, Vibes, डी आर एस का and भी now ठीक. have a एस टी really good position हो ठीक inside सी नहीं the है. circles. Yes, आई they डोंट नो certainly टीम्स do क्या करेगी भाई. have. जोन क्योंकि On the आने other वाला side, मिलिट्री. TRZ, they're मोस्टली still मिलिट्री के getting ऊपर punished ही by है. the players of बाकी Raw हार्डशिप officials. देखो So कहाँ. many early rotations came in, and few of the teams, well, they were a little late, and now they're getting punished. Yes, we have another fight happening between the players of T2K and Leo Esports. I think we spoke too soon. The numbers of Leos are going down, where Rig has been taken down. Sus also goes down through the hands of Jane over there. Mr. Smokey also bids bye-bye, and looks like Leo Esports are now not looking good, as they have been reduced to only 2 men. Liquid and High Dami so far away. It was a 2v4 situation for them. Yes, they did manage to take down Rig, but it's an easy revival ये coming in. लेफ्ट T2K रैंकिंग सही have वाली है. got 3 defeat points for PMWI वाली. यस themselves. ब्रो बिल्कुल And लाइव I would रैंकिंग say चल they रही है have आपकी a स्क्रीन के very good सामने. position inside the 180 circle. पॉइंट है यहाँ पे But एचटी के. 4 yeah, एमबी 3 के defeat points, good 179, loot, upgraded एनबी के loot, few 178 extra एंड resources in their hands. They are looking pretty 178 good in डीआरएस के. terms of resources. तो ऐसा कंपटीशन देखा Yeah, गाइस. that लाइक they पीएल are में देखने को मिलता था for ना. sure. लो ऐसे में And भी this आ was a गया. much देखो needed न्यू fight पॉइंट्स for टेबल के T2K अकॉर्डिंग. also. प्लेयर दिखाओ And भाई. मेरे हाथ में considering, नहीं है ये kind अपना of मैनेजमेंट in के हाथ में सारा प्लेयर्स वाला the दिखाने का. middle, जैसे जैसे they आपको kind दिखा of रहे हैं आपको मैंने. have got that little bit of a freedom, right, to get a little bit more aggressive, try to collect as many points as they can. And T2K, they've got it in them. It's also an all-star lineup. This is a team that looks really promising. It was just in the finals where we could not see that spell of consistent runs. Now, one game, they're looking so good, so promising. There are certain fights where their players shine individually. But when it comes down to just getting results every single game, when it comes down to playing like the players of DRS, that has been missing. Now, talking about DRS, I think they're yet to cross the circle. In fact, they're yet to get inside the southern island. Without head start point And and we lead. now Yes, they are appreciable. going to be threatened by बहुत a lot ज़्यादा. of teams, especially their closest and their worst counterpart over here, NB Sports, right beside them.
and you've also got the players of high voltage and seal coming through. So what DRS has done is they've kind of established a blockade over the bridge. Now, if these teams tend to cross before them, and we मोहब्बत might करने वाले see a few bodies falling कम down to their hands. Yeah, right now, Data guys, they have managed to take down one player from the T2K. Yes, T2K was also hoping to have the control of the shoreline, where the players of Dead Eyes are placed perfectly. And Turula, sir, with the DP, is trying to pip a few bullets in their direction. But look at Nima walking in the wrong Even direction, Demo, walking Nima right bhai, towards not his a good death, I situation. believe, बढ़िया because Demo is Demo. prepared. But no, he's going to retaliate as भाई he takes down last man Demo over standing there. है for Nima, SG. well, one defeat point already because he is all by himself. Not a good And visuals IHC, for they SG have fans, the guys. numbers and looks like Alex Zone is का ready with BT a आपको grenade पता है to lob zone towards zone का Nima. किसी के हाथ Can में he नहीं find है. the perfect projectile? But no, he gets a confirmation point onto his own teammate that Nima is going to be very happy. Now he's prepared about the barrage of grenades hiding in a corner, and Alex is still looking and hoping to take down Nima. Oh, he's gonna use all his utils, isn't he? At this point, IHC will have to push him over. And Nima, what has he got to lose? But if he can somehow, just break through IHC, take a few more players down, then that would be a huge result for him. But Xiol a little bit faster on his triggers as IHC have managed to successfully eliminate the final player of Scarlet's Gaming, but have taken a huge loss in the form of Demo. And Alex won't find anything. Barely a few bullets, maybe a few smokes here and there, but that's pretty much it, right? Now IHC have to cut on their losses and run, make a dash inside the zone as it's gone further down south. And yes, the circle is finally confirmed to be on the southern island. And this is where Illuminate crew, they're in a good position. Even the players of T2K and Dead Eyes, they might lock horns against each other. But for the likes of Miracle Vibes, I'm really keen to see what can they pull off from here. Mabitex have got a clean path. They can just make it inside the zone. Stalwart, I think they really understand how the circle works. And considering the fact that they have kept all 4 players alive, I really fancy their chances winning a chicken dinner in this लो one. भाई Because जोन की every बीटी single आपकी स्क्रीन time, के सामने I've seen डाटा गाइस circle ऑन like पॉइंट this, जहां से वो रोटेशन Stalwart देते बिल्कुल tends बढ़िया to dominate. They IHC kind of take over. Either they go Y8 towards, that little bit of a यार compound just एसपी northeast ने to पूरा ब्रिज military रखा base. हुआ है That पूरा small फील्डिंग areas बिठा like के रखी है that एचपी mini वहां से आ रही hospital है kind of a डीआरएस आई camp डोंट नो डीआरएस का नेक्स्ट type मूव area. क्या रहने They वाला है take that देखते हैं over, and एसआईटीएम then what they एनबी do वहां is पर है मेन टीम गाइस go फोकस मैं उन पे कर up रहा हूँ towards those hills. They play around the circles like that. And near Zed, all right, he's taking a lot of risk over here. He's anticipating that there'll be few teams, there'll be their nearest competitors, DRS, who would show intent on trying to cross the bridge. So if he can put a stop at even 1 or 2 players of DRS, then that could be a huge blow to DRS, and that would be something that proves to be instrumental in Stalwart's path to glory. On the other side, NB Esports, they were opting for the waterways and Sitim. They were placed perfectly to bring down their numbers. They get a knock onto Fistboy, and Akaze and Mondo can't do pretty much anything. They're just trying and hoping to cross that river bank, and QB also takes a jump. Along with that, his own teammates, Desert and Dobu. But Jiro is providing the necessary information from the backlines. He's still sticking to the main island over there and finds Akaze in the water, delivers hefty damage, but somehow Akaze is still surviving. On the other side, we have the players of Seal Esports as well in the water. Becca enjoying the swim. But more than 4 enemy, my eyes are going to be on to the players of Raw Official, but right now, High Voltage and DRS going up against each other, and Malix takes on Gyante. At the same time, rolls over there. Jiggle takes on Killer YTT, and DRS left with only a single player. That is Delta. How many matches Can he do left at the mercy of the blue? how And many it's a matches 1v3 left situation. after this bro इस Yeah, मैच के kind बाद of a आपके kerfuffle बचे over हैं here. 3 मैचेस With the way these teams are डीआरएस possessing, एज यूजुअल जो सीन high होना था voltage वो हो DRS, चुका है and suddenly DRS are reduced to just Delta, who's got to do anything and everything to survive, at least get enough position points, because the number nice strategy of existing elims that R2. they have is just 1, and that's not going to be enough, especially when they're pursuing that top spot, especially where you've got a team like Stalwart watching over you. And now Wally is the one who's going to be a little ominous over there.
He's not going to take any shots though, but has relayed all the valuable information about Stalwart's whereabouts to his teammate, as Mabitex will sort of regroup, reunite, and then they would head in to the circle. Now, this is one of those circles where teams like I8, they're going to massively favor. यार इज रेड योगी भाई डिप्रेशन में कोई नहीं, टेंशन ना लो, 3 मैचेस और बचे, डोंट वरी गाइस, गैप ऑलरेडी कम है। हाँ, अभी सीन तब होगा अगर इस मैच में अच्छे पॉइंट एसटीई, वाइब्स एंड आपका एक और जो हमारी टीम है एनबी ले जाए तो तब दिक्कत बढ़ सकती है। मीनवाइल एनबी की भी सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं है, और एमवी मैंने जैसा आपको बोला सिंगल मैन है, उनकी भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, बट वो 4 पॉइंट डिसेंट निकाल चुके हैं। एनबी के पास 0 पॉइंट है। इस मैच में एसटी ने अगर पॉइंट निकाल दिए तो सीन वहां पे गलत हो सकता है। बाकी आगे देखो क्या सीन होता है। Zero had to be that sacrificial lamb, right? He was watching over them. Took down a couple of players of NB, as they have also been reduced to just a Kaza. Yes, T2K are also aware of Sitim Esports because it was Sandesh getting the confirmation onto 0. Now Sitim, yes, deploying the soft cover of the smokes to inch closer inside the circle. They have made it into the mainland, but moving inside the circle and finding a safe spot to hold on to is going to be a bit challenging for SITM. Sitim Esports. At the same time, fixes they by are not qualifying right now. They are not in the top 12, or maybe they are at the 12th spot only. Yes, they are on the 12th spot. So yes, they have to bring in the consistency. They have to survive. They have to fight for those placement points and maybe some good elimination points. STE घर वाला ही जोन है ये, नोवो से रोटेशन, good resources onto them, but for MV they don't have the numbers to तीन deal मैंने with एक्शन the wrath of लाइक Stalwart. एसटी का भी वही सीन होता पाए वाला कि Yes, एक they बंदा do तो also want to मतलब होना action ही at है the कहीं very ना early कहीं पे, stages of the आगे game, पीछे but ऊपर talking नीचे, about 4MV, तो looks पहले like ही it's only 3 मैन ही Refuse खेलना है over लास्ट there. सर्कल I तक। can चलो only देखो see आगे क्या Refuse. सीन बनता है। And it's a 1v3 situation, but Sanchar at the mercy of the blue. Maptex Esports right in front of me and of him, and he's going to strike. Is he? No, he's not going to strike. That was a mature decision because he has to move inside the circle along with his teammates. Okay, Memun bhai. Rally, what a way. Okay. Kudos to Baron. Also guys, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो so make sure to hit the like and subscribe to the channel. Action कब मर गया पता ही नहीं लगा ब्रो, वही तो बोल रहा हूँ। Meanwhile लो भाई, NB Esports out, now team have a chance. DRS out है, मतलब वाइब्स का भी सिचुएशन बढ़िया नहीं है, तो इस मैच में SD का चांस हो सकता है अच्छे पॉइंट निकालने का। Meanwhile I8 ने स्टार्टिंग से जोन के फेवर्स अगर आपने देखे होंगे कहाँ पे बनते हैं जोन के, I8 ने कहाँ से स्टार्टिंग से कहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। देखो जोन का शिफ्ट कहाँ पे जाने को देखने को मिलता है। Meanwhile T2K as Dead Eyes guys quite furious with the way they got eliminated. Would be their Nepali counterparts. T2K getting the job done and will have no difficulties in getting Jane back alive. And now the circle kind of taking that concentric shift. I8 still in prime position as for Medical Vibes. In fact, barring Stalwart, none of the teams in the top 4 seem to be having a good time. Delta just the sole player surviving for Medical Vibes. With I guess just ठीक है 11 teams, all right, player. now that's even worse. T2K 6 elimination. Let's go T2K. Let's go. Come back Mangta bhai. Let's go T2K. Anyhow, then they will build up a significant amount of lead. And now IHC, in fact, Godless, where the players of Raw are just banking up on him, and somehow he has to fight against all odds. Can he get even a single knock? The answer is going to be no, sir. As Raw has successfully managed to avert the threat, as Zol and Alex are far behind. Well, Raw officials are trying to mitigate all the threat from the Western front because they are looking for the Western control in their favor, and they have the numbers, whereas IHC, Alex with the grenade is trying to bring some opening, bring down the numbers of Raw official, but he is not going to successfully lob the grenade, and now trying to scuttle back to the safety. And Raw officials, will they allow the players of IHC as they're trying to pepper their vehicles with few bullets? But looks like IHC for now they are safe in a better position. They do have a little bit of the ridge, but one of the vehicle was broken. And top 3 पे कौन है अभी? top 3 पे कौन है right अभी? now Good they are question. walking in the direction of Leo Esports. top 3 पे Are they guys prepared आपकी for टीम Leo है Esports? With the STE। if रुको not, they are IHC, disadvantage. not a Looks good like scene, not a getting good some visuals for high IHC. Gandhi, Leo but bhai, Liquid is going nice to save one. the day for Leo And Esports anti IHC and eliminate the entirety of IHC. पॉइंट्स टेबल कहाँ चला गया भाई? पॉइंट्स टेबल आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा, सो टेलीग्राम
टेलीग्राम nowhere ज्वाइन to कर लेना run, आफ्टर द nowhere मैच. to hide. पॉइंट्स टेबल They आपको had to अपडेट हो जाएगा perish. टेलीग्राम पे. And जस्ट I यहाँ पे see क्या their डिफरेंस run कैसा है has तो been just टेलीग्राम ये आ रहा spiraling है. down, to be मॉडरेटर्स honest. लिंक भी थोड़ा But स्पैम कर देना. Maptex, they'll किस be the पॉइंट का ones कितना गेम है. टॉप पे capitalizing on the गाइज अभी तक हमको situations. And एसटी now, देखने को मिल रही थी, वाइव्स Stalwart देखने को मिल kind रही of थी, sense a little bit of एंड danger. DRS Right एंड around एनबी. military एनबी base. तो They've 0 seen पॉइंट there's लेके गई. someone DRS अगर इस मैच से looking पॉइंट ले over लेती them ना तो वो as एसटी के Nirzad गैप में आ जाती. does the needful. थोड़ा ऊपर नीचे As for वाला सीन. medical vibes, just with 4 eliminations, they wipe the dust. And now, well, at this point, right, this is it. Now, Stalwart, they realize that all their nearby threats have been exterminated, barring that final player from DRS. Delta, it all comes down to him. What can he pull off? If he does something out of the blue, if he can somehow manage to get a top 3 finish, then DRS are still going to be in the race, because आईसी NB में जब Esports, से they've आईसी been dealt a लीव huge किया तब blow. से Same डाउनफॉल शुरू. goes for Miracle Vibes and Stalwart. This is going to pray DRS that they get eliminated sooner or later. But I8, they're pretty much chilling, right? They've got the best compound over there. They've got some Top concrete 7 teams cover hai. to work around Abs. with. As you know, all these teams have a lot of room to play around. It's all about, you know, taking over over those king of the hill positions. DRS hashtag and I 7 think पे Stalwart are एक doing एलिमिनेशन के exactly साथ the same. एलिमिनेट हुई है. So now Nirzad, IC top. अभी all three of रैंकिंग the में मेरे को players लग रहा है trying to close in, एसटीई but यहाँ से लीड Leo बनाने has वाले हैं, spotted क्योंकि Nirzad. अपोनेंट्स And DRS Stalwart know who their वाइब्स next target is going to एनबी be. एलिमिनेट हो चुके हैं. अब एसटी के पास मौका है Now, जितना वो Maptex ज्यादा Esports, पॉइंट यहाँ they से अर्न कर definitely know सके about the तो वो position of लीड ही Stalwart बनाएंगे, Esports, क्योंकि उनका but ऑलरेडी rather than लीड था. picking अब up this देखते हैं fight, टीम्स ने इस Maptex मैच से might कितना be लीड कम करा है. prioritizing the rotation inside the circle where some other team could be waiting for them. Valley is already on the periphery. He can be that sheet anchor to bring his teammates inside the circle. On the other side, we have the players of Raw officials still having the complete Western control in their favor. They're looking very good and strong in terms of the position in the epicenter. We have the players of Leo Esports, but all they have is a little shack to hold on to, and they don't have the numbers. So Stalwarts are looking good if they manage to move inside this circle, but that journey is not going to be easy because they might have to cross paths either with I8 or maybe Raw officials, and from the looks of it, looks like they're heading in the direction of Raw officials. Are the players of Raw prepared for it? Because looks like one player has been knocked down. They are going for the rescue mission. They are not prepared for Stalwart Esports right now. Yeah, and there you go. Yetauta dealing with IC yet again. The signs, the semblances of the previous last night's final wrangle coming through again. And Stalwart really need to stay strong over here. Top's just kind of trying to push it, but this is where Illuminate out of nowhere they come chiming in into the battle. Anish, and now Stalwart Esports are reduced to just वो ashes. ST also eliminated with and, 2 elimination have hashtag. been मतलब ज्यादा गैप eliminated नहीं है, at the ज्यादा गैप sixth नहीं होगा. spot. ST ने ज्यादा गैप And, नहीं this बनाया. is DRS dreadful for hashtag them. 7 थी, And a little 1 bit of a elimination, smile if 6 Delta elimination still hashtag survives, 2 point. तो मतलब because, इस मैच के he बाद गाइस आप surely बोल must सकते have हो read रैंकिंग on the कहीं ना kill कहीं उतनी feed. ही क्लोज रहेगी जितना Stalwarts, थी पहले they've सेकंड been, मैच के बाद. dealt with. थर्ड मैच के बाद भी I do रैंकिंग not उतना know ही if that क्लोज was होने the वाली है. wisest of idea, but that was something that had to be done. Stalwart were kind of out of options, and they had to make the push. Little did they know that Raw was prepared for them. And now we are down to the top 5 teams over here. I8 in prime position for getting the chicken dinner. Rig just hiding in that murky smoke. मैं अभी इंस्टा पे Yetauta अपडेट किया. spots him out. Bro, Grenade doing a little bit of damage, and the second one 3 might years just guys. get the And what do you job think? done. 4-5 टीमें As बची है, there you क्या go. होने वाला है? रॉ Finds that अगर knock, and यहाँ पे T2K हैशटैग 12 आ जाती है ना, must वो be बहुत cussing बहुत themselves as बहुत a ह्यूज test. रहने वाला है. Needs some अगर मैं बात fire, करूँ रॉ but के his teammate परस्पेक्टिव, is far away रॉ from की him. टीम में हैशटैग 16 से हैशटैग 12 आती है ना. अगर आप देखोगे काफी अच्छे मैचेस इन्होंने निकाले अपने पिछले आने वाले टाइम से. तो लेट्स सी क्या सिनारी होता है. मैंने बोला था ना रो मारेगी ओके भाई. और गाइस 837 लोग देख रहे हैं अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हैं, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स गो बॉयज. Last angle also the players of Stalwart Esports rushed directly towards Raw officials where Yetauta was able to bring down their numbers. This time लाइक एंड सब्सक्राइब अभी भी भाई बोल दो. एसटी हारेगी तो एसटी पक्का जीतेगी. अरे ऐसा भी होता है क्या? बाय द वे गाइस वी आर 3 सब्सक्राइबर्स क्लोज. 3 सब्सक्राइबर्स ओनली क्लोज. मात्र 3 सब्सक्राइबर्स क्लोज for 2k मतलब 56.2 कर दो यार सब्सक्राइब. 3 सब्सक्राइबर्स की बात कर दो एंड लाइक कर देना वीडियो को फॉर श्योर. लास्ट डे है गाइस, लास्ट डे. फाइनल्स है, ग्रैंड फाइनल्स. दीवानी ची चलो भाई आ जाओ. when all the chaos will begin, all the hell will loose broke, but Maptex, yes, they are looking good right now. Baron
along with his teammate, having the complete Eastern control. Even the split that is coming from the side of I8, can it favor this situation as Sky comes in with a mini shots, takes on Leo over there, but Okay. Kese is going to retaliate, expose himself, and now Sky deals with Kese as well. Oh yeah, and just when we felt that this could have been the game for Mabitex, they had real good edge control, and suddenly the numbers are starting to dwindle. Baron, he's got his attention elsewhere as Sky capitalizes the situation. In fact, it's a 2-2 split coming in from I8, and that is enough to get the job done. Now just looking forward to explode the vehicles, and that is exactly what they do. And Viper will have no trouble in getting himself back alive, but look at that. रो रहे हो क्या योगी भाई? नीरज भाई, राजपूत भाई, मैं क्यों रोऊंगा भाई? Just proning down, inching the gap in, and this is साथ something साथ और that काम भी कर रहे हैं थोड़ा सा, might not have been prepared for. And this is the point where I8 really need to be watchful, because one wrong step. टीम भी बनानी होती है गाइस, टीम भी बनानी है, वहाँ भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा. I know it's a grand finals, but team भी बनानी है. Meanwhile, okay, Eta Uta from Raw knocked I8. I8 इस मैच में अपने strong कर देगा, क्योंकि I8 का situation already starting of the circle ही अगर आपने देखा होगा बढ़िया था positioning wise. वो बढ़िया, Raw nice 8 elimination. Sky spotted है, Noah भाई. You guys got so many chances to themselves in will complete, but they never do. I think throwing those grenades, and that is exactly what he's doing. भाई He's वेट still करो, surviving. करो. He's still holding on मैं to एक the चीज fort. बोलूँ, किसी भी टीम पे कमेंट मत They have करना. made it into लास्ट the top मिनट four, तक कुछ भी but पॉसिबिलिटी. again a grenade Just comes wait from and the side of watch. Sky, अभी but तक किसी को Claw, कुछ नहीं पता है he's कि just कौन जीता है, trying to कौन नहीं scuttle जीता है, back to the कौन हारा है, CT, कौन जीता है. वेट करो, repositioning himself #1 time कौन and आता है time पीएमडब्ल्यू again, प्ले but कौन Sky नहीं. is मैं having तो the upper बिलीफ hand पे चल रहा हूँ, advantage टॉप 4 onto टीम him. में से कोई भी लेके जा Yeah, सकता I mean, है. at this STE, point, Vibes हो, Raw, NB हो, they're चाहे वो definitely DRS. digging in deep, right? Especially considering they are the team at the extreme bottom of the ocean. They still have managed to make it to the top 4 again. And they will have to do anything and everything to try to make it to the top 3 and illuminate crew. They were looking really promising up until the point Ufis gets taken down. But they still do have that high ground advantage, which they'll have to massively put in to their own favor. Because Sky has to somehow deal with Claw, because he kind of is always threatened, has to stay on his toes, because any single moment, maybe he's dealing with the players of Leo and Claw might strike. So getting a little bit of a reinforcement might not hurt him, because they realize they need to clear off that western angle. And if they can successfully do that, then it could help them in getting another chicken dinner for them. They too had not been the best for Illuminate, but seems like in the final day, they could write their own script. As Leo Esports, in a little bit of a sticky situation, they have to get themselves out from Enemy little Sports shacks is over champion. there, because Okay, you kind bro. of get a lot, you kind of get hindered a अरमान lot. भाई अभी And खत्म नहीं हुआ, you अभी kind मैच इज of, ऑन गोइंग है. 15 मिनट का ही susceptible डिले to होता so है. many grenades Wait and just watch. coming in at your direction. As योगी भाई, Molly, why are you sad? the lonesome भाई player मैं क्यों surviving sad हूँ भाई? so far. You know, Mabitex has already gotten a chicken dinner, and now it's going to be a little far-fetched. Still do have the Grotze though. Just hoping सोनिया भाई that परमिशन could get a few पीएमपीएल्स की तो परमिशन knocks मिल here and जाती है there. ग्लोबली. But I8, they're kind of traversing through पता the ही है, terrain but every PMPL का single time. Now globally look at this जाता play. है. It's a तो yes. 1-1-1. I kind of cannot understand what Viper's intention there is. Let's go because Leo map at I8 a very and lower ground. आपकी है All you raw can do is I8 maybe if चिकन somebody's निकालो pushing at and अपनी Nova or probabilities Sky, को to हाई try कर and दो provide the cover साउथ fire. एशिया Had he चैंपियनशिप gotten a के little लिए. bit इस of मैच में अच्छे altitude over पॉइंट्स there, इक्वल टू then things I8 could जो have अपनी been probability better. को ज्यादा बढ़ा रही है. But For the at the same finals time, लियो I8 just wants to keep है as much दामी of भाई territory एंड control as they मैप का can, लास्ट बंदा जो मैं as बचा the हुआ है final वैली. fight तो लियो के लिए seems काफी to be इंपॉर्टेंट breaking मैच down ऑल्सो है ये, any क्योंकि moment 12 के लिए from मैंने now. आपको ऑलरेडी बोल रखा है. जो Yeah, it's टीम kind टॉप of पे a चल रही है stalemate उनका अलग situation. All कंपटीशन these है, teams are मिड just वाला waiting का for अलग the next circle कंपटीशन चल shift रहा है, एंड यहाँ पे बॉटम and वालों को एक maybe अलग just waiting for कंपटीशन the है फॉर द opponent to come in चैंपियनशिप. any क्योंकि kind यहाँ पे of a 4 mistake. टीम आज के दिन से Valley is एलिमिनेट हो having the जाएगी. वो god gun, that is चैंपियनशिप का पार्ट Grotza, नहीं होगी, जो deadliest साउथ gun एशिया in the चैंपियनशिप close है, क्योंकि range, टॉप and 12 raw टीम ही officials क्वालिफाई looks होनी like है. claw position मीनवाइल was रॉ यहाँ really से near. एलिमिनेट He's हुई been है dealt with, #4 he के has been अंदर, एंड 8 eliminated, पॉइंट but मतलब still अच्छा a डबल good डिजिट run पॉइंट from the लेके side गई of है raw यहाँ से. officials in नाउ this आपकी one. स्क्रीन के Now सामने we are 3 left with टीम्स only 3 अलाइव है, teams and 6 players remaining. The जो है split, like आपकी you said, मैप coming from the I8 side एंड of लियो. I8. क्या लग Could रहा है be गाइस, किसका चिकन troublesome आने for वाला the है? एक बार players of नीचे कमेंट Leo करके जरूर because बताना. एंड ऑल्सो yes, गाइस they do ज्वाइन have आवर the height टेलीग्राम सर्वर. advantage. अगर The आपको grenades ओवरऑल are रैंकिंग already जाननी है, being कौन टॉप पे है exchanged, कौन नहीं है, but no तो हमारे connection टेलीग्राम सर्वर whatsoever को on ज्वाइन the कर other लेना. side. लिंक आ Liquid रहा is है, also पुनीत भाई ने trying to पूरा दे रखा है, retaliate सो with the उसको ज्वाइन grenade. कर लेना. मैच खत्म होने के बाद आपको Aldami's जितनी still भी hiding रैंकिंग्स over है आपको there. हमारे टेलीग्राम And look सर्वर at पे Sky, देखने he's को मिल जाएगी. crawling his way, inching closer to get some information onto the position of Leo's. But लेट्स गो Valley, I8. he can be that लेट्स ugly गो thorn लेट्स गो because he's लियो been 2. so दोनों के लिए silent इंपॉर्टेंट up मैच है, until now, दोनों को not फुल making सपोर्ट है इस any मैच kind के of अंदर. sound.
not giving any sound cue, but he needs to be aware of Nova X, because look at the flank angle which Nova X is holding on to. No one has any idea about his position, and this was so close, and finally Haidami takes down Sky over there. Sky shows himself, and now he has been punished and dealt with. He was a dead man walking. And this exactly happens in the final circle if you do not have teammates near you to kind of trade you off. And this is now doable for Leo Esports as Sky will get some aid. ठीक है भाई, लियो important knock on नोवा Liquid. भाई 5 Now, this eliminations completely आई changes है, the स्काई भाई dynamics यहाँ because पे Hai ऑलरेडी Dami नॉक्ड है, is दामी left to भाई fend दामी for भाई himself over गोइंग here. With the revive on Sky, I8 have taken complete control over this game. Haidami just hiding up behind the little box. नेड But बढ़िया for नेड how हो सकता है, long दो can टीम they बची do है, that? लियो As now एंड he's हियर वी गो exposed i8 and का the चिकन grenade डिनर। gets the एंड job गाइस एक बार जीजी i8 लियो मैब एंड रॉ कर देना, इस मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है, बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड गाइस ओवरऑल रैंकिंग जो है हमारी टेलीग्राम पे आ चुके, जाके देख लो कितना डिफरेंस है। आपको ऐसे बता देता हूँ, #1 पे स्टिल स्टॉलवर्ड है, वाइब सेकंड पे, थर्ड पे एनबी है, एंड डीआरएस अगेन ऑन सेम रैंकिंग है जो पिछले मैच की थी, बट पॉइंट्स का गैप अगर आप देखोगे थोड़ा सा और बढ़ चुका है। स्टॉलवर्ड का जो पहले 9 पॉइंट का था, #1 टू डीआरएस, वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। सो क्या है पॉइंट्स टेबल, क्या है पॉइंट्स गैप सॉरी क्या गैप है, सारा का सारा गाइस हमारे टेलीग्राम पे, गाइस टेलीग्राम का लिंक आ रहा है, जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। गाइज जो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था, 2 मिनट रुको। एंड गाइज इस अगर आप चैनल पे नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड टेलीग्राम पे हमने कर लिया आपका 2 मिनट रुको, रैंकिंग्स आफ्टर मैच नंबर 3 अगेन, टॉप टीम्स अर्ली elimination, three matches, now 3 matches, tough competition। तो गाइस जो हमारी रैंकिंग थी हम टेलीग्राम पे डाल चुके हैं, आप भी जाओ टेलीग्राम पे देख लो, जो भी रैंकिंग पॉइंट्स है डाल दिए, एंड कमेंट करके बताओ आप भी किसको सपोर्ट करो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई ये क्या आ गया, ब्रेक द लिमिट, लो अच्छा ये वो है, ये क्या आ गया, वेलकम टू। चलो गाइस आपकी चैट पढ़ना स्टार्ट करो, बाकी टेलीग्राम आ गया होगा, जाके ज्वाइन कर लो, जल्दी से फास्ट जाके देख लो, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो सिनारियोज है, आपको कमेंट करना है, कौन सी टीम को सपोर्ट करे वो भी कमेंट करके बता देना। बाय द वे 400 लोग देख रहे हैं अभी, और ज्यादा मजा आने वाला है। वो गाइस चैट खोलने दो, चैट खुल गई है, चलो भाई। कुणाल ओके, क्या ओके भाई क्या लिख रहे हैं, ओके क्या लिख यार, ओके नाम का ही हेड। चलो भाई टेलीग्राम आ गए, ताची भाई ने भी दे दिया, जाके ज्वाइन कर लो, रैंकिंग देख लो, सारी मैं अपडेट कर चुका हूँ, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने आ ही रही है। 8 एलिमिनेशन भाई, संदेश भाई टीटू के बहुत ज्यादा जॉर्ड परफॉर्मेंस, संदेश भाई बहुत ज्यादा प्यारा। रैंकिंग अभी वैसे आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी। बाय द वे गाइस इस मैच के बाद टीटू के स्पोर्ट्स डूइंग वेल यार, 1 2 3 4 5 6 6th रैंक पे टीटू के का कमबैक हो चुका है 154 पॉइंट के साथ। मैप टेक ओ हो टीटू के ऑल्सो इन द रेस फॉर द टॉप 3 आई गेस, और अच्छा खेल लिया तो सिचुएशन क्या पता क्या टीटू के बना दे, बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस, स्काईलाइज गेमिंग को यहाँ पे ओवरटेक कर लिया है भाई।
सारी की सारी डिटेल्स जो है वो हमारे टेलीग्राम पे आ चुके हैं, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो गाइस। लिंक आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। इताजी की पिटाई, डीआरएस फॉर द विन। यस सूरज भाई, डीआरएस का अभी अगर मैं गैप देखूं, डीआरएस 173 एंड 183, 11 पॉइंट का गैप है। #1 स्टॉलवर्डी है एंड डीआरएस #4 पे ही है। सिर्फ 11 पॉइंट का गैप है जो कवर किया जा सकता है थर्ड मैच के अंदर। लेट्स गो डीआरएस वाइब्स। 180 पॉइंट, 4 पॉइंट का गैप #1 से। एनबी स्पोर्ट्स का 5 पॉइंट का गैप है। ऐसा मेरे को आईपीएल की घंटी आ गई, बोले आईपीएल वाले बोले टीम बना ले जाके। मैच नंबर ही टॉप अर्ली एलिमिनेशन। चलो भाई, ओवरऑल स्टैंडिंग अभी आपके लाइव में भी आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर। चलो बढ़िया, अभी चीजें बहुत फास्ट फास्ट दिखाई जा रही है इस मैच का सिनारियो। बाय द वे गाइस, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। वीडियो का संदेश 8 किल्स बट नो वन साइड ओपी। कितना जेलस मैच देख। सिस्टम ऑफ डाउन नहीं भाई, T2K ओपी अभी T2K कर सकती है सिस्टम ऑफ डाउन, एज आई टोल्ड यू। T2K संदेश ओपी इन द चैट। संदेश भाई फर्स्ट मैच भी बढ़िया खेले यार, संदेश भाई ने एंट्रीज भी निकाली एंड इस मैच में भी बढ़िया। T2K लास्ट डे पे एंड लाइक जब प्रेशर है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है एंड T2K ने यहाँ पे ओवरटेक कर लिया स्काईलेस गेमिंग को एंड #5 आने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट का गैप है। अभी ओवरऑल रैंकिंग आएगी तो मैं दिखाऊंगा। सो T2K प्लेइंग गुड, डैम गुड। आगे और ज्यादा चीजें बदलने वाली है एंड 150 3 मैचेस में यार टफ है यार, मतलब 4 टीमें ऊपर से कोई ना कोई तो मारेगी यार। एक दो क्या पता, 2 में क्या पता, 3 में मार दे, एक में तो पक्का ही मारेगी। T2K अगर कल का दिन उनका डाउन नहीं जाता ना, T2K का अगर एक दो अच्छे मैचेस हो जाते तो आज के दिन पे सीन बन सकता था भाई, समझ रहे हो? आज के दिन पे तगड़ा सीन बन जाता। चलो कोई नहीं, देखते आगे क्या होता है। संदेश ओपीएस ब्रो। PMSL लास्ट मैच ब्रो। यस ब्रो, अभी अभी तो नहीं होगा अभी। अच्छा फोर्थ, अभी तो फोर्थ मैच स्टार्ट है ना इसका। फिफ्थ में उनका लास्ट मैच होता है भाई। 4 MV डोमिनेशन इनकमिंग मैन। देखो भाई, किसी भी टीम को कम मत समझो, टीम को कम मत समझो, देखो अनवॉच करो। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूठ जाऊं। आओ। चलो डूजैक, देश इज ओपी। ओके एमएफपी रैंकिंग्स गाइस, हु इज नियर टू विन। लो भाई, लेट्स गो। फोर्थ मैच ऑन योर स्क्रीन गाइस, T2K DRS ST 4MV। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंड किसको सपोर्ट कर रहे हो इस मैच के अंदर? प्लेयर्स आर रेडी, फुल बूम बाम स्पीड के साथ सारे प्लेयर्स। फेसेस एक्सप्रेशंस आप देख सकते हो। व्हाट इज द प्रेशर फॉर प्लेयर्स और नॉट। लाओ भाई, आपका मैच नंबर 4 हो चुका है स्टार्ट। मीरामार, इसके बाद टैनॉक एंड लास्ट मैच होगा इरेंगल का, द ऊजीएस्ट मैप। स्टार्ट इट मीरामार ऑन योर स्क्रीन बॉयज। And desserts and we find or rather on our path to find whoever gets the chicken dinner over here will have a major advantage, at least out of those top 4 teams that we have in front of us. So as we head in, it's a decent default flight path. We are looking
from water treatment towards Los Egos. None of एनबी these किस teams are कंट्री going to की have a टीम lot है? of एनबी किस trouble कंट्री की टीम है? dropping down एनबी below. आपकी Today, गाइस the कंट्री first की जो टीम है zone वो that we है मतलब witnessed बांग्लादेश in the का first स्लॉट game है of बट Miramar मंगोलियन उनके was a little प्लेयर्स हैं. bit down south, and it went towards Minas de Valley, टीम पे लैंड somewhere क्यों नहीं हो around रहा है ब्रो? पता that नहीं यार, ये region, or मुझे a little नहीं bit पता होगा भाई. eastern to बाय द that वे थर्ड side. मैच स्टार्ट हो And चुका है, आ we जाओ. did see, देखते हैं इस मैच well, में the क्या चीज chicken dinner देखने को went to मिलती है. हर एक Mappetex. मैच में कुछ ना But कुछ this देखने को time, मिल रहा है. I really want शैनॉक to में see हमको something क्लैश happening around ड्रॉप trade देखने को places. मिला बट वो फाइट इतना हो What नहीं about पाया you? स्टार्टिंग Oh, I would एंगेजमेंट. love to see कैड something गाइस happening एंड towards आपका the हाई northern वोल्टेज side, का be सेकंड में it हमको जोन Oasis, देखने को Crater मिला, Fields, even इंटरेस्टिंग the मिलिट्री वाला. territory तो around देखते हैं इस Crater मैच Fields का is क्या not so एक easy की to हाईलाइट play फैक्टर around. We रहेगा have जो हर एक certain मैच में हमको bridges, देखने certain को मिल higher रहा है. grounds, कंपटीशन इज certain lower dips. So कांस्टेंट फॉर that ऑल द टीम्स area जो भी टीम्स itself is परफॉर्मेंस not दे रही है, बट easily चीजें जो easy to play लक around के with, and अकॉर्डिंग at the हमको same देखने को time, मिल रही है वो so भी है. many teams don't ये have पहला so much नशा यस मेरे information. भाई. If you're a team dropping towards PRSIA or towards southern side, you are not so much ओके aware of the geography ओके. of Crater कौन की Fields, but looks करवटें like एंड your wishes शिफ्ट्स are क्या not रहेंगे going to सेकंड be सर्कल्स granted के? because Crater दैट Fields विल is बी द out of the डिसाइडिंग picture. फैक्टर. But maybe we और can जोन have a ठीक है, circle काफी टीम्स somewhere तो मजे towards से लूट power grid. करेगी, मजे से That अपने could be a स्टॉप्स पे possibility. If जाने that वाली है. happens, well, the players of EO, सेंट्रिक they are जोन going to आप be बोल very सकते happy. हो, काफी सारी टीम Well, I के mean, at लिए this point, हाई yeah, वोल्टेज. few teams like let's say Stalwart, if they can successfully, take over those hills, they're going to be really happy for about that. DRS, I think Sitem had always been सपने posing a दे constant threat, गया but वो things seem to be a little different हजारों over there. रंग के. Sitem, they've decided they'll be sitting it out at Los Leones I8. However, they are not showing signs of getting towards Los Leones. Maybe they will eventually, but they're kind of looting out at the, just those exterior parts of Los Leones. That is what their intention is, which is kind of visible right now. अजय ठाकुर साहब Leo बोलिए. Esports, we've always seen them. They kind of go around टीम with में that बनाई नहीं रहा, आज spread, खेल ही नहीं रहा. 1-1-1-1. They loot and then they sort of rendezvous with each other, आज and नहीं खेल. then they kind of tend to take another position. High उनकी voltage, however, they've taken over Picardo. So they're going to be really happy with where they are right now, or they need to get their loot done. And this particular circle, I think, kind of tends to end mostly around the eastern side of El Pozo, sometimes around the Picardo Hills. So it's going to be interesting as to see who the circle favors in this one game, because IHC, I think they've shown to be one of those teams that has kind of really faded out with every passing day in the grand finals, right? They were kind of in the top 4, and then as the days passed, they kind of went down. And at the point where they're not at the best of positions, to be honest, way down below. So not where they're supposed to be. They're still safe. They will still qualify for the SE Championship, but not the way I would have seen IHC done that. 100% agree. The way they started the grand finals, day number 1, IHC was performing really good. In one of the send-off, they came on the 4th spot. Then again, they were delivering good performances. Yesterday also not so shabby, but today, IHC, even in the previous game, they were in the bottom 4 in the match ranking. So yes, IHC, they will qualify for the SAC, but they really need to work on few things, the mistakes which are being happening, so that they are looking super strong for the SAC. But talking about this particular team, 4MV as well, last Miramar looked like is the game for the plus of 4MV, considering their drop location, the circle, it was the way it was formed. But right now, 4MV, this still can have the complete southern control in the favor, because the only team that is coming from the southern side are the plus of raw officials, which 4MV are aware of. लो So भाई, they are going to be 4MV prepared काफी about the इंपॉर्टेंट plus मैच है of भाई इनके लिए भी. officials. वाह On the वाह, other side, मिस्टर talking मूव ऑन about क्या हो गया? team, वाह वाह that is in a very good spot are the players of NB Esports. Even NB भाई. Esports, फेस they रील are को करो also बहुत looking जल्दी for a भाई. chicken आयोगी dinner गेमर्स, fixes, डू यू because yes, they're showcasing a consistent performance. Previous Miramar, they came so very close to getting that chicken dinner. So this time, maybe they'll be looking forward to it, because the El Pozo entire control मेरे is in the कमेंट hands का of भी दे दो. NB क्या दे दे Esports. भाई आपके Yeah, कमेंट I का? mean, for NB चलो भाई, Esports, apart एनबी from that स्पोर्ट्स first Miramar काफी game, इंपॉर्टेंट मैच this है next two सारी haven't really टीम्स के लिए जो got टॉप 4 पे gone the चल way रही है. they वन दो planned, T2K right? के So it's कमबैक been a little bit of a काफी setback इंटरेस्टिंग for देखने them, को and मिले this हैं is आज के दिन perfectly पे. the मतलब time to T2K redeem का ये वाला themselves. This सीन is कल के दिन पे हल्का the सा भी शैडो exact मिल game जाता where they तो have आपकी to टॉप have 5 to get टीम a few बैटल कर रही points होती. अभी भी on 3 board, मैचेस बचे at इस मैचेस least में. आई डोंट 10 नो क्या to होगा still क्या नहीं keep होगा. them in the क्या race पता for T2K इस that मैच में काफी number अच्छा 1 खेल spot. जाए But एंड डबल डिजिट NB 20-25 Esports, पॉइंट I mean, निकाल दे. तो
what they did गैप in जो है Myanmar, ऊपर they वो will और have ज्यादा to क्लोज हो replicate जाएगा, that बट yet डिपेंड करेगा again. Now, टॉप टीम talking की about the परफॉर्मेंस। others, right? टॉप The टीम की कैसी counterparts, परफॉर्मेंस है, एंड जो especially उसके नीचे Stalwart. जस्ट अगर I मैं mean, बात करूँ Stalwart टॉप seem to पे be अभी surrounded STE, from all देन sides. वाइब्स Now, है, we've देन seen NB, देन Stalwart in DRS है, multiple DRS situations के बाद just, मैप है, एंड उसके बाद T2K especially है, in मतलब Wrangle, they 6th रैंक पे, kind of बट tend to डिफरेंस play 3 around 4 the पॉइंट का edges. ही है। So it's kind of really interesting to see what sort of an approach we get to see from their side in this particular game. But talking about the rest of the pack, if you take a look at Skylights Gaming, a team that was absolutely dominating day number 2, suddenly have vanished from the face of earth at day number 3. Just when we thought, you know, if Skylights gets to a really good start, I think they could also have been one of the contenders to take the top spot. But seems that's not the case, as High Voltage getting some crucial information there on the players of Leo. And will not take any shots, will not threaten them, because there's no point. Even if they get a knock, they really cannot go in for the push अभी भाई and यूडू गंदा मारी get लास्ट the मैच squad में wipe. And for now, I mean, it #4135K still could be anybody's साथ circle as long as they're #111 secured over पॉइंट लीड there. में। If High Voltage could get control okay over the southern boys, Picado nice. Hills, then that could be MI won, really fruitful okay, for nice. them. But at the same time, Congratulations it to is MI getting fans. contested. Maybe Let me CE update the Esports has rankings, shown some ज्यादा नहीं कर सकते हो intentions guys, to रैंकिंग mark T2 के that लिए as जैसे मैंने their आपको बोला territory. काफी इंपॉर्टेंट वाला मैच रहने वाला है। Could be possible because they are also in the close proximity. But talking about T2K Esports, this team has stepped up. The way they are picking fights this time, they are winning majority of them. They are getting good elimination points. Yes, they are not able to come in top 5 Guys. in every game, but still, they are at least getting good points in their favor. Consistent performance is coming from their side. But as compared to week number 3, the where they were dominating the entire lobby in the league plays, that T2K is still missing. For TRZ, well, last game didn't go in their favor. They were trying to go from the waterways where they were picked off, ओ and भाई, in fact, ओ भाई, TRZ became the first team to be भाई eliminated भाई from भाई the भाई lobby. भाई 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 So yeah, क्या लगी TRZ चला भाई they गेमर are also पटलो को कैप्टन hoping to बनाया deliver एरिन a भाई very एरिन good भाई एरिन भाई performance in this one. टीम नहीं Because बनेगी even their फिर स्ट्रीम qualification नहीं कर is at पाऊंगा stake. आज But टीम talking छोड़ about रहा हूँ Raw मैं officials, टीम this नहीं is हो a पाएगी team फिर that प्रॉपर is भी टीम का ही fighting देख रहा था with फिर वो tooth ना and ध्यान nail to भटक जाता है फिर qualify मूवमेंट नहीं दिखते बहुत qualify for सारे the SAC. कहीं अच्छा The कोई way प्लेयर they खेल जाता है placed कोई in टीम the अच्छा खेल जाती है last game is वो नहीं worth होता 12 शो points to their मैं name. बीच में All आऊंगा they Yeah. need is a फिर आपको chicken dinner. लगेगा कि They are उसको नहीं बोला hoping for the ये chicken था dinner, वैसा था and if सो they काफी get मूवमेंट it छूट in जाते this तो one, मैं इग्नोर ही कर रहा maybe हूँ they can qualify. भैया The नोवा का chances of नोवा है नहीं qualifying भाई can increase a मेरे को लग रहा है tad bit. तुमने शायद ये जानबूझ Yeah, के I think for Raw officials, ओवरऑल they've been स्टैंडिंग बता दो hitting the भाई बहुत markers टफ right, especially कंपटीशन in है the previous मैं लाइक game. Made a टेलीग्राम पे really अपडेट कर quick देता हूँ लिंक दे दो rotation गाइस down टेलीग्राम पे south, जाके देख लो and जो भी ensured कंपनी they went out for fishing pretty early. ये And who डिसाइडर were the मैच victims? पीएमएसएल I का think यस was none other डिसाइडर than तो QEON नहीं TRC. बोल They were सकते kind of लास्ट left मैच तक stranded, कॉल जाने and वाली that's the सेम result of जैसा which यहाँ जैसे था वैसे उसके you know, the players of Raw managed to get a really good game. And the big question, however, is it going to be too late for them? Because at this point, they have no room for error, right? One bad game, and it is done and dusted for Raw officials. And that would just kind of break my heart, because we've seen this team, especially from the last wrangle yesterday to here, they've been getting some decent agree with points your, on board. It was just with that you first when team day new- that they kind of completely messed up. And this is the circle shift that I was talking about, right? This kind of goes towards the southern Picado Hills, where Seal has already established the dominion, where there's some slight room where either Sitim or High Voltage could benefit from there. But High Voltage, भाई knowing योर them, they're प्रेडिक्शन not ऑन gonna हैशटैग come out of भाई their compound यहाँ पे just तो मैं कुछ yet. नहीं कर They've got सकता the वहाँ core भी मैं कुछ building. नहीं कर They सकता could, भाई you know, बाद just में आप remain मुझे over there. बोलोगे मुझे But for पता है Miracle अभी जोन Vibes देख लो seem to, The you shift know, show बहुत ज्यादा intentions बढ़िया of trying to contest that. यही At the जोन की same time, we've तो got a गाइस plethora भाई सच of बता रहा teams हूँ trying to get in close, and this is not going to be good news for the likes of High Voltage or maybe the others. Even for Medical Vibes, might just get caught in the crossfires as Leo. सब क्लोज They've got one of their धीरे players down, but 2023 चल nothing रहा much to worry भाई about. की He's in जमाने safe covers. He'll have no भाई हमको trouble इनविटेशन getting back on की his जरूरत toes. है And Mr. Smokey is back. At the same time, Leo Esports, the way this team has improved their gameplay in the grand finals. और was टीम्स I do क्वालीफाई remember करेंगे on the एसएससी के very लिए यस first मेरे day, भाई 4 they एमवी were का फेवर struggling. कर रहा है यप Their players were getting picked off out in the open. They were not able to provide the हो necessary हो cover fire वाओ during the initial हैंडिंग तो है stages, भाई during the mid rotations. They were getting off guard. But now Leo Esports, बहुत yes, बढ़िया they are still हैंडिंग तो है playing भाई in a split. But this time, it's a 2v2 ब्रो क्या split हैशटैग that वन is डायरेक्टली working in their पीएमडब्ल्यू हो favor. जाएगी यस They मेरे भाई know हैशटैग वन when to डायरेक्टली regroup. They have read पीएमडब्ल्यू onto their जाने opponent's वाली है rotations. So this time they are looking much prepared. आगे And देखो every time कंपटीशन Leo से मेरा Esports मारे find थोड़ा सा themselves स्टार्टिंग in a में very आपको good spot inside the दो पेज circle. चीजें देखने को Now मिलेंगी also एंड they're पहुंचते having the पहुंचते control of those और Picado क्रिटिकल hills, बनता रहेगा आपका scouting एंड the area.
moving a little bit more towards the center of the टीम्स circle. काफी But क्लोज talking पे about ओ 4MV, एनवी ओ well, मैं they have लियो NV Esports बैरन in the लूज close proximity, रूल्स भाई को यहाँ but पर nothing is really going to फिनिश happen. करा NV Esports, they are going to mind their TRS own business and find a good compound for सिंगल themselves. So मतलब एक nothing जो प्लेयर है उनका यहाँ पे happening डाउन हो towards the चुका side है of एंड किल 4MV. फीड But टीम्स पड़ somewhere else रही on the होगी map, looks लाइक like the players of स्पेशली DRS जो are अभी suffering कंपटीशन के because लाइन their पे numbers have टीम्स है been brought down तो to डीआरएस 3. को है मेनली अभी Yeah, I पॉइंट think निकालने इस this मैच is से not good news for लास्ट गेम वाला DRS. मैच काफी And this is सर्कल ने ought to बीटी happen. कर And they दिया have नहीं तो been काफी facing टीम अगर पॉइंट those निकालती तो constant गैप threat को every कम कर single सकती थी time, लास्ट right? मैच से बट Trying to सेम get खेला है inside the सेम circles परफॉर्मेंस in लिया लास्ट मैच Miramar. में टीम्स के लिए And जिनके लिए इंपॉर्टेंट now, मैच है वो आपकी स्क्रीन के especially सामने आ रहे with हैं one सारी man की सारी down, they टीम्स have to play with 3. It's still fine. पीएमजीसी जनवरी They में can होगा still do इस that. साल होगा But और now they will not पीएमजीसी get that आपका much of नवंबर में होता room है and space दिसंबर के to टाइम just में move around as Sitim managed to get a knock for themselves, and they're going to be happy. As many knocks, that is going to be really helpful in them trying to चांस है solidify रूल this को this क्यों spot तोड़ा in the top 12. अरे अरे रुको But सबर as करो things are right now, रोटेशन not a lot of fights have टाइम पे broken out, and we can रोटेशन करती feel है the ना कोई टीम intensity हो गया आगे of पीछे these teams, the स्पॉट कर pressure लिया that होगा they are under. भाई And I'm मोस्टली still, स्काउटिंग वगैरह kind कर of रहे होंगे hoping to see एंट्रीज the का wild टाइम होता dogs to kind है of यही टाइम just रहता come out of nowhere, just try to देखो आगे cause the सीन क्या बनता chaos है in the जस्ट wheel, स्टार्टिंग ऑफ द and मैच ब्रो then अभी आपके सर्कल्स just आगे जाने हैं अभी अल्फा भी आएगा destroy the dreams of a few of those top teams. But Salvat, like you can see, they've taken over the Picado Hills. High voltage have gone a little down south, and there you go. There you go. We had, just said about a few iterations of this circle, right? One of which was over those southern Picado Hills, and that seems to come true. As Raw, I don't know, whoever their IGL is making some really good calls over there. Again at the center spot. But that is where things get a lot more difficult. Now, a lot of teams would be trying to contest for that position. Now, especially with for medical vibes moving around, for medical vibes need to exercise some caution. They need to be disciplined about their way of approach because look at them. They've got Leo Guys, क्या लग रहा है क्या होने वाला है from मुझे their तो अलग ही backlines. वाइब आ You've रही got है Skylight अरे Gaming गेम any single moment. Even Starwood could knock at their doors, and it's going to be really Bro, Scree का मुझे नहीं पता but try Peak and का get is inside the circle with so many teams keeping watch as Precious. He is on the verge ऐसे of चैंपियनशिप के losing लिए his ब्रो precious life ऐसे over there चैंपियनशिप because में Dead पीएमडब्ल्यू Eyes, की कोई they have to क्लैरिफिकेशन tuck नहीं their है tails and Okay, run. No T2K. other options. If they kind of try to Okay, force nice that one, Jin revival, bhai. they're gonna face more losses and डाडा now to गाइस make things अगेन worse, यार डाडा even गाइस को True करना Love, पड़ेगा he's क्योंकि fallen अभी down. अगर आप देखते हो मैचेस बहुत कम है Things are not #12 में looking कितना easy for the कंपटीशन हो players रहा of है आप Dead देख रहे Eyes. होंगे Even making an नीचे escape रॉ was अच्छा not खेलना so स्टार्ट कर easy. They lost few है ना players and आइए अपने को Sir स्ट्रॉन्ग is करते जा रही है trying, टॉप but 12 other के players लिए of T2K डीओ going to अपने आप hunt को for them. स्ट्रॉन्ग कर I रही है don't think पॉइंट्स so. निकाल रही है Jane, सो the यहाँ पे vehicle डाडा गाइस gets a के लिए confirmation काफी point onto इंपॉर्टेंट रहने True वाला है Love, कि sir. एटलीस्ट And हर एक TRS मैच से even डिसेंट पॉइंट they लेके have जाए कि down to एंड 3 तक men and लाइक Dead एक Eyes अच्छा down to जोन भी 2 आ जाए तो men. उसको कन्वर्ट And कर सके T2K, they are still बाकी having नहीं the तो एंड के edge लिए काफी control दिक्कत हो under जाएगी the एंड finger. टॉप They are 12 aware आना of इज the द मेन rotation गोल that फॉर is द coming टीम्स from the क्योंकि side of साउथ एशिया Maptex चैंपियंस Esports, जैसा and आप looks सभी को like पता है Seog is ready, and the reinforcement is also coming in. The call has been made, and Seog is waiting for the player to be out in the open. First shots coming from the side of Seog, but no connection whatsoever. Now Maptex, they are PMSL का aware क्या वो of चल the रहा है ब्रो players of अभी 5th मैच T2K, ऑनगोइंग but Rick can be the cheeky player who can go for the flank angle onto Maptex because he is a little far away from his teammates. Now grenades are coming in, and Valley just survived that grenade. Oh yeah, I mean at this point, Maptex have just that advantage of playing around the ridges. Still under that dip though. कितनी if टीम T2K PMW आ can जाएगी take ब्रो over यहाँ the से एक ही hills जाएगी हैशटैग and ब्रो PMPL से maybe एक ही टीम Week ने or जाना Chain है could आप get the कितनी बार control पूछो over the ये eastern जो part of PM where वो है Maptex ना are, आपका but just try to pincer PMWI them वो through, एक PMPL and से एक ही that टीम ने could जाना है be आप जितनी बार a पूछोगे death वो एक trap ही टीम for रहेगी Maptex. But we know Maptex have been looking really sharp, really good in this particular map especially. So they should have a few tricks up their sleeves. As Sandesh applying constant pressure with all those grenades just hitting right over them. But one good knock and T2K, we might see them just charging in. Now the Molotovs have been flung, trying to flush the players out of their hiding, but it's kind of in vain, right? Because Maptex have so much room to play around this spot. And Cassie, he has to keep watch. And Rig has done exactly what I was hoping him to do. But Chain is in a really twisted position right now. If he could change his spot and go and assist Rig and try to get a different angle, then maybe T2K could be able to see this through. But seems like they want to escape. They want to make a run to get themselves inside the circle because it's pointless trying to break open a fight over here as Rig has found the big sharks in the ocean, and that's going to be in the form of DRS. Two more players getting taken down, and Killer
Oh, that's just dreadful for DRS at this point. DRS, they were also trying to make the rotation from the eastern side. Train to All kill these proving teams, look how every busy the time still eastern people don't area is support of the them. circle. And अरिन भाई सब करते हैं, बोलोगे ना आप ऐसा तो बंदों के मन में ऐसी थॉट आएगा कि नहीं, सब करते हैं support. lobs a perfect grenade towards Gyante, and with that DRS Still, they have not been support. eliminated. अरिन भाई with just a जितना single आप point to मतलब their name. आपका ये Even आपका Slayers थॉट है are कि being लोग नहीं best करते, of बट लोग position right करते now, हैं. but Maptex, they are coming under समझ रहे हो heavy चीजों को? fire from the side अब of आप ऐसा TRZ. परसेप्शन As बना Steel दोगे Shot तो वो blows एक up the अलग vehicle परसेप्शन and चले जाएगा eliminates the लोगों को माइंड में, entirety आप of जैसे Maptex बोल. Esports. Kudos to the third party that came in. But now we are left with Okay, 14 teams, 2 STE teams and already high eliminated. voltage Even दोनों के लिए Starbuck बहुत Esports are important also मैच है. opening things against high voltage, where Assassin has been taken down. Even Zed has been down, so trades are coming back and forth. Okay, And I see knock takes दिया over परवीन the भाई over को. there. Now high voltage यहाँ पे are left दो with knock only है. 2 players. Yeah, high voltage. And यहाँ पे एक already finish है. And indeed, And here we mulling this go, knock is going to STE be early elimination. really, really मतलब crucial टीम के as, पास the मौका. numbers of Stalwart have been diminished यहाँ पे as high HV ने voltage have एलिमिनेट करा है, successfully मतलब टीम managed to कौन सी है eliminate जिनके Stalwart. पास मौका है? And this is a पी huge के shock, पास, वाइब्स especially के with पास, DRS and DRS के Stalwart पास getting मौका, taken down so T2K early के as पास मौका, IHC मैप के पास decide to मौका, just ज्यादा knock से on the ज्यादा doors पॉइंट of अर्न करने Sitem का. as dessert. एंड इस मैच He's के बाद gonna हो सकता है defend आपको with all हैशटैग his 1 life चेंज and होता हुआ all his दिखाई दे. might as लास्ट दो Ziol मैचेस से decides to ST charge टॉप पे in थी, with लेकिन the अब DBS हो सकता as है Dessert इस want मैच to में कोई नया reposition बंदा हो. himself, Ziol but will not be नॉक spared. एंड फिनिश. Show no SITM काफी mercy इंपॉर्टेंट मैच है इनके as लिए he भी, क्योंकि falls हैशटैग down 12 के लिए as, फाइट कर रहे Sitem एंड lose इनके out on मैचेस one कुछ of the डिसेंट other जा नहीं रही है, players as बिल्कुल बॉटम पे Godless. थे. He's in a whole different world of his own and he will get knocked out. There was no chance he was getting back alive as Sandesh will just charge in first, sort of rejuvenate, get his HP back, and then could get the confirmation. Oh, But DRS भी क्या, मैंने regardless, ध्यान नहीं a दिया, big sorry. storyline over here, DRS भी folks, नहीं that है, DRS and मतलब Stalwart, इस मैच में both चांस है these teams वाइब्स have के पास taken, एंड एनबी के पास अपनी लीड PL को pretty ज्यादा early बढ़ाने into का. the game. Now, a भाई golden opportunity दो for the मैचेस likes में of Pml बहुत अलग Vibes सीन and हो NB सकता है आगे आने to वाले build दो up a मैचेस lead. एंड उसमें से एक And मैच this शैनॉक is the है. moment where शैनॉक इज द Stalwart and अनप्रेडिक्टेबल DRS मैप, both वहां must पे be आप कुछ नहीं cussing बोल सकते कि themselves क्या of सीन है what क्या they नहीं have है. done मीनवाइल as T2K ऑन योर T2K स्क्रीन. deciding to fire on all cylinders. IHC make डैड IHC आएगा their इस next प्लेयर, target, but देखा स्लेयर Slayers भाई ने out दे of दिया, बीटी nowhere दे दिया. finds a knock on Rig. Now this completely changes the equation of how T2K wants to approach this fight, but Sandesh successfully finds a knock on Ziol, but there you go. Sealed Soulless comes out of nowhere and gets a knock And on they Sandesh. say, What South is Asia happening? is never Bodies are flying that time. left, right and center. It's all chaotic, it's all chaotic. Everyone is fighting for the eastern control, and looks like T2K Jane has been dealt with as he was running for the revival onto his fallen teammates. It's a blessing in disguise for the players of IHC as Zemo has successfully revived Zoil over there. Now T2K, they have enough time to go for the crucial rescue missions. All this commotion is happening on the eastern front, and in all this commotion, भाई गेम है, IE गेम ही again ऐसी है. they find जोन किसी को themselves in the फेवर perfect करेगा, spot. किसी They टाइम have नहीं the करेगा. entire जब southern करेगा तो control आपको in मैच their कन्वर्ट favor, करना पड़ेगा. but सिंपल सी IHC बात है. लेट्स गो bodies T2K are still एंड not IHC ऑन over. योर The स्क्रीन. numbers जीरो are भाई not मीनवाइल in their favor अपने as एक साइड को Yoodo Alliance जोन फुल are trying to का lob दे रहा 4 grenades MV and का. find some over there. अब कन्वर्ट करना भी तो है ब्रो, And कितनी he's सारी lobs टीम्स the है. grenade, वेट but करो, he's वेट going एंड to वॉच. resort to his T2K F1 की 6 परफॉर्मेंस देखो. force संदेश clips भाई and अगेन takes एंट्री. HP out of Ziol main Zoil guy over knocked there, from and IHC. finally takes him down. नाइस वन एंड IHC ऑल्सो एलिमिनेटेड. क्या बात है T2K, बहुत ज्यादा बढ़िया. जेन भाई यहाँ पे सिर्फ एक जो बंदे फिनिश हुए एंड इसके अलावा 3 मैन पे यहाँ पे T2K ने अपने लिए 6 पॉइंट यहाँ पे निकाल दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रिग पाजी 3 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं. बहुत ज्यादा बढ़िया. T2K का अगर ये वाला परफॉर्मेंस थोड़ा सा जल्दी हमको देखने को मिलता, मे बी सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी, बट चलो बढ़िया, कोई चक्कर नहीं. They are under heavy fire. Zone full साथ दे रहा 4 barely MV का. with Yes sliver of भाई, HP zone has to shrink come out of his auto cover as होता. Claw goes charging at his direction, and there you go, 4 finishes क्या बोल secured रहे हो अफनान भाई, क्या for बोल रहे हो? Team T2K Raw, जॉर्ड, and yes. could be काश very, T2K very वाला crucial. परफॉर्मेंस कल आ जाता, Much हल्का सा भी needed शाइन आ जाता ना squad शैडो wipe for वाली. them as तो they आज can T2K kind of भी बैटल कर inching रही थी closer हैशटैग बन के. to make सही है their भाई. dreams of T2K अंडर qualifying प्रेशर to बढ़िया. the बट SEC turn true क्यूबी as भाई. T2K, I mean, they were जीरो proving to भाई. be really deadly, really dangerous. जैसे हमने बोला था सामने वाले शेक पे, सामने वाले कंपाउंड पे जीरो था, शायद उसका नॉलेज नहीं था.
एंड यहाँ पे Team बूम बाम T2K हुआ है, recuperated मतलब from that situation. समझ लो They यहाँ got पे wiped एसआई out टीम in a ने jiffy. निकाल दिया पॉइंट एंड टी2 Oh, के भी they गाइस 6 certainly did, पॉइंट but यहाँ पे एलिमिनेट हुए Assassin at लेके the mercy अब of the टीम view. देखना What पड़ेगा can he do? ओके The minute एसजी he स्टिल comes इन द out the लॉबी एंड open, एसजी का Skyless अब Gaming are ओवरटेक ready करने to वाली है strike, टी2 को and अगर इस it's मैच में better अच्छा to एग्जीक्यूशन go एसजी by का the जाता है players एसजी rather का जाता है than स्काईलाइस giving गेमिंग का, away तो your स्काईलाइस गेमिंग finish ऊपर point आ to the सकती है, बाकी opponent. मैप भी But इस लॉबी let's से see आउट हो what's चुके gonna हैं, तो यस happen. How एसजी many हैव अ चांस टू hostage टेक does ओवर he टू have टीम in his टी2 hand? के Because एंड टीम Skyless मैप Gaming, एंड well, बैटल they're फॉर द not हैशटैग moving 5 away. रैंक। They are देखो गाइस still इस मैच में looking क्या होता है। towards Assassin. All he has is a little shack and few meters, just few meters out in the open to cover, which is not going to be easy. And with AJ blowing up the vehicle, it's going to be a tedious task for him. On the other side of the map, well, Sitim, well, their victory was short-lived because QB has been dealt by Woofies over there. I8, they are having the entire southern control, and Sitim, even they are down to a single player. Yeah. At least as of now, good news for all the NB fans. And the same can be said for Miracle Vibes, as they are set on a war path, a path to create history as no team in the previous 6 seasons of the Pmpl SEA has managed to win both the league stages and the grand finals. And if for Miracle Vibes they managed to do so today, वहाँ क्या they're gonna कमबैक write था। यस history. एनवी लाइव, एनवी As स्पोर्ट्स look लाइव है। at यस them, मेरे you भाई know, एनवी स्पोर्ट्स लाइव है। देखो tension is बिल्कुल, definitely अगर आप there. देख रहे होंगे This जोन is का भी not the सेंटर भी शायद Miracle उन पे Vibes we कटने are वाला है, see, पता नहीं कटेगा या नहीं acquainted कटेगा। to see. देखो आगे क्या Usually सीन at होता है, this लग रहा है point उन they पे would कट have made a सकता push है। on QEON TRZ already, but now they are playing देखो with देखो देखो utmost देखो caution. क्या वो They शेर know है। how important जा this game रे is, रे and they आगे know रहो। how देखो एनवी crucial बन it गया is for them. तो एनवी And गाइस the इस मैच same can be said for the है likes इस of मैच के NB बाद। Esports, who have had a rather different style of approach. पूरे You know, एमवी they're देखो much क्या more एग्जीक्यूशन balanced as पूरे a एमवी का team. निकल के They आता है। really know when to मीनवाइल notch it down a little, and that TRZ is आपको दिख exactly ही रही what होगी, they've उन्होंने done. आईएट They've को got a ऑलरेडी really स्पॉट good करके रखा spot हुआ है। inside the circle. They've got nothing to ब्रो worry हैशटैग about. वन कौन है? With करंट Miracle रैंकिंग में Vibes, अभी आया they हूँ। finally हैशटैग have वन to करंट make a रैंकिंग पे move. स्टॉलवर्ड थी Finally लास्ट have to मैच make तक, a बट इस dash मैच के inside बाद the वो zone. अर्ली Now, एलिमिनेट हो what चुकी is है, going to मतलब यहाँ trouble पे them? Well, आपको we've टेक got ओवर करने वाली I8 है on the फोर eastern side, एमवी या फिर and now एनवी। इन if they दोनों में से decide कोई to एक take टीम a टेक fight ओवर कर against लेगी। अब QEON कौन होता है वो TRZ, मैच के एंड पे they पता might लगेगा be in for some आफ्टर द bashing एग्जीक्यूशन। from the मीनवाइल right side. एसजी भी यहाँ पे But टेक ओवर Sky करने वाली है। seems to have been T2K taken down, एंड seems to have been taken a सेकंड blow. टीम So इज I8 आपकी have जो their है वो है attention T2K divided के right साथ now. मैप, Now क्योंकि this is a एसजी हैव अ perfect चांस time 4 मैन for Miracle एडवांटेज है। Vibes देखो to किस तरीके maybe से spot one कन्वर्ट of the करते हैं players चीजों out को। of QEON TRC and instantly make that push. Oh, they can make the push, but NB Esports and TRZ, they are being silent for now. They have the circle, they have got everything on the other side. ऐसे चैंपियनशिप के विनर को क्या मिलेगा ब्रो? अच्छा प्राइस पूल मिलेगा, अच्छा खासा। देखना भी प्राइस पूल आई गेस रिवील नहीं हुआ है, बट आई थिंक इट विल बी द ह्यूज प्राइस पूल जो टीम्स को रहने वाला है। And looks like AJ wants to have this fight. Raw officials, they have a good reach. PMWI slot they do plus have good covers for them. And your esports, Yes, all yes. they have is an open PMWI slot पता है ना आपको गाइस? PMWI में क्वालिफाई होने के ही कितने पैसे मिलते हैं? पार्टिसिपेशन बोनस ही बहुत होता है। जितना आपको इतना ह्यूज प्राइस पूल यहाँ नहीं मिल रहा, उतना सिर्फ पार्टिसिपेशन बोनस ही होगा। बाय द वे पार्टिसिपेशन बोनस इज द अटेंडेंस बोनस, सिर्फ खेलने का। रैंक आपके चाहे जो मर्जी आए, वो प्राइस पूल अलग रहेगा। मीनवाइल रॉ मार रही है भाई, वंस अगेन रॉ मार रही है भाई, रॉ निकाल रही है पॉइंट। रॉ यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हैं कल के लास्ट मैच से जो इनका मोमेंटम आया है, एंड बहुत ज्यादा कंटिन्यू जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि टॉप 12 आना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई पीएल फाइनल्स डेट इज 19th of April मेरे भाई। Esports, they've kind of been proving themselves as the wild cards, right? Every single time you kind of tend to discard them, they somehow come back swinging. But this time is not the case for Haidami. Caught a little astray from his pack and is being dealt with. But now Indonesia this is is winner one of of those Super League knocks that maybe for 100% Miracle EE Vibes and were waiting both for are Indo. on a player of I8. And all they've got to do is just pick the right fight, right? They cannot afford to lose on numbers right now. They need a few elimination points nonetheless. And they've been silent so far. They haven't been getting into a lot of action, which we've seen Mama them bhai, doing. 4MV And Doc just when knock. we were talking, Doc gets taken down, and Okay, things Kaze, start East looking को भी really knock करा है, south multiple as knocks, NB 4MV. have finally managed to take down the danger man from For Miracle Vibes, and now hell's falling under, the skies are falling for down for them. As for Miracle Vibes, not just they need रनर to अप भी get their आएगी क्या players back PMWL? up, नहीं मेरे भाई, they सिर्फ somehow #1 PMPL still से need to #1 manage स्लॉट to है, सिर्फ find a good #1, सिर्फ position एक टॉप inside the जो circle, टॉप 1 especially की with टीम है, them सिर्फ being उन्हीं so को स्लॉट है। exposed. There बाकी you इसके go. बाद गाइस हमारे East दो had मैचेस just बचने gotten वाले हैं, revived up, but I8 मात्र they're दो gonna मैचेस start भी बचेंगे punishing इस them. मैच के, इस मैच के बाद।
So they Last are match going to punish, but right now participant raw team को officials are 10k inching close dollars to the each Plus System मिलेगा Esports, where Giro last time. just survived that Molotov, but Claw comes with a buggy along with his teammate Yoodo Alliance with a UMP in his hands, and Giro can he clutch it out? It's a 1v2 situation where the certain team is in the back lines, but before that raw officials are going to deal with him, and Sitem, after getting 5 elimination, gets bye-bye on the 8th spot. Now raw official, they have the control of the eastern periphery of the 4 circle. MB BT में They है have the and numbers, but I8 susceptible रॉ to भाई those दोनों के लिए grenades मैं that चाहता हूँ might दोनों come in पॉइंट from the निकाले side of Claw साउथ over एशिया there. चैंपियनशिप में आए And looks रॉ like एंड Sky I8 is लेट्स going गो to रॉ reposition I8 तो himself कंफर्म inch कर चुकी है closer अपना inside स्लॉट the लेकिन circle, रॉ को but पॉइंट चाहिए Mufis, और ज्यादा Mufis is still अगर मैं at नीचे a रैंकिंग के अंदर very देखूं weak those people spot. who laughing Along with that, they have 4MB also on the other side. So I8 a little bit in a shaky position right now. They have to find a good spot for themselves. On the other side, TRZ comes in and finds a confirmation okay point भाई onto nice the assumption 4MB. of you Even 4MB, they're not looking so good. Looks like they are at the mercy of the blue. भाई कुछ भी Right लिखते हैं now, भाई I चैट mean, के अंदर things जैसे are ओके getting अभी क्या so मैसेज लिख रहा है much, and मैं so चैट much साथ साथ देख भी रहा हूँ मैच exhilarating at this point, दिखा नहीं because this सकते is pretty much कुछ NB भी Esports' game to lose. चैट के अंदर लिख दो And for Medical, TRZ, And they वो सच are है। defending with Oh! all their might, and there you Vibes go. Apex एक decides to भाई close in, एक but चीज for सुन लो Medical Vibes, they have bitten the सातवीं रैंक में dust. कितना पॉइंट And मिलता है NB 10 Esports, 6 a 5 golden chance to दो ही secure the पॉइंट लेके chicken गई dinner है and get a huge lead, एनबी के because पास मौका है the इस other मैच 3 में टेक teams, ओवर करने they का have क्योंकि been आपके taken सारे down, अपोनेंट and आउट हो not चुके with हैं a रॉ lot of हैव अ points, चांस bear टू in compete mind. for the hashtag And 12 if rank NB Esports manages to get a chicken dinner out of this one, everything is gonna change, and they could write their own script. TRZ, in fact, they are defending with their lives over here. Viper, he's got a very big task ahead. He needs to revive 2 of his players, needs to get a decent गए टॉप cover 4 inside टीम the circle. But एनबी बची ना Madcap, ब्रो he's out for blood. टॉप 4 He में एनबी भी तो wants है those एनबी को crucial भूल गए kills. क्या And if they can do that, Kunio TRZ will be in a really good spot, at least to qualify भाई for the थोड़ा SA सा ना अब championship. थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो रही Well, है मतलब certainly we can. अब ऐसा Because they सीन है have the कि जो numbers, they टीम are लास्ट तक having a सरवाइव very कर good जाएगी ना movement, and सर्कल में 73 points उसका सीन already तो there तगड़ा हो in जाएगा their favor, and NB Esports right in their crosshairs. Rare X, perfect moment. He shied away, went into the covers. Now they do have a good compound. On the other side, NB's Mondo globs a perfect grenade, takes on Rare X. 0 over points there. ST in This is this the match moment where they hashtag have to go 14 for the revival. bro On the other side, Skyland's Gaming देखो go वाइब्स with भी the लेके नहीं गई third पॉइंट party as एसटी they भी take लेके नहीं on गई 7 पॉइंट inside of एंड आपकी NB टीआरएस भी Esports. पॉइंट Now लेके नहीं गई NB जो 4 have टीमें to थी deal with बट Skyland's एनबी at the पॉइंट same लेके time. जा They रही है have सो to 3 deal पॉइंट with ऑलरेडी Kunio निकाल चुकी है TRZ. They are एंड यहाँ से beating अभी टीम the स्कोर sandwich पीटी करने वाली है situation. सो हो Thankfully, सकता है they कि do have a एनबी good इस मैच से compound to डिसेंट the पॉइंट name. लेके गैप को कम Sek करके is हैशटैग again 1 back पे आ on जाए his बट अभी feet. कुछ नहीं Nothing कह to सकते worry जब तक about. Their रैंकिंग नहीं numbers are आती है still intact. They do have a good position inside the circle. हेलो गुनाली Everything कैसा is है मेरे working भाई in their favor. They just have to defend and get those elimination points 4 and a एमवी के chicken पास dinner. कितने A very एलिमिनेशन है important एक chicken एलिमिनेशन पे dinner, आउट but हुई है it is मतलब उनको so 2 पॉइंट मिलेंगे crucial उनके to the रैंकिंग के plus of अकॉर्डिंग TRZ टोटल and वो raw 2 पॉइंट लेके officials गए मैच to get ज्यादा this पॉइंट one नहीं लेके गए in their pockets. So they have to hold on to their nerves. They cannot let this game go away from them. Skylight's Gaming, Raw, everybody just hell-bent on taking them down as Yeta Uta decides to fight against the monsters that Skylight's Gaming are decided to charge in at their direction. In fact, Raw trying to pick a fight against them, but could be exposed to attack from the side of NB Esports as AJ somehow bobbing and weaving, trying to keep himself alive. But for how long is the big question. देखा Sek हमने आपको बोला manages to यूडो इज अ find a गुड knock टीम far ब्रो away. That will be on भाई Nova. हमारी टीम But बहुत coming back to कंसिस्टेंट this खेली है fight, पूरा सीजन Raw, देखो they आगे are लास्ट showing मैच पे क्या intent. सीन They था wanna मीनवाइल go हियर in, वी गो but एसजी Zodi can एंड only find one रॉ as there you go. He एसजी gets के लिए भी काफी traded इंपॉर्टेंट by मैच है दे Pisco, आर in fact, बैटलिंग from the फॉर back हैशटैग 5th lines रैंक as No No Fear Fear. and Mafia Ninja. They have Raw to is somehow battling for hashtag defend 12 this rank area. secure They have करने to के लिए somehow keep them at Skylar is bay battling for as hashtag Raw 5 rank क्या होने still वाला है इस मैच में trying to but kind of 2 rethink the strategies as No No Fear Fear जब तक लॉबी decided पे to है तब तक initially कुछ हम charge in, एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट at कब the तक end kind क्या of सीन retreats. बनेगा So रॉ a little bit of a क्या hiatus, करने वाली not इस the way मैच we ऑफ द wanted मूवमेंट in पे this particular fight, but for now it's a little bit of an intense situation brewing up as the Molotovs have been laid Raw down, but Mongolia और नेपाल nobody's और बंगाल burning नेपाल as नेपाल Mafia और finally Royce from finds another नेपाल crucial one. ओके And Yeta रॉ Uta falls मोंडो भाई down ने फिनिश to निकाले his misery as Claw 5 finally टीमें remains. बची है One good grenade Claw and भाई 3 बचे हैं players from Skylight's एनबी और Gaming पॉइंट निकालने to just वाली है get ऐसी वाइब आ रही है एंड यस decimated फिस्ट बॉय का क्या in नेट thin गया है air, भाई but दो it's gonna be दो Fist नॉक्स Boy who does the dealing there
and now it is all एक down और to AJ. नेट Now the पुल इन perfect time for Yes. QEON to come out, but एंड not यहाँ पे necessary गाइज at आखिरी all. माम्बा के नेट As से ही सारे के सारे elsewhere फिनिशेस we आ see, गए एंड TRG स्काईलाइट्स dealing with गेमिंग की टीम I8, where एलिमिनेट हुई है। Skylets रॉ are की being टीम यहाँ पे dealt कुछ by पोजीशन पॉइंट लेके NV जा रही है। दे Esports. एग्जैक्टली नो Now वहाँ पे they एक know रॉ का that प्लेयर है Claw is जिसको the ऑलरेडी lonesome स्पॉट player करके रखा हुआ है। surviving. तो पता है The वहाँ पे बंदा है, next फायर potential एक्सचेंज हुआ threat is going एंड to be यहाँ पे Kunyo रॉ को भी TRG, एलिमिनेट of करा। course. 9 Mondo पॉइंट deals इन with एनबी Claw, and स्पोर्ट्स now यहाँ we से are निकाल down के गई है, to बट a एंटी यार 4v4 एंटी एक showdown बार एंटी कर देना between रॉ के Kunyo लिए। TRG द वे दे आर and फाइटिंग, NV हियर वी Esports गो as they TRZ decide to वर्सेस change TRZ के लिए everything, भी change the इंपॉर्टेंट मैच है भाई dynamics, the ये gravity टॉप 12 in के लिए the overall standings, as Rare deciding to charge in as it's a 2v2 split going in for NB the players of and NB as they defend with all their TRZ life. जो टीम यहाँ पे जीतेगी They have अगर to पूरे defend it. फिनिशेस So लेके जाती है, important टोटल for 10 TRC पॉइंट to का, get सॉरी this 10 win, पॉइंट का to गेम get है ये। those 10 placement points, extra 4 elimination points. हैशटैग If they सेकंड want to आओगे तो qualify आप for यहाँ the पे 8 SEC, पॉइंट लूज Esports कर are सकते हो। down. मीनवाइल Grenades from the hands of ट्रेड आ Mondo चुका है, brings एनबी down चढ़ने the का core फुल of ट्राई TRC करेगी। as यस, एनबी Renex धीरे also धीरे goes चढ़ने का down ट्राई to कर रही है। OV. अकाजे एंड Madcap TRZ and Steel Shot. यहाँ पे Even Madcap लास्ट goes बंदा down to बचा है the hands of TRZ का Mondo. एंड And now NB एनबी Esports, this is the नॉक moment आया that एंड हियर वी गो last एनबी player स्पोर्ट्स was fighting. फोर्थ There मैन was चिकन one डिनर player गोज for टू टीम NB एनबी Esports. स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा सीन कि कितने पॉइंट, भाई ज्यादा ही पॉइंट हो गए हैं। 9 9 4 13 10 23 पॉइंट 23 पॉइंट मतलब गैप अब यहाँ पे लास्ट के 2 मैचेस में बात पहुंच चुकी है भाई। अगले मैच पे अगर एनबी का अच्छा मैच चलेगा तो समझ लो न्यू चैंपियंस शायद से, कि फिर लास्ट मैच और अगर नीचे की टीम का भी मैच अच्छा नहीं जाता है। सो गाइज अभी के टाइम पे कंपटीशन लेवल इज अ हार्ड वन, टॉप नॉच कंपटीशन। एंड गाइस जो भी रैंकिंग है हमारे टेलीग्राम पे अपलोड हो रही है, कितने पॉइंट का गैप है, कौन कौन सी रैंक के अंदर है। T2K का कमबैक आया, हियर वी गो। रैंकिंग नहीं बताई जा रही है, रैंकिंग नहीं बता रहे हैं, रैंकिंग नहीं बता रहे हैं गाइस, रैंकिंग नहीं बताई जा रही है, रैंकिंग नहीं बताई जा रही गाइस। बाकी गाइस हैप्पी एनबीएस पीएमडब्ल्यूआई जा रही है कंफर्म। ब्रो अभी आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मैच अभी खत्म नहीं हुए, मैच आर नॉट ओवर येट। NB Esports stalwart for miracle। तो गाइज हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मॉडरेटर स्पैम कर दो। एंड गाइज गैप अगर आपको देखना है तो मैं दे रहा हूँ टॉप 4 टीम का जो भी है DRS। तो गाइज हियर वी गो, T2K ने टॉप 5 के अंदर एंट्री मार दी है। बाय द वे रैंकिंग सेम है पिछले मैच वाली, बट एनबी ऊपर आ गई, बाकी सेम रैंकिंग है। तो गाइज टेलीग्राम पे आ जाओ जल्दी से, होप सो आपने ज्वाइन कर लिया होगा। मैचेस गाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वैसे टाइप कर रहा हूँ तो आपके मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा। लो भाई रैंकिंग आ गई। एनबी स्पोर्ट्स आपको बता देता हूँ जो लाइव देख रहे हैं 202 पॉइंट है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स 184 पॉइंट है। ओ भाई समझ रहे हो एनबी स्पोर्ट्स ने कितना गैप बना दिया है, मतलब 16-18 पॉइंट का लीड है एनबी का, और मिरेकल का 20 पॉइंट का गैप है। अरे डीआरएस का गैप बहुत बढ़ गया। T2K और डीआरएस के पॉइंट सॉरी 160 है, फिर से गलती होगी, एडिट कर देता हूँ। T2K 160, भाई T2K बहुत क्लोज आ गए डीआरएस के। तो गाइज जो ओवरऑल स्टैंडिंग है हम दे चुके हैं, अपने टेलीग्राम के ऊपर जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा है। तो टॉप 5 टीम्स जो हम आपको बता चुके हैं, जो भी सिनारियोस चल रहे हैं, मीनवाइल 5 एलिमिनेशन के साथ मोंडो भाई ओपन द चैट कर दीजिए। बहुत बढ़िया एनबी स्पोर्ट्स जिस तरीके से फिनिशेस निकाली है। टेलीग्राम ऑन नहीं हो रहा
अयोगी गेमर सर्च कर लो, टेलीग्राम पे आ जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लो। बाकी मैं ऐसे ही बता देता हूँ मुंह से वर्बली जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। एनबी स्पोर्ट्स के गाइस कैलकुलेटर निकाल लो, 202 पॉइंट है। स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स के 184 पॉइंट है। 4 मिरेकल वाइब्स के 182 पॉइंट है। डीआरएस के 174 एंड टी2 के 160। तो दीज आर द टॉप 5 टीम। बट अगर आप देखो डीआरएस और एनबी का पॉइंट अब गैप ज्यादा बढ़ गया। डीआरएस को इस मैच में फाड़ परफॉर्मेंस लेनी पड़ेगी, बट नेक्स्ट मैच है शैनॉक का। 174 और 202 माइनस कर लो कितना होता है, इतना डिफरेंस है। बाकी 16-18 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है एसटी का भी। भाई अलग अलग सीन होने वाला है इस मैच के अंदर। ये मैच काफी क्रूशियल होगा शैनॉक का, वैसे अनप्रिडिक्टेबल मैप है। बाकी सारे एलिमिनेशन लीडर बोर्ड आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। एंड मीनवाइल मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉ की टीम टॉप 12 के अंदर बना लेगी अपना सिनारियो। रॉ की टीम भी 102 किल है यार रॉ का, इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी, क्योंकि 2 मैचेस में उनको पेलम पाल खेलना पड़ेगा भाई। तो टीआरजेड ने भी इस मैच से पॉइंट उठा ही लिए हैं। सो एसआई टीम और नीचे आ गई है, 1 2 3 4। उन्नियो अभी है, लियो को कंसिस्टेंट खेलना पड़ेगा, इवन दो हाई वोल्टेज को कंसिस्टेंट खेलना पड़ेगा, इवन दो हाई वोल्टेज की टीम साउथ एशिया चैंपियनशिप से बाहर हो सकती है। शुड बाकी गाइज आगे का सीन देखते क्या होता है। गाइज अजहर भाई ने रैंकिंग दे दी आफ्टर मैच नंबर 1 4 रैंकिंग एनबी स्पोर्ट्स 202 स्टॉलवर्ड। भाई अजहर भाई क्या बात है, हमारा टेलीग्राम से कॉपी पेस्ट भाई तो बढ़िया। अजहर भाई ने गाइज जो हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट हुआ है आपको यहीं पे बता दिया, देख लो बिल्कुल वही चीज है। थैंक यू सो मच अजहर भाई कॉपी पेस्ट करने के लिए। क्या लग रहा है कौन लो भाई आईएचसी लाइक ओवरऑल पॉइंट्स टेबल आई डोंट नो ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। अगर ये दिखाते हैं तो देखते हैं भाई। ऑल्सो गाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो गाइज, हमारे मेंबर्स हो चुके हैं 269। ओ 69 इस 2 आलोक भाई, आलोक पुर्थी भाई थैंक यू सो मच। सानी भाई, शिशी फॉर ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम सर्वर। देन गणेश भाई, जैन भाई, मिस्टर नेप्स भाई, कौशिक भाई, मीट में मोहम्मद भाई, वंश भाई, कप्तान भाई, डीजे भाई, रबीन भाई, नीरज भाई, मोहम्मद भाई, तनु भाई, अक्षत भाई, एक्स बैबो, विशाल, आकाश, तेजस्वी, तेंजिन, डीएक्टिवेट अकाउंट, बीनाम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम सर्वर। एंड गाइज अगर आपने अभी भी नहीं करा है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारी जो पॉइंट्स टेबल है हमारी आपको वहीं देखने को मिल रही है, सारा का सारा सीन वहीं पर है। लेट्स गो बॉयज। लोग एक्साइटेड भी दिख रहे हैं टेलीग्राम पे, 600 मेंबर हमारे होने वाले, जल्दी आ जाओ। एसटी शुड विन अदरवाइज नॉइस पोल्यूशन लाइक। अरे अरे हाय की गेमिंग व्हाट्सअप, दीपक जोशी ओके ब्रो। Yoodo 157 A52 VPN boom 152 missile with one। ओ भाई शेडी भाई कुछ भी होने वाला है, टॉप 2 टीम जाने वाली। टेलीग्राम का लिंक दो, टेलीग्राम का लिंक दे दो और मॉडरेटर साहब। लो भाई मैं दे रहा हूँ टेलीग्राम का भाई, तनुज भाई हेलो व्हाट्सअप, टेलीग्राम का लिंक ले लो भाई, मैं दे रहा हूँ। बाय द वे रैंकिंग ये है जो डाल दिया, सॉरी इसमें टी2 के 140 है, टी2 के 140 160 है, टी2 70। मैं पहले मेंशन कर दूं तो आपको मेरे को लिंक देना है टेलीग्राम का गाइज। तो गाइज ये टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन कर। आ चुका आपके सामने टेलीग्राम, ज्वाइन कर लीजिए। हाय राम भाई, पीएमएसएल ओवरऑल सेटिंग देखो एक बार। यस यस ब्रो आई नो आई नो। एसटी क्यों हर बार एसटी यस 184 bro. Let's go boys, match number 5, the crucial match of the PMSL South Asia on your screen। इमेजल में ड्रॉप क्लैश, अफनान भाई अभी रुको रुको सबर करो गाइज, हियर वी गो। यहाँ पे भी क्या पता ड्रॉप क्लैश गाइज, क्या ड्रॉप क्लैश कुछ हमको देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर, क्या रोटेशन क्लैश, ड्रॉप क्लैश। लेट्स गो बॉयज, काफी क्रूशियल हर एक टीम के लिए, पानी पिया जा रहा भाई। लेट्स गो शैनॉक द अनप्रिडिक्टेबल मैप। इस मैच से पॉइंट लेना काफी ज्यादा जरूरी। एनबी ने अगर पॉइंट निकाल दिए इस मैच से समझ लो फिर तो एनबी का कंफर्म हो जाएगा, एक नई टीम पीएमडब्ल्यू आई जाएगी भाई, एनबी ई-स्पोर्ट्स। ओ भाई क्या ऐसा होगा या फिर नीचे से एक्सपीरियंस टीम्स पकड़ अप करेगी। Now this is where the Tough call positions to are all going to of be threatened guys, and same you goes fans, for आ जाओ। guys also, because we've got two narratives and two Guys, ऐसे storylines team for के this particular match right now. Who is going to be the winner of this PMPL and
which teams are going to T2 के full qualify support. Let's for go the top boys. 12. Last With match the battle bro, it's getting the second last really match अरुण intense भाई. down इसके the बाद order, आपका last match होगा. this game काफी is going to important and give us a crucial match more है. Top 3 clear स्पेशली. insight, NB more अभी rather फर्स्ट vivid पे है, picture सेकंड पे of STA, थर्ड पे who's going वाइब्स to है, qualify फोर्थ पे and who's DRS है, not. फिफ्थ पे As T2 के. तो we just देखते हैं hope इस to मैच see से yet कितना टीम another पॉइंट fight निकाल just के चलती breaking है. अगर T2 around को के Campbell. हैशटैग For 1 last आना है तो time, उनको we 25 could see, पॉइंट निकालने हैं. the players of high क्या वो voltage निकाल just पाएगी? contesting dead eyes, और just उसके trying बाद to अगर टॉप की टीम put थोड़ा a डाउन stop खेलती है, at काफी their अनप्रिडिक्टेबल मैप dreams है, of जोन का शिफ्ट qualifying देखते for हैं the क्या SEA थर्ड आइलैंड का Championship. जोन देखने को And मिलेगा, this क्या मेन time, आइलैंड I का जोन think देखने को things मिलेगा. look a little आजकल different. हमको You दो know, ही शिफ्ट देखने I को kind मिल रहे of हैं, थर्ड have a आइलैंड और मेन different आइलैंड. take मेन on this. आइलैंड में If आपका you जाता है want to really टैटमॉक, ruin a team's game, पैराडाइज या what you have to क्वेरी do के is instead आसपास, of just या फिर dropping आपको पता down at लगा their भी वाले location, शिफ्ट्स a आते हैं वो place where they're कैंपर very तो क्या familiar ये with, शिफ्ट देखने try को to just मिलेगा block their rotation या path, फिर एक right? What are सेंट्रलाइज the शिफ्ट ways that मेन वाला a या team फिर like थर्ड Dead आइलैंड Eyes could कहाँ opt जोन for? जाएगा? They could either take that northern काफी bridge, क्रूशियल है, where जोन ने IHC are बहुत सारी anyway करवटें present, बदली है. or they could go for down south, where you could really put your players in there and make their एचसी life कौन सी hell. पोजीशन पे But बताओ? प्रो सेकंड now, पे, लो पोजीशन में बता देता interestingly, हूँ. we've got ये a rather पोजीशन more है, मैं central बताऊँ. circle The around that position, Paradise guys. Resort. So I8 are going to be really happy about it. NB Esports also, They if they happy. manage to survive the wrath of I8, then you never know. But knowing I8, they have not done this throughout the grand लो finals. भाई, But come जो at the बोला था final आपको day, यही शिफ्ट they देखने को मिल रही है, तो seem वही like शिफ्ट they देखने को have मिल a रही है. itch बट to take a fight. SITM and high What can be the voltage. perfect moment? The last Senok Okay. is the perfect time to go against the old rivalry. Guys, I8 and NB ये हमने Esports, कल भी but we देखा have था, अगर T2K आपको याद also होगा. in the आज भी picture, देख रहे हैं हम. and there is a टेम्पल में सीन chance हुआ that था, अगर आपको T2K, याद हो. they were looking NB, hungry for those ओहो, elimination points, but no. NB and No, I8 काफी NB क्लोज Esports, they are not in क्लोज. the mood NB to के लिए come काफी fight. They इंपॉर्टेंट want मैच to है. keep अर्ली up the एग्जिट NB का हुआ. hashtag one बेनिफिट यहाँ हो spot in सकता the है overall STE, ranking. They वाइब्स don't एंड want to DRS risk को. अभी anything. जस्ट मैच स्टार्ट So हुआ है, they are हम not going वॉइस to उठा engage in a चुके हैं. fight. आई थिंक But वॉइस आ रही होगी last आपको. time when they did तो एक so, बार इंट्रोड्यूस by कर देते looting हैं. the काफी फन city of होने वाला है आगे का Paradise, सिनारियो. they went directly towards Jane. The Jane was able to bring down their numbers. So this time I hope, really hope, NB Esports, well, they are prepared for Jane. At the same time, T2K Jane, well, he's prepared ऐसे for the टीम और plus एचपी of का NB फाइट ब्रो Esports ऑलरेडी because हो ही रहा है. they वहाँ are कल heading भी हुआ था, directly जरूरी नहीं towards आज his ही की, कल भी direction. हुआ है ये सीन. And looks उसके like बाद डेड shots आई are गाइस गई already थी ऊपर, being अगर आपको याद fired आ रहा हो. कल हमने from the बहुत side of पार्टी करा. T2K and NB Esports. Akaze has taken a hefty damage. Now T2K, they are aware of the players of NB Esports at the same time from the back lines. I don't think I8 is going to do a third party at this time. You know, they want to go for the chase. And just when NB were thinking that they could be safe, ST look का at आईजीएल them. कौन है? मोस्टली Look आईसी. at एनबी जीतेगी T2K 100%. getting ओके really ब्रो, close. एनबी भी And लाइक at this बिल्कुल रिस्क point, नहीं you लेने know, का ब्रो. NB एनबी Esports इस might मैच में just अच्छा get खेल गई ना. sandwiched. एनबी ने 10 प्लस पॉइंट And निकाल दिए, तो their समझ worst लो fears could नेक्स्ट मैच come में true. कितनी टफनेस All रहने they वाली need है. to do is समझ रहे हो, एक just मैच get में 5-6 25, points. अगर इस मैच से And I कितना think ऑलरेडी 18 they'll be पॉइंट in का a गैप safe है. ऑल position 30 पॉइंट का to win गैप the championship. कवर करना, And समझ with सकते हो so क्या many सीन of होएगा. these क्योंकि Nepali एडवांटेज teams रहेगा. right एनबी after अगर 10 them, प्लस पॉइंट निकाल दे. you हाँ, know, अगर एनबी अर्ली this एलिमिनेट हो is रही है where विद the द real 0.12 masala पॉइंट, really देन टीम हैव अ arises, right? चांस. You know, जो we भी hadn't सेकंड seen थर्ड फोर्थ वगैरह में चल रही I8 है. go और after इस मैच NB में so एसटी को early on. ताबड़तोड़ खेलना है. And 20 today they प्लस did. 15 They या just 10 प्लस पॉइंट threw them निकालने out of their हैं. compounds. देखो इस मैच में And क्या now होता है बाकी सीन. T2K, what have they got to lose? They've qualified for the SEA Championship. They have secured enough points. And now they could also go on to try and make things worse for NB. Because if DRS win this game over here and with a good margin, then NB will have a game on their hands in the final one. They will have to prove their mettle yet again. And this circle, I mean, not exactly a DRS circle because they have to get in the circle really quick. And same goes for Stalwart and also for the likes of Medical Vibes who have already left final. And instead are kind of somewhere just hovering around bootcamp. Raw officials, had they shown the same sort of tenacity from day number one, I think they would have comfortably been in the race to make it to the top 12. But now they have to fight for their spot, which they're doing, which I really appreciate. Do not give up till your last match. Oh, they are certainly not giving up. I agree. But yes, if day number one had they delivered a good performance in even one of the game, they could have been at a better position in the overall ranking. At one point, I was thinking it's way too late for the Raw officials to qualify for the SAC, but the way they are fighting, kudos to their efforts. I really hope they qualify. I really hope they get the chicken dinner. But right now, we have the players of SEA Esports holding on to compound, not having the perfect resources in their hands. Yes, they do have those shotguns, few smokes and molotovs, but nothing really
that can help them to survive till the later stages of the game. At the same time, they have the players of I8 in the close This proximity. match raw So chicken, CL, yes they मेरे are भाई, just being PMSL the last silent match ones. They're लगा है, just being yes yes silent, yes holding bro. on to the compounds, waiting for the By next the way guys, circle we have shift. completed That is अपने when they will start making those rotations, or subscribers maybe will सारा go का for the सारा scene. secondary loot. But Ugh. Sanjay is definitely one of the guy that impressed us in the grand finals, but so less. He was the one from the side of Seal who used to perform really good in the league plays, but suddenly I don't know what happened to Seal Esports, because in one of the Miramar, I still remember Seal was a team that went in all YOLO, all aggressive, going for those, कुछ हो गया NB hunting for those 2002 teams and guys. grabbing those अच्छे से देखो elimination why points. But some suddenly teams do there is a that. क्या drastic shift in the play style of Seal Esports. Now they are the more calm and composed one rather than the aggressive हाँ, forces अगर ये which मैच they were NB का trying जाए तो to be हो in the सकती है league गाइस plays. पॉसिबिलिटी. Maybe भाई could be देखो the NB pressure of अगर मैंने grand आपको बोला finals, ना but NB 10+ पॉइंट इस hey, मैच, last तो two समझ game लो NB ने remaining. ऑलरेडी This लीड is है, the बट moment when डिपेंड Seal करता है नीचे Esports की टीम कितना has to पॉइंट bring निकालती the है. aggression. वाइव्स I एसटी mean, एनडीआर Sale, डीआरएस की we तो did, बहुत touch मतलब upon 20 them. या This was a 15+ team पॉइंट that निकालने was से one time, I think, अगर a वो couple लास्ट of मैच तक years लेके जाना ago, है. कम ऑन was one डीआरएस, of the लेट्स most गो, यू feared कैन डू इट teams in the बॉयज, SA लेट्स region, गो. right? One of those teams, but I think they had that complacency all the time. And they kind of were a little erratic also in their behavior with how they kind of tend to qualify. In fact, top the charts on one week and then suddenly failed to qualify in the second, and kind of raised a lot of doubts, a lot of questions. And then we had a few swaps in their rosters, few players going to different teams, and we क्यूबी haven't seen the best क्यूबी out of them so far. टीआरजेड. But right now, Sitim and इमेजिन फाइट भी किन Kunio टीम्स की हो रही है TRZ कि अब battling 12 it के लिए out कम. against each other with TRZ उनकी taking a 12 little पे bit of बैठी है ऐसा damage, टीम but उनकी. inflicting the ये मैच same अगर ऐसा on टीम ने Sitim अगर as पॉइंट नहीं Jiggle. निकाले, Might टीआरजेड have अगर been निकाल की, spotted from the far हमें away as T shot way out in प्रेशर the आ जाएगा open, लास्ट मैच के and लिए. ऐसे टीम को QB बहुत नेक्स्ट लेवल will खेलना punish पड़ेगा. him. अगर Sitim टीआरजेड यहाँ just से kind of नहीं निकाल respond पाई तो back, प्रेशर and टीआरजेड a पे very टॉप crucial 12 के battle लिए, क्योंकि between चैंपियनशिप के the क्वालीफाई bottom होगी. two teams, because at this point survival is of the utmost importance over here, and both these teams want to avoid the fight, get inside the zone, and get a few kill points for themselves, and make sure somehow edge into that top 12. And look, he's coming from the northern side, the squad of high voltage जोन that ठीक can है, ruin the things for the players of अभी के लिए TRC and बढ़िया. Sitem Esports, as both these three teams are trying to migrate inside the circle. Yes, the boot camp is completely empty, और इस but Stalwart Esports and 4MV, they're on the outskirts of boot camp, where 4MV, they जोन क्या लग do रहा है have गाइस, the अगला height जोन का शिफ्ट advantage किसको as फेवर well. करने वाला है? व्हाट डू So यू थिंक? yes, holding on to the boot camp at this point is not going to be of such advantage. But TRC and Sitem, they have to do something. Look, from the looks of it, maybe Sitem, what they can do is head over to the city of Painan, and from there try गाइस क्या and लग रहा move है inside किसको the फेवर circle. करने वाला है? But TRC, if they directly head in, I think they're going to find a clear pathway, because high voltage, they're not coming south. They're opting for the waterways. They're crossing the river bank, having the swim, and maybe will enter into boot camp. On the other side, talking about the players of Raw officials, because this game is very important for Raw as well. They're having the southern control for themselves, but we have a team in the close proximity. There are the players of DRS, and we know DRS is not a team you want to poke in the map of Senok. So Raw officials, if they stay silent, I think they are good to go. But NB Esports, well, their bags are pretty loaded. Sek with that M249 in his hands, his teammate having a एनबी shotgun. एनबी They have काफी the इंपॉर्टेंट perfect मैच है. weapons in their hands to even barge into the compounds of Skylar's Gaming, who are in the close proximity. Loaded, you say? Seems like not the case with Akaza. Spaley has one first aid and just one Molotov to work things around. And their lives have been made hell, to be honest. With what happened at Paradise Resort, they were kicked off from their own houses, and they decided to loot around the nearby vicinity. And the moment they tried to do that, T2K was also nearby. So NB Esports, if they win a chicken dinner in this one or get a top 3 finish, I mean, I'll already declare them as the champions if they can somehow manage to do so. As Ziol, I think has sort of given up, trying to just go uphill. भाई 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 नहीं सल्वेतोर भाई, मोमेंटम Took a few टूट pot जाएगा. shots, but पीएमएसएल suddenly they उसका realized पूरा का that पूरा they have मोमेंटम to टूट get जाएगा. इस inside मैच the के बाद अपन circle. वी कैन चेक कि क्या And चल रहा है have रीजन के already अंदर. lost out on one of the players. And समझ रहे हो Dead Eyes भाई? guys is पीएमएसएल one of समझो those teams पॉसिबल that नहीं लग रहा भाई. has been 32 की लीड है fighting डीआरएस for की. that top 12 position, and they know a lot is ये on मैच stakes देखो, for इस them मैच में right क्या now, टीम्स and किस survival तरीके से सीन लेके is जाती their है. first priority. At कुछ नहीं बोल least, सकते इस because मैच के एंड तक what ब्रो. will happen to Hit and IS watch. even if they get eliminated? That's Dead it. Eyes is going to get some crucial 4 points, but that's going to absolutely ruin their time of rotation inside the zone, and it's going to be much more difficult for them.
And so it's उसने better बात to take की the higher route, just ऐसे escape from there. Might have to rotate a long way up सपने north दे and get गया inside the circle, maybe वो from the backs हजारों of रंग। I8, or even go as far as going towards T2K. But as of now, for Medical Vibes, this is not how we have how we are acquainted to watch them. They've been so patient. They've been so लियो disciplined. दामी भाई They're लियो के just लिए भी playing for इम्पोर्टेंट है positions भाई। right जो now. जो They're जो just टीम मैं आपको holding बोल रहा हूँ down the सबके लिए circles. इम्पोर्टेंट मैच है। They're लियो, not pushing on any DRZ, team. And the SITM, same रॉ, can be seen in the Stalwarts HV department हाई as well. वोल्टेज भी Because अभी even रेड the लाइन के likes of अंदर ही है। Stalwart, we have seen इवन दो them दे taking हैव all द those लीड early 10-12 fights, पॉइंट का and आई they have गेस, also या ज्यादा taken a भी हो halt. सकता है And या we कम भी all हो know सकता the है। reason why. नंबर इतना They नहीं है बट इतना ही है, cannot 10 से 20 afford के बीच में लीड even है। a बट single एचवी casualty अगर at अर्ली this एलिमिनेट moment. होगी तो दिक्कत हो सकती Winning है। तो this एचवी game को भी is टॉप 12 आने के लिए, imperative टॉप for 12 की them. बात कर रहा हूँ। And if they kind of get eliminated 11 pretty पॉइंट्स early एंड on, 90 पॉइंट्स। their dreams, their chances of making it तो गाइस to जोन be देख the लो। victors, ओके the एसजी champions of PMPL will be left just like that. Well, certainly they are targeting the top spot in the overall पॉइंट दे रहा हूँ एक बार leaderboard. They want to be ये the पॉइंट थे champions लास्ट because मैच। for MV they were consistently on the top in week number 1, week number 2, and week number 3. Stalwart Esports was also giving a very tough competition. So yes, that could be the reason we are seeing a change in the play style of 4MV and Stalwart Esports at this अरे point, T2 के because they are the 174 aggressive नहीं है forces, and looks like TRZ they are also in the close proximity to the plus of 4MV. And shots are being fired towards the side of Skylights Gaming, where they have managed to take down one player from the side of Dead Guys. Things are not looking good as दिस इज there द are लास्ट certain मैच नहीं ब्रो, only इसके man बाद आपका remaining, लास्ट मैच। trying to make a quick escape, but NB Esports, no, it was 18 की actually लीड, यस। Seal that is going to lay the final bullet, and Dead Guys, they become the first team to be eliminated. After this, I think I can safely एसटी say में एजिल कौन है प्लीज? that मोस्टली आईसी chances होगा of यार। Dead Guys qualifying for the ACC are almost ऐसी ही होगा। जैन भाई, टीटू Looks के very जैन bleak at this point, but this is भाई। the fight I'm pretty sure a lot of the people have been waiting for. NB Esports against T2K. Now T2K, they've got nothing to lose, and NB Esports, the crown that's काफी on their इंपॉर्टेंट head. फाइट है टीटू के At आल्सो this point, 164। Mondo ओ gets into एपेक्स the compound, एचवी, into मैंने safe आपको बोला covers. है He एचवी के knows लिए कितना that they're इंपॉर्टेंट being मैच watched है। upon. He एपेक्स knows that 4MB somebody's gonna knock at the door एनबी। sooner or अगर ये later, फाइट and they एग्जीक्यूट होती है also दोनों टीम के लिए understand इंपॉर्टेंट। अगर that they टीटू के have ने to निकाल engage दिया in a सो fight, इट विल बी get those प्लस couple of 1 looting फॉर done. एसटी, But 4MB for एंड that, they need डीआरएस। to survive the एंड wrath of इनके लिए T2K, खुद बेस्ट who रहेगा have क्योंकि ये been 5th रैंक पे quite चल रहे हैं impeccable. 160 They've पॉइंट been के साथ। showing no अगर ये fear होता है every अंजीत single time now, moving like a pack of hyenas together. And NB, look at that, they're scared out of their mind right now, because one player even getting knocked out, they might lose their nerves. And in that tumultuous situation, oh god, Malik finds a knock अरे on अरे one अरे of the players 4MB for Medical असासियन Vibes, प्रवीण but आई they गेस मल्टीपल retaliate. नॉक्स हो चुके They हैं। too would love to see what's HV happening आई over डोंट there. थिंक इट्स अ गुड But सिचुएशन फॉर as of HV now, करंटली अगर आप T2K is सिनेरियोस still just देखते हो गाइस। hovering over. यस नॉट अ NB, गुड and now finally we are सिचुएशन back. फॉर HV एंड Malik 4MB left to यहां से fend पॉइंट all by his उठाने वाली है। lonesome एंड dock. HV के Will लिए get काफी that इंपॉर्टेंट revival मैच था। coming in टॉप from 12 Refuse, but East knows he has to टॉप get 12 something, लास्ट मैच में उनको some पॉइंट value out लेके of this जाने fight, पड़ेंगे as एचवी को Malik अगर ये मैच अर्ली manages to get one more knock. फिनिशन हो जाता है। And मीनवाइल he's got to go on a retreat. 4MV के And भी this is the प्लेयर्स point यहाँ पे where he needs नॉक्ड to है। drop a few smokes and ensure that he's got all corners दो प्लेयर secured, नॉक्ड because है। even अब Leo मलिक भाई को Esports आना है, क्या could करेंगे? फर्स्ट गेम could मलिक pose a भाई एचवी threat पूरी तरीके से at that पिंग हो चुके direction, हैं। because स्काई right now what मीनवाइल यहाँ पे Medical ज़्यूल Vibes को can do is फिनिश just करा है। safely gatekeep them. Malik, he's all रैंकिंग by his दिखाना lonesome. कंप्लीटली बंद, He फुल has to get सस्पेंस inside the बाजी circle. चालू। You've already gotten a few finishes, or just get inside the circle. Just forget about Malik for now, because मलिक भाई ऑलरेडी स्पॉटेड है। big 4 मैन picture स्ट्रांग हो over चुके हैं। here 3 is to एलिमिनेशन try and एपेक्स get a top सॉरी 3 एपेक्स बोल finish रहा हूँ, with 8-9 वाइब्स ने निकाल eliminations. दिए हैं। भाई Look at टीम the को क्या ही circle. हो The रहा होगा? circle has आप taken a ऑडियंस को ऐसा फील हो रहा है sudden तो टीम eastern क्या shift, and फील now हो रहा है? 4MV they have a जी long journey ahead of them, so it's better they 4MV focus 3 on the एलिमिनेशन, I8 rotations. 3 And we एलिमिनेशन, have SG 2 T2K and एलिमिनेशंस, NB Esports in ST kind of a 0, stalemate T2 situation 0, where we DRS have the 0, players of NB Seal 0, Esports these are the in the top close team proximity. currently। But लियो for के now, लिए Seal इंपॉर्टेंट, they रॉ are के in लिए no mode इंपॉर्टेंट, of a DRZ third और party. SITM के लिए But इंपॉर्टेंट, Reg HV के लिए wants to इंपॉर्टेंट है। reach लास्ट into मैच the बचा है, compounds. सिचुएशन NB सही नहीं है। Esports इवन they दो are not giving NBA too T2 many के क्या circles, ये यहाँ पे so the किसी का गेम grenades that बनेगा, are coming किसी का from the side of बिगड़ेगा, T2K. कोई All पॉइंट the players निकालेगा, are कोई नहीं safe for निकालेगा। now. ये काफी Reg on इंपॉर्टेंट the फाइट rooftop T2 के trying to NNB get some आपकी स्क्रीन के information सामने where थोड़ा सा exactly NB the यहाँ पे players रुक के खेल are. रही है। बहुत प्यारा नॉक, And JM बट finds a थोड़ा सा perfect ध्यान से grenade, T2 को लेना takes on पड़ेगा Akaze क्योंकि उनके over बंदे there. अलग Just अलग for a एंगल्स पे moment बैठे। they can मीनवाइल एक march और into
Fizz का knock आया है. Now it's a 2v4 situation. T2K. Wondo सामने. Knock. Last guy left for NB. किल फिट पड़ी जा रही होगी ST से, वाइव से, DRS से. तो देख रहे होंगे ये +1 है उनके लिए. रिवाइव दिया जा रहा है अपने प्लेयर को. हिट गया है.
Yeah, fishing for targets. Exactly, no player है यहाँ पे. Seemed like गया that है. really worked. And somehow, you know, at this point, NB Esports desperately trying to grasp as many finish points as they can possibly have. As they are in a whole world of trouble. Just saved by Sek and Akaza. Meanwhile, Who needs to आइए. patch himself up Vehicle really, burst. really quickly. As Big Sek Paji, lone holding HP. down the line, but SDE, eventually falls. Seal को knock As दिया. now T2K मतलब सील और आईएट का अपना अलग चला है बसड़ गाइस. जेन भाई ने बड़ा प्यारा नॉक दिया यहाँ पे. लास्ट बंदा बचा है. फिनिश निकाला. Himself up, does not have meds. It seems like that, but does administer that final first aid on himself. And now T2K trying to get in. Meanwhile, ST ने यहाँ पे सील के पॉइंट निकाले जा रहे हैं. मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल फाइट्स गाइस. मल्टीपल फाइट्स हो रही है. TDM, Raw, and well, Doc, TRZ. He's just staying Last alive. guy. Refuses to die, refuses to give up as Jane closing in on the Defense. distance. T2K And taking here all we the go. sweet time in NB the world, Sports and with the eventually hashtag they one will find the elimination. target एक that they were point. searching on for so long. एक as पॉइंट लेके NB गई है. Esports, Now TM all have they a could chance. get is just 1 Have a point. chance. Courtesy to DRS have a Suyog's chance. elimination Gap as कम T2K करने का इस मैच have से. succeeded What in is the their position endeavors currently? of Zone कटने वाला है. trying ST to have a pull chance. down Vibes have a chance. NB, and now this has made things a lot more exciting. लास्ट मैच तक Especially गेम with जाने वाली है. DRS लास्ट सेकंड तक भी having गेम a जा good सकती है chance इस if मैच they के can, बाद से, get क्योंकि some अब decent गैप points कम out of करा जा this सकता है. game, कितने पॉइंट का then गैप था? who knows प्लस माइनस what निकालो. awaits for 718 us लोग in the देख रहे हो. final one. We will have a match for a lifetime. And it's तो गाइस ये पॉइंट्स टेबल थे. प्लस माइनस करते रहना. मैंने फिर से कर दिया. बाकी गाइस हमारा टेलीग्राम है. टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो. सबसे पहले रैंकिंग जो आएगी आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिलेगी. तो जाके टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर लो. जैसे मैच खत्म होगा टेलीग्राम पे रैंकिंग सबसे पहले हम अपडेट कर देंगे. तो लेट्स गो बॉयज. 739 लोग देख रहे हैं. इफ यू आर न्यू टू दिस, like the video and subscribe to the channel. Does the player of 4MV, do they have any sort of idea where exactly Mamba is? Because their attention right now is towards the side of your esports on those vehicles, making those rotations, drop with an PMPL info, going trying really to tough. take Yes them मेरे one, भाई. but SG failing ओ to do so. SG Well, they are safer SG now, को and अभी 4MV, अंडर they एस्टिमेट have to मत move करना. inside circle, क्यों? क्योंकि SG का भी कंपटीशन चल रहा है. रैंक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ. and grenades on the other side. ST, Silence teammate. SG, This time they are again DRS. in the center spot, a prime spot to hold on to. They have Stalwart Esports in the close proximity, but Leo Esports and T2K not looking so good as Haidami bring down the numbers as he gets a confirmation onto Sandesh, leaving Rig and Jay. This is going to be such an important game, especially for Miracle T2K. Vibes, who are trying to get inside the circle. But look at Rig, he spotted out DRS at this point. DRS भाई अब थोड़ा अच्छे से मैच देखो भाई. Just enjoy the match, enjoy the vibe. DRS meanwhile Raw के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है वाला भाई. हर एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैच है. लियो के लिए इंपॉर्टेंट मैच है भाई. कहाँ तक सिचुएशन जा चुकी है भाई. रूल्स भाई ने निकाला है नॉक. जोर्टे का रॉ फिनिश निकाला है. किल फीड बढ़ते रहना गाइस. Somewhere down the line, T2K will have to. T2K 2 मैन है. 4 एलिमिनेशन निकाला है. मेन इन्होंने क्या एनबी को वाइप करा है. सील यहाँ पे बीटी कर रही है अपनी वाइब्स की टीम को. रूल्स भाई. And for Miracle Vibes, this is not a good news from them. And Stalwart Esports, Killer they are Whitey going knocked. to be rejoicing with all these teams falling down. DRS go out of the घंटे भाई server. knocked by And there STE. you have घंटे it, भाई का just फिनिश two आ गया. eliminations, 2 कांछा points from भाई this अपने game, from and रॉ their है वो dreams नॉक हुए. I of guess winning the DRS PMPL eliminated. seems to be thrown out of the I window. think DRS And eliminated Stalwart, guys. I think they शायद would से. be the happiest in the room right now. For Miracle Vibes, they have taken a lot Yes, of losses. DRS eliminated. NB Hashtag 12 Esports पे 2 both elimination being के wiped साथ out. अब बहुत Stalwart tough has होगा done last that match even DRS का. in the previous Sanhok game. Can they 4 repeat it MV5 again? elimination, That's the ST3 big question. elimination. But for Meanwhile, Miracle SG Vibes, if finish they निकाल can रही है. TRZ miraculously मम्मा TRZ survive, भी eliminate हुई make है. it to the top 2 or top 3 or game, भाई maybe somehow गलत कॉल है. get a गलत chicken कॉल है. dinner. That's gonna change a lot of things as Seal closing down on the players of T2K as they have a little bit of compounds to hide. But at some point or the other, in the next 8 seconds, they will have to move out because the zone's gonna start shrinking in. And that is when 4MV, they have to go for the rotation. They have to pick fight for the closest Stalwart Esports. ST मारेगी अब देखना. देखते ब्रो क्या सीन होता है. I see with the grenade bringing down. Oh, the Jane, numbers of 4MV. T2K You're भी trying to eliminate. see Esports. Well, they have It's managed Seal. to eliminate the players of T2K Esports. but सील 4MV कर चुके क्या? and हैशटैग Stalwart 12 के लिए Esports वो भी are रैंकिंग में suffering देखना पड़ेगा. perspective. For Seal Esports could be the players of लियो एंड सील को भी एलिमिनेट करा. लियो के लिए मैंने आपको जैसे बोला है हैशटैग 12 के लिए बहुत पॉइंट पे चले हुए थे. ST टॉप पे, देन SG वाइब्स भी एलिमिनेट हुई है हैशटैग 9 पे, देन ST हैव अ चांस. 18 पॉइंट का गैप था.
his own HP. लास्ट मैच है क्या ब्रो? इसके बाद लास्ट मैच होगा. बाय द वे 800 लोग देख रहे हैं. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. इसके बाद गाइस आपका लास्ट मैच होने वाला है जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. Eliminated. This is going to open so many things for the plus of Stalwart Esports. It's like a deja vu moment of the yesterday's Senok where Skylar's Gaming was holding on to the command 4MV of गई, Stalwart yes 4MV Esports, गई. and ST है वो Stalwart, मौका. instead SG of them, सामने it was उनके. Leo Esports. This can be the game of Stalwart Oh. Esports. ओ It certainly could be. कौन? Skylight's Gaming has had managed to secure a chicken dinner from that spot. I But think for कुछ बूम बाम Stalwarts, बसड़ होने वाली है the गाइस. floodgates have opened up. For medical vibes, they've been eliminated. DRS and NB also with them. If Stalwart can get a second chicken dinner in Sandhawk, this changes everything. And then we will have a fight on our hands, and the teams will be reduced down to just भाई हम तो लास्ट a मैच battle के between लास्ट the जोन के लास्ट Mongolians मिनट तक only, वेट करेंगे. क्या where सीन होगा अभी Stalwart तक कुछ and कंफर्म. ओए होए होए NB आईसी fight for eternal glory over दो here. नॉक as बैक IC टू has बैक. managed to नीमा secure नो two फियर. very important knocks, but Stalwart, सिचुएशन are सही they नहीं going है to भाई, take मैं their पहले बता chances? रहा हूँ. Are they going to decide to push? Because Mabtex might make their lives hell over here with कैसे? Kessie just UMP spraying 4X. down his entire फिर भाई magazine क्या from his बचा है? arm over there. He spotted down Action a few गया. players, but Action, he's Expected. fallen down on his knees. Draw Courtesy eliminated. to Haidami. I don't हैशटैग think वन he's पर going to कौन है? मैच survive, के बाद but पता Nirzad लगेगा. टेलीग्राम doing ज्वाइन कर लो, whatever वहाँ he पे आपको possibly रैंकिंग can, दिख जाएगी, stealing पॉइंट्स as टेबल आ many जाएंगे. finishes as he टेलीग्राम can, हमारा गाइस as लिंक he स्पैम still करना स्टार्ट keeps कर दो. Stalwart alive and kicking. Somehow, Action लियो still prone down, STE लियो still knocked, भाई. still bleeding, SG2 yearning, screaming for SG help, but I hashtag think 5. it will just be Nirzad and top for now as Leo and Stalwarts engage in a battle where they would want to establish the supremacy in this particular fight, as Haidami and Smokey V3 wanting to change something from here. Leo Esports, we know they kind of tend to get really deadly in the maps of Sanhok, as Mafia Ninja just lies down right out in the open, as Stalwarts trying to just pinch in through, get as many finishes as possible as the final हैशटैग two वन पर कौन है remain. भाई? It अभी is a रुको, इस 2v2 मैच के बाद पता situation, and लगेगा. Stalwart हैशटैग वन पे have इससे gotten so पहले close. एनपी थी. 18 All पॉइंट they की need to लीड do, थी. इस मैच Shadow, के बाद देखो नो over एलिमिनेशन here ऑलरेडी is निकाल get चुके हैं. that लियो final kill सामने on हैशटैग वन पे Haidami, क्या यहाँ पे and एसटी their एंड करने वाली है. chances, their दामी भाई dreams of 5 winning the एलिमिनेशन निकाले टीम के लिए. will नूर be भाई alive as Tops gets eliminated. It all comes down to this man, Nirzad, Here as Haidami versus just Dami. peeking through the trunks of the tree, 5 trying पॉइंट. to get a जो knock टीम on यहाँ पे Nirzad, फिनिश निकालेगा trying 5 to पॉइंट get लेके the final जाएगा. kill. इट्स अ But 1v1. now 5 पॉइंट की बैटल है. Nirzad trying to close in the grab. He knows भाई. exactly where Haidami is hiding. Finally gets that cover around the knock rocks as Haidami just charging in with his vector, as Nirzad has managed to dish out some specific amount of damage. दामी But भाई, still, दामी bobbing भाई, and दामी weaving भाई, both these दामी players. भाई. Haidami really low on HP. 5 Nirzad पॉइंट needs ST. to go for the final blow. Can Leo. he do that? That's the big question. Both these players very alert, making sure Nirzad in the process gets confirmation, but the job is still not yet done. Haidami wanting to heal himself up, but maybe could have been a decision एंड that यहाँ can पे come to एसटी haunt ने him, यहाँ पे as पॉइंट Stalwart निकाल दिया do है. it out. 5 पॉइंट एक्स्ट्रा. रैंकिंग टेलीग्राम ज्वाइन करो. रैंकिंग आ गई. रैंकिंग बता रहा हूँ कौन टॉप पे है. आ जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. 900 लोग. रैंकिंग टेलीग्राम पे आ रही है. बाकी मैं यहाँ भी दे दूंगा. एक बार मेरे को टेलीग्राम पे टाइप करने दो. मैं टाइप कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप सुनते भी रहना. मॉडरेटर्स प्लीज. तो गाइस रैंकिंग ओवरऑल स्टैंडिंग ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लो. यहाँ पे आ रही है. 900 लोग देख रहे हैं. इफ यू आर न्यू टू द स्ट्रीम मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स गो बॉयज. सॉल्वर्ड. ओ लास्ट मैच बचा है. लास्ट मैच बचा है भाई. रैंकिंग कसम से बता रहा हूँ भाई, रैंकिंग बहुत खतरनाक है. आफ्टर मैच 5 रैंकिंग आर स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स. गाइस स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स टॉप पे है. देन एनबी स्पोर्ट्स है सेकंड पे आ चुकी है. एनबी स्पोर्ट्स. देन वाइब्स है थर्ड पे. फोर्थ पे है DRS. एंड फिफ्थ पे आ चुकी है मैप. गाइस रैंकिंग आ रही है आपकी. मैं यहाँ भी दे दूंगा आपको चैट में, बट टेलीग्राम पे सबसे पहले दे दूं अपनी जनता को, जब प्रॉमिस कर रखा है. तो गाइस आई एम गिविंग द रैंकिंग्स ऑन माय टेलीग्राम.
Last match. Now last match. लो भाई रैंकिंग आ गई, जाके देख लो। तो गाइस रैंकिंग आ चुकी है, अब आपको बता देता हूँ रैंकिंग आपको देनी है। दे रहा हूँ रैंकिंग गाइस, रुको टाइप कर रहा था यार, 10 अकेला बंदा हूँ, हैंडल नहीं होती चीजें। अरे 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 2400, अरे अरे हो रहा भाई, थैंक यू सो मच। CR7 हो रहा 2400 की वॉचिंग भाई, थैंक यू सो सो मच। अगर हो रहा भाई आप अगर स्ट्रीम देख रहे हो, थैंक यू सो 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 वेरी मच। वन ऑफ द हैंडसम गाय फ्रॉम द लाइक कम्युनिटी, अपना नेपाल कम्युनिटी से, वन ऑफ द हैंडसम मोस्ट हैंडसम क्रिएटर, एंड जिसके लिए सारी लड़कियां फिदा है। CR7 हो रहा भाई, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड फॉर द रेड गाइज। CR7 हो रहा ओपी करो, आप जितने भी हो रहा रेड मत करो, CR7 हो रहा ओपी इन द चैट करो सारे के सारे। एंड थैंक यू सो मच CR7 हो रहा फॉर द रेड एंड द सपोर्ट। अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो अभी, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया। CR7 हो रहा द मोस्ट फेमस एंड द डैशिंग एंड हैंडसम कंटेंट क्रिएटर। अरे 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 सॉरी, मैं थोड़ा सा ना टेलीग्राम पे अपना वो अपडेट कर रहा था, अपना पॉइंट्स टेबल दे रहा था लोगों को, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट थैंक यू सो मच। CR7 हो रहा, यस CR7 हो रहा ओपी लिखो, रेड मत लिखो, लिखो CR7 हो रहा ओपी इन द चैट। यस हो रहा ओपी इन द चैट लिखो, यस। ये नेक्स्ट लेवल सरप्राइज दे दिया बाय द वे, थैंक यू सो मच। ओ वी आर वेरी क्लोज टू 57,000 सब्सक्राइबर्स टू, थैंक यू सो मच। लाइक 200-300 सब्सक्राइबर्स क्लोज है, अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, हमारे 57,000 57,000 की फैमिली हो जाएगी, थैंक यू सो मच। होरा भाई थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो 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 वेरी मच। बाय द वे गाइज अभी रैंकिंग तो आएगी नहीं, बट होरा भाई हमारे को एक बार थैंक यू बोल देते। CR7 होरा, तो एक मिनट, एक मिनट रुको। बाय द वे होरा भाई ये नया अकाउंट है मेरा, ये नया बनाया है, तो तब सब्सक्राइब नहीं है, वैसे मैंने सब्सक्राइब कर रखा हुआ है ओल्ड चैनल से, अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो। दिस इज माय न्यू 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 वाला अकाउंट, इफ यू आर वाचिंग दिस इज माय न्यू वाला अकाउंट। अरे चैट चैट नहीं हो रहा, चलो मैं फोन से सुपर चैट करता हूँ। चलो लेट्स मूव इन टू अपना वाला स्ट्रीम। और भाई थैंक यू सो मच अगर आप देख रहे हो, इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पबजी मोबाइल साउथ एशिया इंग्लिश, तो भाई CR7 हो रहा ओपी, यस गाइस CR7 ओपी। PMSL देख लेते गाइस, अभी वैसे मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक PMSL की एक झलक मार ले, PMSL पे क्या चल रहा है। लास्ट PMSL भी चल रहा है, PMSL में भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है, एक झलक मार देता हूँ कि क्या है। वेम्पायर आउट, वेम्पायर आउट होगी क्या? इवोस पर्सिया ऑलरेडी बाहर थी, द सेवियर ऑलरेडी बाहर है, क्या चल रहा है यहाँ पे रैंकिंग लाइव। VP आउट, गीक ऑलरेडी आउट थी, RRQ का पोजीशन। कौन जीत गया? मुझे लग रहा है यूडू निकाली या फिर यूडी कौन निकाली, टूर्नामेंट कौन निकाला है? ऑल्ट्री को निकाल दिया। ओ भाई ऑल्ट्री को कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ऑल्ट्री को कॉन्ग्रेचुलेशंस।
एंटी वेम्पायर, बट टोनी के नहीं खेल रहा था, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कमबैक करा है। सो एंटी विदाउट टोनी के भाई, एंटी कर दो यार, एंटी। यस, बहुत ज्यादा बढ़िया। एविन एविन ए ए ओ हो, अच्छा अभी मैच हुआ ही नहीं है, सॉरी नॉटी, मैं लाइव है, मैं ऐसे खुश हो गया, मैंने देखा नहीं ऊपर नीचे आगे पीछे। ऑल्ट्री को लाइमैक्स बची है। लॉबी पे कौन है? बीटीआर है, बेकन दिख रही है, ऑल्ट्री को लाइमैक्स है। यूडो आउट हो गया क्या? यूडो कौन? बूम। यूडो कौन है क्या? टोनी के प्लेड लास्ट मैच, अच्छा लास्ट मैच ही खेला ना, स्टार्टिंग से कहाँ खेल रहा है ब्रो? कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, लेट्स फोकस टू पीएमपीएल साउथ एशिया। उनका लास्ट मैच बचा है, इनका तो हो ही रहा है, अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। लेट्स गो बॉयज, लेट्स सपोर्ट। भाई मैं तो आंखों की पेटी बांध लीजिए, सारे आ जाइए। चलो ब्रो, अगर एनबी चैंपियन हुआ तो बांग्ला कास्टिंग चाहिए। ओके ब्रो, चलो बांग्ला कास्टिंग लगा देंगे अगर एनबी चैंपियन होगा। लेट्स गो बॉयज। गाइस एक बार 500 लोग देख रहे हो, कमेंट करके बताओ कौन सी टीम को आप चाहते हो यहाँ पे जो चैंपियन बने, आपके अकॉर्डिंग जो टीम चैंपियन बने, कमेंट करके जल्दी से बताओ। विच टीम यू वांट कि ये टीम भाई जाके चैंपियन बने तो बने। कौन सी टीम है? एसटी चाहते हो, एनबी चाहते हो, वाइव्स चाहते हो, एंड डीआरएस गाइस बहुत ज्यादा कॉल हो चुका है अगर आप गैप देखोगे, बट डीआरएस हमने होते हुए देखा है। बहुत इंपॉसिबल चीजें, लाइक जैसे i8 ने करा था, क्या डीआरएस वैसा वाला यहाँ पे बैंगर दे पाएगी? वो देखने वाला सीन होगा। लास्ट मैच लेफ्ट है, आपकी स्क्रीन के सामने सारे प्लेयर आ चुके हैं। पीएमपीएल साउथ एशिया, वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन, टफेस्ट लॉबी हमको देखने को मिली है इस पूरे सीजन के अंदर, इस पूरे सीजन में टफेस्ट एंड टफेस्ट। And here we go, the last match, the last ride for PMPL Spring 2023. Flight path आपकी स्क्रीन के सामने, let's go. Which team you want? NB चाहते हो, ST चाहते हो, कौन सी टीम चाहते हो, वाइव्स चाहते हो, DRS चाहते हो, कमेंट करके बताना। As we venture into Erangel to चलो find भाई, out फिंगर क्रॉस्ड टू ऑल ऑफ द टीम, जो भी आपकी फेवरेट टीम हो। मैं आपको ऑलरेडी बोलना चाहता हूँ गाइस, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर आपकी टीम, अभी भी बोलूंगा, इट डजंट मैटर आपकी टीम लाइक थोड़ा सा अगर डाउन भी होगा परफॉर्मेंस, कोई नहीं, अपनी टीम को दिल से फुल सपोर्ट करना। लाइक अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं खेल रहा है, फिर भी बहुत अच्छी बात है। अभी चैंपियनशिप होना है, चैंपियनशिप की अनाउंसमेंट बाकी है, जस्ट वेट एंड वॉच, लेट्स गो। 2 या 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ओके भाई चलो, फिंगर क्रॉस गाइस, फिंगर क्रॉस। एक आप सभी लोग भी एक बार फिंगर क्रॉस, एक हर्ट का स्पैम कर दो एक बार गाइस, सारी टीम्स के लिए हर्ट स्पैम कर दो, जितने भी हमारी पार्टिसिपेंट टीम्स ग्रैंड फाइनल्स के लिए, इवन दो लीग के लिए, उन सभी टीम्स के लिए एक बार हर्ट स्पैम कर देना। 400 लोग देख रहे हो, एक बार पॉजिटिविटी के साथ लास्ट मैच है, विद फुल पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट पाथ स्टैलबर के ऊपर से जाता हुआ गटका। रैंकिंग्स अफनान भाई, हमने टेलीग्राम पे रैंकिंग डाला है, बाकी मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ, ये है रैंकिंग्स, समझ जाना, ये रैंकिंग है। 205 है, 205 है, एनबी के 203 है, वो पॉइंट जुड़ रहा है। बाकी हमारा टेलीग्राम ये है गाइस, टेलीग्राम पे जाके रैंकिंग देख लो, मैं ऑलरेडी वहाँ पे डाल चुका हूँ टॉप 5 जो। दिस इज द टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल, दिस इज आवर टेलीग्राम। Was it I8? we'll I'm ready. अरे आज तो एमचिन भाई पार्टी होनी चाहिए, आज हमारे चैट पे पार्टी होगी। एमचिन भाई आप देख रहे हो, मुझे पता है, और आज अगर एसटी क्वालीफाई होती है तो आपकी तरफ से पार्टी है। But now the top 4 ठीक है, battle has kind of reduced. कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। If are they gonna settle scores right from the very beginning? Because Hi. Illuminate, they're on the hunt. Did not expect it. A lot of bullets. Did not expect it. They have to run for their lives, and Illuminate, they are gonna stop at nothing at all. You know, be it pistols, be it 4MV रॉ का फाइट हो रहा है, everything it takes. Maybe take क्या हो रहा है even a ये? single player down. NB Esports again struck with lightning right from the beginning of the game, but thankfully, I mean, on the other side, we do see Pmwi Vibes getting a few knocks, but the big question is, are they going to commit or not? Well, NB Esports, they really need to take a deep breath
and calm down and approach the game so भाई साहब cautiously, सांसें because रोक लो, yes, the सांसें casualty रोक could have सांसों been there, वक्त but की पेटी thankfully थाम NB लीजिए Esports, गाइस, now they are safe. They वक्त की just need पेटी a good थाम लीजिए compound, थोड़ी. they just need the good resources. On the other side, for MB, they have managed to get few good defeat points onto the plus of Raw officials, and that's not gonna help the case of Raw. On the other side, we have the place of I8 भाई already वक्त heading की over पेटियों to को the थाम southern लीजिए. side of the farm, looting the compounds, looking very happy by doing enough damage, getting one defeat point. They're just happy. They're just happy they have done so much such a big damage. 4MV एक पॉइंट For निकाला है, Miracle ठीक है Vibes भाई. at this point, I think I'm pretty sure they're going to be out for blood. Because they know just getting a chicken dinner is not going to make sure they have a चलो fighting भाई chance साउथ for the एशिया. trophy, right? What they have to do instead, they have to be all over the place. They have to do whatever it takes, take as many fights, because it's now or never, right? A team like for Miracle Vibes, you would not want to see the, just watch them kind of back off and just settle with maybe a third or a fourth position, right? And I think they have a decent margin. They're kind of ahead of DRS. So at this point, I'm kind of hoping that for Miracle Vibes, just go all out. And for Stalwart, like anticipated, they've एस टी gone for a स्क्रीन के different सामने drop गाइस, this जिन लोगों time, को नहीं just पता around है हमारे Stanchion टेलीग्राम and ज्वाइन कर Shelter, लेना. and मॉडरेटर now थोड़ा सा around लिंक दे Prison. देना, भाइयों को Or बता are देना they going for a सर्कमस्टांसेस hunt? क्या चल रहे हैं. वैसे मैं दे Okay, चुका हूँ पॉइंट, now आप भी कॉपी this पेस्ट is करके रख going लो to completely, गाइस. जो जिनके पास भी पॉइंट्स टेबल completely कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, सो change टेलीग्राम things जिन्होंने around. ज्वाइन करा था, तो If अपने ऑडियंस को Stalwart भी यहाँ पे कमेंट करके बता take देना, down पता NB लगे सीन right क्या from चल the रहा है. very beginning, मीनवाइल एसजी then there's स्काईलाइस no गेमिंग कल point के दिन पे for this बहुत match. अच्छा Does not मोमेंटम इन्होंने matter पकड़ा था. whatever the आज के outcome दिन पे is. लाइक वो कैरी आउट होता Stalwart तो Esports, चीजें they कुछ और playing it होती, बट smart. कोई दिक्कत नहीं. They एंटी know एंड अभी if they साउथ एशिया can deal with चैंपियनशिप में NB पहुंच right गई from टीम. the very आगे का beginning, सिनारियोस then देखेंगे no कि क्या matter बनते हैं. whoever wins, they've got that first spot secured. They do not have to play the remainder of the games under pressure. But this is literally playing with fire for Stalwart. We have seen them do it in even the previous renditions of PMPL. This is something that even the current IHC, which was formerly Zeus, did once, and somebody else benefited. But regardless, I think it was DRS that kind of won that show. But again, Stalwart, they realized like let's not get too overwhelmed, too excited, because this is exactly something that could have happened, as Wally has managed to take down IC. चलो गाइस, डाल दिया हमने. Certainly have. चैट पढ़ लेता हूँ आपकी, Stalwart आ जाता हूँ, रुको Esports जरा IC सब्र has करो. been eliminated. ये डाल Banning रहा gets था the अपने confirmation, and इंस्टाग्राम now पे Stalwart लास्ट में साउथ Esports, एशिया का. they're not going to be happy at all. Even one of the player, I believe it is Action, who is down किधर to है? a very little HP. Stalwart, they don't have the resources. They don't have the perfect weaponry in their hands. They have just dropped in. They were moving towards their drop location. That is nowhere Pnoy. And नेपाल टीम्स आर Maptex, well, they डोमिनेटिंग बट have the पीपल डोंट entire अप्रिशिएट. loot of एरिन nuclear भाई तुम power. ये बोल They're बोल looking के ना जो pretty loaded. अप्रिशिएट कर रहे हो उनको भी But डिमोटिवेट कर दो. Action, along with ठीक his है एरिन भाई, teammates, मैं is तुम्हारा trying to कमेंट make कब a से देख रहा हूँ. quick कितना escape from this डिमोटिवेटिंग हो भाई तुम. situation. But where जिंदगी do में they आगे go? बढ़ो, How do पॉजिटिव they भी reach रहो the थोड़ा यार. drop इतने बंदे location? सपोर्ट कर रहे That हैं. is nowhere. No, Action is trying to go ahead from between the road, but finally he's safe. Maptex Esports, टॉप they got टेबल one defeat में point, कौन है भाई? and टॉप Stalwart, टेबल they have में कौन suffered है भाई? enough टॉप टेबल में casualty. ब्रो They want to एसटी keep टॉप their पे, numbers बट डिफरेंस alive ज्यादा till the नहीं है. मैं very end of ऑलरेडी the game. रैंकिंग यार At this एक बार ऐसा point, करो, Stalwart ये would रैंकिंग है be थोड़ा ऊपर नीचे discussing हुआ है, थोड़ा themselves. टच हो गया, देख How लेना. could they lose out on numbers? And they were out for blood, and eventually they get hunted. And now it certainly गाइस changes their रैंकिंग दे दो यार approach. भाई को. No, they have that threat looming right over their जब आप heads, 10 right? चीजें That संभालो ना sword तो आप कंफ्यूज. hanging तो ये रैंकिंग है could मेरे fall भाई. बाकी ये down टेलीग्राम and का just लिंक भी chop दे रहा them हूँ, off जाके ज्वाइन any करो, single इसमें moment. सारी रैंकिंग. Because if Stalwart get eliminated pretty तो early, खुश रहो. then they're serving the trophy to NB Esports on a silver platter. And considering that fact that for Miracle Vibes will be out for blood, नाइस this जोक, just आई चेक्ड इट्स goes down for Stalwart. They do not want to bottle it at this moment, especially एसटीई वन मैन with डाउन. already, NB deciding that, with whatever loot they have, they just want to contest for the center of the hills and hold on to their life. And that's all they need, just stay at a high ground advantage and get at least 3-4 kills and just hope that Stalwart gets eliminated, as Wally is deciding to continue on with his rap. And Kansha from Raw, barely alive, just one bullet shy, will escape. Finally, he has escaped, and thankfully,
He's going to be pretty happy because enough damage has already been done on the side of Raw officials. TRZ They कितने lost पे one है? player, 3 ब्रो for enemy the TRZ minute they आपका dropped in, क्लोज है. and TRZ now Raw officials, SITM even they are in they close are rank. also walking with a Currently very thin they are in ice. I close don't know rank. if they are qualifying or not, Just but this vibe game is भाई मैं crucial ज्यादा for नहीं them. बोल रहा लास्ट But मैच के लिए थोड़ा Stalwart and मैच को NB वाइब को Esports, एंजॉय करो Stalwart, they जस्ट haven't made it दैट्स to इट. the city of No Ripnoy yet. On the other side, NB Esports, they have to be very calm and composed one. The By the way guys, over-aggression PMSL might को AE ने win कर go लिया. in Many their many favor or might congratulations not go in their Alter Ego favor. Limax for winning This the is going to be PMSL so very title. tricky for बहुत them ज़्यादा because खुशी हुई if, Alter Ego if they Limax go के for लिए. the over आज मैंने बोला था आपको हम दो टीम को सपोर्ट करें, Alter Ego if Limax, they Vampire and हम then Yoodo it's बोला था not and going to Yoodo ने fare करके off भी दिखाया really क्योंकि well Yoodo in में terms of the consistency overall दिखी थी. ranking. But Stalwart Esports And may nice one be यार, अच्छा safe लगा in देख the के. city of Yeah, No एक Ripnoy. बार But look at the congratulations rotations that Alter are Ego coming from Limax the कर देना western front, PMS. where we have the players of Meanwhile अभी IHC, अपन Dead यहाँ पे बढ़े Eyes, Leo Esports, रैंकिंग at के the same ऊपर. time TRZ. सिचुएशंस जोन Right. क्रेजी So जोन है they've changed their strategy. यहाँ पे बीटी What होती I है can टीम्स. feel Stalwart is doing over here निकलना is मुश्किल हो they जाता है. want us to retreat back, recuperate a little bit, and take the waterways. Maybe that is their go-through way, or maybe यार rotate pretty late into the game. And के oh god, ओ they just arrived at Nova Ripnoy to loot, and now they have to escape from here. And this is गाइस मैं going to be सिचुएशन देख रहा हूँ फॉर disastrous एमवी from की और them एसटी. दे because आर the ऑन kind of #1 decision and they 2. took. वेयर इज I mean, I एनबी? thought at a point maybe they will just take over those Miltapa factory over there, maybe go एनबी towards the nuclear power बिल्कुल plant एग्जैक्ट and सिचुएशन पे. क्या get यहाँ पे whatever न्यू loot चैंपियन that आपको remains मिलने and वाला just है? go to the top of the terrace and defend. Now that could have been the way to go, and I think they tried to do that भाई until अलग सी Mabitex kind अलग of सी कोई just वैसे मेरे shoved को them दिख away, नहीं just रहा ब्रिज spotted पे, them from बट their एसटी territory, तो अपने पॉइंट and ये तो हमको Stalwart दिख had रहा है to be ब्रिज पे pushed कोई नहीं. back. बट एसटी तो माइंड पे Now लेके this चलेगी is the ही कुछ. point where for Miracle Vibes needs to make a very important एसटी decision. ने क्या सोचा Do they इसके stay लिए? over the bridge and fight against और एमवी Stalwart, अपनी or do रोटेशन they मार रही है. just go inside the circle and pick up other fights? T2K But मैप regardless, we've इंपॉर्टेंट got फाइट है फॉर T2K मैप. just charging in at Mapitex मैप direction. #5 पे चल रही थी This इस मैच sort से of पहले. T2K aggression #5 we आ are जाएगी. seeing from रैंकिंग है फॉर T2K द प्राइस time and पूल. again, and we've been मैप loving केसेस स्पॉटेड what बाय they've जेन. been doing throughout the day. Oh yes, T2K. They are looking for blood, and this time the target could be the players of Maptex Esports. They have got one defeat point in their favor, and Maptex, well, they lost one of the player. But now Maptex, they don't want to ruin the chance of getting a chicken air or having a best game in the last wrangle, so they're not going to engage in this fight because, of course, they have all the reasons to shy away from this fight. This is their circle. This is their home ground. Milta Power, complete eastern periphery is a Maptex area, and they want to capitalize on it in the later stages. But looks like Sandesh is the guy who is getting shots from लगे somewhere STN 4 else. MK. यस He जोन did बहुत lose out खराब. on to a little और bit of इमेजिन the यार HP, ओ भाई but T2K, they do have एनबी a good compound to hold on to. At the same time, they have NB क्या लग रहा है Esports गाइस? and एनबी I8 होगा. also lurking nearby. And NB Esports, I'm not in favor of the compound which they are holding on to right now, because there is certain uphill advantage to the team on the left side. At the same time, Maptex Esports and T2K, they can also do a third party. So NB Esports might want to change things at the later stage or maybe in the next circle. But Monda with a DP takes on Sandesh over there. And if T2K have any idea that the team in front of them is NV Sports, they're gonna leave Just everything enjoy the vibe guys. and Just just go enjoy the after vibe. them. And then we'll see Skylights Gaming also applying pressure, and then NB Sports, they might be reduced to ashes. And NB Sports will have to somehow defend with all their lives. And I completely agree with you. You know, we have barely seen any team kind of successfully defending from the compounds that NB Sports is holding. But hey, can't really blame them at this point. Any cover, anything that keeps them a minute alive extra, they will take that with open arms. But Kessie, ooh, just dancing around there. It gets spotted out, but no major casualties. But look at T2K. They show no mercy, instantly charging at their direction as Kessie will take the brunt of T2K it. As मैप Baron, दोनों के he लिए needs भाई those #5 trades. He वाला needs to बैटल get the वाला job सीन. done instantly as Baron. Oh, he takes a dip into the water. He realizes he's got no business over here as Mabitex. They will have to go for a hasty retreat. For Mabitex and T2K, well, they have not got a lot to lose or win. And at this situation, whatsoever, T2K Sandesh, all he's got to try and get his teammates back up. Jane somehow just crawling his way back to him. But Suyog also under dire circumstances. Baron, considering the fact that he has dropped down, leaves Wally with a huge job ahead. One good grenade could completely haul down the hopes of T2K, but it misses by miles. And what is Rick doing all by himself in that compound?
where his teammates are fighting He's with the guarding players it. of Maptex Esports. Yes, he's guarding the compound, but right now his teammates needed him. But now it's just Valley, so it's going to be an easy win. But for Celia, it's not going to be easy, as the players of TRZ To be and respect for Deadeye not holding back. both Yep. are doing a third party, where TRZ, there are 2 players down, and Steel Shot जो with जो a टीम vehicle trying to make एलिमिनेट a होगी quick ना अभी escape from the सभी टीम्स situation के लिए as the ओपी blue is एंड हर्ट closing स्पैम in. करेंगे All this सारी is टीम्स के लिए happening around फॉर the ऑल द matching टीम्स area, जो and एक here एक टीम comes the अभी यहाँ grenade. से Is एलिमिनेट होती looking है for the confirmation By the way, point guys, onto the players of let's move into the TRZ, match. Dada and guys, 3 looks like eliminations. Deadeye T2K guys are have 2 going to be the eliminations. faster one This match is with the very, very TP, important for and STE, we'll get the for confirmation now. Vibes, NB, TRZ, क्योंकि the बहुत question कम is, गैप how के do they साथ ये move टीम inside खेल the रही है जिन circle? At लोगों the को same गैप time, नहीं Becca पता is है कि also कितना stuck. ज़्यादा गैप है No तो मैं vehicle at रैंकिंग एक all, बार and आपको बता Deadeye is देता हूँ on ये the रैंकिंग है looks मॉडरेटर्स like आप भी he's अपडेट hunting करना for him. Easy confirmation will be made 205 on to पॉइंट Mapkit over आपके there. TP इसके even for हैं आपके TRZ. स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स के Well, this एनबी was के a very 203.2 important game, पॉइंट का गैप and है they're वाइब्स के already down to a 187 single पॉइंट्स player है with वाइब just का 1 गैप ज्यादा elimination. है एंड Not a good सिचुएशंस start, अगर आप not a देख रहे होंगे start अभी they के were लिए hoping बहुत ज्यादा for. क्रिटिकल But है towards the एसटी जोन lumberyard के area, बाहर है we have the सील players जोन of के बाहर Skylar's का Gaming डैमेज ले having a रही good है spread एसटी with के 3 मैन control. मैन But का IHC, एडवांटेज well, they are नहीं है also in the मतलब kills लास्ट सर्कल आपको proximity. पता है मैन एडवांटेज Well, कितना ज्यादा exactly, इंपॉर्टेंट रहता है But at एनबी this स्पोर्ट्स point, स्टार्टिंग में बीटी हो Shadow चुका था उनको बट बहुत ही अच्छे is तरीके kind से of टैकल करा एंड 4 मैन it's on the स्टैंडिंग है verge of a काफी अच्छा breakdown. जोन में एंट्री मार दिया है Stalwart, what do they देखो do? एसजी NB, how do DRS they hold on? STE So much is going on because Stalwart I am looking playing for around the NB. edges. Oof. They are the Hey, ones fighting with death. Because for medical guys, vibes NB भी right बहुत बढ़िया beside है them, भाई. and they need to do बहुत ज़्यादा anything बढ़िया and है NB everything अभी to के time. avoid them and make it And inside the where zone. is Because they do not have all 4 of them and yeah ये alive. yeah and IC is not vibes there with them. He had been eliminated early STE on. ठीक है सीन And अभी देखो जैसे क्लोज for क्या medical सीन है vibes, काफी they'll इंपॉर्टेंट hit a फाइट है blow. फोर And this is where IHC IHC show no PMWI respect, slot and Doc also goes falling down. Four courtesy to MV. Demo, and Ziol बहुत close. secures that kill. IHC, I mean, their days look numbered over here, but still they don't care. But for I medical think vibes, यहाँ से getting बहुत huge सारी चीजें dents, क्लियर हो गई as होंगी now IHC they survive Alex with just Apex Reviews is and the last Refuse. guy And Refuse नहीं hiding Apex भी behind बचा हुआ है that but little situation tree, गया gets knock spotted out. oh And Apex, his dreams are looking to just 4 shatter MV league right in front of his dominate eyes. किया finals में अच्छा And खेला will maybe have to settle with but the third or the competition fourth try position hard scene इतना था because, lobby के अंदर इस things बार have भाई definitely gone awry for medical vibes as Apex IHC last guy है look from hell-bent on 4 MV IHC dealing no that killer better blow and last taking बंदा Apex बचा है out of the equation Alex as and he Godless decides is to cook going upon the grenade as Alex with that Apex shot नेट kill पुल इन हो रहा है deciding नेट to करा close है in, and splash they damage have आया that है location. and All here we Godless go has to do guys is एक बार just NT2 slap team his 4 face, miracle and there you vibes go. hurt There के goes साथ the spam कर देना Miracle with full vibes positivity eliminated I at want the guys 16th please spot. वाइब्स ने बहुत अच्छा खेला And थ्रू आउट even द the players टूर्नामेंट of फुल Deadeye डोमिनेट guys करा are एक बार not हर्ट looking स्पैम so कर very देना good. IHC एंड 23 ऑफिशियली points दे on आर their नॉट next गोइंग victim. फॉर Could be PMWI the एंड players of high विनर नहीं voltage, बन or रहे हैं maybe vice वो versa. 4 Because MV high is officially voltage team have eliminated a from the certain height tournament now the advantage. race is And between to Demo NB over there, and the spread Stalwart that is coming from their Esports side, IHC, they can go for the flank angles. Malik and guys एक Praveen, बार they are pretty वाइब्स को much pinned appreciation down बनता guys let's go behind that let's do rock. some One appreciation for all the grenade, teams if let's one, go even a anti grenade vibes is on the not chat required. with A the perfect red flank hearts angle is with enough full to take down let's Malik go and Praveen in the situation. And Zoil with the vehicle was बहुत looking for the प्यारा flank, but competition दिखाया Malik is भाई going to 4 stop MV ने him in his tracks as Zoil takes hefty damage. And Malik with a grenade might be looking for some knock over there. HV Can he take down Demo? Leo And the answer T2K is no, but on the other side of the map, संदेश भाई we have लियो Leo के and साथ T2K बैटल also करते हुए going up against each मीनवाइल other. They मलिक will भाई not ने start डेमो का फिनिश bringing निकाला है down. किल फिट देखो But at the कितना same जल्दी time, चल रहा है एनबी Stalwart, स्काई well, they have वाइपर landed inside the अकासे circle of the circle. मेन फाइट They ऑन have the गोइंग southern control. आई If इट they manage वर्सेस to find फिश a बॉय good compound, a नॉक्ड good position to hold on to, they can find it from the ओ southern side. संदेश But भाई NB लियो का Esports, फिनिश आया है well, they are स्लेयर भाई in लिक्विड proximity to the plus of सीक I8 right वुफ now. गया Yeah, I8 have decided to सीक barge in डाउन on their एनबी compounds, and there एनबी you go. स्पोर्ट्स एलिमिनेटेड NB 0 पॉइंट के Esports साथ wiped by I8. Certainly missed that action. वाइपर But, आई there इट goes द their नाइटमेयर dreams फॉर of एनबी winning स्पोर्ट्स दैट PSA, कितना PMPL, क्लोज and PMW
LWI Now slot. Stalwarts, I'm pretty sure we're gonna see Oh. that smile on their faces at Fight the नहीं right दिखी हमको. position. Does not matter what the case shall be. But वो I'm pretty sure they might गाइस have एक done बार it. But at this NB point, high voltage NBNT against NBOP IHC. जैसा वाइब्स के लिए Well, अभी आपने स्पैम one of करा their players वैसे ही has NB fallen के लिए down. स्पैम High कर दो voltage चैट के and अंदर IHC both have NBOP nothing to lose at NB this point. Esports NT It's all and with the about full hurts respect. के It's all साथ about लाइक जैसे glory हमने वाइब्स के लिए for अभी all करा these two NT teams as सेम गोस फॉर Jigar gets टीम NB forced out from IHC the lower HV के लिए ground. इंपॉर्टेंट था यार HV somehow कौन सी रैंक पे चल रही थी converts मेरे को that. देखने दो And that being HV को said, टॉप 12 पे जाना था numbers यार on high voltage, 2 मिनट में they रैंकिंग are देख रहा diminishing as Godless finally activates his God mode.
little too late into this tournament, but it's एमचिन fine. भाई अगर आप देख IHC, रहे हो they've पार्टी still इज पेंडिंग qualified आई for the गेस SA Championship, and all they can do is just get a little bit of NB practice. Sports, please What guys. awaits NB Sports for with them in the Hertz, future. vibes with Hertz. I just Let's go. can't get over T2K how with Hertz NB with the full Esports energy. can get Let's eliminated go so for early in T2K. the Let's game. go for I Leo. hate they barge Steel, into the compounds TRZ, and I hate they're OP in not the chat कर दो guys. stopping. T2K They're ने बहुत अच्छा expecting फाइट other करा players लास्ट on डे red, पे. guys. काश But अगर ये वाला NB फाइट वाला Esports सीन having कल रहता ना zero थोड़ा सा, elimination, तो आज this is going T2K to भी open बैटल so कर रही many थी things for the players भी of जा सकती है Stalwart बट कोई Esports. दिक्कत नहीं Even the कोई players नहीं of 4 LD, अप्रिशिएशन they बनता have है been T2K को अच्छी eliminated. The only परफॉर्मेंस के लिए threat गाइस लेट्स गो is T2K DRS. OP इन They द have चैट got the कर दो numbers, विद फुल but do they पॉजिटिविटी have हर्ट good स्पैम कर दो position T2K inside के the लिए circle? TRZ के लिए कर Yes, दो they are सारी somewhat टीम के close लिए to गाइस जो the अभी players of एलिमिनेट हुई है Stalwart हमारी Esports लियो on के the लिए ओपी southern कर दो side. काफी अच्छा खेला है Where एज एन even the players of आपको Pro पता है अभी नई officials टीम are आई also उसके बाद there. इस Then तरीके का circle परफॉर्मेंस shift दिखाना is going to बहुत decide ज्यादा so बड़ी many बात है things. लेट्स गो And बॉयज well, Stalwart Esports, they are on the southern periphery, a good position, but on the western side, we have ISC एंटी going हर्ट up स्पैम against कर देना Skylar's टीम्स Gaming, के लिए and जो Nima जैसे is जैसे going गाइस to open एलिमिनेट things होगी up प्लीज as he लेट्स takes गो out Zoel with that T2K perfect M416 spray. एंटी और And ओपी Alex हर्ट्स with के that साथ buggy is going to lure the स्काइलैश players गेमिंग around स्टिल the लाइफ floor. स्काइलैश Demo गेमिंग ने hiding बहुत behind तगड़ा the फाइट front दिया of है the tree. स्काइलैश Gives गेमिंग a के लिए bit भी of एक the बार glimpse, takes hefty damage. अब At कर the देना same चैट time, के अंदर Nima अभी अभी also गाइस needs to be टॉप very 5 की रेस cautious. बाकी है If बाय he द वे doesn't, एसजी बैटलिंग Fortress फॉर will द take टॉप him 5 down, रेस and अभी कुछ exactly लेट नहीं that हुआ है वेट कर रहे हो is going to happen. The glimpses of the past seem to have come true for Godless, as finally What is all the the differences Godless in fans TRS and would be ST? rejoicing Please with the tell way fast. Bro, the hero Kumar is bhai playing देखो right last now. tweet This का is point मैं exactly आपको how दिखा we दूँ wanted IHC to अब perform. अपनी Show no calculation fear, लगा देना show no mercy to बहुत their गैप था opponents, and they are doing exactly the TRS same. अब देखते हैं इस Demo मैच से closing in, the gap on सिनारियो no निकाल fear पाती just है has a bison to play IFC around as Demo just SG thrones in. IFC No for fear high again spec taking 5 the rank cover of the trees, and now will just instantly flush him out with that Molotov as No Fear ज्वाइन कर लो starts गाइस burning, टेलीग्राम as the वहां मैं बता grenade चुका हूँ starts getting पॉइंट्स टेबल cooked तो off, वहां से आपको as समझ Demo आ जाएगा कितना है applying extreme pressure as No Fear takes that opportunity, instantly backs off. Well, it certainly backs off, but Demo is still fighting Skylar's Gaming. The numbers are not favoring their case. So let's see what's going to happen. IHC, 5 defeat points already in their favor. Actually, Skylar's Gaming, all the 4 players are still alive. 12 The आना क्यों revivals were जरूरी है made, अनिल भाई and 12 आना Zero इसलिए is जरूरी है also साउथ from एशिया Seven चैंपियनशिप Seven अभी Esports प्राइस after पूल रिड्यूस है fighting, पीएमपीएल and के looks लिए like dead end, साउथ एशिया guys. में प्राइस After पूल having रहेगा ना 6 उसमें ज्यादा भी elimination, होने वाला है they have been प्राइस dealt पूल के with, लिए they इवन have तो been क्या पता eliminated, but पीएमडब्ल्यूआई look के लिए at क्या कुछ स्लॉट का Praveen in सीन such ना a बन जाए close proximity, अभी रूमर्स चल रहे हैं hiding over कंफर्मेशन there नहीं है at the दैट्स mercy व्हाई of the blue. 12 चैंपियनशिप तो I don't know खेलना है how the ब्रो players of चैंपियनशिप IHC खेलना है can क्योंकि spot प्राइस him पूल है over there. पीएमपीएल में प्राइस पूल Finally, डिडक्शन हो चुकी Praveen, है बहुत he has ज्यादा made टीम्स it को inside प्राइस the पूल नहीं safety मिलता of the टीम circle. इतना And now इन्वेस्ट कर just रही है ऑर्गेनाइजेशन hoping that the players of Skylights and IHC prioritize the rotation so that without any vehicle, he can move inside the safety of the circle. But Skylights, they're still holding on to that compound. And Assassin, high voltage, he's in such a tricky spot right now. Yeah, job still not over अब for दिख Stalwart. एसटी को गाइस Not ओह until टॉम they एंड get a जेरी few kills क्या over जाते here, जाते at टॉम least एंड जेरी 5-6 हमको फिर points से देखने को secured. मिलेगा पूरे Then they टूर्नामेंट could में हमने maybe देखा start to celebrate. They एसटी know जहां the होती है biggest वहां पे thorns in the टीआरएस path होती है have been dealt तो with, and now दे आर द going बेस्ट after फ्रेंड गाइस दे another आर द big बेस्ट dog फ्रेंड्स over here. That अगर मैं is बात करूं TRS. रोटेशंस Few of the players पैटर्न्स कई बार already देखो knocked एजिस out. दोनों खेलते TRS हैं desperate एग्जीक्यूशन in trying रहता to है get हियर the वी गो revives एसटी done, but वर्सेस Tops टीआरएस is वन playing मोर with लास्ट fire. टाइम फॉर द पीएमपीएल Got स्प्रिंग सीजन another चैंपियनशिप grenade में just देखने hooked को up. मिलेगा One more बस स्प्रिंग की successful बात करें one, इस and सीजन की 3 मे बी might टॉम एंड go जेरा tumbling down. टॉम एंड जेरी But वाला that फाइट does आगे not hit मतलब the समझ रहे हो spot. एक Rules बेस्ट फ्रेंड वाला barely जर्नी टीआरएस एंड somehow एसटी का survives that, वंस as अगेन ऑन योर Stalwart स्क्रीन still eyeing on DRS, as Claw from the backlines has managed to take down action, as things might go down for Stalwart if they do not survive over here. They know that NB has been dealt with. All they need to do is at least get 3-4 position points and get a few kill And points to moderators their be active name. on chat जो भी And hate as you comment can see, hate they chat आ are रही है प्लीज उसको रिमूव exercising कर दो extreme प्लीज caution, but they need to do that. They need to do that in order रिमूव to make मतलब sure टाइम आउट दे दो डायरेक्टली that पर्सन they are at least 4-5 points clear of NB Esports. I'm pretty sure they would have done the maths, but we This have whole no man strong, idea. IHC, NB might okay, have had high a little voltage भी sliver guys of a eliminate lead. हुई है. Stalwarts definitely did make a comeback. High in voltage the is map also of,
eliminated. Sandhawk, but NB did get a lot of kills in their previous Miramar chicken dinner. So that is something that we really need to count down to. But considering the fact ST that champion, Starwoods yes. have और दिखती retreated, बात है guys. do not ST is have the enough champions, men, guys. they need ST to, is the somehow champions. get action back alive. I think they've done that. And also, they need to get themselves inside the circle. ISC And chicken, I'm ISC can telling you. stop Okay, them bye. because Demo is in such close proximity to Nized over there. But right now, DRS ये they're caster lobbing fixes some है, yes smokes, पढ़ना भाई, trying fixes to भाई do अपने. some soft cover so that they can भाई अभी transition grand finals themselves में आए हैं inside and the full circle. मौज लगा On दी the fixes northern भाई ने. front, we still have the plus of Skylights Gaming, Sitim Esports, Positim. Also, this is a very crucial game.
On the भाई other ऑल्ट्रिगो side, चैंपियन, Flawless, यस they are मेरे भाई, marching खुशी towards हुई the ऑल्ट्रिगो circle, को देख के। and वैम्पायर भी Mafia होती खुशी Ninja होती, is बट hiding ऑल्ट्रिगो के लिए behind भी the ज्यादा truck, खुशी हुई। ready for the ऑल्ट्रिगो players of लाइमेक्स को हम IEC, देख रहे हैं, and फॉलो but कर रहे हैं he काफी just टाइम से, survived that तो grenade. बहुत अच्छा लगा है ऑल्ट्रिगो And लाइमेक्स AJ के लिए from भी। the rooftop angle is एंड trying बात to करेंगे भाई capitalize अभी on that information, ऑल्ट्रिगो grab लाइमेक्स के as much लिए भी। information as much यस, possible. करते हैं अभी बातचीत Looks like के no बाद, fear. मैच He has a खत्म होने vague के बाद। idea about the कॉन्ग्रेचुलेशन। players of एक I8. एक प्लेयर Courtesy से to शायद the बात होती है smoke, the मेरी, तो position has करेंगे been उससे, given उनको away. Now the कॉन्ग्रेचुलेशन। players of भाई क्रेजी Skylights बंदे हैं are भाई वहाँ ready. के। At the same time, they have an information onto Sitim as well. So Skylights, this is their game in terms of the elimination If points, DRS will because get they chicken, do have also a ST height will champion. advantage onto Sitim, and Gap, I8 gap, can gap. Deepa, capitalize on gap the is elimination point. But gap difference Stalwart, is that's from still being the silent NDR one, still gap है ना, playing with the वो बहुत circle, है। on the edge of the तो yes, circle, ST is the having the champion। southern control in their favor. But I believe और अभी the minute the circle एलिमिनेशंस भी shift is इतने going to बचे नहीं come है in their कि favor, तरीके they से will होगा। start मीनवाइल रूल्स raining भाई death को यहाँ and पे नॉक दिया destruction. है, सॉर्डे फ्रॉम द रॉ, Certainly. रॉ के लिए काफी At this इंपॉर्टेंट point, मैच है। Skylights टॉप Gaming, 12 they've पे got क्या really यहाँ good पे position रॉ to hold है on कि to, नहीं but, है, रॉ होगी Stalwart या नहीं होगी, actions ये at this क्वेश्चन है। point, मीनवाइल they 1100 really लोग देख cannot रहे afford हैं। इफ यू आर that. न्यू टू द स्ट्रीम, मेक As श्योर टू लाइक द Zodi वीडियो एंड manages सब्सक्राइब to टू द take चैनल down again। rules over here, सब्सक्राइब it कर लेना चैनल को again गाइस। comes वी आर down to वेरी क्लोज Nizet, टू and top 57,000 action is सब्सक्राइबर्स, pretty थैंक्स much टू CR7 done हो रहा for, भाई but top फॉर द he रेट। wants वी to आर go for that. 200 गाइस, He 200 wants to revive him. He अगर आप wants करोगे to get his सब्सक्राइब तो हो teammate जाएंगे, back बाकी alive, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, and आज नहीं तो कल हो ही जाने। with constant threat, constant pressure from IHC up top, this is going to be a very difficult one, and one of the most important revives. Oh yeah, somehow top has managed to do that, but now Zolin got it again, strike at that IHC 7 direction. elimination। As top deciding to, you know, just park safely, maybe take control of that wizard tower, get back to his teammate, but no, they decided Tell me to something new stick meanwhile. for another position, Good color view. maybe exposing themselves to threat from ST the champion, backlines. yes, that yes could bro, be raw like the video, in that particular yeah, case. like the stream, But like the IHC stream bro, like the regardless, stream। By the way, they वीडियो भी managed आने to वाली है get इसके 7 बाद, finishes कमेंट भी कर already, and देना like गाइस। PMSL anticipated, प्लस PMPL का top वीडियो is रहेगा under ओवरऑल, heavy, जैसे हम heavy पहले fire. बनाते थे, एंड कल भी बनाया Oh, था हमने, certainly एंड he is, काफी but पुरानी IHC यादें ताजा Devo, होगी look फिर। at his position. आज He भी वीडियो doesn't have too बनाएंगे, many एंड throwables in लाइक his hand, एंड but his कमेंट कर देना उस teammates, वीडियो पे, आ Zoal, जाएगी नोटिफिकेशन 10 बेल ऑन grenades, तो अगर 2 आपने नहीं किया। molotovs. Oh my god, he can eliminate the entire squad just by grenades. But Stalwart, I won't say they are in the best of the position. They are in the low ground. They're holding on to I8 their visit बहुत tower. बढ़िया And परफॉर्मेंस है। tops, I8 को भी you देख के really अच्छा need लगा to watch परफॉर्म your करते हुए, six फर्स्ट because एवर from टाइम the आई थी। आई एम backlines, इम्प्रेस्ड बाय I8 Pacha गाइस, is in such स्पेशली close थिंग proximity that the टीम smoke जो will give बीच में away इन्होंने his परफॉर्मेंस position, दिया and these three trunks are not फ्रॉम enough इंटेंस to provide परफॉर्मेंस the necessary cover. And looks like Tops is ज्यादा aware बढ़िया। about the players of Raw तो गाइस officials. एक बार DRS OP And एंड कर देना चैट के अंदर। let's लेट्स गो see गाइस, what can he do. The लेट्स गो। circle shift DRS is OP not going to कर दो help the चैट players के of अंदर। Stalwart लेट्स Esports गो right गाइस, now लेट्स गो। because it DRS goes OP in इन the द favor चैट। of I8 फाइट and Raw बहुत इस बार officials. टफ कॉल था, And at रूल्स the भाई same ने time, खुद Sitim also, they are की awarded by good position inside the होगा। circle. PMGC का They लॉबी should वहां make पे it खेलना आसान है, count बट यहाँ पे if they क्वालिफाई want to करना, समझ रहे qualify हो। for the एक बार हमारे SEC. But चाइनीज प्लेयर ने भी Stalwart, किसी ने कहा था कि what they are वहाँ going to do, क्वालिफाई at करना one मुश्किल है। side सो they आपको have ओवरऑल IHC, on सिनारियो the other देखने को side मिला होगा। they have Raw. DRS OP Looks एंटी like they are DRS going to DRS के fight लिए with the हर्ट कर players of देना Raw चैट के अंदर officials. विद द Even the फुल players of Raw पॉजिटिविटी के officials साथ। with those molotovs DRS are बहुत trying तगड़ा to take down कंपटीशन दिया, एंड Tops. वन ऑफ द But कंसिस्टेंट टीम। अभी भी मैं very DRS को बोलूंगा, एंड No, जब जब DRS there's खेलेगी that तब तक ये narrow, बात आएगी। small little वन ऑफ द valley kind of कंसिस्टेंट रीजन position फ्रॉम there. PMPL I think रीजन, they have to दैट go इज with टीम DRS। because रूल्स that भाई is the OP, only way they किलर can भाई OP, survive डेल्टा from the गैंट है भाई onslaught. OP। Because लेट्स at गो। this point, एंटी DRS OP if इन they द take चैट विद द फुल around the हर्ट एंड द center of the map, पॉजिटिविटी। then they're gonna be just विनर इज pressing क्लियर like a गाइस, sandwich देयर there. इज नो, इसमें And शक नहीं होना चाहिए। it could be either IHC or it could be DRS Raw. OP So एंड Stalwart, हर्ट I स्पैम think कर देना, they'll have एंटी to DRS ऑन they'll द have चैट के to साथ, wait a द little फुल bit, एनर्जी। be a little patient, or maybe just let ऐसे टीम Raw टॉप आरा aggress. में है But क्या? no, ये मैच they're the उन्होंने ones निकाल are दिया, नहीं taking तो that नहीं first होते। step. अब And पता नहीं IHC इस is मैच के so बाद well से देखो prepared for रैंकिंग them आती है right तो मैं now. आपको बता दूंगा। IHC having complete control over that northwestern territory. The only posing threat would be coming in from Skylights Gaming. As AJ, he decides to go after the players of Sitim over there. As there you can see a few trades coming left and right. And now this is the fight finally breaking out. Mafia Ninja and Nofia just charging in on QB, the lowest survivor, as he gets picked off in Skylights Gaming. Another team wiped out to their hands. And
Sitim goes down this time, however, with 5 eliminations to their name. So few points accrued out of this game. But now the big question is, Stalwarts have made it to the top 5, but they have to dig in a little bit deeper. And this is where Raw officials start dancing, start playing with IHC. So IHC realize they've got trouble from down below. So they have to calculate every single move yes, that guys. they make.
स्काईलाइट्स ओपी, यस भाई, स्काईलाइट्स आल्सो ओपी। स्काईलाइट्स ने भी काफी अच्छा फाइट दिया जो कल के दिन पे। कई टीम जैसे कि मोमेंटम थोड़ा सा लेट आया, शॉर्ट टूर्नामेंट पे ये चीजें होती है, आपने बहुत टीम्स के साथ देखा होगा, थोड़ा सा मोमेंटम लेट आता है। इवन S2G जब फर्स्ट पीएमजीसी खेला था, अगर आपको याद हो, उसका मोमेंटम आधे मतलब जब आपका लाइक जो सेकंड 3 दिन का टूर्नामेंट होता है, सेकंड डे के लास्ट मैचेस से मोमेंटम आया था। मीनवाइल जुल भाई ने फाड़ा यहाँ पे ST न्यूज़ को गॉडलेस काफी एडवांटेज वाली पोजीशन पे। आईएचसी का चिकन देखो आता है कि नहीं आता, आगे जाके क्या सीन रहता है। बट यस, सारी टीम्स के लिए DRS के लिए एंटी कर देना चैट के अंदर, बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिला है DRS की तरफ से। T2K हो, TRZ हो, अगर हम बात करें लियो हो, I8 हो, हर एक टीम के लिए ओपी इन द चैट कर देना। रॉ ने काफी अच्छा कंपटीशन दिखाया आज के दिन पे ओवरऑल। फर्स्ट डे से अगर सीन रहता तो चीजें रॉ के लिए भी अलग हो सकती थी, इवन दो स्काईलाइट्स गेमिंग। तो शॉर्ट टूर्नामेंट का गाइस ये पार्ट है, शॉर्ट टूर्नामेंट में चीजें होती है कि कई बार टीम्स अच्छी होती है, सारी टीम्स यहाँ पे बेस्ट है, बट कई बार मोमेंटम कैरी करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। T2K के साथ हुआ बीच में, थोड़ा सा SG के साथ हुआ, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैंपियनशिप अभी आपकी बचने वाली है, तो वहाँ पे भी कंपटीशन डबल होगा जब PK की टीम आएगी। इट्स अ क्लैश बिटवीन साउथ एशिया एंड PK। मीनवाइल SG अपने SG के नो फियर ने नॉक दिया, एंड नो फियर को यहाँ पे ट्रेड पे नॉक आया है। Finds a beautiful knock onto No Fear of Skylar's Gaming. This is looking so very promising for the class of Raw officials, but IHC as well. Yoodo Alliance के yes वाइस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था Yoodo ने। तो मोमेंटम पे दिख ही रहा, 3 वीक से कंसिस्टेंट टीम खोल के देखो डाटा। Yoodo Alliance है। Deals with both the remaining class of Stalwart Esports. Raw was 16 but now they qualified for SSC. Yes Deepa, exactly. The last day momentum जो Raw ने लिया है बहुत प्यारा। Again #3। आप आज के 6 मैचेस खोल लो, कितने ही मैचेस पे Raw #2 #3 है, #4 है ये। This is the consistency। जो momentum थोड़ा लेट आया but आया at last और वो waited ever so close 3 to 3 points but still at the top 3 position. इनवाल IHC आपकी है SG एंड आपकी बची है रॉ की टीम। एक बार गाइस ST OP इन द चैट कर देना, ST एंटी कर देना, क्योंकि ST तो वैसे विन हो चुके। कांग्रेचुलेशन ST कर देना चैट के अंदर। ST इज द विनर ऑफ स्प्रिंग 2023। दे आर द चैंपियन, बट इस बार कंपटीशन उनको नेक्स्ट लेवल मिला है एंड ये कंपटीशन और ज्यादा मजा आने वाला है। Deciding to get in a little bit closer to Winning Godless, ceremony but भी Godless देखते हैं। instantly smells the threat and sniffs it away, snuffs it away in fact. And at this point, it has calmed down to whoever gets that next knock. Demo still waiting Winning and ceremony, hiding. Ansha really close to him. Claw has a different angle altogether. You His do only didn't qualify for responsibility PMSL. right now is to deal Why? with the threat They are coming not in from #2? maybe Muffin Ninja Ashik? or AJ. That is the sole मैंने responsibility. ओवरऑल स्टैंडिंग Godless देखा नहीं and ऑनेस्टली, Zio, बट मैं देख they के are बताऊंगा। together. Demo has been left to fend for himself. If he gets knocked down, there's no chance on earth that he can get back up. Every team depleted out of their utilities. Look at the bullets, look at the ammunitions. Just a few more mags remaining. Also guys, IHC have been anti to constantly all the fighting teams against like so many teams. IHC, At a certain anti point, OP, they will have to रॉ break आज out की Kansha परफॉर्मेंस के लिए बनता है and जिस take a तरीके से वो little bit बकल of अप करके damage आए। over there. #16 से Instantly उठ के decides to क्वालिफाई take करना his SSC position as 12 के Demo अंदर आना, reveals इट्स अ himself, ह्यूज वन। but he does IHC के manage पास to get that एडवांटेज है, crucial बाकी knock, SG के लिए and ओपी now कर दो Raw जिस वे में are in a उन्होंने whole फाइट world of बैक trouble. करके दिखाया SG OP एंटी हर्ट के साथ। hands सारी of टीम जितनी भी तीनों टीम्स Demo, आपकी and स्क्रीन it के is सामने so आ रही है, very इनके लिए deadly हर्ट एंड for ओपी the स्पैम class कर of देना। Raw जिस टीम officials. को Are आप not able to दिल से strike सपोर्ट for कर रहा है पूरे very long, टूर्नामेंट पे, left with वैसे only हर एक 2 टीम के लिए players. एंटी Dot falling और his ओपी way, बनता है। एक and the बार class हर्ट of स्पैम कर देना, IHC लिख दो right in front of PMPL them, ऑल and they टीम are busy OP keeping एंड with हर्ट the स्पैम class कर of दो एक बार Skylar सारी Gaming. टीम्स के Trades लिए। are coming in, कांग्रेचुलेशन ST and Demo left एंड all by आपका himself. So टीम really, ऑल्ट्रिगो the class of लैमैक्स Raw फॉर द विन। officials, they have been eliminated. Skylar's Gaming, they have the numbers in their favor. This looks like this is the game to lose. There is no chance for Demo to clutch this one, or maybe he can, as Mafia Ninja is the only one remaining. Has 2 players from the side of IHC are still bleeding, and the grenades are coming in. And a Demo, he has a MK14 at the same time, a solid hard cover ST for वर्ल्ड himself. रैंकिंग में But 0.7 में Mafia Ninja has a #1 grenade, and IHC's oil giving away the हो position of हो Mafia Ninja. जाते And Demo जाते with the स्काईलाइट्स MK14 गेमिंग ने comes यहाँ पे in, but चिकन SK डिनर reigns चिकन supreme डिनर देके as गई है। Mafia Ninja #5 के gets अंदर away एंट्री with the मार ली chicken स्काईलाइट्स dinner गेमिंग में, अगर for मैं गलत himself नहीं and हूँ his यहाँ पे team. तो। बहुत the बढ़िया final परफॉर्मेंस एक बार laughter स्काईलाइट्स comes down गेमिंग for Skylar's एंटी Gaming, ओपी इन but द the चैट big जीजी कर दो। question is, नाइस who फाइटिंग बाय is टीम एसजी going गाइस। to एक बार be बनता है गाइस titled ओपी as इन the द चैट। champion? लेट्स गो बॉयज। Stalwart Esports done और ऑल द enough टीम्स हर्ट स्पैम in कर दो the यार, final हर्ट्स few रुकनी चाहिए moments. चैट It के got अंदर गाइस, हर्ट्स रुकने ही नहीं चाहिए चैट के अंदर। एंड हियर वी गो, द विनर एंड द चैंपियंस फॉर PMPL साउथ एशिया इज हु गाइस? हु गाइस? हु? एंड रैंकिंग अभी भी नहीं, अच्छा अभी भी नहीं रैंकिंग दिखा रहे यार। अब तो पता है सबको, दुनिया को पता है भाई, अब तो दिखा दो, अब तो दुनिया को पता है यार।
गाइस सब टीम के लिए ओपी STE एंड अल्टर ईगल MX कांग्रेचुलेशंस एंड एंटी टू ऑल द टीम्स, एक बार हर्ट स्पैम कर देना, चाहे वो स्काईराइज गेमिंग हो, चाहे वो TTK हो, सारी टीम्स को अप्रिशिएशन बनता है। 4MV हो, NB स्पोर्ट्स हो, यहाँ पे DRS हो, यहाँ पे मैप की टीम हो, I8 हो, लियो हो एंड TRZ हो, काफी टीम्स के नाम नहीं लिए जाएंगे, सारी टीम्स के लिए एक बार एंटी एंड हर्ट स्पैम कर दो। हर्ट रुकने नहीं चाहिए गाइस, रेड हर्ट ऑन द चैट प्लीज गाइस, रेड हर्ट ऑन द चैट कर दो एक बार। हर्ट रुकने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए भाई। एंड गाइस ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम, जहां पे आपको रैंकिंग अभी मिलने वाली है। जो टेलीग्राम का लिंक दे दो मॉडरेटर साहब, टेलीग्राम का लिंक दे दो जल्दी से, रैंकिंग आपको देने वाले हम वहीं पे। लेट्स गो बॉयज। बाय द वे सबको पता ही है, चैंपियन एंड रैंकिंग्स भी पता ही है। सो मैच खत्म हो चुका है, सो अभी हम रैंकिंग दे देते हैं आपको लास्ट मैच की। गाइज हियर वी गो, ज्वाइन टेलीग्राम। जो जल्दी से गाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फाइनल रैंकिंग आपकी टेलीग्राम पे डाल दी मैंने। गाइज जल्दी से मॉडरेटर्स टेलीग्राम लिंक दे दो। और क्या चीज था? लो भाई रैंकिंग आ चुकी है आपकी गाइज, हमारे टेलीग्राम पे आ गई है गाइज, टेलीग्राम पे दे दो रैंकिंग। जाओ गाइज टेलीग्राम पे रैंकिंग देख लो, लास्ट मैच की कौन सी बार गाइज। दैट आई गाइज एलिमिनेटेड, हैशटैग 16th रैंक, सील एलिमिनेटेड, कुन्यू TRZ एलिमिनेटेड, SITM एलिमिनेटेड, रॉ ऑफिशियल्स ने कर दिया है, रॉ ऑफिशियल्स क्वालिफाई कर चुकी है, रॉ ऑफिशियल क्वालिफाई कर चुकी है गाइज। लो भाई here we go, चैंपियंस आपके आ चुके हैं स्क्रीन के सामने, PMPL साउथ एशिया। वो है वो है वो है वो है Stalwart Esports, PMPL South Asia Spring Champions and qualified to PMWI 2023 from PMPL South Asia। बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला है, बस बहुत टफ कॉल था गाइज। एक बार ओपी करना सारी टीम, एक लाल हर्ट स्पैम करते रहना चैट्स के अंदर, रुकने नहीं चाहिए। दैट रेड हर्ट फॉर ऑल द टीम्स जिन्होंने भी कंपटीशन दिया है टफ, एंड टू ऑल द टीम्स रियली अप्रिशिएटेड गाइज, जो इस बार कंपटीशन देखने को मिला है। चाहे वो आपकी एनबी हो, वाइब्स हो, DRS हो, T2K हो, I8 हो, आपकी मैप हो, हर एक टीम के लिए ओपी इन द चैट गाइस, हर एक टीम के लिए ओपी इन द चैट। एंड इस साल जो डाटा गाइस, सील, कुन्यो, TRZ इस सीजन ऐसा टीम नहीं कर पाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर सेम टीम रहेगी, सेम टीम फुल फाइट करके आएगी, अपने आप पे स्टडी करेगी, टेंशन मत लो। अपनी टीम को फुल सपोर्ट करो, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, साउथ एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करे, उनको फुल सपोर्ट करो। लाइक अभी भी लाइव आएंगे, हार्ट स्पैम करो पॉजिटिविटी के साथ। गाइस हर्ट नहीं रुकनी चाहिए। MVP भी आ रहा है गाइस, 2 मिनट रुक जाओ, MVP आ रहा है। बाकी हमारी एक वीडियो भी आएगी, उसमें भी जाके देख लेना। बाकी गाइस जो टीम 12 टीम रही है क्वालिफाई हुई है, दैट इज स्टॉलवर्ड, NB Esports, 4 Miracle Vibes, स्काईलाइट्स गेमिंग। गाइस रैंकिंग हमारे टेलीग्राम पे आ चुकी है, जाके देख लो। टेलीग्राम पे हमारे रैंकिंग आ चुकी है, टेलीग्राम लिंक दो मॉडरेटर्स, टेलीग्राम लिंक मत छोड़ो, लोगों को देते रहो, टेलीग्राम लिंक देते रहो। जाओ देख लो रैंकिंग आ गई है, टॉप 12 टीम कौन सी है, कौन कौन सी टीम एलिमिनेट हुई है, जाओ रैंकिंग दे दी है भाई, टेलीग्राम पे जाओ, सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम पे हमको। एंड अभी सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगा सबसे पहले टेलीग्राम पे, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, प्यार दिखा देना थोड़ा सा। भाई ST बहुत खतरनाक है, लास्ट डे खतरनाक खेलते हैं, यस प्रेशर पे बहुत अच्छा खेलते हैं।
जो उनका एक ट्रेडमार्क है। तो पुनीत भाई फुल स्पैम कर लो गाइस, टेलीग्राम लिंक आ रहा है आपको हमारे आपकी स्क्रीन के सामने, इसको ज्वाइन कर लो। मैं ओवरऑल स्टैंडिंग दे चुका हूँ वहाँ पे ऑलरेडी, तो आप वहाँ ज्वाइन करके अपनी देख सकते हो। ये पुनीत भाई जो दे रहे हैं अपना टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लो, मैंने भी दे दिया। जाओ 659 लोग। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल्टर ईगल MX2। मेरे को भी 10-15 मिनट लगेंगे सारी चीजें अपडेट करने में। अल्टर ईगो एसएल, अच्छा SLT है, शाइन लाइक डायमंड क्वालिफाई हुई है। नाइस वन यार, शाइन लाइक डायमंड ने लास्ट मोमेंट पे ही चौका मारा है, छक्का मारा है डायरेक्टली, बढ़िया। अब गाइस PMPL ऐसे PK वर्सेस साउथ एशियन टीम देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। रिसेंटली हमारे सर्वर को यहाँ पे ज्वाइन करा है समर्पण, रिजल भाई ने, लिमोन भाई, नार्कोस, दीपू भाई, मीत भाई, हेत भाई, याडू भाई, मिस्टर ओपी, पार्थ, हर्ष, अंकित, काजी, रजत, सौम्या, प्रतीक, ओमिन, 7 स्टार, हामिद अली, सैयद भाई, काजा भाई, रितु भाई, रंजन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम सर्वर। राइट नाउ 5 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स दूर है हम यहाँ पे अपने गाइस किसके 700 फॉलोअर्स होने वाले हैं टेलीग्राम पे, जल्दी जाके यार फॉलो कर लो फास्ट। मीनवाइल स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स चैंपियन रैंकिंग अभी आपकी स्क्रीन के सामने भी आ चुकी है। रैंकिंग अभी आपकी स्क्रीन के सामने भी आ चुकी है। Some people say there is no competition in PMPL Pakistan. Where is the competition? ST winning all 3 years. अरे अरे इविल भाई, हार्ड कंपटीशन ब्रो। इविल भाई इस पर देखा नहीं क्या आपने? आपको ये बोलते हुए थोड़ा सा लॉबी को देखना चाहिए एक बार, सेंस नहीं है जो आपने बोला। बोनस पॉइंट की वजह से, बोनस पॉइंट भी तो भाई अच्छा खेल के आए हैं। बोनस पॉइंट भी तो अच्छा खेल के आए ब्रो, जो अच्छा खेला उसको बोनस पॉइंट। मीनवाइल गाइस, डाडा गाइस, सील कुन्यूस ऐसे टीम आउट है। रॉ ने यार क्या खेला, 117 पॉइंट भाई। भाई ऑन पॉइंट, अगर आप देखते हो एक टीम और ऑन पॉइंट थी, बट ओपी परफॉर्मेंस भाई, ओपी परफॉर्मेंस। एक बार ओपी कर देना चैट पे सभी के लिए। लेट्स गो बॉयज। रोजमेरी जस्ट किल द रीजन। एसटी ओपन डीजे, यस गाइस। बाकी 547 लोग देख रहे हैं। अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो गाइज जाओ और हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो गाइज। मेरा इंस्टाग्राम लिंक स्पैम कर देना एक बार मॉडरेटर्स प्लीज, लास्ट टाइम। गाइज अगर आप नहीं हो, अब इंस्टाग्राम पे सारी चीजें हम अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज लेट्स गो, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो हमारे को, जल्दी से जाओ। 500 लोग देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, आवाज बढ़ाओ। बाय द वे गाइज, आवाज आप एमवीपी का वेट कर रहे हो, आई नो कि एमवीपी रैंकिंग जल्दी से आए। आई एम वेटिंग फॉर एमवीपी रैंकिंग। आ जा भाई, जल्दी से आ जा एमवीपी रैंकिंग। Guys, yes, and here we go, MVP 32 elimination 2981, and ये तो guys वही चीज होगी, टॉप भाई नहीं मानते MVP के लिए।
ऑलवेज एमवीपी, यस मेरे भाई। बाकी गाइज मैं चीजें वो कर रहा हूँ, ओनली फैंस पे। अरे लो भाई, एमवीपी रैंकिंग, फिस्ट बॉय सेकंड, सीक थर्ड, डॉग थर्ड, मोंडो, रिग, वैली एंड माफी निंजा भाई। बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस गाइज, सबकी तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, मजा आ गया भाई। लो भाई, चैंपियनशिप की ड्रॉप क्लैश की वीडियो कब आएगी? जल्दी ब्रो, जिशान भाई जल्दी, बहुत ही जल्दी आने वाली है अभी भाई। दोबारा देख जाके भाई, ऑल पॉइंट्स दोबारा देख। चैंपियनशिप के ड्रॉप की क्लैश जरूर ब्रो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लो। चैंपियनशिप की वीडियो भी बहुत जल्दी आपको अपने चैनल पे देखने को मिल जाएगी, टेंशन ना लो। बाकी यार मॉडरेटर्स प्लीज एक बार हमारे अपने इंस्टाग्राम का लिंक एक बार स्पैम कर देना भाइयों को। एसएससी फ्रॉम 27th ऑफ अप्रैल, यस 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 भाई, बट शायद डेट चेंज हो, शायद से, आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है। गाइस अल्टर ईगो लाइमैक्स का फोर मैन लाइनअप क्या खेल रहा था इस बार? गाइस एक बार बताना, अल्टर ईगो लाइमैक्स का फोर मैन लाइनअप क्या था? एसटी जीती है भाई, यस एसटी जीते, एनटी एनबी, यस गाइस। भाई पीका का क्या सीन है बताओ जरा ब्रो? पीका नहीं है ब्रो, पीका स्टडी पे फोकस करा है। एनबी का मेरे को अल्टर ईगो लाइमैक्स का लाइनअप बताना क्या खेल रहा था? ऑक्टा, पोटैटो, रोजमेरी, और लास्ट बंदा कौन था गाइस? प्लीज बताना। फेनेटिक, फेनेटिक ही था ना? वही डेविड है, फेनेटिक का नाम है डेविड। फेनेटिक, यस यस गाइस। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम। अभी के लिए स्ट्रीम को एंड करते हैं, हमारी वीडियो आ जाएगी, वीडियो को देख लेना। 265 लोग देख रहे हैं, अगर आपने मैच फन मिस कर दिया है तो हमारी स्ट्रीम स्टार्टिंग से देख लेना। आज हमारी बहुत लंबी स्ट्रीम हुई है, 5-6 घंटे की स्ट्रीम है। थैंक यू सो मच कमिंग फॉर द स्ट्रीम। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स, अल्टर ईगो लाइमैक्स एंड एंटी टू ऑल द टीम्स जिन्होंने भी टफ कॉम्पिटिशन दिया है। शाइन लाइक डायमंड वहाँ से क्वालिफाई हो चुके PMWI के लिए, बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन था। हमारी वीडियो जस्ट अभी 30-40 मिनट में वीडियो आ जाएगी गाइज। प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो हमारे चैनल का। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, योगी, ये मेरा नया चैनल है, चैनल बाय द वे।
ये नया चैनल, सो गाइस आईयू गेमर चैनल को लिख करके नोटिफिकेशन बेल लेना, जो इसको ऑल पे कर लो, दैट्स इट। अभी मेरी वीडियो आएगी उस पे, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम। अगर आपने अभी स्ट्रीम को लाइक नहीं करा एक बार लाइक कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अभी हमारी वीडियो पे नेक्स्ट पे। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाकी जय जी जी गाइस, जी जी टू ऑल द टीम्स। ठीक है, बाकी फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, लिंक आपको पता ही है अपने लाइक ये इंस्टाग्राम में, इसको कर लो ज्वाइन। 234 थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। एक बार हर्ट स्पैम कर दो जाने से पहले। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।